commensurate to our actual and true potential. A crucial factor in this context has been the limited involvement of the private sector in defense production and export activities. In addition, relatively less attention has been paid to academia industry interface and in the involvement of R&D organizations, which curtail the competitiveness of certain sectors of this industry. In order to this objective, I will stress upon the integration of public-private defense industry to achieve maximum results. New ideas, entrepreneurial and management skills, private sector need to be co-opted with public sector defense industry. The potential of academia and the organizations needs to be incorporated with the defense industry for more efficiency as well as volume to our defense production exports. Our government, ladies and gentlemen, will continue to a business-friendly environment for investments in human capital, professional development, and the demand-driven industry. The unity government is also committed to deliver an industrial strategy that contributes to growth and employment, encourages small and medium enterprise to come forward and join hands for the development of our industry. In this regard, I forward to the Ministry of Defence Instructions formulating of a clear policy framework to integrate the whole potential of Pakistan's defence industry. Distinguished guests, when we talk about the defence industry, International Defence Exhibition and Seminar is an iconic platform for showcasing the latest defence technologies and innovations. In fact, Ideas is a regional gateway for international manufacturers and suppliers to explore new avenues of defence cooperation through joint ventures, outsourcing, and collaboration. On the other, the presence of a number of foreign exhibitors and delegates reflects Pakistan's deeply embedded and mutually beneficial relations with the international fraternity. I would say that Ideas is a shared vision for global peace, stability, and harmony amongst the community of nations. And the Ideas slogan, "Ours for Peace," truly reflects Pakistan's principal stance in this regard. Ladies and gentlemen, before I wind up, I need to appreciate the efforts of the Ministry of Defence Production, Defence Export Promotion Organization for successfully holding a series of ideas to exhibit the best of Pakistan's defence sector and promoting international cooperation in the field of defence production. I applaud the continuous support of the federal provincial ministers, the Pakistan Armed Forces, law enforcement agencies, Government of Sindh for the successful conduct of this mega event. I am also very pleased to know that Pakistan Postal Service has issued a commemorative postage stamp to complement the holding of this very special of Ideas 2022 in the 75th year of independence of Pakistan, and I am positive that this landmark event will achieve more progress years to come. I thank you all. Pakistan Zindabad. अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग सब? अभी तक तो बचत बाज़ार अच्छा जा रहा है। बदर एक्सपो की तरफ से जो लगा है, लास्ट ईयर भी हम लोग आए थे तो यहाँ काफ़ी अच्छा था और इस साल भी काफ़ी अच्छा है। रिस्पांस पब्लिक का फुटफॉल थोड़ा सा मेरे ख्याल से होना चाहिए।
क्योंकि जिस तरीके से हम लोग इधर काम करने के लिए बैठे हुए हैं और बाजार जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, तो बचत के इधर लोगों को अच्छी खासी हम लोग बचत दे रहे हैं। जैसे ये आलू है, तो हमारे आलू 3 किलो आलू का बैग आपको अगर तो आप आलू लेते हैं तो आप बाहर से मिलता है 220 रुपये तक का ऑन एवरेज प्राइस अप्रॉक्सीमेटली। हम आपको दे रहे हैं 150 रुपये का 3 kg। जैसे ये प्याज आ गई, अब ये प्याज है, ये प्याज अच्छी प्याज है, सबसे बेस्ट क्वालिटी की एक्सपोर्ट की प्याज है, सेम एज आलू। तो प्याज आपको हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे 3 kg। बाहर आपको भी रेट पता है और मुझे भी रेट पता है कि 600 कम रुपए की तरह आपको 3 kg प्याज नहीं मिलनी। सेम एज अगर हम लोग टमाटर देख लें तो टमाटर के अंदर हमारे पास काफ़ी अच्छा टमाटर है, और आप टमाटर देख सकें तो टमाटर सारा बड़ा टमाटर है और सारा लाल और अच्छा टमाटर है। यही लोग 60 रुपीज़ पर kg हम लोग दे रहे हैं, और बाहर आपको 70 रुपीज़ का बाहर टमाटर पड़ रहा है। तो इससे ज़्यादा तो बचत, ईद से पहले ईद आ चुके हैं, तो आई बी लाइक मैं बहुत खुश हूँगा कि आप लोग आएँ, इस चीज़ को अवेल करें। बाकी थैंक यू सो मच बदर एक्सपो, थैंक यू सो मच बचत बाजार, एंड थैंक यू सो मच कराची। मेरा नाम मोहम्मद है और मैं BTV फार्मेसी फाउंडेशन पाकिस्तान से मेरा लोग है। हमने एग्जीबिशन में जो है अपना सोलिया लगाया है अवेयरनेस के लिए, मेडिसिन की अवेयरनेस के लिए, आवाम को अवेयरनेस है कि जो कि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है जालियत व्याध लोग बनाते हैं, तो उन्हीं के आप लोग जो है मेडिसिन, मल्टीनेशनल मेडिसिन को देखें। और जो एक्सपो है ये आवाम के लिए बड़ा अवेयरनेस है, और इस पर है कि आवाम को जो है हमारी आवाम को अपनी हेल्थ में जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जब एक्सपो इन्होंने बड़ा अच्छा एक इकदाम उठाया है लोगों के लिए, आवाम के लिए, और यहाँ जो सर्विस है बहुत अच्छी। और BTV फाउंडेशन का यही है कि हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी आवाम है मेडिसिन डिस्काउंट पर भी मिले, और जो मेडिसिन है वो जाली ना हो, और मेडिसिन ओरल जो है कंपनी की हो। Merhabalar, Ergin Akyüz, Trabzon Silah Sanayi Dış Ticaret Müdürü olarak görev yapıyorum. Firmamız 1993 yılında Trabzon'da kuruldu. Entegre tam kapasite üretim tesisi. Yarı otomatik tabanca üretimi yapıyoruz. Markamız Zigana. Firmamızda yarı otomatik silahlar Zig 14, 1910 X9 silahımız mevcut. Bunun yanında kendi üretimimiz ve kendi dizaynımız olan Zigana serisi, Zigana Sport FK modellerimiz de mevcut.
आइडियाज 2022 जो कि एक बाइनियल इवेंट है, 2 साल के बाद होता है, लेकिन इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से जब 2020 में हम इसको नहीं कंडक्ट करा सके तो ये अब 4 साल के बाद है। तो उसकी वजह से अब की इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है और हम इंशाल्लाह पूरी तरह इसके लिए तैयार, और हम उम्मीद करते हैं कि 2018 जिस तरह कंडक्ट करता है उससे मज़ीद बेहतर होगा और पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होगा। हमारे पास काफ़ी हाई लेवल डेलीगेशन की कॉन्फ्रेंस आ चुकी हैं जो कि पूरी दुनिया के तमाम बयाज़ों से हम डिग्नेट्स आ रहे हैं, और एग्जिबिटर्स भी हमारे पास यूरोप, एशिया, हर तरह से बहुत बड़े लेवल के एग्जिबिटर्स इस एग्जीबिशन में आ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस दफ़ा हमने बहुत ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया है वो ये है कि न सिर्फ हम अपनी जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री है उसके साथ साथ अपने जो प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी इसके लूप में लेके आएँ और उनको भी एक आउटलेट दें ताकि वो दुनिया के सामने अपना प्रोडक्शन है उसको शोकेस कर सकें। इस पर भी इस तरह की कोई बिजनेस एक्टिविटी होती है जहाँ पर इंटरनेशनल लोग भी आए हुए हैं, आपके लोकल इंडस्ट्री भी मौजूद है, तो इसमें एक बहुत बड़ा उनकी एक अपॉर्चुनिटी होती है, न सिर्फ यहाँ के जो दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग हैं या जो हमारे लोकल लोग हैं कि वो जो दूसरे मुल्कों से आने वाली कंपनीज़ हैं, OEMs हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, और इसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल कंपनीज़ हैं एट टाइम्स उनके भी जॉइंट वेंचर्स होते हैं बाहर के मुल्कों की कंपनियों के साथ। तो डेफिनेटली ये हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा और हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक अच्छा साइन है। लेवल का ये एक इवेंट है जिसमें पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और बहुत हाई लेवल, जैसा कि मैंने आपको बताया, आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ जब पाकिस्तान में इसका इनेकाद किया जाएगा तो इसका बहुत ज़बरदस्त और बहुत पॉजिटिव मैसेज है जो लोग यहाँ आएंगे वो लेके जाएंगे। उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान भी इस लेवल का एक बहुत बड़ा इवेंट करा सकता है, और तमाम तर जो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अब हमारे साथ वो सिक्योरिटी चैलेंज नहीं है जो हुआ करते, और इस तरीके की चीज़ होगी। और आज जो फ्लड के बाद के जो हालात हैं उसके बाद इस तरह का एक इवेंट कंडक्ट होना, ये हमारी इकोनॉमी को भी इंशाल्लाह इससे फायदा होगा। इसके अंदर हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेमिनार हम मुनक्किद करवा रहे हैं जो कि बेसिकली 2 सेगमेंट्स में होगा, जिसका सेगमेंट 1 टियर 1 जो है वो आइडियाज़ के पहले ही दिन उसका इनेकाद किया जाएगा, और उसके अंदर 4 स्पीकर्स होंगे जो कि एक्सपर्ट्स होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और इसी तरह जो सेकंड टियर का जो नेक्स्ट डे पे कंडक्ट करा जाएगा, दैट विल बी द सेकंड डे ऑफ आइडियाज़, उसके अंदर जो हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने इस पे काम किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, बाकी ना काम प्रेजेंट करेंगे। और ये प्रेजेंट करने वालों के अलावा दोनों दिन हमने अपने स्टूडेंट्स को और यंग ऑफिसर्स को भी इनवाइट किया हुआ, वो इनको सुनेंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनसे सीख के जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे ज़ोर शोर से, चाहे वो कराची की सड़कें हों, आइडियाज़ के जो वेन्यू है कराची एक्सपो सेंटर उसके बाहर की कोई जगह हो, कराची एक्सपो सेंटर के अंदर का जो आउटडोर एरिया है और जो एग्जीबिशन हॉल्स का एरिया है, सब के ऊपर बहुत ज़ोर शोर से काम हो रहा है, और इंशाल्लाह हम अपने टाइमलाइन को मीट करते हुए स्टार्ट से पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। सिंध गवर्नमेंट के बारे में मैं ये कहूँगा कि उनकी पैटर्नेज हमेशा हमें मिलती ही है, पास्ट में भी मिली है, और इस दफ़ा भी आपने खुद देखा कि हमारी जो 2 स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग्स थी, दे वर हेल्ड एट CM हाउस। CM साहब वेरी काइंड ऑफ हिम, उन्होंने उसको शेयर किया, और वहाँ पर तमाम सिंध गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स मौजूद थे। उनको जिस तरीके से CM की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिली, उनका बड़ा पॉजिटिव ने इम्पैक्ट देखा कि जब सिंध गवर्नमेंट ने अपना साथ हमें दिया तो उससे चीज़ें बहुत हमारे लिए आसान हुई। फरिश्तों को शिकायत है कि या रब बशरे गुमा कम कोशिश भी है, नया इंसान कोई तख्लीक कर तो ये जाहिल भी है, बारे दोष भी है। It's 2 p.m. IDEA 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The board exhibition offers a platform for E2G, E2G, and E2 directions, joint ventures, and investments in the private sector. A key seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges in the defense sector. The 12th edition of IDEA will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good evening to all of us. So today, I would like to deliver presentations about development of 5G network-centric warfare, its component and challenges. Next slide, please. So I would divide this topic into 4 subtopics. The first one is that I will give very brief introduction about the 5G itself, the KPI, the use cases, the standardization roadmap, and so on. And then from subtopic 2 until 4, they are about the military. What are the 5G key enablers that can be used for the military? How 5G can be very beneficial, can be used for the future battlefields. And the last but not least will be, so what are some technical challenges in there that we need to consider? Okay, next slide. So I will start with this triangle, which is very famous in explaining about 5G. If I only have one slide, we can see here that in 5G, basically there are 3 very big use cases. The first one is called the massive broadband, which means that the speed is much faster than the existing one, the existing 4G or even the 3G and so on. And then the next one, the bottom left, no, previous slide please. Okay. The bottom left is about the massive machine type communications. So this is about so many devices are connecting to the network. For instance, in this kind of venue or in the stadium and so on, even if there are cellular signals, in most of the cases we cannot connect to the network. It is because a number of connectivity are limited. So in the 5G, this kind of problems is solved. So one big use case in the 5G will be massive machine type communications, which is later on will be used very much for the IoT, Internet of Things, and so on. And then the third use case is about critical machine type communications. This is about the very low latency, even less than 1 millisecond latency. So using these 3 general subcases or big use cases, then there are many possibilities, like using 5G sensor network, using 5G for Industry 4.0, using 5G for streaming, using 5G for autonomous driving or semi-autonomous driving, and so on and so on. Next slide, please. So if we want to see a little bit detail, then the upper left or upper right picture is showing how we can compare the 5G with the 4G. So 5G is much better in all the aspects, and then we can see also in there several KPIs of the 5G, but I think it's quite difficult for you to read. But here I just want to show you that with all these KPIs, all this performance, we have very big possibilities to use it in various type of use cases. For smart cities, for mobile broadband, for the automated controls, real-time telematics, and so on and so on and so on. And of course, 5G is connected to the AI or also the edge computing. Next slide, please. And in this slide, you can see that the standardizations of 5G is now still ongoing. We call it the release stages, release 14, release 15, release 16, release 17, and so on. Now it's 2022, so the release 17 is already there, which means that the full set of 5G will be available in the market already. And some countries have launched the 5G. I think Pakistan is not there, but some countries like Korea, Japan, US, Germany, Saudi, and many countries have launched the 5G, so they can
use all the capabilities. Next slide, please. And then, if we relate this to this event, actually, even though 5G is originally developed for civilian applications, recently there are many studies saying that 5G also be used in defense. This study from Allied Market Research saying that global 5G in defense market is expected to reach 70,000 million US dollar. This is quite a significant number. Next slide, please. Next. So, how 5G can be used for the defense? There are several key enablers. I don't know if you can read the slides because the fonts is quite small. But actually, there are some enablers in the 5G that is very significant for the military. The first one is the NFV, Network Function Virtualizations, in which most of the functions will be virtualized. And then also SDN, software-defined. The network will be defined using software, not hardware. And also network slicing, which is a set of parameters can be very easily changed and done for different types of use case. And then orchestrations, end-to-end orchestrations. This one is using AI, and then cloud native, mobile edge computing, and of course millimeter wave. Next slide. So with all those key enablers, we can see that there are many studies, many research about using 5G for the military. This is just a few examples, like the one done by LMT and definable, and so on and so on. Next. Okay. So this slide explaining in brief about how this 5G can be used for military applications. Okay. The first and the foremost is that it can be used for the military decision making because of the quality of connectivity, the very low latency, and so on and so on. Several studies investigating about how 5G can be used for military decision making, and then also for smart warehousing, and then for distributed command and control in the battlefields. Even some studies are investigating about the use of the 5G for NTN, non-terrestrial network. Also for tactical communication. Tactical means that in the battlefields, using millimeter wave, so we can use very high frequency, high directivity, and very low latencies. Also for the proximity service, PROC, 5G for the AR, VR, augmented reality, and the virtual reality, also the mixed reality, and also for the geointelligence. These are some pictures, some pictures that is showing that how this 5G can be used and has very big potential for the military applications. Next. However, we can see that still there are some challenges in the 5G. The first one, click please, next, is related to the KPI challenges. Not all KPIs are there, but it is in the process. Next. The next one is about architecture. 5G is much more efficient than other G, than 4G, than 3G, of course. Okay, but if you can see here that the contribution of 5-layer algorithms is about 5 times. Contributions of spectrum is about 20 times, and the big contributions comes from smaller cells. It is 1,600 times. So all these components is, if it is there, then it is very, but in fact, not all of them are there. Next. And then the next one is the most important, I think the most important part here is that challenge of softwareizations. Okay, in the legacy network, in the 4G, software and hardware is interlocked with each other. Most of them are not open. Okay, and in the 5G,
there is called decoupling between software and hardware, so that we can develop the software and virtualize the hardware and so on and so on. And then post 5G, after 5G, beyond 5G, it is just decoupling, but also orchestrated using the AI. So this is the most important technical revolutions in the 5G. Next. Next one is about the bandwidth and delay. I think we can skip one, and then next one. Next. The next one is about the use of the IP version 6. Next one. So, as we can see that one of the things that have big impacts on the security in the 5G is softwareizations. Softwareizations mean that NFV, SDN, edge cloud computing, and so on. All of them are softwareizations. And it has very big impacts for security aspects. Next. 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 Okay. If we compare this 5G to 4G, then 5G is much better in terms of security, much more secure. The problem is that because 5G is more software, meaning that the security problem difference. So we need different approach of assessing the security of mobile cellular communications, like Lars said just now. Maybe we need to use the cybersecurity approach. That's what makes the 5G more challenging. It is much more secure than 4G. But because of this variety of use cases, meaning that it also increasing the surface of for attacks. That's why this is very big concern to use this 5G for military. Next slide, please. And of course, the security standard itself still ongoing. Now, next. The problem is this one. Okay. Even if the standard is there, okay, the standard is just the what we call it, the innermost rectangular. Okay. After that, there are some security issues which is depend on the vendor development process, and then another security issues that are related to the deployment process, and then another security issues that are related to the operation process. That's why there are so many forums that are discussing about how we need to deal with this security issues in the 5G. 5G has very big potential to be used for the military, but there are so many challenges, technical challenges, software challenges, and the most important thing is that security challenges. So we need to do very important and serious research if you want to use this 5G for the military. Next. That will be the last slide from my presentation. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. बहुत ही बड़ा इवेंट के जिसमें अगर हम इंटरनेशनल डेलीगेट्स की बात कर लें, इंटरनेशनल ममालिक की पार्टिसिपेशन की बात कर लें,
शायद पाकिस्तान का कोई दूसरा इवेंट जो है वो इसको मैच भी नहीं कर पाता। ये हमारा ट्राई सर्विसेज इवेंट है जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स मिलकर अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं और वहीं पर ही सारी दुनिया के लोग आके अपनी प्रोडक्ट को शोकेस करते हैं। और कई सारे ऐसे जॉइंट वेंचर माजी में हो चुके हैं और इस दफ़ा भी इसके इम्कान बहुत दिखाई देते हैं। पाकिस्तान की तमाम बड़ी कंपनीज वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल कंपनीज की बहुत बड़ी तादाद यहाँ अपना स्टॉल कायम कर चुकी है। आइडियाज़ 2022 जहाँ आर्म फॉर पीस जो उनका सूरत दिखाई देता है, जहाँ स्प्लेन की बात हुई है, वही एक खास टॉपिक इस आइडियाज़ 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। इस सिलसिले में एक प्रॉपर सेमिनार का इनेकाद भी किया गया और ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल को इससे आगाही दी गई। आज अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं तो सारी दुनिया में ये खास सब्जेक्ट दिखाई देता है और सारी दुनिया इस पर एक खास फोकस करती हुई दिखाई देती है। मेरे साथ 3 हमारे मुल्क की बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत गुफ्तगू के लिए मौजूद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस वक्त ये किन किन चीज़ों में हमारे लिए बहुत कारआमद साबित हो सकता है। इंतहाई अहम शख्सियत मेरे साथ मौजूद है। क्लाउड एंड मेटावर्स आर्किटेक्ट, CEO पैरा क्लाउड और इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं ज़ियाउल्लाह खान साहब। थैंक यू। उनके साथ MNP के बिजनेस हेड एंड फिल्म्स के और इसके साथ साथ आप ज़बरदस्त किस्म की इस मामले में भी बड़ी एक्सपर्टीज रखते हैं अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुजम्मिल अतर साहब। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल साहब। जबकि उनके साथ बड़ी जिम्मेदारियां, अहम जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, आइडियाज़ के साथ भी जुड़े हुए हैं और जहां मुल्क में कोई मुश्किल आती है वहां पर ईसा लैब बहुत आगे दिखाई देती है। CEO ईसा लैब फरहान साहब। थैंक यू वेरी मच फरहान भाई, बहुत शुक्रिया। फरहान भाई ज़रा शुरू करते हैं ज़ियाउल्लाह खान से। ज़िया साहब, सबसे पहले तो आम लोगों को, मुझे भी नहीं पता, तो मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, हम बिल्कुल आम लोग यहाँ बैठे हुए। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? नॉर्मली जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं ना, जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उसमें इंटेलिजेंस है, मगर वो बिल्कुल नहीं थी। मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि उसको क्या ये आपकी एज अगर 60 से ऊपर है तो प्लीज़ आइडेंटिफाई करें इनको, ब्लड डालें इनसे। अच्छा, ये इंटेलिजेंस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है जो आपकी एज पूछ के उसका जवाब देता है। मगर इसके बरखिलाफ तो नॉर्मल अभी जो हम अपनी ज़िंदगी में सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नहीं होते। अगर आप, जो आम आदमी भी इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने लगा है, आप फेसबुक पे जाते हैं, आप तस्वीर अपलोड करते हैं, वो आइडेंटिफाई करता है कि तस्वीर में कौन कौन लोग हैं आपके दोस्त में और उनको ऑटोमेटिकली करता है। अच्छा, अब ये सिंपल सा प्रोग्राम नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम है जो तस्वीर को देख के आइडेंटिफाई कर लेता है कि ज़िया है। तो इस काम के लिए आपको नए किस्म के प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे। तो जो पुराने किस्म के प्रोग्राम है जो मोस्ट ऑफ द हम कर रहे हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल नहीं होती, मगर जो नए किस्म के प्रोग्राम है इनमें एक्सटेंसिव इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रही है। ज़्यादातर पता नहीं है नए प्रोग्राम क्या है वो। अच्छा, वो अब मिसाल के तौर पे टेक्नोलॉजी के मैं अंदर जाना चाहता क्योंकि एक आम आदमी के लिए प्रोग्राम है, मगर लुबिना आप ये इस तरह समझे आप कि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ना पहले तो ये पता कि, और अभी यही होता है कि हम क्या करते हैं कि उसको ना ट्रेन करते हैं। ट्रेन से मतलब है कि हम क्या करते हैं, तो ना जैसे मेरी 10 तस्वीरें दिखाएंगे उसको। अच्छा, हम आम जिंदगी में मुझे कैसे पहचानेंगे? मुझे 2-4 दफा होगा तो पहचानेंगे आप। अच्छा, कंप्यूटर भी इस तरह करने लगा है कि आप खुद नहीं लिखनी पड़ती, तो आपने उसको कहा ये तस्वीर है, ये ज़िया है, तस्वीर है, ये ज़िया है। अच्छा, जब 10 दफा किया तो वो ये प्रोग्राम है जो उससे ये निकाल लेते हैं कि ये ज़िया है। तो आइंदा कोई नई तस्वीर दिखाई जाए तो वो मुझे पहचान लेंगे ये भी ज़िया है। तो इसका के लिए ये समझना जरूरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस वक्त जो टेक्नोलॉजी पहुंची, आपको प्रोग्राम ट्रेन करना पड़ता है। अगर आप ट्रेनिंग करेंगे या डेटा चाहिए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो जुड़ी हुई है साइंस वो है डेटा साइंस। तो आपको जैसे हमारे पास इसे लैब्स के वो बैठे हुए हैं, अभी क्या होता था, ब्लड आया, ब्लड खुद में वो देखा डॉक्टर, आइंदा क्या होगा और अभी हो रहा होगा, इनके पास भी होगा कि तस्वीर से डायग्नोज उसको बहुत सारी खाते हैं, मगर करना पड़ेगा, डेटा चाहिए और तस्वीर आके कि यार ये कैंसर है। फिर जब वो नया कैंसर सेल लेगा तो फौरन पहचान जाएगा कि कैंसर है। पहले इंसान कर सकते थे, सिर्फ आप मशीनें भी कर सकती हैं। मैं ये जानना चाहूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से करते हैं आम जिंदगी के अंदर, क्योंकि एक IT एक्सपर्ट इसको ज़्यादा और बेहतर बता सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ, ज़ियाउल्लाह साहब खुद एक ज़बरदस्त किस्म के एक्सपर्ट है, लेकिन IT सेक्टर के थ्रू इस इंटेलिजेंस को किस तरीके से सामने लाया जा सकता है?
मैं अपनी बात शुरू करने ले ज़िया साहब जो मेरे साथ बैठे हैं, ये इनके साथ बैठना ही मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि इनका जो तारुफ आपका है वो बहुत मुख्तसर तारुफ है। इस वक्त ये पाकिस्तान के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग के अंदर समझ लीजिए इनके साथ मेरा बैठना ऐसे ही है कि सूरज के सामने जो है आप चराग दें, तो मैं तो इन सामने ज़ाहिर है अपनी छोटी बात नॉर्मल बात कर सकता हूँ। ये एक्सपर्ट हैं इस पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पे सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट इनिशिएटिव है पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर आईटी एक्सपर्ट को बनाने का। उसके अंदर सबसे बड़ा काम ये प्रेसिडेंशियल लेवल के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के साथ मिलकर कर रहे हैं इस वक्त। तो बड़ी किस्मती है हमारी, एक दो बहुत बशरियात के दरमियान में आपने मुझे बिठाया है, तो मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहरहाल काम हमने शुरू किया है, जिसके ऊपर इन्हें तवज्जो दिलाई है। इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा काम कर, इसमें दो टाइप, एक जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इन दो चीज़ों के अंदर जरा ज़िया साहब ने बताया के अंदर जो मामूली चीज़ें होती हैं वो नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर आती हैं, और उसके बाद जो अब इसके अंदर आगे बढ़ते जाते हैं। जिस तरीके से एक की तारीख में जो गूगल असिस्टेंट या अगर आप कर लें एप्पल की, तो वो एआई के तौर के ऊपर सी को इस्तेमाल करता है। इसी तरीके से जो स्मार्टफोन्स हैं उसके अंदर उसके साथ अलेक्सा इस्तेमाल किया एंड्रॉइड के अंदर। तो ये डिफरेंट तीन टाइप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें डेफिनेट सबसे ज़्यादा जो पावरफुल समझी जाती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके अंदर सी को समझा जाता है। गूगल सर्विसेज को बहरहाल सबसे ज़्यादा फोकस हासिल है, उसके बाद फिर जो है वो अलेक्सा को। इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के कहाँ पहुँच चुकी है। आपका फ़ोन आपको आपसे ज़्यादा बेहतर बनता है। मैं इसकी कुछ मिसालें बड़ी चस्प आपके सामने रखूँ। आप दिन में कितनी दफ़ा कौन कौन जगहों के ऊपर विजिट करें, इसका डेटा के फ़ोन के अंदर महफूज हो रहा है, आपके कोऑर्डिनेट्स के साथ, आपके लॉन्गिट्यूड के साथ हो रहा है। उस जगह की फिर निशान, चूंकि उसके पास पहले ही जगह प्रोग्राम में सेव है, तो वो निशान करता है कि या ये जगह आपके काम की जगह है। वो जब टाइमिंग देखता है, सुबह आप 10 बजे या 9 बजे एक जगह दाखिल होते हैं और वहाँ 6-7 बजे निकलते हैं, तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये इसकी वर्क प्लेस है। तो आपको बताने की जरूरत नहीं। अगर आप अपने फोन के अंदर जो रोजाना जान लोगे, जब वो गूगल मैप्स के अंदर जाएंगे तो आप अगली के अंदर वर्क प्लेस आ रही होगी, आप भी ऐड नहीं किया उस प्लेस को। इसी तरह रात का टाइम चूंकि ज्यादातर आपके अंदर गुजारते हैं, मैं सहाफियों की बात नहीं कहूँ, लेकिन ये कि ज्यादातर लोग वो शाम के बाद के सुबह तक का वक्त पर गुजारते हैं, इस वजह से वो उनकी होम की कैटेगरी अंदर नजर आ रहा है। अच्छा, इसी तरह चूंकि सैटरडे संडे का दिन डेफिनेटली आप करते हैं, तो वो आप इसी तरीके से आप अगर एक खास टाइम के अंदर घर से चलते हैं और एक जगह जाते हैं, तो उसको डिटेक्ट है कि ये मस्जिद आ रहा है शख्स, तो आरे में ये निशान होती है कि आप मस्जिद आने वाले हैं और कितनी दफा, यानी 5 वक्त के नमाजी हैं, एक वक्त के जुम्मा नमाज पढ़ते हैं आप के अंदर। अच्छा, इसके बाद फिर आप जिन लोगों से मुलाकातें करते हैं, अच्छा आप एक शख्स है जो स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर है, वो आप उससे मुलाकात करते हैं, आप हफ्ते में 1 दफ़ा मिलते हैं, 2 दफ़ा मिलते हैं, या महीने में 2 दफ़ा जाते हैं, उससे आपकी शख्सियत के बारे में गेज हो रहा है कि आया आप एक खिलाड़ी से मिलने के लिए जाते हैं रेगुलर बुनियादों के ऊपर, आप एक इस्लामिक स्कॉलर से मिलने के लिए जाते हैं, आप एक डॉक्टर के पास मिलने के लिए जाते हैं, और डॉक्टर फिर वो किस फील्ड का डॉक्टर है, बिकॉज वो सारा डेटा उस डॉक्टर का भी बेड के ऊपर, गूगल के ऊपर या सेफ है, तो वो लिंकेजेस क्रिएट करता है। आज की तारीख के अंदर अगर आप इंटरनेट ऊपर जाएं, उनको सिर्फ इस बात जरूरत होती है आपकी फेसबुक या आपकी गूगल आईडी उनके पास मिला है, उसके बाद आपके बारे में मुकम्मल मालूमात आपसे ज्यादा बेहतर उनके पास आ जाती हैं, और उस बुनियाद के ऊपर वो फैसला करते हैं कि आइदर आपको वीजा देना चाहिए या आपको वीजा नहीं देना चाहिए, आपके ही उनके मुल्क की जरूरत है या आपके उनके लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। तो ये मैं आपको इसकी बहुत ही आपको मामूली मिसाल ये है, जिस तरह ऐसा फरमा रहे थे, वो जो तस्वीर है, उस तस्वीर को देख, अगर आप बड़ी दिलचस्प बात यह है, अगर पास आपके बच्चों की बचपन तस्वीरें हैं, तो उन तस्वीर की बुनियाद के ऊपर वो साल हर तस्वीरों को उन चेंजेस के साथ आपको दिखाता है, और इसके लिए आपको और प्रोग्राम फीड करने की नहीं है।
गूगल ऑलरेडी ये काम के ऊपर आपके बगैर कर रहा हो, तो आपकी तस्वीर की डिटेक्शन चेंजेस के साथ कि 1 साल के बाद आपका अगर एक चाहे जिसका नाम राफिया है, राबिया है, वो उसको डिटेक्ट करते कि बचपन में इसकी ये था, उसके बाद 1 साल बाद ये हो गया, 2 साल के बाद ये हो गया और 15 बाद वो इस कंडीशन के अंदर है, तो वो पूरी तस्वीरों की ट्रेल वो आपके सामने रख देता है। मेरी बात लंबी होगी, लेकिन मैं एक्चुअली बताना ये चाह रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त आपकी जिंदगी के अंदर किस लेवल तक शामिल हो गई है। बिल्कुल सही बात है फलानी साहब, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाए उसको टेस्ट के लिए आपके पास आना पड़ता है। जिस तरीके से अभी हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो ये तो आपके शोबे में भी बड़ी करामत साबित हो सकती है डाटा वगैरह के हवाले से, या अगर अब कौन से टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, किस सीजन में हो रहे हैं, तो ये तो इंटेलिजेंस आपके लिए भी बड़ी करामत हो सकती है। जी बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने करना शुरू कर दी है। ख़ासतौर पर रेडियोलॉजी के अंदर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन साइज हैं, उसकी हज़ारों, जिस तरह से सर ने कहा कि वो उनकी इमेजेस और उनके रिज़ल्ट्स वो फीड हो गए और कंटिन्यूसली डाटा उनके सिखाया जा रहा है। और अब जो है वो, बल्कि हमने भी एक स्टडी करी जिसके अंदर तकरीबन हमारे 45,000 इमेजेस थे, और उसमें जब हमने देखा तो 45,000 इमेजेस फीड करने के बाद में पता ये चला कि 25 इमेजेस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चीज़ें पकड़ ली थी और ह्यूमन रेडियोलॉजिस्ट ने मिस कर दी थी। अब आप अंदाजा अच्छा, दूसरा ये हुआ है कि कोविड में डॉक्टर्स आ नहीं रहे थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो ये हमने स्क्रीनिंग के तौर पे यूज़ करना शुरू किया था कि जो नॉर्मल रेडियोलॉजी की चीज़ें हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, वो स्क्रीन हो जाएं और नॉर्मल वाली जो है वो रेडियोलॉजिस्ट के पास आ जाए। इसी तरह से टेस्ट होते हैं, जैसे ख़ासतौर पे डेंगू आ रहा है और उसके साथ दूसरे टेस्ट भी हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन है, लिवर के हैं, तो इनका डाटा भी कंपाइल होकर निकल के आते हैं। जैसे इस दफ़ा जो डेंगू आया, हमने अनाउंस किया कि वो वैसे कहते हैं ना ब्लीडिंग हो जाएगी और दूसरे मसाइल होते हैं डेंगू में, लेकिन इस दफ़ा लिवर फेलियर के साइन सिम्टम्स आए, तो हम लोगों ने तो ईसा लैब ने ये शुरू कर दिया है। अच्छा, फिर हम लोग ना बायो सेफ्टी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। कोविड ने जब आया था, उसकी एपिडेमियोलॉजिकल के जैसे डेंगू जब इंडियन बॉर्डर्स पे आया था, हम सर्वेलेंस कर रहे होते हैं और हमने कहा था ये कराची पाकिस्तान आ जाएगा, जो आ गया। फिर चिकनगुनिया और बीमारी बॉर्डरिंग पे आई, हमने पहले से बता दिया था कि उसका मच्छर भी यही है और यहाँ तक पहुँच गई है, ये आ जाएगी। और उसके बाद एनसीओसी के साथ मिलके भी हमने इसी के साथ मिलके काम किया, और उसके आई थिंक मैं बहुत मुबारकबाद भी दूंगा इस अच्छे इदारे को। एनसीओसी जो बना, जनरल हमूद उसको कर रहे थे और जनरल हुमायूं अब को कमांडर कराए थे, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हुआ और आज वो आइडियाज़ की बनी एक तरह से जो भी हुआ है। जनरल हुमायूं को और चीज़ भी हुई कि हुमायूं साहब ने जो सबसे बड़ा काम किया कि उन्होंने इन्फेक्शन कंट्रोल स्पेशलिस्ट को, जो पहला, जहाँ पे हम आज बैठे हुए हैं, यहाँ पे पहला तो पाकिस्तान का कोविड सेंटर जो स्टैब्लिश हुआ वो जनरल हुमायूं की वजह से हुआ जी, और जी अभी हैं वो, और मैंने कल भी उनको मुबारकबाद दी। और इधर का जो एक्सपो सेंटर स्टैब्लिश हुआ, उसके 2-3 बड़े पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट दुनिया को नजर आए और पूरे पाकिस्तान को आए। पहले तो यहाँ पे एक ऐसा मॉडल बना कि जो यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स थे उनकी प्रोटेक्शन के बारे में काम हुआ। आपको बताऊं, ये वो रिकॉर्ड है, जनरल हुमायूं थे, जीओसी जनरल अकील थे और ब्रिगेडियर शहजाद होते थे 25 मैक के उस ज़माने में, इनकी, और फिर बाद में जनरल नदीम अंजुम भी थे। उसमें हुआ ये कि एक डॉक्टर, एक नर्स, एक पैरामेडिकल स्टाफ, एक सफाई वाला, जो रेड जोन जहाँ पे पेशेंट से, मैं जो पे हमारी ईसा लैब भी फ्री सर्विसेज दी पहले दिन से आखिरी दिन तक, एक शख्स को भी जो काम कर रहा था, एक को कोविड नहीं हुआ और इससे पूरी दुनिया हिल गई, जिसमें सारे ये मैकेनिज्म्स इस्तेमाल हुए। सेकंड चीज़ है डेथ रेट, यहाँ पे बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉनिटरिंग ऑफ द डिजीज़ ऐसी हुई कि यहाँ पे डेथ रेट ना होने के बराबर था, जबकि डेवलप कंट्रीज के अंदर मरीज तो मरे ही मरे, खासतौर पे इंडिया के अंदर पैथेटिक उनकी कंट्रोल्स थे, 0, और उनको तो बल्कि पाकिस्तान से हेल्प लेनी चाहिए थी, और उन्होंने, और सेकंड चीज़ ये हुई कि जो हेल्थ वर्कर्स थे उनको भी नहीं हुआ। तो पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस है और ये जो आइडियाज़ हैं, और आज हम भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो सिविलियंस और बिजनेस कम्युनिटी, आर्म्स फॉर पीस और सब मिल के काम कर रहे हैं, आई थिंक कि ये इंडेवर्स जो हैं, जो कोविड में नज़र आए और रिकॉर्ड्स बनाए पाकिस्तान ने, डेथ रेट हार्डली हो सकी, आई थिंक कि ये हर जगह पे होगी। और पाकिस्तान जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है और जितना हमारे आर्मी चीफ जिस तरह से चीज़ें गाइड कर रहे हैं, आई थिंक वी विल डू वंडर्स। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस तरह से इन्होंने पहले दिन सेमिनार में डाला, आपको मैं बताऊं, हम नॉट ओनली हम मेडिकल कम्युनिटी जो बायो सेफ्टी, बायो सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, ज़रूरत है, ये नेसेसिटी है, ये एक रियलिटी है, और इसमें जो ये इसके ऊपर और भी ज़रा काम होना चाहिए। इसकी हाईलाइट आइडियाज़ ने किया, आई थिंक इसने एक तहलका मचा दिया। मुबारकबाद हो सारे ऑर्गेनाइजर्स को। फोकस किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, समझ में आ गया कि भाई ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले सेक्ट में।
ये हम दिफाई नुमाइश में बैठे हैं, हमारा डिफेंस सेक्टर है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे डिफेंस सेक्टर में कितनी कामयाब होती है? असल में हमें ये देखना चाहिए कि मेरे ख्याल से हम कोई 10 साल दूर हैं। आप इमेजिन वो दुनिया जहाँ पे मुल्कों को अपनी फौज उतारनी पड़े, रोबोट्स उतारें। आप इमेजिन करें मुल्क अगर ये कर पाए कि एक भी उनकी कैजुअलिटी हो और सब रोबोट्स हों, तो ये दुनिया का सही बदल जाएगा। और जो इस मैदान में नहीं होगा उस पिछ हालत सोच लें, क्योंकि वो इंसान गोश्त पोस्ट करे जैसा इंसान होगा, उसी तरफ रोबोट होगा, तो जीतेगा कौन? रोबोट ने जीतना है। और उसको अच्छा फर्ज करें नहीं भी जीता वो तो कोई मसला नहीं, वो नया बना के फिर दोबारा आएंगे। किसी की जान नहीं जा रही। मैं तो होपफुली इररिप्लेसेबल हूँ, इंसान तो इररिप्लेसेबल है, मगर जो मशीनें तो कोई मसला नहीं है। अगर गलती भी हो गई या तो ये कहता है कि मैं यहाँ आने से पहले, आज की मीटिंग से पहले मैं जरा सबके भी आया, देखें ट्रांसलेशन से लेके मिलिट्री, जिसमें अब वो ये कह रहे हैं कि सामान, आपको पता है लॉजिस्टिक सबसे बड़ा मसला होता है वॉर में। मेरे वाले साहब भी फौज में थे, जिस वक्त एक को चलती है तो साथ उसे पूरी हजारों ट्रेनें होती हैं, हजारों ट्रक होते हैं उसका सामान मूवने के लिए। अब जब ऑटोमेटेड गाड़ियां, तो जितना अगर आपका 1 लाख आदमी डिप्लो होता है तो 10 लाख आदमी उनको पीछे सपोर्ट करने होता है। क्या कहते हैं, मगर अब क्या होगा कि पहले स्टेज में कि ये वाले जो काम है ना वो सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता ही है इस वक्त सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पे और डेस्क की सड़कों पे ऑटोमेटेड गाड़ियां घूम रही हैं जिनमें कोई ड्राइवर नहीं है। तो इमेजिन करें कि जो से ये लॉजिस्टिक्स आर्मी का से पहले जो ट्रांसफर होगा वो होगा प्रिंटिंग। अब ये जो मेटावर्स का कॉन्सेप्ट आया है, ये वर्चुअल रियलिटी का और ऑगमेंटेड रियलिटी का कॉन्सेप्ट आया है, इसके थ्रू ट्रेनिंग आपको एक्चुअल चीज नहीं, जहाज के पायलट को एक जहाज में बिठाने की जरूरत नहीं है, वो वर्चुअल रियलिटी में उसकी ट्रेनिंग दी जा सकती है। और इसी तरह एक सिपाही की भी जा सकती है। थोड़ा सा अच्छा, मेटावर्स ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये आजकल पॉपुलर किया हमारे फेसबुक ने और उन्होंने अपना नाम भी मेटा चेंज कर लिया है। मेटावर्स में ये है कि हम क्या करते हैं कि देखिए अभी आप फेसबुक गिरे ना तो आपकी इस पे फेसबुक है, तो आप बाहर से देख रहे हैं फेसबुक को। अब जैसे अभी कोई 15 दिन पहले मेटा क्वेस्ट को उन्होंने वीआर ग्लासेस लगाए, उसमें थोड़ा सा एआर कॉन्सेप्ट भी है, फिर क्या वर्चुअल रियलिटी है। आपने जब वो ग्लासेस लगाए तो आप समझे, मैंने माउंट एवरेस्ट कभी नहीं देखी, तो मैंने पहला काम क्या किया कि माउंट एवरेस्ट के वीडियो देखने शुरू वर्चुअल रियलिटी में। तो मुझे आप बता सकता हूँ कि 0 पॉइंट किधर है, बेस कैंप किधर होता है, उससे कैसा नजर आता है, फील आती है। आप देखें 70-60% फील आती है। मेरी बहुत ही एक कुड़ी है हेरा, वो हमसे कहती है कि मैं तो जब मांगी मेटावर्स को जब आप मेटावर्स में खाना खा सकें। अभी तो वो तो दूर है कि खाना खा सके, मगर देखिए हवा की फील नहीं होगी अभी आपको, क्योंकि हम अगर वहां होंगे माउंट एवरेस्ट के नीचे तो हवा भी चल रही होती, ठंड भी होती, तो वो तो नहीं है, सारी बात है इस चीज पे। मगर जो आंखों से नजर आता है और आइंदा कान से भी जो अभी भी कानों से जो आप महसूस करते हैं वो सब महसूस हो रहा है आपको, क्योंकि वो माइक के थ्रू और उसके थ्रू। और आप जैसे मिसाल के तौर पे आप नॉर्मल चीज नहीं देखना, देखें टीवी में अभी क्या है कि आप वो कैमरा में दिखाना चाह रहे हैं वो देख सकते हैं, वो 360 डिग्री व्यू दे रहा है। फर्ज करें मैं फोकस करना चाह रहा हूं कि फला आदमी का सामान जो सामने रखा हुआ है, मैं इक्विपमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट हूं, तो मैं इक्विपमेंट पे फोकस करूंगा, मैं चीजों को इग्नोर कर दूंगा। क्रिकेट में भी फर्ज करें कोई किसी एक खास आजम का फैन है, बाबर आजम देखना ही नहीं चाह रहा बॉल, तो चाह रहा हूं कि बाबर आजम फील्डिंग कर रहा है, मैं उसको देखना चाह रहा हूँ वो कर रहा है, मैं करूंगा वहां पर करूंगा। अच्छा वो आपको सारा चल रहा है चारों तरफ के, आपका मुंह कैसे, और ये सब कनेक्टेड है एआई से। एआई के बगैर पॉसिबल नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर मेटावर्स भी, ये जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो उसमें एआई का बहुत मेजर हाथ है इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज में। और इसी तरह आप क्या कहते हैं, तो ये दुनिया बदल के रख जाएगा। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए क्रिटिकल तरीन है। देखें हमारे पास एजुकेटेड पॉपुलेशन है, इसलिए डॉक्टर एफ अलवी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने 3-4 साल पहले प्रोग्राम शुरू किया था मास लेवल लोगों को ट्रेनिंग देने का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो माँ बाप है ना, अपने बच्चों को नई दुनिया की याद नहीं करेंगे तो बढ़ जाएगी, पाकिस्तान के लिए भी हो और इंडिविजुअली लोग के लिए भी होगी। कितना लेट तो है हम ज्यादा लेट नहीं है, अगर अभी आप इससे अंदाजा करें, जबकि हमें इस तरह कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, मगर फिर में तो दुनिया में कंपैरिजन नहीं होता है। इस इंडिया की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स $150 बिलियन है, हमारी 3 है, तो 150 में और 3 में तो काफी फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क है। और देखिए इस वक्त हमारा सबसे प्रॉब्लम एजुकेटेड यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट है। अच्छा ये भी सारा इससे मसला हल होता है।
अच्छा, बड़े इंटरेस्टेड नहीं है, उनको बताने की जरूरत नहीं है, सारे खुद फेसबुक पे पढ़ें और मोबाइल आपका बच्चे आपसे ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करते होंगे। मैं आपको सिखाते हूँ, सारे काम उन्हीं से करवाने बच्चे बहुत आगे हैं। मसला क्या है कि जो हमारी पुरानी जनरेशन है उसको समझने की जरूरत है कि यहाँ पे रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे और उसकी ट्रेनिंग। और अभी हम एज कंज्यूमर तो कर रहे हैं। देखिए फेसबुक जितने पाकिस्तान में फेसबुक बहुत कमा रहा है पाकिस्तान में, और दूसरी कंपनियां कमा रही, मगर हम यूजर एंड पे तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको इस्तेमाल करने में, मगर प्रोड्यूस करने में हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो वो आगे चल के और मसला हो जाएगा, अभी तो है ही, और ज्यादा मसला हो जाएगा। अब कभी वबों की गुफ्तगू चल रही होती है, कॉन्गो वायरस जी अफ्रीका से नहीं आ रहे हैं, उनको जरा चेक करना चाहिए, ऑटोमेटिकली पता चल रहा होता है कि जगह पे ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, लेकिन कोई नया वायरस आने वाला है, वो दुनिया के किस खित्ते को मुतासर कर सकता है, इसकी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ काम हो रहे हैं? देखिए तो बहुत हो रहा है। थोड़ा सा ये है कि हमारे ना अनफॉर्चुनेटली अगर हो पाता है ना इस मुल्क के अंदर, तो वो हमारे थैंक टू आवर आर्म्ड फोर्सेस ही हो पाता है। पॉलिटिकल विल का जो वैक्यूम है ना, वो हमें बड़ा डिस्करेज कर रहा है। आज आईटी इंडस्ट्री जिससे से बात करी, इंडिया तो चले बड़ा मुल्क है ना, आप कह सकते हैं कि वो बड़ा मुल्क है तो इसलिए उनकी ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गई, लेकिन फ़िलीपींस तो पाकिस्तान से भी छोटा मुल्क है, उसकी 24 बिलियन की एक्सपोर्ट है आईटी की। तो ये तो पहले तो ये है कि हम तो गुजारिश ही करते हैं कि जो हमारी जो पॉलिटिकल विंग लोग जो हैं रूलर्स, वो अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं बना सके तो इंटरफियर करना छोड़ें। पहली चीज़ गुजारिश है। अगर आज कोविड पे कंट्रोल हुआ तो ये एक एनसीओसी जैसा इदारा बना था। देखिए हमारे पास जो, अगर आप मेडिकल और इसकी काम के बारे में बात कर रहे हैं ना, उसका मैं एक चैलेंज को इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि उससे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है हमेशा। जैसे फॉर एग्जांपल 18th अमेंडमेंट आई, 18 अमेंडमेंट से हुआ ये कि हेल्थ हो गई डिवॉल्व सूबों के पास। तो जो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है कि नेशनल स्पिरिट में कोई पॉलिसी बनाई जाए सर्वेलेंस की, तो सारे सिंध की बनाएगा, पंजाब की बनाएगा। तो मैं ये करता हूँ, इतना इम्पोर्टेंट आपका इवेंट है कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट सेशंस हैं हेल्थ का जैसे, जिसमें एक नेशनल पॉलिसी बनना बहुत ज़रूरी है और उसकी कोलैबोरेशन नेशनल इदारों के साथ होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आ जाइए, तो अगर ये हो जाए तो ये सारी चीज़ हो जाएंगी। एनसीओसी के थ्रू ही हो सकता है, फोर्सेस के थ्रू ही हो सकता है जी, वरना कोई पॉलिटिकल, क्योंकि फोर्सेस ये एक वाहिद है ना जो पूरा पाकिस्तान जी सूबों में नहीं, वो यही तो देखिए, और इसी को तो डैमेज करे ना लोग आजकल। हो ये रहा है कि हर मुल्क की एक ग्रेविटी होती है, पाकिस्तान की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिन्हें पाकिस्तान को जोड़ रखा हुआ है वो हमारी रिस्पेक्टेड आर्म फोर्स है। आप पूछें, बस मैं कुछ और एग्जांपल भेजता हूँ। साउथ कोरिया की है, साउथ कोरिया की मिच्योर डेमोक्रेसी है। ईरान की है, नेशनल स्पिरिट है। ईरान में 30% से ज़्यादा जो लोग हैं वो अरब्स, टर्क्स और कुर्ड्स रहते हैं, किसी को नहीं पता। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे मुल्क की है। आज अगर देखें, ये जो हमारे डिफेंस का एक्सपो सेंटर लगा हुआ है आर्म्स फॉर पीस के शोबे से, और एक्सपोर्ट करने के बारे में और कोलैबोरेशंस डेवलप करने के लिए, इससे ज़र मुबादला का, इससे एक इमेज बिल्डिंग भी होती है। आज दुनिया के जनरल्स और सारे स्टेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ जो ये जो डिफेंस आए हैं, तो आज वो पीस का एक मैसेज ले जा रहे हैं दुनिया में। ये चीज़ें साथ होना, कंबाइन होना, और डेफिनेटली अगर आर्म फोर्सेस लीड करेंगी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो ये चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। और आज ये जो टॉपिक उठाया गया है वो भी आयाज पे इन्हीं लोगों ने उठाया है, जो आज सारे अखबारों की जीनत बढ़ाए और लोगों को थॉट प्रोवोकिंग पे लगा हुआ है इसने। अच्छा, एक बात मैं बस खत्म, थोड़ा सा बात को शॉर्ट करते हुए, वो ये है कि आज के बाद जो फ्यूचर वॉरफेयर होंगी, आज का हम हाइब्रिड वॉरफेयर से, पहले हम कन्वेंशनल वॉरफेयर पे थे, अब हम एक हाइब्रिड वॉरफेयर से गुजर रहे हैं, सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ों की। और आइंदा आने वाले टाइम्स के अंदर हम जर्म वॉरफेयर और से गुजरेंगे। और ये कोविड जो है ये इसके लिए बड़ी आई ओपनिंग कर रहा है, और इसके लिए बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं कि अगर ऐसी वबा कोई आती है या जानबूझ के फैलाई जाती है, और उसके लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। तो आपका ये जो प्रोग्राम है ये और लोगों को करेगा अवेयरनेस, इसके अंदर शामिल हो। एक तो ना सिर्फ कि नेशनल स्पिरिट है, बल्कि अपॉर्चुनिटी भी है कि इसके अंदर आप आके कैसे बेहतर आ सकते हैं, दुनिया को चेंज कर सकते हैं पॉजिटिवली। चीज़ भी जरूर बताइएगा, मिसाल के तौर पे अभी जैसे कोविड आया था, उसमें बहुत सारे लोग बताते नहीं थे कि उनके घर में कोविड का पेशेंट है, कुछ बातें थे कि उन्होंने सिग्नल नहीं भिजवाना है। अब आगे जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके थ्रू हम कहीं कोई अप्रोच कर सकते हैं या कोई को और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, ताकि ये आवाम के लिए है, लोगों के लिए है, तो इसको हम छुपा नहीं सकें।
बिल्कुल कह रहे हैं इसी वजह से जैसे उन्होंने बताया ना कि उसकी जो हमने वो जो भी हमें उसकी वो जो ये जो डाटा डिटेक्ट किया कि कोविड किसका था जब हम एनसीओ को रिपोर्ट करते थे, उसकी वजह से बहुत ये फ़ायदा हुआ कि जो लॉकडाउन्स लगे वो माइक्रो लेवल पे लगे, पूरे शहर में बाद में बंद नहीं हो रहे थे, सिर्फ इलाके लॉकडाउन हो रहे थे। और इसमें थोड़ी सी हम सबकी अपनी जिम्मेदारी भी है। ये जो छुपाते हैं ना चीज़ें, ये भी बड़ी गलत है। एक चीज़ मैं ज़रूर बात को ख़त्म करते वैक्सीनेशन के बारे में बोलूँगा। जो आवाम की आपने बात की, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें इंसान को भी थोड़ा सा सीखना चाहिए। वो सीखना ये चाहिए कि आपको मैं बताऊं कि मैं तो इन्फेक्शन कंट्रोल स्पेशलिस्ट हूँ। मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि वैक्सीन लगाने से जहन तो मफलूज नहीं हो जाएगा, आँखें तो अंधी नहीं हो जाएंगी, दिल की धड़कनें तो बंद नहीं हो जाएंगी, मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, डायबिटिक हूँ, मेरी बीमारी तो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाएगी, जिगर तो नहीं फेल हो जाएगा। हमारे लोगों की यही परेशानी थी कि बच्चे पैदा हो सकते हैं नहीं हो सकते। तो ये जब कॉन्सेप्ट एजुकेशन से फैलेगा, और अगर हमने आज एजुकेशन नहीं ली और लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं हुई, तो डेफिनेटली ह्यूमन फिर रिप्लेस होना शुरू हो जाएंगे और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट हो। तो इसलिए बेहतर है कि इस टेक्नोलॉजी को अपनाएं और इसको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और अपनी विजडम लेके आएँ। बिल्कुल सर, आप एक पैगाम हमारे असर्स के लिए आपकी जाने जाएगा, क्योंकि इस डिस्कशन के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई, कोई एक डिपार्टमेंट, कोई एक शोबा ऐसा नहीं है कि जहां पर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत ना पड़े। कोई भी सेक्टर वैसे ही बचा है, बल्कि हम इस इंटेलिजेंस के थ्रू हम अपने तमाम उन कामों को और मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। इसलिए जो हमारी नौजवान साल आपको सुन रही है, उनके लिए आपका पैगाम, आपका कैमरा है। सब इम्पोर्टेंट बात यह है, इस वक्त चाइना की एक मेजर पॉपुलेशन मिडिल क्लास में आई है, इंडिया की एक मेजर पॉपुलेशन मिडिल क्लास में आई है। आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं, बहुत सारी और भी वजूहत हैं महंगाई की, मगर मेन वजह यह है कि ये राइज ऑफ द मिडिल क्लासेस इन एशिया। अच्छा, जो ये मिडिल क्लास उभर के आई है, इनके पास पैसे हैं, ये सॉफ्टवेयर से और हार्डवेयर से पैसा कमा रहे हैं। ये चाइना में बैठ के एक बंदा $1.5 कमा लेता है, जो कि पहले $200 पे था मिडिल क्लास में, अब वो अपर मिडिल क्लास का हो गया है, तो वो गोश्त भी खाएगा। अगर हमने अपने आप को इंटरनेशनल इकोनॉमी से नहीं जोड़ा और टेक्नोलॉजी इकोनॉमी से नहीं जोड़ा, तो मैं आपको बता रहा हूँ हमें खाना भी मसला हो जाएगा। और अभी भी आप देखें गोश्त कितना महंगा हो चुका है। ये जो महंगाई एक वेव है दुनिया में, वजह क्या है कि जो टेक्निकल लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वो मार्केट से उठा रहे हैं सामान, और हम और आप क्योंकि पुरानी तरीके से जिंदा रह रहे हैं। हमारे पास पैसा नहीं है कि हम उसकी कीमत खरीद सके, तो क्या होगा, हम भूखे मरेंगे, वो खाना खाएं। तो अगर हमने जिंदा बचना है आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, हमें अपने आप को सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, वेब3 और जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है, जहां पे सारा भलाई है। देखिए, दूध पीना अलग चीज है और भलाई तो सारे अमेरिकन और दूसरे इंडस्ट्रियल जो मुल्क हैं वो खाएंगे, हमें वो दूध भी नहीं मिले, वो छाछ मिलेगी दही की। तो अगर हमने अपने बच्चों को ट्रेन नहीं किया और अपने आप को ट्रेन नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात, सिर्फ ये बच्चों के लिए नहीं है कि जो बड़ी उम्र के भी लोग हैं, खुद 60 का हूँ, मैं तो हर रोज अपने आप को रीट्रेन करता हूँ, और मैं यकीन से कहता हूँ मेरे साथ दो मेहमान बैठे हुए हैं, ये दोनों भी रोजाना पढ़ के अपने आप को, तो हमें ये सोचना चाहिए हमारी उम्र क्या है, जो भी उम्र है, अगर नए दौर में जिंदा रहना है तो नए तरीके से रहना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। ज़ियाउल्लाह खान साहब, थैंक यू वेरी मच सर। आप हमारे आइडियाज़ 2022 शो के मेहमान बने, BTV के मेहमान बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई चीज़ अगर आप कोई पैगाम कंप्लीट हुआ या अगर कहना चाहते हैं सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर जी, असल में देखें, हमारी आर्म फोर्सेस के लिए, मैं अभी पॉपुलेशन की भी बात कर रहा हूँ, हमारी आर्म फोर्सेस बात ये समझ रही है। देखिए, हमने एक वर्ल्ड लेवल का बनाया JF-70, जो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। जब ये पहली दफ़ा बना, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में शामिल थे, तो मैं खुद भी हैरान हो गया जब मैं उनसे बात होती थी कि माशाल्लाह ये मार्वल। मगर अब नया दौर आ रहा है, आप 5th जनरेशन में तो स्टेल्थ और इस टाइप के, मगर 6th जनरेशन फाइटर बन, 6th जनरेशन फाइटर और 7th जनरेशन फाइटर में हमारे दुनिया के बेस्ट पायलट्स हैं, मगर बाय द टाइम 7th जनरेशन आए तो पायलट की जरूरत ही नहीं होगी। तो इस वक्त नए किस्म के जो 6th और 7th जनरेशन में, अभी वो एक्जैक्टली टाइम हुआ हुआ, 6th और 7th जनरेशन जो फाइटर होंगे वो रोबोट्स होंगे, वो ड्रोन्स होंगे, और वो ड्रोन्स की फाइट होगी, क्योंकि जैसे फाइट है 9G से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, ड्रोन तो 16G बर्दाश्त कर लेगा जब टर्न होगा। तो हमें ये हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अगर हमें जिंदा रहना, तो पॉपुलेशन के लिए तो मैंने बता दिया, आर्म फोर्सेस को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी भी, क्योंकि आजकल जहाज 17 और F-16 में कोई मेजर फर्क नहीं है, मगर
जो F-35 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स और उसका सॉफ्टवेयर, दैट इज, तो हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें ये अडॉप्ट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच जियाउल खान साहब, थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल अख्तर साहब, थैंक यू मच फरहानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा मैं देना चाहूँगा इस वक्त जिस तरह फरहान भाई ने फरमाया कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, और ये मैंने कल भी जब मैंने इंटरव्यू दिया तो इसके ऊपर मैंने एम्फेसिस किया था, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी आर्म फोर्सेस जो पूरी दुनिया के अंदर मानी जाती हैं अपने नज़्म ज़ब्त के एतबार से, अपनी कंट्रोलिंग के एतबार से, अपने काम के एतबार से, तो कोई भी काम जिस हर चीज़ के अंदर किसी एक चीज़ के बारे में एक्सपर्टीज होती है किसी भी शख्स के अंदर, इसी तरीके से हमारी आर्म फोर्सेस की ये कैपेबिलिटीज़ हैं। इसके साथ साथ हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, जिस तरीके से ज़िया खान साहब जैसी शख्सियात हमारे पास मौजूद हैं, हम चाहते ये हैं कि आर्म फोर्सेस इसके अंदर कम आगे बढ़ाएं। अगर वो JF-17 थंडर तैयारा पाकिस्तान के अंदर बना सकते हैं, सुपर मशाक तैयारे पाकिस्तान में बना सकते हैं जो इस बेशुमार मुल्कों से एक्सपोर्ट करें, तो कोई वजह नहीं कि वो एक पूरी जनरेशन को डेवलप करें जो मेटावर्स, पाइथन लैंग्वेज और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक्सपर्ट हो। तो इसके लिए काम ये करना पड़ेगा कि आर्म फोर्सेस के साथ प्राइवेट सेक्टर्स को और ज़िया खान साहब जैसी शख्सियात को आगे बढ़ के, सैलानी जैसे इदारों को, JDC जैसे इदारों को, ED जैसे इदारों को आगे बढ़ के इनके साथ काम करना होगा, ब्रिज करना होगा, और इसके लिए एक पूरा लाहे अमल तैयार करना होगा जिसकी बात पे अगले 2 से 3 साल के अंदर हम एक बड़ी तादाद के अंदर IT एक्सपर्ट्स को पैदा कर सकें, और पाकिस्तान को IT की फील्ड के अंदर, जो हम इस वक्त इंडिया से हम कह रहे हैं या फिलीपींस से कह रहे हैं बहुत पीछे हैं, हम इसके अंदर आगे जाना होगा। लेकिन उसके लिए कोर रिसोर्स जो है, मैं समझता हूँ कि नज़्म ज़ब्त के एतबार से, कंट्रोलिंग के एतबार से, सिस्टम के एतबार से हमारी आर्म फोर्सेस को इसके अंदर अपना रोल प्ले करना होगा। उनका हो सकता है। फरहान भाई, आपका भी कोई एक पैगाम? थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ ये, आपने यूथ की बात की थी, मैं यूथ से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी जो हमारी जनरेशन आई है ना, जी जनरेशन, ये थोड़ी हम सोचते हैं कि व्हाट नीड फॉर मी, कि मेरा क्या फ़ायदा है, कुछ करने में मेरा क्या फ़ायदा है। मैं उनसे सब गुजारिश करूँगा कि हमने सबने मेरे ख्याल से सबने दुनिया ट्रैवल की है और बहुत दुनिया देखी है, और भी हैं। आपको बताऊं कि पाकिस्तान से जगह पूरी दुनिया में आजकल ये जो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है, ये सारी एक्सपोर्ट कर सकती है। अपने मुल्क से एक्सपोर्ट करें। आप यहाँ पे लोगों को जॉब सीकर्स नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइडर बने, और पाकिस्तान का भी नाम रोशन करें और पाकिस्तान को स्ट्रेंथन दें। और अगर आप पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे तो यहाँ के जितने बच्चे हैं, अगर कोई बाहर भी जाता है या सॉफ्टवेयर के लिए जाता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। ऐसी चीज़ बनाएं कि जो वर्ड्स आपके हैं, जो आप किसी से कमिट करें उसको पूरा करें। बल्कि मैं गुजारिश करूँगा, अंडर कमिट ओवर डिलीवर, और पाकिस्तान फर्स्ट। थैंक यू वेरी मच अनीसा साहब, थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल अख्तर साहब एंड ज़ियाउल खान साहब। इट्स एन ऑनर टू चैट यू, और आपके पैगाम गए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे। हमने तीनों एक्सपर्ट्स ने सुन लिया होगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस आइडियाज़ 2022 का मैं ये कहूँ कि चंद बड़े मकासद में से एक मकसद है, तो ये बेरा ना होगा। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं दिखाई देती। जो ज़ियाउल खान साहब ने एक जुमला कह दिया, अगर हमें अपने आप को, अपने इदारों को और अपनी तमाम वो चीज़ें जो हमें ज़िंदा रखने में मददगार साबित होती हैं उनको ज़िंदा रखना है, तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक ख़ास फोकस हमें ज़रूर देना होगा, और हम सबको देना होगा। कि किसी एक सेक्टर के लिए ज़रूरी नहीं है, हर शोबे की ये बुनियादी ज़रूरत दिखाई दे रही है, और आने वाले वक्त में अगर इसका सहारा नहीं हुआ फिर शायद हम सब बेसहारा हो जाएंगे। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इस आइडियाज़ 2022 के स्टूडियो से इजाज़त चाहते हैं। मज़ीद गेस्ट आते रहेंगे, उनसे गुफ्तगू होती रहेगी। जल्द मिल रहे हैं, अल्लाह ने के बाद। Assalamualaikum. My name is Haider Mahbub Khan, and I am the founding editor of Defense Guardian International. We are the media partners of Ideas 2022, and we are launching Defense Magazine, which is Pakistan's first international defense magazine. We are giving all sorts of media solutions which is related to the defense industry. And I hope you're all having a good time in Ideas, and we look forward to see you at our stall in hall number 5. Thank you very much.
My name is Ayhan Şentürk, and I am the Business Development Manager for Profen Defense Technologies. We're a Turkish company. Our company was founded back in 1995, and our core expertise and experience is in satellite communication systems. So that's satellite antennas, satellite ground stations. And those are the main products that we're promoting at this exhibition. So we can design and build all the way from 65 centimeters small satellite dishes, man-packed terminals, all the way up to 7.3 meter big ground things. So as I said, that's our main expertise. That's where our main experience comes from. But we're also an engineering company. We do systems integration. We have a very good software team supporting us in our activities. We have a materials science team helping us with the design of our antennas. And we deliver turnkey solutions to our customers. It's our first time in Pakistan attending an exhibition, and it's been a very fruitful period for us. I mean, we've been very busy for the past 2 days. We're busy today as well, and we're very happy about it. We're very happy about it. During the COVID period, we've been having a lot of online meetings, or telephone meetings with our contacts in Pakistan. So as I said, it's our first time in Pakistan, and it's a great pleasure. It's a great pleasure to be able to talk, face to face with our contacts, with our customers in Pakistan. So thank you very much. Thank you very much for everything, for your hospitality. It's been an honor to be here, and we look forward to improving our relationship with Pakistan. Thank you. इल्म में भी सुरूर है, लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। बुरा समझून है मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं It's 3 p.m. Assalamu alaikum. My name is Haider Mahbub Hussain, and I am the founding editor of Defense Guardian International. We are the media partners of Ideas 2022, and we are launching a magazine, which is Pakistan's first international defense magazine. As well as we are giving all sorts of media solutions, which is related to the defense industry. And I hope you're all having a good time in Ideas, and we look forward to see you at our stall in hall number 5. Thank you very much.
2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The four-day exhibit offers a platform for G2G, B2G, and B2B Russian joint ventures and investments in the defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenge in the defense sector. The 12th edition of IDEAS will be held from 18 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. IDEAS 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The four-day exhibition offers a platform for E2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures, and investments in defense production sector. A strategic seminar will also help to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of IDEAS will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Park Global is basically running a buying house. We are facilitating with the different countries' buyers
with Pakistan industries, and we are giving a one-window sport so that the visitor don't have to visit again and again the same stall or the same product. We facilitate them, and with shorter time we make the arrangements. And recently we make 2-3 deals with the Jordan government and Zimbabwe and Nigeria. And by the grace of Allah, we are very successfully running this Pak Global Supply Solution. In Pakistan, Depot is presenting very good opportunity to all our potential buyers. And for the Pakistan industry like small arms and textile industry, it is a big opportunity to produce the items world standards. And for the Depot and Badar Expo, I am very thankful. They have provided us this opportunity for the international buyer. We are linking with them. Thank you very much all. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर है। मैं हेल्थ सर्विसेज एकेडमी में बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर को हेड करता हूं। आज हम एक BIC की प्रोडक्ट जो कि हमारे वर्दी वाइस चांसलर डॉक्टर शहजाद अली खान साहब का आइडिया था, जिसको हमने अमली जामा पहनाया है हमारे इंक्यूबेशन सेंटर ने। और हमने एक ध्यान के नाम से एक बॉट बनाया है जो कि घर में बच्चों का ध्यान रखेगा, उनके साथ इंटरेक्टिव सेशन करेगा। ये AI बेस होगा और इसके अलावा स्टोरीज सुनाएगा, उनके साथ इंटरेक्शन रखेगा, रिप्लाई करेगा और बहुत सारे और टीचिंग में भी मदद देगा। शुरू में हमने ये प्रोडक्ट सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बनाया था, लेकिन अभी मंथ में हमने ये प्रोडक्ट कंप्लीट किया है। तो अभी ये ब्रिगेडियर रफ़ीक साहब जो कि नेवल कमांडर भी हैं यहाँ कराची में, तो हम इनके अल-शिफा हॉस्पिटल में भी इसको इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम असद कमाल है। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस। GISG पाकिस्तान की लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड कंग्लोमरेट है, कंपनी है। हम आइडियाज़ का 2007 से पार्ट है और मैं ज़ाती तौर पे तो सन 2000 से आइडियाज़ को देख रहा हूँ। जब इसके शुरू में 3 हॉल हुआ करते थे, आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एग्जिबिटर्स व्हेन आइडिया स्टार्टेड। जी, आई हैव हैड द ऑनर के मैंने इसको देखा है ग्रो करते हुए। 2022 है, अब माशाल्लाह 9 हॉल्स हैं इसके। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मोमेंटस ओकेजन है 2022 में, क्योंकि बहुत सारे मैं देख रहा हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और आज बहुत से इंटरनेशनल विजिटर्स हैं और एग्जिबिटर्स हैं जो इस पूरे इवेंट का पार्ट बन चुके हैं। हमारे अपनी स्टैंड पे इस वक्त मेरा 50 से ज़्यादा डेलीगेशंस तो मैंने खुद रिसीव की हैं और इससे भी ज़्यादा आई एम श्योर इन्वाइटेड होंगी। और जो एग्जिबिटिंग कंपनीज हैं, 9 हॉल्स अगर हैं, तो दैट मीन्स कि एग्जिबिटिंग कंपनीज जो पाकिस्तान में हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, लोकल और फॉरेन, बहुत सारे और मुल्कों का इंटरफियर्स में। मैं देखता हूँ जी कि जो डिफेंस एग्जीबिशंस होते हैं फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, एक बहुत आइडियल प्लेटफॉर्म आपको देते हैं जहाँ पे आप डिफेंस कैपेबिलिटीज हर 2 साल बाद आगे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस है क्या, और आपको एक मौका मिलता है दुनिया से नेटवर्किंग करने का, बाहर की दुनिया को मौका मिलता है कि वो आज अपनी चीज़ों को अवेल कर सके। आई विश डेपो एंड बदर एक्सपो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स, और मैं होप करता हूँ कि अंडर देयर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट they can take this platform and exhibition to new heights. So good luck to both of them. Thank you very much. Pakistan Zindabad. मेरा नाम आतिफ कटाना है और मैं GM कॉर्पोरेट सेल हूँ सर्विस इंडस्ट्रीज में। सर्विस इंडस्ट्री पाकिस्तान में 50 साल पुराना नाम टायर के हवाले से और शूज़ के हवाले से पहचाना जाता है। हम लोगों के लिए जो जूते बना रहे हैं, उनके अलावा हम लोग फोर्सेस के लिए जूते बना रहे हैं जो कि कंप्लीट रेंज है नेवी के लिए,
आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, रेंजर्स के लिए और पुलिस के लिए। इसके अलावा सर्विस इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में कुछ और चीज़ें भी बना रही है, इसे बहुत कम लोग जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम लोग आर्मी के लिए सियाचिन में जो शूज़ इस्तेमाल किया जाता है, के शूज़, वो भी बना रहे हैं। इसके अलावा हम गैस आर्मी के लिए बना रहे हैं, जो पाकिस्तान में सिंगल सोर्स है आर्मी के लिए। इसके अलावा हम लोग अल खालिद ज़रार के लिए कुछ रबर पार्ट्स भी बना रहे हैं। रिसेंटली हमारा एक जेवी हुआ है चाइना की एक कंपनी लॉन्ग मार्च के साथ, और पाकिस्तान पहली दफ़ा ट्रक बस रेडियल के जो टायर मुतारवाए गए हैं वो भी सर्विस ग्रुप की तरफ से करवाए गए हैं, सर्विस लॉन्ग मार्च तरफ से। इससे पहले ये सारे टायर पाकिस्तान में इंपोर्ट जाते थे। पाकिस्तान में मार्केट साइज ट्रक बस रेडियल का तकरीबन 2 मिलियन के करीब है एक साल में। हम लोग जो प्लान करके इस पाकिस्तान में ये फैसिलिटी ले गए हैं, हम इंशाल्लाह थर्ड फेज में आज से 2 या 3 साल बाद 2.4 मिलियन की कैपेसिटी इस साल की बनाए होंगे। और मार्च में ये इनग्रेट हुआ है, और इस वक्त हम लोग अमेरिका को ये टायर पाकिस्तान से बना के रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए फख्र की बात। आइडियाज के हवाले से मैं ये बात करूंगा कि ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ममालिक से लोग आते हैं, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, नए प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है और दुनिया को ये जानने में आसानी होती है। पाकिस्तान भी बहुत सी चीज़ें अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। नो डाउट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट के लिए। I start with extending my thanks, and I would also like to assalamu to all the dignitaries, members of this chief guest, chief guest Admiral Shahri Mullah Sahab, DG Ahmed Said Sahab, and members of the business community, all others present. Assalamu alaikum, and thanks for granting me this audience today. I'll be talking about the challenges of our shipping industry from a private sector perspective and how that relates to other stakeholders. The area of focus of this presentation is the energy supply chain. And the reason why I have chosen this topic is because I truly believe that energy is the biggest security factor for a country, especially a country like Pakistan, that is heavily dominant on and reliant on energy that is being imported. Our energy comes from crude oil, from LNG, from coal. We do have indigenous local sources that we are developing, and I hope that goes on and becomes a good percentage of our energy mix. But as of today, we are a nation that imports the bulk of its energy and is reliant on imports. And that import is done through the shipping routes, through the shipping supply chain. And if we resolve those inefficiencies, some of the inefficiencies, and we are also able to capitalize on our existing shipping infrastructure, on its utilization, we can make our energy mix and our energy supply chain much better, and we can be operationally and economically efficient in managing our energy. As you already know, energy impacts all of us, from the gas in our cooking stoves, to the petrol in our car, to the gas and other sources of energy that we need to run our industries, to run our Navy fleet, to run our jets, and so on and so forth. So it is a very important factor for any nation. That is the reason why I have chosen this topic. I will be giving a few examples that will show us two sides of a coin about how we are, it will show us why we are inefficient in some ways, and how, on the flip side, by taking some small measures, we can become much better and much more efficient. So, first of all, I would like to just present the impact of a inefficient energy supply chain, or the impact of high energy costs, let's say. So there are three components to the energy supply chain, broadly speaking. One is the product. The product is imported and its price is driven by international markets. That is not something that is in our control. The second are shipping costs, which is something we can control, because a lot of our energy can be transported through the Pakistan National Shipping Company and fleet, and we can manage our shipping costs in that way. I'll come and address that point later in the presentation. The third part is the supply chain, the berths, the storages, the discharging methods, the pipelines, the connectivities. These three make up the energy supply chain, broadly speaking. So a high energy bill translates into inflation, into current account deficit, where we face devaluation, where we
face inflation because of the devaluation, and that leads us to a certain sort of debt crisis every now and then, and also encourages hoarding because there is an imminent shortage of commodities and energy products, and that leads to a certain sector which hoards the current inventories and aggravates the situation rather than helps it. So if I talk about the oil import, I'll be focusing on two products in my presentations. I don't want to bore you too much on this Sunday morning, so I will try and keep it simple, not too dry. So I've chosen oil, and I've chosen to speak about coal to give you an insight and a holistic view about what can be done. So if we talk about oil imports, we have two ports mainly that cater to our oil imports: crude oil, furnace oil, petrol, diesel. All of this comes through Port Qasim and Karachi Port. I'll talk about Karachi Port. Karachi Port has number of berths. We have OP1, OP2, DB1, DB2. They all discharge chemical, petrochemical, and oil cargoes. We have multiple berths there. And most of the time, you'll find that there are idle berths at KP for discharging oil and related products. However, the storages in KPT are slightly inefficient. They haven't been developed. The infrastructure, the pipeline connectivities has not been done over the last 10 to 15 years. Now, in contrast, if I talk about Port Qasim has very efficient storages. It is linked all the way from pipeline up to Punjab. It has multiple storages. It has a good mix of storage, but it only has one berth to discharge all cargoes. So you see how KPT has inefficient storage, but multiple berths, but Port Qasim has one berth and multiple storages. So the problem and the solution are sort of one and the same, in the sense that if we connect the both ports, if there was some sort of connectivity between both the ports, they could benefit of that synergy. They could benefit of that. Port Qasim does not need to make more storages, and KPT does not need to make more berths. A collaboration, a synergy, a little bit of discussions between both the ports will resolve the problem. So without spending much, we will be able to capitalize and increase the capacity utilization of the existing infrastructure. So that's a little example of how we can go about it. Just to give you a little bit more insight, there are vessels that call on Port Qasim. There is empty storage at Port Qasim available, but due to just one berth, discharge one vessel at a time, we have up to 5 to 10 vessels waiting for berth in current ranges, sometimes to the tune of $100,000 per vessel, sometimes higher. You build that up onto 10 vessels, that's $1 million. And obviously for a country that is working on its foreign exchange reserve, such a situation can be avoided, should be avoided. And there is another port which is not too far away from Port Qasim that has multiple berths. All we need to do is connect them both so we can discharge 4, 5, 6 vessels at one time. We can store our energy, we can be more efficient. Talk about coal a little bit. We are developing third coal, and I think that is a very good initiative. That is something that should go on. It should become a bigger percentage of the overall coal mix. That will help us not be reliant on imported coal, something we should all prefer. However, the reality as of today is that in 2021, Pakistan imported 16 million tons of coal through seaborne routes. And it is expected that with the added power plant capacity and expansion of the cement sector, this will go up to 25 million tons over the next 2 years. That 16 million tons translates to 290 vessels per annum, approximately. That's 24 vessels per month. And during proceedings of the Supreme Court in 2018, there was a decision was made where all coal imports were destined towards Port Qasim to a single purpose custom-built terminal, which is fine. However, that terminal also has one berth. It can only discharge one vessel at a time. The time that that terminal was being built, Pakistan imported less than 1 million tons a year. Now we import 16 million tons a year. The capacity is not enough. The vessels, they wait outside during high traffic season, and they incur, again, damages up to $100,000 and $150,000 per annum, per vessel per day, I'm sorry. And that increases our import bill. And at the same time, another port, KPT, which is an hour away from Port Qasim, has idle berths lying there that discharge coal, or a purpose-built terminal can also be developed at KPT, or some kind of railway connectivity can be done so that the discharging from the vessel onto the land and forward onto the factories is much more efficient. And we don't pay extra dollars for our energy. So if
if I was to sum up the gaps, if you realize both the topics that I talked about, KPT, Port Qasim, crude oil, coal, we aren't talking about any new projects that we need to do. The idea that I'm trying to float over here, I'm trying to give a dissected bird's eye view that we have the capacity within the realm. We just need to have a smarter approach. There is a concept of smart hub or smart port, which basically talks about how ports can talk to each other, how they can share data on one dashboard, and they should use that data to deploy their capital in a much more efficient manner. So in efficient capital deployment, where one port has an existing capacity which is idle and the other port is spending more money to build the same storage facility or the same discharging facility, is inefficient capital deployment. A little bit of synergy that we can build between both the ports, between the authorities, that will help them deploy their capital a better way and also make themselves much more efficient by building those synergies between themselves. Another initiative or another drive that we need to focus on is the impact of PNSC, the Pakistan National Shipping Corporation. The Pakistan National Shipping Corporation is a hidden gem that we must focus on. It is the only company in Pakistan that charges its freight PKR. We don't have any other. If we want to pay for our shipping costs in Pak rupees, we don't have any other option except PNSC. So PNSC should be supported to increase its fleet so that it can cater to maximum energy import. Its focus is already on oil and crude oil imports that come into Pakistan. It should increase its fleet. We are trying to increase its fleet. We are talking about how PNSC should be allowed to procure second-hand vessels. It should be exempted from PEPRA rules so that it is able to increase its fleet, and we don't have to pay for our shipping costs in dollars. We pay for them in PKR. In fact, if we build excess capacity of PNSC fleet, PNSC will not only be able to reduce our shipping bill, it will be able to bring in foreign exchange by selling its freight and vessels to the foreign market. Also, if we are efficient and we build these synergies between our ports, we would also be able to benefit from low commodity prices. We all must remember when COVID hit, oil went down to $20, coal went down to $40. China and other countries in the region who had efficient energy supply chains, they bought commodities at very low prices, they stored them, and they benefited off them when prices were high. We've seen this same issue with us in LNG. When the prices are very high, we are unable to purchase them, and that leads to a gas crisis. So that is another thing that we need to focus on. The government's part, obviously, a little bit of activism, a little bit of synergy, sharing data, flow of information. I think platforms like NEMA are a great platform where all of these authorities, stakeholders can get together, share their views, help give a holistic view, a bird's eye view, rather than working in small pockets. We can share our information, we can share data, and we can help spend less and become much more efficient. Also, incentivizing the private sector, and in the private sector, or I would always say that we should support local companies. PNSC is a great example of how a local company is benefiting us for the same services that we could have taken to international companies. That does not mean that we should discourage international investment or JVs, but local companies should be incentivized to build railway routes, shipping routes, terminals, ports, and multiple of those facilities, so that there is more competitiveness, and less monopolization, and the market should become more efficient automatically once there is more competition. So that would be all for me, and thank you very much for your time. Ideas 2020 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4A Exchange offers a platform for G2G, B2G, B2B actions, joint ventures, and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center.
Assalamu alaikum. My name is Ahmad Askari. I am business head of dynamic engineering automation. You can see मेरे पीछे भी कंपनी देख सकते हैं ये हमारे यहाँ पे we are a company जो हम alternate gas solution देते हैं पाकिस्तान में। आपको पता है आजकल के जो सी गैस है वो पाकिस्तान नापैद हो रही है, उसी को सामने रखते हुए हम पिछले कोई 10 साल से उनके साथ 11 साल हो गए हम ऑल्टरनेट गैस सोल्यूशन दे रहे हैं जो कि एनर्जी नेशनल गैस को रिप्लेस करते हैं। एलपीजी बेस्ड सिस्टम होते हैं। अब तक हम कोई तकरीबन 60 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल इदारों में और तकरीबन 10 से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ में ये गैस का सोल्यूशन दे चुके हैं। जहाँ पर सुई गैस नहीं होती है वहाँ पर हम एलपीजी बेस्ड एसएनजी सिस्टम देते हैं जो कि बिल्कुल उसी तरह से गैस पाइपलाइन में ट्रैवल करती है जिस तरह की नेशनल गैस ट्रैवल करती है, और वैसा ही एक मीटरिंग सिस्टम लगा होता है और इसी बिल्कुल सेम बिलिंग होती है। इसमें से अब तक 8 प्रोजेक्ट हम SSDC के प्लेटफॉर्म से लगा चुके हैं और 2 प्रोजेक्ट अभी हमारे जो लगाए हुए प्रोजेक्ट हमारा SNG पे लगा रही है गिलगित के लिए। पूरे गिलगित शहर पे हम ये SNG का सोल्यूशन दे रहे हैं। और अभी रिसेंटली कराची में हमने जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है 8000 घरों के लिए, वो बेरिया टाउन में है जहाँ पर बेरिया के तमाम घरों को गैस पाइपलाइन के जरिए गैस मिलेगी और मीटर से जरिए वो भी की जाएगी। वो बेरिया टाउन का अपना प्राइवेट प्रोजेक्ट है और जो गिलगित का प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। आइडियाज़ में भी मसला इंटरनेशनल एग्जीबिशन वहाँ पर भी हम लोग करते हैं। पाकिस्तान से बैठ के हम UAE में और अफ्रीका में भी काम करते हैं। So my speech today will be about artificial intelligence and its evolution in the defense market. If you can please have the slides. So in the meantime, I would put in that you might have heard the word Industry 4.0. And the manufacturing industry, for example, or in broad sense, since the world works, is divided into 4, paradigms or 4 pieces in which sciences prevail in different ways. So the most recent one, the Industry 4.0 era, actually comes after the Industry 3.0 era of robotics. And this one, the current era, which is post 2015, is more about artificial intelligence with all sorts of devices. We keep hearing stuff like Internet of Things, for instance, or data, for example. We keep hearing about cybersecurity. We keep hearing about so many other areas. And basically, at the back of all this, without artificial intelligence, nothing would actually work. Because what do we do with all data that we collect with IoT, for instance? If there is no AI with it to actually process data and take any intelligent decisions, that's the use of having all that data. Similarly, there are proven examples of, for instance, medical science. There's research back in the 90s. This is before the invention of deep learning, for example. With normal machine learning, a lot of complex medical problems were actually solved. The third aspect is that artificial intelligence in the current world, in the today, is perceived as, most of the applications of AI that we see are in the area of perception. That, for example, we have some data, we're trying to make sense of that data, and we're extracting some information and, presenting it in a way that is useful for humans to actually process or make decisions. The actual manifestation of artificial intelligence is in the form of real life things which actually implement AI in real world. And that is most obvious when it comes to defense products. For example, we all know about the Loyal Wingman project, for example, for the Air Force, which the US Air Force has. That, for instance, you know that they've already succeeded in flying an F-16 autonomously, right? So the Loyal Wingman project focuses on, a wingman flying with a real pilot and the plane being totally pilotless. And a lot of the decisions to be taken by the Loyal Wingman basically depend on the data, but they are real-time decisions which have elements of all sorts. The implementation of AI can come from search-based algorithms, it can come from logic-based algorithms, and some aspects of it can come from the machine learning algorithms as well. So AI has a lot of paradigms, and one basically needs to know which paradigm to apply in what sort of a problem, in what way. For this reason, what usually is said is that AI is the mind behind AI that actually writes the program, right? So the more comprehensive the data is, and the better the mind that's actually writing the artificial intelligence code, that actually, gives us the manifestation of how an algorithm of artificial intelligence will come out. So taking the privilege of thus being late and being able to talk to your friend, I can, tell you a little bit about the AI seminar, which has been a big effort with C4I and with Depot, and it's had several legs. So it has 2 components. One component is today, another component is tomorrow. So the first component, which is today, is with 4 keynote speakers, 2 of them foreigners who have actually made time to come to Pakistan, and Dr. Jawad Shamsi is a very prominent speaker from Pakistan side. So it's a privilege for me also to speak. And tomorrow we're going to have presentation from, it's a competition-like format in which papers and project ideas have been invited from all over Pakistan, and people have competed against the project. So it's 143 submissions. From there we came down to 70 evaluations. After 70, the next stage of evaluation, we went down to 16. And after 16, we have the top 6 basically projects and papers which are going to be there. So great effort done by Depot and C4I, with some input from the National Center of Artificial Intelligence. And it's good to see
that AI, the importance of AI is finally being felt in Pakistan. I always said in every department in Pakistan, we need at least a think tank which thinks about applications or you could say technologies which are useful, in the form of, including emerging technologies. At the back, automatically there will be artificial intelligence, and there will be a lot of instrumentations and sensors, etc., which will be integrated in different departments as well. AI is, by the way, not a new area. AI has been around for a long time. I think since there are successful examples of artificial intelligence being applied even as old as the Second World War. And the reason why AI has become more significant right now is the advent of a lot of the computational resources as well. And you can see that there is a lot of new resources are evolving, and defense technologies are becoming more and more advanced with artificial intelligence now, incorporated in them. So now that we have the slides, let me finally begin with them. So formally, the topic of my presentation today is the evolution of artificial intelligence technologies in defense, the overview of the market, dynamics, and trend analysis. Next, please. Next slide, please. Okay, so a little bit about myself. So I've been passionate about computers and about programming since my early school years. Actually, I started my programming, I think I was in the 5th grade when I started writing programs. And my first attempt at writing a research paper was in the 9th grade in school. So I've been teaching the AI and robotics at, actually I founded the Department of AI and Robotics back in 2009 at NUST, a PhD from Japan. And this is the oldest STEM in artificial intelligence and robotics that exists in Pakistan with this title as well. And right now I'm the chairman of the National Center of Artificial Intelligence. Next, please. So this is a glimpse of some of the research which predates NCI that I've done. So just to give you an idea which background I'm coming from. So I'm really fond of putting artificial intelligence into real life systems and into machines that actually interact with the real world. For example, the robots that you see on your left and my right, these are the humanoid robots playing soccer completely autonomously. So some of my famous projects was done in the media a lot. And this was about 6 on one side, 6 robots on the other side. And they're completely playing with each other autonomously without any human interruption, without even connecting to an external computer, with a pre-trained algorithm which we actually train and we feed inside the robot. And they work by themselves to realize where the other robots are, where the goal is, where the ball is, and independently make strategy to actually score a goal and to also defend their own goals. Technologies for rehabilitation, which we have made for Sakura wheelchairs of Japan, and other projects, for example, this prosthetic hand project, which we worked with AFIRM, and this one has tactile sensation, which actually gives back feedback to the humans. And actually, on 2 of these, like the soft grasping and the hand projects, we won Best Paper Awards in London and Sydney as well. So the prosthetic you see, this is also AFIRM actually. So this is an adaptive leg, which actually adapts to the walking speed of the person. So a lot of other projects like that. This is a glimpse of the sort of projects that we do. Next, please. So the organization I'm currently leading is the National Center of Artificial Intelligence. This is a competitive grant awarded to the Higher Education Commission of Pakistan. And it's like in 2016, the government of Pakistan issued a call to all the Pakistani universities, all the professors, that everybody, whatever they're doing in artificial intelligence, they come forth. And looking at their research, looking at the background of the work, they awarded funding to 9 labs across Pakistan. I was very fortunate to be one of them. And then again, through competition, select which one person should lead the whole center. So right now, I'm leading the Center of Artificial Intelligence. 9 labs are there. And we also awarded 12 research-funded projects, different domains of artificial intelligence. So we are very applied. We actually met AI, and a lot is deployed in the real world as well. Next, please. So coming to artificial intelligence and its significance, we see that the financial impact of artificial intelligence, this saying from Forbes is actually very insightful, that it is forecasted to add $15.17 US to the global GDP by the year 2030. The main reason is that this technology is general purpose. And it has applications that span industries like healthcare, like transportation, like financial services, energy, and so on. Some consider AI to be on par with which will solve the evolution of electricity in the 20th century. So this is the reason why everybody keeps saying that AI is so significant. Some say that AI is as significant as electricity. Some say that AI is the most important invention that human beings have ever worked on. So another saying, for example, that whoever leads in AI will rule the world. So all this buzz around artificial intelligence, what's so special about it, and why is this the case? And then how does this apply to defense? Next, please. Let me share with you a small quote that I actually extracted from one of the letters which 3,000 researchers from around the world actually signed and sent to the UN. So this is the quote reads that autonomous weapons which threaten to usher in the third revolution in warfare after gunpowder and nuclear arms will permit armed conflict to be fought at a scale greater than ever and at time scales faster than human can comprehend.
So it's the perception about AI right now, particularly focusing on defense, right? That the scale of the war and also the speed of the war will go beyond, completely beyond the way that we've been fighting wars before. And with completely autonomous systems, we've all seen how the Iron Dome has worked in the recent conflict between Israel and its neighbor, like the Hamas, the Palestine. And we've seen how artificial intelligence-based systems are real-world systems applied in real life right now. There are others, for example, we've got Royal Wingman project, autonomously flying plane, for instance. We've got Valkyrie. We've got so many other land systems. I didn't do any pictures of naval systems here, but there are autonomous ships as well. There are submerged vehicles too. So there are helicopters. This one, for example, this is like Black Hawk helicopter. So this is the Alias. Also, there are like land machines also. The Mars project, for instance, this Black Helmet, for example. So all of these projects actually are autonomous agents that work in the warfare strategy, and they actually also not at the level, also at the tactical level. I'll come back to that in the next slides. So at the tactical level also, that all these integrate together, and there is a tactical framework as well, which you can actually, using the AI governance framework, you can actually apply artificial intelligence towards the strategy of the war as well. Next, please. So there are also drones are one example in which artificial intelligence has been applied extensively, and there are so many examples of drones, like of course several of them are teleoperated, but the real manifestation of technology is when the planes fly autonomously, right? So this is one of the applications area of artificial intelligence as well. These are some of the AI powered drones. Next, please. So artificial intelligence applies to various segments. Like I've shown you some of the machines that work autonomous within the battlefield. But AI goes well beyond that, actually, some of which you will see as examples in the papers presented tomorrow as well. So there are, for example, mission-specific battlefield robots. Some of the pictures I've shown you. There are unmanned craft. There's a formulation of governance of artificial intelligence, AI-based governance framework, and tactical design systems. So there are unmanned vehicles and weapons with hybrid remote operation capability. There is unmanned tanks and UVs. There are like multi-aircraft coordination and control technology. Then there is autonomous underwater surveillance systems, and of course the marine surveillance systems in general, and autonomous land obstacles and mine detectors. So this is just like some of the aspects of artificial intelligence. Actually, AI extends well beyond that. For example, one of the projects that we are doing, not directly for defense right now, it's mostly for the civilian maritime sectors, is focusing on how, for example, humans are dealing with so many new technologies, and why some of the accidents that are taking place with all these automated machines are because of human error, and how we can improve on that using artificial intelligence. Right? So AI extends much beyond the core areas in which there are applications. Next, please. So if we look at statistics, if you look at numbers, right, because there are some analytics involved as well, the market share in defense, particularly for the defense AI market, because this is the depot, this is defense export portion. So if you look at that, the market is expected to grow at an compound annual growth rate of 2.4% annually. So this is according to the Evergen. And this is actually the software market. If you look at the hardware market of artificial intelligence, because AI requires, computational capabilities to be developed at the same time as well. And now for a lot of, this is probably one of the major applications other than the mobile phone industry, where a lot of hardware is being designed looking at what sort of software is going to be deployed on this hardware to efficiently run that. So hardware industry, there's another 13.6% growth, the compound growth rate, CAGR, expected for the hardware industry itself. If you look at, for example, the global market share, so like it's like 28.8% global market revenue was accounted for that in the Asia Pacific region. But there is, so far, the development of AI is fragmented. It's not in just one place. Actually, Forbes did a very famous article in January 2019, which they compared the American capability with the Chinese capability and assessed which thing is better where, right? Particularly for like artificial intelligence technology. So hardware and software both. Next. Other statistics as well. For example, in case of the global newswire, they say that the growth rate is going to be 13.4%. Their assessment is 12.9%. There are other studies which are included in this presentation, but for North America, for example, or certain regions, the growth rate in artificial intelligence actually exceeds 30%, right? So it's like really huge growth. Wherever people are coming, applying artificial intelligence into the industry, so huge growth rates are expected there. So this is what I was talking about, that apart from the development of weapon systems, it is like the efficient information, you could say, retrieval, the deployment of sensors, and the information which is coming, back to you, the raw intelligence which comes from the real data, and also the automation of sensor data fusion and intelligence sensing techniques to leverage better situational awareness. And once you have that situational awareness, then you can get to the tactical level, right? So cloud-based integration of land, airborne, and assets into a battlefield management system to leverage tactical capabilities. So this is also something which is being worked on by artificial intelligence, like developers who are developing systems based on AI. Next, please.
So the way AI works actually is we have at the bottom level, like I think PFs and I relate to it very much. The way that this AI works is that at the bottom level there is infrastructure, of course. So like this is hardware as well as the core software infrastructure in which, for example, you need a lot of data to get to artificial intelligence through a lot of sensor networks. You require this can be mobile, this can be cloud, this can be Internet of Things, the things I was talking about right in the beginning of my talk. Then top of it, you've got cognitive systems, and then top of it, you've got applications. So the thing is that a lot of applications which are like, for example, application areas maybe particular to defense don't need generation of entirely different kind of algorithms. Like for example, if something has been worked on in the civilian domain, it's also applicable to the military domain as well. So for example, if you want to do object recognition or you want to do any activity recognition, for instance, the algorithm behind that activity recognition will be the same, even though it is applied to the military application as well. So we can leverage a lot of things, like there is trans learning and so many techniques that are available to actually use, the kind of knowledge we generate in one kind of scenario. And actually, this is the reason why some of the game kind of scenarios are generated, where I just cooperate with each other. And we actually want to use this scenario for machines, for example, tanks in the battlefield or aircrafts in the air to collaborate together, share information with each other, and actually find the real world scenario. So if you look at, for example, segments in which artificial intelligence is divided and the impact which comes from different areas, right now, 9.6% firms are investing in the data science area, 7% in the business intelligence area. Then there are health plans and patient care, computer vision, speech recognition, aerospace and defense industry. So this is particularly aerospace related defense industry. Otherwise, applications of defense are in all, for example, computer vision. So many applications are in defense industry. So natural languages, processing, entertainment, and the list goes on. I could hold it just on this. Next, please. So coming to the National Center of Artificial Intelligence, let me give you a glimpse of some of the projects we are doing, and, with artificial intelligence. And of course, many of them are on the civilian side, and of course, some of them have applications toward defense side as well. So we've been able to generate the product concepts and proposals that we've generated are, 221 so far, and we are touching nearly around 635 million in funding that we've generated during the last 3 years. So the kind of projects that we've done and deployed reach around that. So we just inaugurated in March 2018. The first financial release came in 2019. So you can imagine just 3 years of work that we are actually displaying before you. Next. So one of the major projects, for instance, was collaboration with the Law and Justice Commission of Pakistan to develop artificial intelligence for judiciary. This could be very useful for the military courts as well. So for instance, what we've done is that digitized data from the 70 years history of Pakistan. And whenever a new case, for example, comes, you enter some facts of that case to the system. And the most relevant case from the database, from the 70 years history of Pakistan database, they actually come up. And then they with it himself. Like AI, of course, right now, the system AI does not suggest a judgment. But even in that case, for example, relevant cases coming in front of the judge can help the judge make a more informed decision, right? Thank you. Next. So I'll just go quickly to the slide. We've been working very closely with Pakistan Air Force, management of the CENTAIC, and we have good close collaboration. Next, please. Next. So this is one of our projects which will be displayed in detail tomorrow by one of our contestants in the competition. This is a Medium.ai. It's a company spin-off from there. This actually looks at all the media channels. Initially, we know fifth generation warfare is actually not just a battlefield in every home, right? With the digital devices and television and everything coming into everybody's hands. And this, for example, documents whatever is being said by any person, who is saying what, all the content analysis behind it, giving you a summary of whatever is happening in the day as well. So complete perception of whatever is going on in the media. Next, please. Many of these technologies have now spun off into companies like the last one. In this one, for example, the system where we, for example, various vehicles, some of the applications, for example, are parking spaces. Next, please. So this is another one for tickets, for example, like how many suspicious vehicles or persons could any human possibly remember. So this is AI-based system which is actually reading the number plates, actually looking at the make and model of the car, and based on that, it tracks which kind of vehicle, for example, needs to be stopped. If a suspicious vehicle comes in, it can relay back to the database and stop that vehicle right there. Next, please. So this is another system, for example, in which you can detect weapons. For instance, this is object detection. You're actually detecting weapons. And on the left and on the right, you can see activity recognition. So, for example, a person is crossing, a different side, like not walking in the direction everybody else is going. So this is statistical modeling of the dominant motion in the scene. So we can actually predict with a lot of accuracy whenever somebody is doing something different from the crowd. So this is for mob analytics. Next, please. So this is an example of what we do with the mob analytics. So many persons are there. Whichever persons, for example, are holding sticks are pointed out separately. So on the right, you can actually distinguish activity recognition. For example, if two persons are fighting with each other, or for example, a gun is being pointed. Because in a real scenario, guards are always going to be carrying weapons, right? So detect a weapon only may not mean a lot, but something being done with the weapon actually means something, right? So this is why this activity recognition. And when the gun is pointed at someone, that's when we raise the alarm. Next, please.
So this is like just a glimpse from the lost and found system that we've been able to deploy with the Punjab Safe City Authority, and I'm happy to share with you that in the past year, in very major events that took place in Lahore, we were actually able to catch some of the miscreants using artificial intelligence face recognition technology, using our completely home developed systems. Actually, next please. So these are medical applications. One system that we've developed for thalassemia detection and assessment, another one for breast cancer. Next please. So these are other systems. BrainWiz is a very popular system for brain like tumor detection and cancer anticipation, lifespan prediction, also for tuberculosis, COPD, and other pulmonary diseases. Next, please. Just actually the day before yesterday, our system is deployed in the PIMS hospital in Islamabad. So another initiative which, for example, you should know about is the AI Tech Verse competition organized. So this is initially was scheduled in these days, but we moved it forward because of virus, and it's going to be inshallah in the coming February, inshallah. So if you want to, for example, we are going to sponsor prize money rupees in this for the winner, and if some company wants to sponsor, for example, a particular challenge that you want to develop a product of this, and you want to offer prize money who develops the best product, you're welcome to contribute to this, and otherwise also you're welcome to visit. Next, please. Also, like to address the need of the defense market and particularly the shortage of AI human power, which could actually develop efficient algorithms, the proper level human manpower which is required. We've started the Certified Artificial Intelligence Program, the CIP certification. So this is a particular certification. If you want your team to enroll in this, you want them to develop expertise, it's a 4-month-long course. They can develop that expertise. Doctor, last 2 minutes. Already finished. Okay. Next, please. So this is my contact information. If any one of you would like to contact me, so you're very much welcome to do that. I got like a reminder, so this is why I really hurried after the things. Thank you very much. I hope you enjoy the talk, and I hope we interact and on some real AI together. Thank you. मैं असल में इस इवेंट 2012 से एसोसिएटेड हूँ। 12 और 14 के इवेंट के अंदर मेरी अपनी काफ़ी पार्टिसिपेशन थी। उसके बाद से ये माशाल्लाह इवेंट हैज़ गॉन अप एंड नाउ इज़ वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स दुनिया के अंदर फॉर डिफेंस एग्जीबिशंस। जो लास्ट टाइम नहीं हो सका वो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के अंदर ही कोविड की वजह से इफेक्ट हुआ एग्जीबिशंस के अंदर, बिकॉज जहाँ पर भी ग्रुप्स और इनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी वो ख़त्म हो गई। बट पाकिस्तान के लिए अगेन बैक वी आर इन द लाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसके ऊपर हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा से प्रमोट करना है, और इवेंट के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत और करना पड़ेगी ताकि हम दोबारा उसी लेवल पे या उसी बेहतर लेवल पे जाए। मेरा लोग उस वक्त डेपो से था, मैं डायरेक्टर था डेपो के अंदर, और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हमारे वक्त में पहली मरतबा इंडक्ट हुआ था फॉर आइडियाज़, एंड पहली मरतबा जब ये आए थे तो उतना एक्सपीरियंस उनका आइडियाज़ का नहीं था, बैक एंड पर रख के काम करते थे, बट देन विद द पैसेज ऑफ टाइम दे हैव बिकम टू गुड फॉर दिस इवेंट, एंड माशाल्लाह इतने अरसे के अंदर दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, एंड इंटरनेशनली नाउ द एक्सपो सॉल्यूशन इज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द बेस्ट इवेंट मैनेजर्स इन पाकिस्तान। बहुत अच्छा काम है। बुरा समझूं उन्हें, मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं खुद भी तो हूं इकबाल अपने नुक्ता चीनों में। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। पर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। मजहब से है, मजहब जो नहीं तो तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिले अंजुम भी नहीं।
शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। अपने किरदार पर डालकर पर्दा इकबाल हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। Hello, greetings. I'm Badar. I'm at Powerhouse Private Limited, and we are very excited from Powerhouse to participate in IEEE Third Industrial Fair, which is organized here in Karachi by IEEE, and we are participating as a platinum sponsor. We believe that IEEE platform is a great platform which benefits the industry, and it gives us an opportunity to interact with the B2B customers and some foreign delegates who are going to attend this great exhibition here in Karachi. IEEE platform and fairs are excellent and they are providing opportunity for all the commercial to participate and exhibit their product so that we can get the bid and we can also participate in many other exhibitions organized by IEEE. I congratulate once again to IEEE for organizing such a great exhibition, and I always do. And we see that this time again we meet all our business colleagues and customers and different people who are going to this exhibition. So thank you very much. Forward to see you. ये इवेंट करने जा रहे हैं ऐसी शूटिंग कॉम्पिटिशन, ये हैंगर का इवेंट होगा साथ जो नए बात ये उनके लिए है। इन जो नए से हम करते रहते हैं, ये प्रोफेशनल इवेंट दुनिया में डिफरेंट मुल्कों में होता है। पाकिस्तान फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं। हमारी टीम्स चाहती थी कि मुल्कों में ये इवेंट के लिए, तो हमने कहा कि जो चीज़ें बाहर होती है पाकिस्तान अंडर इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बैनर, और हम उसको यहाँ पे फर्स्ट टाइम अरेंज करने जा रहे हैं। इसकी सबसे खास बात ये है कि जितने यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे नेवी है, आर्मी है, रेंज है, ASF है, या इन जो बाकी प्रोविंस की पुलिस है, कमांडोज, इन सबको हमने किया है। तो अपने इसके साथ जो अपने उनके प्रोफेशनल शूट हैं वो आके इस इवेंट में हिस्सा लें, और अपनी काबिलियत को सामने रखते हुए मैं सबको ओपन चैलेंज किया है, और हमने कुछ खास इनामात रखे हैं, सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज। उसके अलावा ये अरेंज करने जा रहे, तो यूनिफॉर्म पर्सन तो हम मीटिंग करते रहते हैं, सिविलियन जो शूटर्स हैं उनकी भी रिक्वेस्ट आई कि हम भी हिस्सा लेना चाहते हैं। तो हमने एक सिविलियन कैटेगरी रखी है कि उसमें जितने भी सिविलियन लाइसेंस वेपन है वो आके अपने शूटिंग की जो स्किल्स हैं वो आ जाए, और इसमें ओपन कंपटीशन हिस्सा लें। एक हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है 50% हमारी आबादी, तो खवातीन हमने स्पेशल कैटेगरी रखी है। इसमें जो भी शूटर्स जिनकी वेपन हैंडलिंग बेहतर है, जिनको लाइसेंस वेपन है, वो आके इसमें हिस्सा लें और इसकी अपनी जो स्किल्स हैं वो आजमाएं। तो ये हमने इनिशियली 6 सितंबर को डिफेक्ट पे रखा था, क्योंकि चेलम का है और इसमें तमाम हमारे लोग प्रूफ हैं, तो हमने 9 सितंबर पर लेके गए। तो 9 सितंबर में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान कंपटीशन होने जा रहा है, जिसमें तमाम नेशनल और इंटरनेशनल शूटर्स हिस्सा लेंगे, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि इससे एक का जो सॉफ्ट इमेज है वो बाहर जाए, और हम दिखाएंगे कि लोग यहाँ पे इस चीज़ को कैसे करते हैं।
तो मेरी तरफ से सिंध पुलिस की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी सपोर्ट के साथ हम इसको कर रहे हैं और इसमें जितने भी लोग हैं उन्हें इनवाइट कर इसमें हिस्सा लें और अपने स्किल्स आजमाएं। मैं शुक्रगुजार हूँ बदर एक्सपो का और मीटिंग का कि वो इसको ऑर्गेनाइज करने में हमारी करें और इसको एक प्रोफेशनल तरीके ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि जो इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करें और जब हम प्रोजेक्ट करें तो एक तौर पर हम पाकिस्तान में इसको दुनिया के आगे रख सकें। वहाँ ये कंपटीशन है, 9 बजे शुरू होगा, शाम को 5 बजे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगी और इसके अंदर जो सिर्फ एक हिस्सा लेने आ रहे हैं उनके साथ गेस्ट आएंगे, उनके लिए हमने एक डिजिटल तरीके से फूड स्ट्रीट टाइप का बंदोबस्त किया हुआ है जिसपे पाकिस्तान के चारों सूबों के खाने हम आप लोगों के लिए, जो आप दोस्त आएंगे उनके लिए, जो लोग हिस्से हैं और जो गेस्ट आएंगे उनके लिए हमने रखा है ताकि एक ट्रेडिशनल तरीके से उनको हम वेलकम कर सकें और उनकी हॉस्पिटैलिटी कर सकें। तो ये एक मेहमाननवाजी होगी सिंध पुलिस की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों के लिए हिस्सा लेंगे और जो देखने आएंगे। तो ये एक सॉफ्टवेयर इमेज है हम पेश करेंगे दुनिया के आगे, न सिर्फ कंपटीशन हो रहा है बल्कि सिंध की रिवायत के हिसाब से हम उनको मेहमानों का खास तरीके से इंतजाम भी किया हुआ उनके खाने पे। इसमें इस टाइम जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो 60+ ने रजिस्टर किया है तमाम पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगिस्तान से और लोकल। ये वो लोग हैं जो कि इन्फॉर्म पर्सन है। उसके बाद सिविलियन कैटेगरी में टोटल जो रजिस्ट्रेशन किया 104 लोगों ने इसको अपने आप रजिस्टर किया है। प्राइस हमने उसमें रखा है कि 1 लाख फर्स्ट प्राइस है, सेकंड प्राइस 50,000 है, थर्ड प्राइस 30,000 है। इसके अलावा हम उनको मेडल्स देंगे, ट्रॉफी देंगे और सर्टिफिकेट्स देंगे। जो पिस्तौल गोलियां हैं वो जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उसमें जो खुद खेल रहा होता है उसकी अब तरफ से होती हैं। उसलिए हमने POF फैक्ट्री को रिक्वेस्ट किया कि वो अपना स्टॉल लगाएं, वहीं से वो बुलेट्स ले सकेंगे, वहीं से अपनी शूटिंग में हिस्सा ले सकेंगे। प्रैक्टिस के लिए भी हमने 3 दिन पहले अपनी शूटिंग रेंज को ओपन किया है ताकि वो आके अपने प्रैक्टिस करें ताकि मैच डे पे कोई नया सरप्राइज ना मिले। ये सब के लिए हमने की जैसा स्टैंडर्ड रखा है ताकि सब अपनी जो है काबिलियत को आजमा सके। इस टाइम जो पाकिस्तान में जितनी फॉरेन डेट्स हैं जो कि कॉन्सुलेट में काम कर रही हैं सब हमारे इंटरनेशनल मेहमान हैं। उनको हमने जब इन्विटेशन भेजी तो जो कॉन्सुलेट सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल हैं वो कुछ आएंगे जो यूनिट कैटेगरी में करेंगे और जो सिविलियन है वो सी कैटेगरी में। तो जितने भी कॉन्सुलेट्स हैं दे आर इनवाइटेड और वो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा सर, ये इस बेस्ट इवेंट को करने का मकसद जो है वो जरा मकसद ये कि हमारे आप ये मेरी शूटिंग टीम का खड़े हो जाएं, ये हमारी शूटिंग टीम के कैप्टन हैं और इसके अलावा इंस्पेक्टर शबीर जो ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं कराची में। ये वो लोग हैं जो अपने शौक से इस स्किल को सीखा और इन्होंने वॉलंटियर करी जाके अपने इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा लिया। तो वहाँ पे देख के आए, सीख के आए, हम उसी चीज़ को उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के अंडर यहाँ पे इनकार कर रहे हैं। बाहर ये मैसेज पाकिस्तान का जो नेगेटिव मीडिया इमेज है पता नहीं यहाँ क्या होता है और सेफ नहीं है, ये उनके लिए मैसेज है कि ये सब चीज़ें नॉर्मल है, जैसे बाहर के मुल्कों में इंटरव्यू होते हैं ऐसे हम करते हैं। और हम तमाम जितने भी फोर्सेस हैं उसके बीच में ये कोऑर्डिनेशन और ये भाईबंदी को हम मेंटेन करने के लिए जब हर जगह से लोग आएंगे एक दिन अपने एक साथ गुजारे शूटिंग में तो एक लाइफ मेमोरी होती है जो कि शूटर या वो जो टीम वापस लेके जाती है वो सेम की मेमोरी से मुस्त होंगे और उसको एंजॉय करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव इमेज है जो कि ना विद इन पाकिस्तान दे रहे हैं, एक इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी हम दे रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ बेहतर है, नॉर्मल है और हम भी वही चीज़ यहाँ पे और कर सकते हैं जो कि दुनिया की और जगह पे होती है। ये नो सिर्फ आपका लाइसेंस वेपन होना चाहिए और या फिर आपको यूनिफॉर्म पर्सन होना चाहिए, ये 2 कंडीशंस हैं और उसकी हिस्सा लेने के लिए। रिसेंटली हमने देखा कि जब स्ट्रीट क्राइम बढ़ा था तो पाकिस्तान से एक्टिविटी भी बनाई गई थी, अब वायलेंस ज्यादा है क्राइम में, तो अब एसएसक्यू कुछ प्लान कर रहा है दोबारा स्ट्रीट क्राइम में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा? अभी रिसेंटली आपने 15 का जो एनकाउंटर था आपने विटनेस किया, वो लोग कौन थे? वो SSU ऑपरेट कर रहा है, SSU की टीम वहाँ बैठी हुई है। ये स्ट्रीट क्राइम में हमारा एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर जाते हैं डिफरेंट तरीके से। जब भी हमें रिक्वायरमेंट आती है कि कहीं पे अगर सेंसिटिव एरिया है या है तो हम उधर पेट्रोलिंग भी अपनी बढ़ाते हैं, मगर उसके अलावा जो 15 की जो सर्विस है दैट्स रन बाय द SSU उन्हीं के लोगों से, और हम पब्लिक की मदद पा रहे हैं। उनकी एक इंस्टेंट हेल्प की वजह से एक कॉन्फिडेंस है शहरी में कि अगर हम 15 पे कॉल करते हैं तो टाइम से पुलिस आ जाती है और ये डेटरेंस, ये खौफ क्रिमिनल्स के लिए उस चीज़ को रोकने का बायस बनता है। तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे भी हम चीज़ें बेहतर कर सकते हैं उसको कर रहे हैं और आइंदा इसी तरीके से करते हैं।
स्केटिंग फोर्स बिल्कुल बनाई थी। स्केटिंग फोर्स का मकसद ये था कि जो हमारे स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं वहाँ के लिए, अभी जैसे स्टेडियम में वुमेन क्रिकेट टीम आई हुई है, अब जब इसमें हम पब्लिक के लिए इसको खोलेंगे तो जो स्केटिंग जो लोग होंगे वहाँ पे लोगों की हेल्प करने के लिए मौजूद होंगे। स्केटिंग फोर्स का था कि शहर के अंदर जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सके या जो वॉकिंग जगह है वहाँ पे करें, मगर यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, तो इसलिए उनको हमने लिमिटेड किया है। और 20 लोगों की टीम है, वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, उसको भेजते हैं, मगर मेनली उसको हमने स्पोर्टिंग इवेंट के लिए रखा है। अभी आप देखेंगे जब टीम होगी, इनकी मैचेस होंगे, जब खवातीन आएंगी तो आप लेडी कमांडोज को स्केटिंग में देखेंगे, उनकी लोगों की हेल्प करते हुए, उनके साथ गाइड करते हुए, और बाकी हमारे मेल कमांडोज को भी देखेंगे। दैट इज फॉर स्पोर्टिंग इवेंट्स ओनली। और ये भी कहा गया था कि कमांडो जो है वो सड़कों पे रहेंगे, थाना पुलिस है वो गली मोहल्लों को देखेगी। कहीं पे भी एसएसबी कमांडो की गाड़ियां और जो पेट्रोलिंग है वो दिखाई नहीं देती। जिस तरीके से आपने बताया कि बनता है मुकाबला किया और हमने रिस्पॉन्स किया, तो बनता है एक अलग मोबाइल अलग से थी। मुझे एसएसबी के अपने कमांडो है हॉटस्पॉट से खड़े होते थे, एक दो दफा जो है वो तस्वीर शायद की गई थी, उसके बाद कहीं दिखाई नहीं दी। जब कराची पुलिस की तरफ से रिक्वायरमेंट आती है कि हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, उसको डिप्लॉय करते हैं। उसके अलावा 15 की भी हमने स्ट्रेंथिंग की है, वो एसएसयू के कमांडो से की, तभी ये पॉसिबल है कि 3 शिफ्टों में वो 24/7 काम कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। तो जब भी हमें रिक्वायरमेंट आएगी मजीद, तो हम इंशाल्लाह उसी तरीके से हॉटस्पॉट्स को भी कवर करेंगे, उसी तरीके से लोगों की मदद के लिए क्विक रिस्पॉन्स भी करेंगे। अच्छा, बजट के हवाले से इसमें कोई बजट नहीं है। जो आपकी फीस थी से हम उनका जो खर्चा वही निकालेंगे, प्लस स्पॉन्सर्स का जो फूड अरेंजमेंट है वो है। फीस हमने 2000 रखी है फॉर यूनिफॉर्म पर्सन, 5000 फॉर सिविलियन पर्सन, और फीमेल कैटेगरी की भी 2000 फीस। अच्छा सर, ये पूरी दुनिया में जो सिक्योरिटी वो एसएसयू को फॉलो कर रहे हैं, और एसएसयू की जितने भी इवेंट हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए वो बात करें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र है कि हमारा मुल्क में एक ऐसा इदारा है जिसको हम एग्जाम्पल तौर पे पेश कर सकते हैं, जिसकी परफॉर्मेंस से खाली न सिर्फ ये कि उसको हम प्रोजेक्ट हैं, बल्कि आगे लोगों के लिए भी हम एक उम्मीद की किरण है कि जब एसएसयू जवान बेहतर हो सकते हैं, बाकी पुलिस भी हो सकती है। तो एक बेहतरी की तरफ एक हमारा काम है। इस टाइम अगर हम परसेंटेज में देखें तो हम 2% है सिंध पुलिस के, तो 2% बेहतर हो गया है। 98% इंशाल्लाह पुलिस का बेहतर होना बनता है। इसी तरीके से अगर लोगों की हम खिदमत कर सकें, उनकी बेहतर सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे सकें, तो जो पब्लिक का ट्रस्ट है पुलिस में वो बेहतर हो सकेगा। जी, ये हमारा चौकंडी में एसएसयू का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे हम इसको अरेंज कर रहे हैं, और वहीं पे हम सारा कुछ शूटिंग रेंज सारा कुछ वहाँ पे हमने बनाया। हो जाएगा इंशाल्लाह, टाइम लगेगा। चीज़ों को सिस्टम्स को ठीक होने में जनरेशन सकती है। एक तरफ कदम है, शुरू में आप देखें कि मोटरवे पुलिस का जो इमेज था कितना बेहतर होगा, उसी पुलिस के लोग जाके वहाँ पे काम करते हैं, तो वो चीज़ बेहतर होती हैं और पब्लिक भी उससे मुतमईन होती है। इसी तरीके से एसएसयू की ये एक थोड़ी सी स्ट्रगल है, टाइम लगेगा इन चीज़ों को। ये कि बेहतरी की तरफ डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं, वक्त आएगा कि सारे लोग इसी तरीके से बेहतर तौर पे काम कर सकें। हम ये कर सकते हैं कि जो मीडिया के दोस्त हैं जिनके लाइसेंस वेपन है, उनका आपस में मुकाबला कराएं। उनके लिए हम स्पेशल टारगेट रखेंगे। आप अपने वेपन्स के साथ हैं, वो मेरी तरफ से फ्री ऑफ चार्ज है। आप अपने स्किल्स के वेपन्स के साथ हैं, वो अपने आपस में मुकाबला करें। उसकी हम प्राइस की कैटेगरी अलग करें। उसमें आपसे रिक्वेस्ट और सर अब ये होने वाला है, जल्द ये आगाज हो जाएगा। आपने इतना अरसे पे काम किया, अब ये एक्चुअली हो जा रहा है, तो उसमें ना होना क्या आपके लिए फीलिंग है? इस हवाले से ये भी साथ आ रही थी कि आपने कोई चीज प्रपोज की थी, एनआरटीसी को दिया गया बजट, और आप भी चाहते थे क्योंकि आप ज्यादा लो कॉस्ट लेकर आए थे, लेकिन साहब ने जो एनआरटीसी को दिया, इसमें क्या होगी? उसमें जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, तो बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स होते हैं। ये आप सब लोगों को पता है। हम और इसमें हम कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से बेस्ट पुट इन करें, चाहे एक्स करें या वाई करें या जेड करें। हमने हमारी मेहनत का ये फ़ायदा हुआ कि हमने डॉलर्स में प्राइस लॉक कर दी। हमने वो मार्जिन्स ख़त्म कर दिए जो लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट की वजह से बढ़ रहे थे। तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट को हाफ करके हमने जो 200 मिलियन की कॉस्ट थी 100 मिलियन में कर दी। अब वो 100 मिलियन पे ही लॉक है, चाहे वो ए टीम करे चाहे बी टीम करे। उसका ये फ़ायदा हुआ कि हमने डायरेक्शन सेट करी
हमने चीज़ें बता दी कि किस तरीके से होगी, और हमने एक सैंपल तौर पे एक पूरा एक सिस्टम बाहर लगा दिया जो अभी लगा हुआ है, इस फॉलो करें तो हो जाए। तो इंशाल्लाह उसी गाइडलाइन पे करेंगे, और इसमें जब भी होगा ये मुल्क के लिए बेहतर होगा, इस शहर के लिए बेहतर होगा, यहाँ के आवाम के लिए बेहतर होगा। तो इस चीज़ से हमने इंशाल्लाह होपफुल हैं कि आगे चीज़ें बेहतर होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मुगीस है और मैं BTL मेडिकल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सेल्स स्पेशलिस्ट हूँ और हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट्स में हमारे पास कंप्लीट रेंज है, जिसमें हमारे पास कार्डियोलॉजी सेगमेंट में है, ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, और हमारे पास जो रिहेबिलिटेशन है जिसको हम फिजियोथेरेपी भी बोलते हैं वो हमारे पास हैं। हमारे पास हमें जब ये एक्सपो के बारे में पता चला, हम लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, यहाँ के मैनेजमेंट ने हमसे रब्ता किया, हमने उनको अपने बारे में बताया, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे एक्सपो में सब लोग अपनी मशीन्स को लेके आए हैं, क्योंकि दुनिया न्यू टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जा रही है, रोबोटिक्स के ऊपर जा रही है। सेम इसी तरह सामने यहाँ पे हमारे पास सुपर इंडक्टिव सिस्टम है जो कि एप्लीकेटर एक रोबोटिक है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के अंदर ये हेल्प करती है, जो कि बोन्स के ट्रीटमेंट्स को, नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स को ये हेल्प आउट करती है फिजियोथेरेपी के अंदर, जो कि बहुत हेल्पफुल है किसी भी पेशेंट के लिए। सुपर इंडक्टिव सिस्टम जो कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि दुनिया में शायद ही बहुत कम कंपनीज है जो कि इसके ऊपर, चाइनीज बहुत जो कि क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन जो यूरोपियन ब्रांड्स हैं, जो USA ब्रांड्स हैं, वो अपने क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे पास इसी तरह कार्डियोलॉजी सेगमेंट में जो कि हार्ट से रिलेटेड मशीन्स हैं, ECG मशीन, ETT मशीन, होल्टर, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर, एक कंप्लीट रेंज है हमारे पास उसमें। सेम इसी तरह हमारे पास स्किन ट्रीटमेंट की मशीन्स और डिवाइसेस हैं जो कि हम लोग पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पे आपके सामने फिजिकली मशीन्स भी लगी हुई हैं, हमने डेमो पे लगाई हैं। हमारे साथ एक्सपो सेंटर वालों ने बड़ा ताउन किया। मैं खुद लाहौर बेस्ड हूँ और मैं आया हूँ यहाँ पे, और मुझे मैनेजमेंट अच्छी लगी है, यहाँ पे सपोर्टिव है, और बार बार आके उन्होंने काफ़ी चीज़ें पूछी भी हैं, कोई मसले मसाइल वगैरह तो नहीं है। और मज़े की बात ये है कि यहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट में रह के आपको हेल्थ प्रोफेशनल्स भी मिल रहे हैं जो कि आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं। मेन चीज़ ये होती है कि पेशेंट को फैसिलिटेट किया जाए। उसको हम लोग क्या करते हैं कि पैसे चार्ज कर लेते हैं, डॉक्टर्स चार्ज करते हैं, लेकिन उसको फैसिलिटी उस तरह उस लेवल की प्रोवाइड नहीं की जाती, जो कि यहाँ पे अवेयरनेस दी जा रही है, लोगों को, डॉक्टर्स को बताया जा रहा है जो स्टॉल्स पे आ रहे हैं। इवन JDC वाले भी आए हैं हमारे पास जो कि एक अच्छा काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में फाउंडेशन है। तो हमने उनसे भी बात की है टेक्नोलॉजी के ऊपर, और हमने डॉक्टर से भी बात की है। तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, और फ्यूचर में पाकिस्तान के अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो आनी चाहिए, और हमारे हॉस्पिटल के अंदर ये मशीन्स होनी चाहिए। थैंक यू।
Ladies and gentlemen, in the next few minutes, I shall briefly touch upon the saying and the novelty, defense support organization and ideas, mainly dilating upon the objectives and what the organization does by itself. And thereafter, we will have a little documentary which will take you through the journey of the depot and the activities of ideas. It was raised in 2000 under the Joint Staff Headquarters, which was later placed under the Ministry of Production in 2002. Since then, depot is working under MOD. The aim was to promote, project parts and military's industry and defense export potential. All core functions of the depot are performed on corporate model with no financial burden on national exchequer. The winning statement, which has been spelled out for the depot, reads: as a national platform, provides support to the defense manufacturing, service sector, and the export chain through promotion, facilitation, and coordination for sustained growth of defense exports of Pakistan. To achieve this vision, the depot basically undertakes promotion, facilitation, and coordination of the business opportunities and networking for the defense industry. It organizes defense exhibitions both inland and abroad, including the flagship event of the Ideas. Establishes Pakistan Pavilion across the globe. Gentlemen, in this regard, depot establishes 12 to 14 Pakistan Pavilions annually across the globe in different countries for our own defense production enterprises. We also had the unique honor of organizing a single country exhibition at Iraq, which was actually mentioned a little while ago. With regard to national exhibitions, the depot has been instrumental in organizing 2 editions of the Suppliers and Vendors Defense Exhibition at Lahore in concert with the Chamber of Commerce Lahore, 2 editions of the Defense Exhibition at the Rawal Expo at Rawalpindi in concert with the Rawalpindi Chamber of Commerce and the Defense Port Turkey at Islamabad. The Ideas has been a flagship event which is conducted biannually since 2000, and it has grown over a period of time both in stature as well as in size. Other than these core subjects, the depot also maintains an international standard display center here at Islamabad. We have carried out an extensive mapping of the private defense industry, wherein the potential buyers across the globe are now directly interfaced with public as well as the private defense manufacturers. A comprehensive defense products catalog has been prepared, which is not only available online but has also been provided to all our foreign missions and is presented to all the visiting dignitaries. In addition, the depot also conducts seminars other than the main seminar during ITRs. Well, just briefly touch upon the centerpiece of the recent efforts of the depot, which is basically focused on magnetizing of the private defense industry, and wherein the private sector is facilitated for international participation. It is happy to note that 8 private companies participated in World Defense Show KSA without the government support. However, this participation can increase manifold with the government support in the future. We are also focused on integrating and participating along with the Chamber of Commerce in our different defense, national as well as international exhibitions. Besides, we are focused on the suppliers, vendors, and the small-scale manufacturers, basically to link them with the large-scale manufacturers and our private and public large-scale defense production enterprises. Now coming over to the flagship event of Ideas. As you're aware, the Ideas is a flagship event of international stature for Pakistan, which is a sought-after rendezvous for business and knowledge sharing. With synergistic interaction of the global defense industry, it serves as a shared platform both for global peace and stability. International recognition and participation thus truly reflects deeply embedded, mutually beneficial relations.
Gentlemen, the main objectives which are actually desired to be accrued out of the ideas include provision of the business opportunity for the defense industry, both for the international exhibitors as well as the domestic exhibitors. Attract maximum numbers of the domestic as well as the international exhibitors. Demonstrate organizational skills and increase in the defense exports. Image building of the country. Promulgate Pakistan's point of view internationally. And reinforce diplomatic efforts in the realm of defense diplomacy. Now with this, gentlemen, with the brief introduction, I shall now take you through a documentary which will actually show you both these, whatever I have spelled out about ideas and the depot. How did it actually reach to this, where we are standing today. Thank you very much. जी मेरा नाम सैयद असद मशदी है और आई बिलोंग टू मिलिट्री व्हीकल्स पार्ट्स बिजनेस और बेसिकली ये जो आइडिया एक्सपो है इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज पीपल हो जो कि डिफेंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हैं। एक विंडो पे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है थैंक्स टू ऑर्गेनाइजर्स और मैं बड़ा मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा डेपू को जिन्होंने ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है आफ्टर दिस लॉन्ग कोविड जो सारी दुनिया ने फेस किया है। और उसके बाद ये एक जब दुनिया में B2B मीटिंग पॉसिबल नहीं हो रही थी तो मेरा ख्याल है ये डेपू ने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि लोग अपने एंड यूजर्स तक यहाँ पे पाकिस्तान में मीटिंग अरेंज कर सके, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सके और अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर सके। सो मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी जो डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड वेंडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एजेंट्स हैं, उन्होंने अपने डिस्प्ले भी किया है। एट द सेम टाइम बहुत सारे फॉरेन कंपनीज जो है उन्होंने भी यहाँ पे डिस्प्ले किया है जो कि बहुत अच्छा एक इंकरेजिंग पॉइंट है पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी के लिए भी। और साथ साथ ये भी दिखाया जा सकता है दुनिया को कि यस वी आर रेडी, वी आर हेयर टू सर्व ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री है एट द सेम टाइम ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करती है। सो ये जितना भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है विन विन सिचुएशन था फॉर बोथ साइड्स, फॉर द प्रोक्योरमेंट एजेंसीज और फॉर द जितने जो इसके सेल कर रहे थे या अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे या अपने नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने आए थे। सो थैंक्स टू डेपू, थैंक यू वेरी मच। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। क्यों मन्नतें मांगता है औरों के दरबार से इकबाल, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। أشهد أن لا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آل سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ऐ अल्लाह इस दावत कामिल और ता क़यामत कायम होने वाली नमाज के अब तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत नुमाया मकाम फजीलत और बुलंद दर्जा फरमा और उन्हें उस मकाम महमूद पर फाइज फरमा जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है और क़यामत के दिन हमें उनकी शिफात नसीब फरमा तू वारे के खिलाफ नहीं फरमाता। मैं असल में इनके साथ 2010 से एसोसिएटेड हूँ। 12 और 18 के अंदर मेरी अपनी काफ़ी पार्टिसिपेशन थी। उसके बाद से ये माशाल्लाह इवेंट गॉन अप एंड नाउ इज़ वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स दुनिया के अंदर फॉर डिफेंस एक्सीडेंट। जो लास्ट टाइम नहीं हो सका वो अपनी दुनिया के अंदर ही कोविड की वजह से इफेक्ट इलेक्शंस के अंदर बिकॉज जहाँ पर भी रूट्स और इनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी वो खत्म बट पाकिस्तान के लिए अगेन बैक और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसके ऊपर हमें अपनी डिफेंस को दोबारा से प्रमोट करना है और इस इवेंट लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा कि हम उसी लेवल उसी तरफ पे जा। मेरा उस वक्त डेपो से था, मैं डायरेक्टर कॉर्ड था डेपो का और बल एक्सपो सोल्यूशन हर वक्त में पहली मरतबा इंडक्ट हुआ था फॉर आइडियाज़ एंड मरतबा जब ये आए थे तो उतना एक्सपीरियंस उनका आइडियाज़ का नहीं था, बैक एंड पर रख के काम करते थे बट देन with the passage of time they have become too good for this event. इतने अरसे के अंदर they have improved a lot and internationally now Badar Expo is recognized as one of the best event managers in Pakistan. बहुत अच्छा काम है। मेरा नाम असलम खान है। आइडियाज़ के हवाले से आज ब्रीफिंग रही और हमें जिस तरह बताया गया है कि 229 पार्टिसिपेंट होंगे, 100 ममालिक हैं जो यहाँ पर इसमें शिरकत। पहली आइडिया से हम
यहाँ तक पहुंचे कि इसमें नए ममालिक भी आ रहे हैं और ऐसे ममालिक भी हमारे पास आज भी हमारी जो बरादराना ताल्लुकात हैं, दिफाई ताल्लुकात। और मैं आपको ये कहूँ कि हमारे जो तैयारा है JF-17 उसमें बहुत से ममालिक ने खरीदारी में दिलचस्पी। माजी में अगर हम बात करें अल-ज़रार टैंक, बहुत से मुल्क उस खरीदारी में दिलचस्पी रखते थे और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसी रेट उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं मजबूत। और आज की ब्रीफिंग बहुत अफजा थी हमारे लिए कि पाकिस्तान दिफाई मैदान में किससे पीछे नहीं है। हम पहली नुमाइश की अगर बात करें वो इंतहाई शानदार है और मैं कहता हूँ कि ये जो दिफाई नुमाइश है ये भी मजीद दुनियावी झंडे गाड़े की कामयाब होगी और सिलसिला इसी तरह रहेगा कि हर भाई नुमाइश में हम मालूम होगा कि हम दिफाई मैदान में किस तक आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो कौम है उसके लिए भी ये बाइस इत्मीनान है कि उसकी जो मुसल्लह अफवाज है वो पूरी तरह तैयार है, किसी भी दुश्मन की जाहिरियत का मुकाबला करने के जो है वो पूरी तरह तैयार और डटे हुए हैं। जो कि वैसे एक एनुअल इवेंट है, हर 2 साल के बाद होता है। इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से जब 2020 में हम इसको नहीं कंडक्ट करा सके तो 4 साल के बाद हुआ, तो उसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा थी और हम इंशाल्लाह पूरी तरह के लिए तैयार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 2018 में जिस कंडक्ट करा गया था उससे मज़ीद बेहतर होगा। नेशनल पार्टिसिपेशन भी हमारे पास काफ़ी हाई लेवल डेलीगेशन भी कन्फर्म आ चुकी हैं जो कि पूरी दुनिया के तमाम बड़े से हमारे पास डिग्नेटरीज आ रहे हैं और एग्जिबिटर्स भी हमारे पास यूरोप, एशिया, हर तरह से बहुत बड़े लेवल के एग्जिबिटर्स इस एग्जीबिशन में आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि इस दफ़ा हमने बहुत ज़्यादा एक जो जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया है वो ये कि सिर्फ हम अपनी जो पब्लिक सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसके साथ साथ अपने जो प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी इसमें लेके आएँ, उनको भी एक आउटलेट दें ताकि उनके सामने अपना जो प्रोडक्शन है किसी इस तरह की बिजनेस एक्टिविटी होती है तो इंटरनेशनल लोग हुए, आपके लोकल इंडस्ट्री भी मौजूद है, तो इसमें एक बहुत बड़ा उनकी अपॉर्चुनिटी न सिर्फ यहाँ जो दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग जो हमारे लोकल लोग वो जो दूसरे मुल्कों से आने वाली कंपनीज हैं OEMs हैं इंटैक्ट कर उनके साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं और इसके साथ जो हमारी लोकल कंपनीज हैं टाइम्स उनके भी जॉइंटर्स होते हैं बाहर के मुल्कों की कंपनियों के साथ। डेफिनेटली ये हमारी इकोनॉमी करेगा और हमारी इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक अच्छा साइन है। इस लेवल का ये एक है जिसमें पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और बहुत हाई से मैंने आपको बताया आ रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ जब पाकिस्तान में इसका इनेकाल जाएगा तो इसका ज़बरदस्त बहुत पॉजिटिव मैसेज जो लोग यहाँ पर आएंगे लेके जाएंगे, उनको पता लगेगा कि पाकिस्तान भी लेवल का एक बहुत बड़ा ही करा सकता है। और तमाम तर अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अब हमारे साथ सिक्योरिटी चैलेंजेस नहीं हुआ करते थे और इस तरीके की चीज़ होगी। और आज जो टर्ड के बाद के जो हालात हैं उसके बाद इस तरह का इवेंट कंडक्ट हुई हमारी इकोनॉमी को भी अल्लाह इससे फ़ायदा होगा। इसके अंदर हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेमिनार हम मुनक्किद कर जो कि बेसिकली 2 सेगमेंट्स में होगा, जिसका सेगमेंट 1 टियर 1 जो है वो के पहले दिन उसका इनेकाद किया जाएगा और उसके अंदर 4 स्पीकर्स होंगे जो कि एक्सपर्ट्स होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और इसी जो सेकंड टीयर का जो नेक्स्ट डे पे कंडक्ट किया जाएगा दैट विल बी द सेकंड डे ऑफ आइडियाज़ के अंदर जो हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने इस पे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो आके अपना काम प्रेजेंट करेंगे। और ये इन प्रेजेंट करने वालों के अलावा दोनों दिन हम अपने स्टूडेंट्स को और यंग ऑफ भी इन्वाइट किया हुआ वो सुनेंगे और डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनसे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जोर शोर तो कराची की सड़कें हों, आइडियाज़ के जो वेन्यू है कराची एक्सपो सेंटर बाहर की कोई जगह हो, कराची एक्सपो सेंटर के अंदर का जो आउटडोर एरिया है और जो एग्जिबिशन हॉल्स का एरिया है सब के ऊपर बहुत जोर शोर से काम हो रहा है और इंशाल्लाह हम अपने टाइम करते हुए स्टार्ट पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। सिंध गवर्नमेंट के बारे में मैं ये कहूँगा कि उनकी पैटर्न हमेशा हमें दी रही है, पास्ट में भी लिया और इस दफ़ा भी आपने खुद देखा कि हम 2 स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग्स हेल्ड एट CM सब काइंड ऑफ उन्होंने तो चेयर की और वहाँ पर तमाम सिंध के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स मौजूद थे, उनको जिस तरीके से CM की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिले और उनका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा कि जब सिंध गवर्नमेंट ने अपना साथ में दिया तो उससे चीज़ें बहुत हमारे लिए आसान हुई। Assalamualaikum. My name is Mohammad Arsalan Khan. I am VP Sales at Shibli. Shibli is Pakistan's only private manufacturer of thermal images. We have come to Ideas the 3rd time. We have been regular participant in the Ideas Expo. Ideas is a very good platform for Pakistani companies, private or national, to demonstrate what sort of we have in the defense industry and we can what sort of capabilities we can export and assist the other armies of the world with. I would also like to thank Badar Expo Solutions because Badar Expo is basically
actually organizing the whole event, and they're doing a very good job. We have launched 2 new this year, SUA MP and SUA at Ideas, which are binoculars with LRF. This is this is SUA MP mounted over here, which is a LRF based SUA binocular that can be used anytime or night time to give the forces image with the exact and accurate range of the target. Thank you. आइडियाज़ 2022 जो कि वैसे एक बाइनियल इवेंट है, हर 2 साल के बाद होता है, लेकिन इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से जब 2020 में हम इसको नहीं करा सके तो ये 4 साल के बाद हो रहा है। तो उसकी वजह से अब इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और हम इंशाल्लाह इसके लिए तैयार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 2018 में जिस तरह कंडक्ट कराया गया था उससे उम्मीद बेहतर होगा और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होगा। हमारे पास काफ़ी हाई लेवल डेलीगेशंस की कंफर्मेशन आ चुकी हैं जो कि दुनिया के तमाम बरे-आज़मों से हमारे पास डिग्नेटरीज आ रहे हैं और एग्जिबिटर्स भी हमारे यूरोप, एशिया, हर तरह से बहुत बड़े लेवल के एग्जिबिटर्स इस एग्जीबिशन में आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि इस बार हमने बहुत ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर फोकस दिया है वो ये न सिर्फ हम अपनी पब्लिक सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है, उस साथ साथ अपने जो सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसकी इसके लूप में लेके आए और उनको भी एक बुकलेट दें ताकि वो दुनिया के सामने अपना जो प्रोडक्शन है उसको सकते हैं। इस तरह की बिजनेस एक्टिविटी होती है, इंटरनेशनल लोग भी हुए हैं, आपके लोकल इंडस्ट्री भी मौजूद है, तो इसमें एक बड़ा उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। न सिर्फ यहाँ के जो दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग हैं या जो हमारे लोकल लोग हैं कि वो जो दूसरे मुल्कों से आने वाली कंपनीज हैं, OEMs हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं और इसके साथ ही साथ जो हमारे लोकल कंपनीज हैं उनकी भी जॉइंट वेंचर्स हैं बाहर के मुल्कों की के साथ, तो डेफिनेटली ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा और जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक अच्छा साइन है। ये एक इवेंट है जिसमें पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और बहुत हाई लेवल, जैसा कि मैंने आपको बताया आ रहे हैं। तो इस तरह की जब पाकिस्तान में इसका इनेकाद किया जाएगा तो इसका बहुत पॉजिटिव मैसेज है, जो लोग यहाँ आएंगे वो लेके जाएंगे, उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान भी इस लेवल एक बहुत बड़ा इवेंट करा सकता है और तमाम तर जो अल्लाह का बहुत शुक्र कि अब हमारे साथ वो से चैलेंजेस नहीं हैं जो हुआ करते थे और इस तरीके की भी। और आजकल जो फ्लड के बाद के जो हालात हैं उसके बाद इस तरह का कंडक्ट होना ये हमारी इकोनॉमी को भी इंशाल्लाह से फ़ायदा होगा। इसके अंदर हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमिनार हम मुनक्किद किए जो कि बेसिकली 2 सेगमेंट्स में होगा, जिसका सेगमेंट 1 Tier 1 जो है वो आइडियाज़ के पहले ही दिन उसका इनेकाद किया जाएगा और उसके अंदर 4 स्पीकर्स होंगे कि एक्सपर्ट्स होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और इसी तरह जो सेकंड ईयर का जो नेक्स्ट पे कंडक्ट करा जाएगा दैट विल बी द सेकंड डे ऑफ आइडियाज़। उसके अंदर जो हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने इस पे काम किया आर्टिफिशियल के ऊपर वो अपना काम प्रेजेंट करेंगे और ये इन प्रेजेंट करने वालों के अलावा दोनों दिन हमने अपने स्टूडेंट्स को यंगस्टर्स को भी इनवाइट किया, वो इनको सुनेंगे, डेफिनेटली कुछ से सीख के जाएंगे। हम पूरे ज़ोर शोर से, चाहे वो कराची की सड़कें हों, आइडियाज़ के जो वेन्यू है एक्सपो सेंटर, उसके बाद कोई जगह हो, कराची एक्सपो सेंटर अंदर का जो आउटडोर एरिया है और जो एग्जीबिशन हॉल्स का एरिया, सब पर बहुत ज़ोर शोर से काम हो रहा है और इंशाल्लाह हम अपने टाइम को मीट करते हुए स्टार्ट से पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। गवर्नमेंट के बारे में मैं ये कहूँ कि उनकी ट्रेनेज हमेशा हमें मिलती रही है, पास्ट में भी मिली है और इस दफ़ा भी आपने खुद देखा कि हमारी जो 2 स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग्स थी दे वर हेल्ड एट सी हाउस। CM साहब भी काइंड है, उन्होंने उसको शेयर किया और वहाँ पर तमाम सिंध के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स मौजूद, उनको जिस तरीके से CM की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिली और उनका बड़ा पॉजिटिव हमने इम्पैक्ट देखा कि जब सिंध ने अपना साथ में दिया तो उससे चीज़ें हमारी आसान हुई।
जिस तरीके से जब हम आइडियाज़ की बात करते हैं तो आइडियाज़ जो है इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो तकरीबन कोई 50+ कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन होती है। और जब 50 कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन होती है तो आप कुछ समझ सकें कि शो का साइज़ और चीज़ें जो हैं वो किस लेवल पे चला जाता है, जहाँ पे हमारे पास सारे चीफ्स के काउंटर पार्ट सारे होते हैं, दुनिया डेलीगेशंस की पार्टिसिपेशन हो रही होती है और ये पाकिस्तान का एक नाम जो है पूरी दुनिया के अंदर एक प्रोजेक्ट हो रहा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा शो जो है इस दफ़ा दोबारा 15 to 18 नवंबर को इंशाल्लाह कराची एक्सपो सेंटर में होगा। आज इसकी हमारी सारी सॉफ्ट लॉन्च थी जिसको ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको इनॉग्रेट किया। तो हमारा असल इसके अंदर मकसद है कि इसके अंदर हम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बढ़ाएं और इस शो के अंदर हमारी जितनी डिफेंस इंडस्ट्री है वो सारी की सारी यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करती है। और इसके साथ साथ मेरा हमेशा से एक ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ है इसको हम तो प्रमोट करें और दुनिया को हम ये दिखाएं। जिस तरीके से इस वक्त चीफ की भी एक पॉलिसी है कि हम सेल्फ इंडिजनाइजेशन के ऊपर जाएं और हम अपनी खुद से पाकिस्तान जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करे, मैन्युफैक्चर करे यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से हमने इस पूरे इवेंट के ऊपर जिस तरीके से हम अपने लोकल एग्जिबिटर्स को जो है या मैन्युफैक्चरर्स को जो है वो हम सब्सिडी देते हैं, तो उसमें उनका मकसद ही यही है कि हम उनको इस फोरम पे लाएं और लाने के बाद जो हमारे पास दुनिया से डेलीगेशंस आती है, पार्टिसिपेशन आती है, ताकि ये उनको ऑर्डर्स मिल सकें और वो एक बिजनेस जनरेट कर सकें और इसके साथ साथ हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर नई एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट की जाए। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जितने भी हमारे जितने ये डिफेंस इदारे हैं और जितने हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक बदर एक्सपो के ऊपर ट्रस्ट है और ये एक भारी जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बदर एक्सपो इसको मेरी पूरी टीम, मतलब ये मिलके ये एक बंदे का काम नहीं है, इसमें सारी टीम एफर्ट्स दी हैं और ये पूरी टीम जो है वो मिलके अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम कर रही है। और इसमें जितना कोऑर्डिनेशन और जिस टाइप की चीज़ें होती हैं आप उसको समझ सकते हैं वो कितना एक पीक टाइम होता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरा टीम उसको उसी के अकॉर्डिंगली जहाँ जैसी जो रिक्वायरमेंट्स उसको मैनेज करती है। तो बस अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक ये मकाम दिया, ये चीज़ें दी जहाँ पे लोग कंपनी के ऊपर और बदर एक्सपो के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ये एक और बड़ी खुशाइन बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह के 75 ईयर्स हमारे कंट्री को जो है वो कंप्लीट हो गए और आप जैसे देखें कि ये साल आइडियाज़ का जो है वो भी इंशाल्लाह ताला उसकी पूरी एक सेलिब्रेशन इंशाल्लाह की जाएंगी आइडियाज़ के अंदर। और हम इंशाल्लाह जिस तरीके से आज आपने सॉफ्ट लॉन्च में भी देखा कि हमने एक स्टैम्प बनी है जिसके ऊपर 75 ईयर्स को हमने उसके अंदर प्रोजेक्ट किया है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान का इवेंट है और पाकिस्तान फोर्सेस का इवेंट है। इंशाल्लाह ये उसी तरीके से ये सक्सेसफुल इंशाल्लाह ये इवेंट होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम असद कमाल है। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस। GIDC पाकिस्तान की लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड कंग्लोमरेट है, कंपनी है। हम आइडियाज़ का 2007 से पार्ट हैं और मैं ज़ाती तौर पे तो सन 2000 से आइडियाज़ को देख रहा हूँ। जब इसके शुरू में 3 हॉल हुआ करते थे, आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एग्जिबिटर्स व्हेन आइडिया स्टार्टेड। जी आई हैड द ऑनर के मैंने इसको देखा है ग्रो करते हुए। 2022 है, अब माशाल्लाह 9 हॉल्स हैं इसके। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मोमेंटस ओकेजन है 2022 में, क्योंकि बहुत सारे मैं देख रहा हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और आज बहुत सारे इंटरनेशनल विजिटर्स हैं और एग्जिबिटर्स हैं जो इस पूरे इवेंट का पार्ट बन चुके हैं। हमारे अपने स्टैंड पे इस वक्त मेरा ख्याल है कि 50 से ज़्यादा डेलीगेट्स की हैं, उससे भी ज़्यादा आई एम श्योर इन्वाइटेड होंगी। और जो एग्जिबिटिंग कंपनीज हैं, 9 हॉल्स अगर हैं, दैट मीन्स के एग्जिबिटिंग कंपनीज जो पाकिस्तान में हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, लोकल और फॉरेन। बहुत सारे और मुल्कों का इंटरेस्ट भी है इसमें। मैं देखता हूँ जी कि जो डिफेंस एग्जीबिशंस होते हैं फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, एक बहुत आइडियल प्लेटफॉर्म आपको देते हैं जहाँ पे आप डिफेंस कैपेबिलिटीज हर 2 साल बाद जाके डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस है क्या, और आपको एक मौका मिलता है दुनिया से नेटवर्किंग करने का। बाहर की दुनिया को मौका मिलता है कि वो आकर आपकी चीज़ों को एवेल्युएट कर सके। आई विश डेपो एंड बदर एक्सपो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स, और मैं होप करता हूँ कि अंडर देयर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट they can take this platform and exhibition to new heights. So good luck to both of them. Thank you very much. Pakistan Zindabad.
सबब यही है शायद, सब कुछ है याद मगर खुदा याद नहीं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। It's 5 p.m. मैं समझता हूँ कि ये जो आइडियाज़ है, इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत एक अच्छा मौका है, जहाँ पर पाकिस्तान के न सिर्फ अपने गवर्नमेंट के दिफाई सेक्टर के लोग बल्कि प्राइवेट सेक्टर के लोग भी अब चीज़ें 85 मुल्कों के लोगों को शोकेस कर सकते हैं, और जहाँ पर बहुत से दूसरे ममालिक के लोग इधर आते हैं आपस में मिलकर डिफेंस के मौजूद डिफेंस प्रोडक्शन पर काम करने की हमारी जो पूरी सलाहियत है उसमें बहुत इजाफा होता है। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि कोविड गुजर बाद आइडियाज़ हो रहा है और बड़े धूमधाम से हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत खुशाइन चीज़ साबित होगी इंशाअल्लाह। मैं असल में इस इवेंट के साथ 2012 से एसोसिएटेड हूँ। 12 और 14 का इवेंट के अंदर मेरी अपनी काफ़ी पार्टिसिपेशन थी। उसके बाद से ये माशाल्लाह इवेंट हैज़ गॉन अप एंड नाउ इज़ वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स दुनिया के अंदर फॉर डिफेंस एग्जीबिशंस। जो लास्ट टाइम नहीं हो सका वो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के अंदर ही कोविड की वजह से इफ़ेक्ट हुआ एग्जीबिशंस के अंदर, बिकॉज जहाँ पर भी ग्रुप्स और इनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी वो ख़त्म हो गई। बट पाकिस्तान के लिए अगेन बैक वी आर इन द लाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसके ऊपर हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा से प्रमोट करना है, और इस इवेंट के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत और करना पड़ेगी ताकि हम दोबारा उसी लेवल पे या उससे बेहतर लेवल पे जा सकें। मैं ताल्लुक उस वक्त डेपो से था, मैं डायरेक्टर कॉर्ड था डेपो के अंदर, और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हमारे वक्त में पहली मरतबा इंडक्ट हुआ था फॉर आइडियाज़। एंड पहली मरतबा जब ये आए थे तो उतना एक्सपीरियंस उनका आइडियाज़ का नहीं था, बैक एंड पर रख के काम करते थे, बट देन with the passage of time they have become too good for this event, and mashallah itne arse ke andar they have improved a lot, and internationally now Badar Expo Solution is recognized as one of the best event managers in Pakistan. बहुत अच्छा काम है। Federal Minister for Defence Production, Federal and Provincial Ministers, Chief Minister Sindh, Chairman, Joint Chiefs of Staff, Services Chiefs, Director General, Defence Export Promotion Organization, Senior Civil and Military Delegates, Chairman and Chief Executive of the National and International Defence Organizations, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning. It is my pleasure to speak at the 11th edition of the International Defence Exhibition and Seminar, commonly known as IDEAS 2022. I am very pleased to see the presence of a large number of guests, including honorable delegates, exhibitors, and trade visitors who traveled from around the world to join us today. I welcome you all to this special edition of Innovation and Excellence. Indeed, your presence here today truly strengthens our resolve to foster and promote strategic relations with our partners and friends while encouraging technological growth and knowledge sharing. Distinguished guests, since assuming
since our government formed, our unity government formed in April this year, the coalition government has been engaged in efforts to bring the country out of various challenges. The most serious among these crises that has expended most of our time and energy is the stabilization of our economy. We inherited an economic catastrophe where Pakistan was on the precipice of a default. Shukr alhamdulillah, by the grace of God and the efforts of the unity government and the Prime Minister's financial team, Pakistan was saved from the brink of an economic crisis we have yet to witness in our history. The most unfortunate aspect of this economic crisis was, in addition to the economic impacts of the COVID pandemic that affects each and every nation across the world and has caused economic difficulties for citizens everywhere. In addition to the economic impact of the conflict, the Russia-Ukraine conflict, the risk of economic default in Pakistan was not only exacerbated by these factors, but a direct result of conscious decision-making. This was effectively a collective shooting oneself in the foot. And it is something that we must all agree should never happen again in the course of our governments come and go, political party change, but we should never compromise the fundamentals of our national economic policy. At this time, we've been focused on making service delivery efficient and people-centered, fixing Pakistan's energy woes, rebuilding Pakistan's foreign relations, and giving a sense of stability in our policy, if not political environment. As far as foreign policy is concerned, I'm happy to report, as a result of our teamwork and extensive positive engagement across the board, Pakistan's diplomatic relations, diplomatic ties have gone from strength to strength. Over the past 6 months, we've witnessed a positive trajectory of our diplomatic relations, be it with the East, the Middle East, West, or the rest of the world, culminating in our exit from the FATF grey list, the Financial Action Task Force, and on our way, hopefully, for the restoration of our GSP Plus status. Just when this looming economic crisis was averted and things started to move in a positive direction, we experienced the worst ever climate catastrophe that Pakistan has ever seen. The monster monsoon on steroids, as Secretary General Antonio Guterres put it, resulted in 1/3 of the landmass of our country being underwater. 1 in 7 people affected, that's 33 million people of Pakistan, 16 million of which are children, 600,000 women waiting to give birth. The impacts of this on the backbone of our economy, the agricultural sector, have been devastating. The total loss and damage is estimated at more than $32 billion, which is 10% of Pakistan's GDP. This climate event will directly correlate with a significant portion of our population being thrust below the poverty line. Given the massive scale of destruction, we have been pushed back for decades, but in every crisis, there is an opportunity. And we convert this crisis into an opportunity if Pakistan commits to not only investing in these less developed areas, in these rural areas that have been devastated by the flooding, but also as we look
towards reconstruction and rehabilitation. We hope to do so in a climate resilient manner. We too share the aspiration to not only build back, but build back better. In our interactions, world leaders, including the recently concluded COP27, we have underlined the need for concentrated global action to take climate change as a priority. As the chair of the G77 plus China, we have led the demands of the Global South for climate finance and climate justice to enable developing countries to cope with climate adaptation and mitigation challenges. But in addition to that, we have, alhamdulillah, been successful, and this is a success not only of the developing world that has long held this demand, but of Pakistan and the people of Pakistan, that following the devastation from this climate catastrophe, in our capacity as G77 chair, we have successfully negotiated to add on to the COP27 agenda, in addition to mitigation and adaptation, but the concept of loss and damage. Because it was only after we in Pakistan experienced the devastation of these floods that have resulted in a 10% loss to our GDP, that it became evident to us that there was no international financing mechanism for devastation, for loss and damage of this scale. And it was after our own experience that we joined the many countries that have long been demanding that loss and damage be added to the COP and global agenda. And we hope, if it was too late for the people of Pakistan to benefit from the lack of such an institution, that the next country, the next developing country to be affected, will be able to benefit from an internationally agreed upon mechanism for financing loss and damage. There should be no doubt in anyone's mind about the potential of climate change to reverse all endeavors for sustainable development goals. Climate change is one of the most national security threats that can ignite and deepen conflicts. And as we have witnessed, Pakistan is now ground zero for climate-induced disasters and must prepare for the challenges associated. Ladies and gentlemen, today the increasingly complex security environment poses multifaceted threats to national security and stability of the countries. With rapid advancement of technologies and proliferation of related knowledge, we are experiencing a visible change in the established security paradigm. In today's globalized world, the national security has emerged as a dynamic concept that is as much economic, political, social, and institutional as it is military and strategic in nature. In an age of fake news and disinformation, the threats to national security have increased manifold. The specter of rising global food and energy prices is putting immense strain on national cohesion and unity, thus deepening internal fault lines. It is our considered opinion that the best way to safeguard and strengthen national security is to achieve economic self-reliance, rebuild and strengthen political institutions, deliver the 21st century governance that is demanded and required, ensure rule of law, and put the people at the center of public policy. This requires a much needed reset in our thinking, as well as the way we conduct the business of the state. Internal consolidation can alone enable our nation to secure its core economic, foreign policy, and security interests. And in order to do so, each institution must function within not only their constitutional domain, but with a primary focus on their objective, on their national goal. For example, I am a politician, I am a parliamentarian, and I represent my constituency in Parliament. My job is to be answerable to Parliament, to the President in Parliament, and rather than lashing it out with my political opponents on the streets or in the public arena, we have created this forum
where all people of Pakistan can be represented, where our exchange of ideas, our debate should lead to the addressing of issues of national importance through consensus, so we can move beyond our consistent state of flux and focus on the priorities of our nation. Distinguished audiences, the new technologies led by this revolution in the field of artificial intelligence are playing a vital role in confronting various security challenges. In my view, the responsible use of technology advancement can make the world a better and safer place. Pakistan, being a responsible state, is always committed to play its role for international peace, stability, and order. Reciprocity, mutual interests, and international norms are the guiding principles that govern Pakistan's relations and the bilateral and multilateral levels. In the regional context, the transformation of South Asian geostrategic environment has further accentuated the importance of this region in world affairs. Resultantly, regional cooperation and active engagement of regional and global players has become imperative, particularly to achieve regional peace, security, and socio-economic development. On the other hand, instability and turmoil that has beset our region for many decades also needs a firm and coordinated response by all stakeholders. We believe in meaningful dialogue on the basis of equality, not only to resolve bilateral issues, but also to unpack the immense economic potential of our region. It is here that the peaceful resolution of the long-standing occupied Jammu and Kashmir issue is, in light of the UN resolutions and aspirations of the Kashmiris, is central to establishment of sustainable peace in South Asia. Distinguished guests, it is heartening to note that Pakistan's defense industry has now achieved a good level of quality and reliability, wherein its products are comfortably competing in the international defense market. Though Pakistan is now exporting some high-tech defense products to more than 60 countries, yet the volume of exports, in my opinion, is not commensurate to our actual and true potential. A crucial factor in this context has been the limited involvement of the private sector in defense production and export activities. In addition, relatively less attention has been paid to academia industry interface and in the involvement of R&D organizations, which has curtailed the competitiveness of certain sectors of this industry. In order to achieve this objective, I will stress upon the integration of public-private defense industry to achieve maximum results. New ideas and the entrepreneurial and management skills of the private sector need to be co-opted with public sector defense industry. The potential of academia R&D organizations needs to be incorporated with the defense industry for more efficiency as well as volume to our defense production exports. Our government, ladies and gentlemen, will continue to promote a business-friendly environment, investments in human capital and professional development in the demand-driven industry. The Unity government is also committed to deliver an industrial strategy that contributes to growth and employment, and encourages small and medium enterprises to come forward and join hands for the development of our defense industry. In this regard, I look forward to the Ministry of Defense Production's formulation of a clear policy framework to integrate the whole potential of Pakistan's defense industry. Distinguished guests, when we talk about the defense industry, International Defense Exhibition and Seminar is an iconic platform for showcasing the latest defense technologies and innovations. In fact, Ideas is a regional gateway for international manufacturers and suppliers to explore new avenues of defense cooperation through joint ventures, outsourcing, and collaborations. On the other hand, the presence of a large number of foreign exhibitors and delegates reflects Pakistan's deeply embedded and mutually beneficial relations with the international fraternity. I would say that Ideas is a shared vision for global peace, stability, and harmony amongst the community of nations. And the Ideas slogan, Arms for Peace, truly reflects Pakistan's principled stance in this regard. Ladies and gentlemen, before I wind up, allow me to appreciate the efforts
of the Ministry of Defence Production, Defence Export Promotion Organisation for successfully holding a series of ideas to exhibit the best of Pakistan's defence sector and promoting international cooperation in the field of defence production. I applaud the continuous support of the federal and provincial ministers, the Pakistan Armed Forces, law enforcement agencies, the government of Sindh for the successful conduct of this mega event. I am also very pleased to know that the Pakistan Postal Services has issued a commemorative postage stamp to complement the holding of this very special edition of Ideas 2022 in the 75th year of the independence of Pakistan, and I am positive that this landmark event will achieve more progress in years to come. I thank you all. Pakistan Baindarad. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem. Professor Dr. Syed Irfan Haider, the chair, distinguished panel members, General Arif, DG Defense Export Promotion Organization, worthy delegates from the friendly countries, general officers, dignitaries, honorable ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's a great privilege for me to be standing here and thanking the distinguished panel for educating us on a subject which is still evolving but very important for us. I followed the discussion with a lot of interest, and I wanted to make some of the comments which I will now be sharing with you. One of the points that we discussed was intelligence. I believe intelligence is the ability to assimilate the information in one situation and then analyze it in a manner that it can be applied in a totally different situation, and also to be able to sift the information from the noise and to be able to make corrections if something goes wrong. So all that combination which is there in the intelligence, which distinguishes us from the animals, we are trying to put it through algorithms into the IT system. So far, the Turing test appears far away. So I think we are not yet in danger of being eliminated by the computers or robots. But at the same time, we have to be very cautious, as Dr. Irfan said in the end, in use of any technology. It can't be panacea for everything. And also, we have to understand that AI's use will vary from situation to situation. Take the example of chess. Now chess has very defined rules, and chess has two opponents contesting with each other over a board of 64 pieces, 32 pieces over 64 squares. This is something which AI can understand. It can comprehend, because no matter who the two opposing sides are, they have to follow a set of rules, and then they have to apply it on a very, very limited scale. So AI can master chess better than human beings maybe. The other example that came here was that of the stock exchange. Now stock exchange is a very limited field where there is no opponent. It's just a lot of data crunching and associating it with the happenings around the globe, how they are going to impact it. In normal circumstances, a flood in China would not be linked with the stocks in New York Stock Exchange. But with the help of AI and giving it a data of years and years, the AI will be able to correlate something which human minds will need a lot of exercise to understand. For a normal mind, it will need, okay, the flood has come in a certain area, how does it affect production? How does it affect the transportation? Does it affect the tanker movement? Does it affect the petrol supply? Does it affect the container movement? With AI being able to utilize a data of years and linking it with everyday stock exchange ups and downs, can reach that level quickly where any happening around the globe and its impact on the stock can be worked out. Now, taking these two examples onto the side, look at what is actually warfare and what is defense.
War is a contest of opposing wills, but there are no rules. It's not on a chessboard, it's played live. And in this case, the things that are to be discussed or achieved are not a figurative calculation of stock values, but so much of diversification that it will be very difficult for any AI module, any AI system to overrule what a human being can do. Those of us who have been practitioners of warfare, the decisions by a captain with 5 years of service, 6 years of service, and the decisions by a general with 35 years of service, they can't be the same because of the background of 30 years difference and learning that he has done over a period of time. Whether right or wrong is something different, but the decisions cannot be the same. So similarly, giving AI a data, one, that data is not available right now, the warfare data. Every war has different dynamics, every war has different kinds of weapons, every war has different kinds of adversaries. Every war has different thought processes on both sides. The man of 1945, Second World War, his way of thinking, and the man of 2022, these are two different things. So war cannot be totally predicted by the AI or cannot be controlled by the AI. Because essentially war is what? It is contest of the opposing wills. In warfare, the main target from day one, from the very beginning of the warfare, has been the will of your opponent. You want to subdue the will of your opponent, and over the years, human beings found weapons and violence to be the key to subjugating the will of the opponent. And they use that to their advantage, and that is what brought us into the domain of wars. Where I see more scope for AI is some part which was discussed here. It is shaping the minds of your opponents and making them capitulate without firing a bullet. By using AI to play with the way they think, the way the society operates, making that society fight with each other instead of fighting outside, making that society collapse internally through economic, through political, through religious, ethnic, or any other kind of warfare internally. So I think that particular aspect of AI is already in play, and we are not yet fully aware of it, but I think this is being played by the global players at various levels, and if we look at it, we are also being subjected to it. Recently, there was a discovery that Indians were operating fake sites and generating fake news to malign Pakistan. Well, this should not come as a surprise. This is what is going to happen. And how much of this is already happening is again something which should interest the practitioners of warfare. The other aspect where I think, from what I gathered from the discussion today, AI can help you regulate so many of the mundane tasks which today sap the energy of decision maker, like the logistic calculations, like movement of supplies, like the time taken for move from one place to another, and so many mundane plans. Those can be, computerized and automated with the help of AI with a fair degree of certainty, and of course keeping some breaks in between for the variables which you don't understand. But end of the day, the major decisions that you make will remain human, and AI will only be used as a decision support mechanism, because it will be able to analyze many of those informations which human beings cannot process at one time. So it can act as a decision support mechanism, but it cannot replace the decision makers right now as we are. Still, it is an evolving field, and like all predictions in the past, it will not be a good thing to predict something which may change very suddenly, and we may find that sometime in near future, artificial intelligence has reached that level where human beings are not required to control. But one thing I am certain, that artificial intelligence can never compensate for the natural stupidity of human beings.
And that is what we need to cater for. And as practitioners of war, we need to guard against our natural stupidities. Thank you very much, gentlemen. I once again thank all of you for all the inputs that you gave us. You have given us a lot of food for thought, and sure, all the people attending here have benefited from this talk. Thank you very much. Honorable Defense Minister, Major Muhammad Asif, Excellencies, distinguished guests, Assalamu alaikum and good afternoon. It is a matter of great honor to extend a very warm welcome to the Defense Minister, Federal State Ministers, Secretaries, Ambassadors, High Commissioners, legacy of senior serving and retired officers from our forces, our guests from national media, business group and government departments. We are grateful to the Honorable Defense Minister for placing the occasion to formally launch the National Defense Exhibition and Seminar 2020, better known by its acronym IDEAS. Ladies and gentlemen, we entered into the National Defense Exhibition industry by organizing the first IDEA in the year 2000 at Expo Center Karachi with 125 international visitors and 150 foreign delegates. During the last 2 decades, IDEA has grown steadily in space, volume, exhibitor and foreign delegates. In IDEAS 2018, we had a record participation of 524 exhibitors and 231 delegates representing 44 countries. And we are lucky that General Ahmed is here, who was the DG then, and we had a record participation across the world. The opportunity to accelerate the IDEA got adversely affected when IDEA 2020 has to be rescheduled due to the COVID, which was one of the worst catastrophes of our living. World in general, and in particular, fought with courage and determination. COVID is still not over, but we have learned how to live with it. Ladies and gentlemen, I am glad to share that the 11th edition of IDEA is scheduled from 15 to 18 November 2022, the year of 75th celebration of independence of Pakistan. What a proud moment. Despite a gap of 4 years, we have received a booking for more than 70% of the available space state to date. Needless to say that IDEA 2022 will be much bigger in size and stature than ever before, inshallah. We are also in the process of extending invitation to the defense delegation of around 85 countries and expect to receive positive response from the honorable invitees. IDEA has established itself as an attractive and grand venue to promote mutual understanding, trust, friendship and cooperation. In this regard, Pakistan's defense industry and vendor industry offer a great opportunity to the defense industry of the developed world. Ladies and gentlemen, it presents Pakistan's large defense industry to the outside world, showcasing Pakistan's defense production capability in the conventional level, aimed at exploring ways and means of partnership in defense production through joint ventures, outsourcing and promotion. Ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity to share the vision of IDEA, which is twofold. On one hand, it aims at increasing space for joint cooperation between Pakistan public and private enterprises with their regional and global partners, while on the other hand, it is meant to enhance the possibilities of public-private partnership, providing a unique opportunity to our friendly countries to visit Pakistan, sit together, interact with each other, collaborate, operate with defense ties, and find solutions to problems confronting the region and the world. I wish to make a special mention of Ministry of Commerce as well as the Trade Development Authority of Pakistan for their all-out support and availability of Expo Center Karachi as a venue for the IDEAS 2022. I would also like to thank Ministry of Communication and Director General of Pakistan Post for according approval for issuing of commemorative postage stamp on 14th of August 2022, signifying the holding of 11th edition of IDEA in 75th year of celebration of independence of Pakistan. May I also mention that the Government of Sindh and Karachi District Administration have always been forthcoming and very supportive of holding this mega event in Karachi. I would also like to thank Badar Expo Solution, our event organizer, for his untiring efforts
and wholehearted support. Ladies and gentlemen, in the end, I would like to thank all the worthy guests for accepting the invitation to attend this ceremony. Honorable Defence Minister, we are personally grateful for your presence on this occasion. I thank you all, ladies and gentlemen. Pakistan Zindabad. Ladies and gentlemen, in next few minutes, I briefly touch upon the salience and the nobility of the Defence Force organization and the ideas, mainly dilating upon the objectives and what the organization does by itself. And thereafter, we will have a tutorial document which will take you to the beginning of the depot and activities of ideas. It was raised in 2000 under Joint Staff Office, which was later placed under Ministry of Defence Production in 2002. Since then, depot is working under the ambit of MODP. Its aim was to promote and project Pakistan military's industrial process and defence potential. All core functions of the depot are performed on corporate model
with no financial burden on the national sector. The winning statement which has been spelled out for the depot reads, as a national platform provides support to the defence manufacturing, service sector and the export chain through promotion, facilitation and coordination for sustained growth of defence exports of Pakistan. To achieve this vision, the depot basically undertakes promotion, facilitation and coordination of the business opportunities and networking for the defence industry. It organizes defence exhibitions both inland and abroad, including the flagship event of the IDRs, establishes Pakistan Pavilion across the globe. Even in this regard, DEPO establishes 12 to 14 Pakistan Pavilions annually across the globe in different countries for our own defence production enterprises. We also had the unique honor of organizing a single country exhibition at Iraq, which was actually mentioned a little while ago. With regard to national exhibitions, the depot has been instrumental in organizing 2 editions of the Supplies and Vendors Defence Exhibition at Lahore in concert with the Chamber of Commerce Lahore, 2 editions of the Defence Exhibition at the Rawal Expo at Rawalpindi in concert with the Rawalpindi Chamber of Commerce and the Defence for Turkey at Islamabad. The IDEA has been a flagship event which is conducted biannually since 2000 and it has grown over a period of time both in stature as well as in size. Other than these 4 subjects, the depot also maintains an international standard display center here at Islamabad. We have carried out an extensive mapping of the private defence industry wherein the potential buyers across the globe are now directly interfaced with public as well as the private defence manufacturers. A comprehensive defence products catalog has been prepared, which is not only available online but has also been provided to all our foreign missions and is presented to all the visiting dignitaries. In addition, the depot also conducts seminars other than the main seminar during ITRs. Now, just briefly touch upon the centerpiece of the recent efforts of the depot, which is basically focused on magnetizing of the private defence industry and wherein the private sector is facilitated for international participation. It is heartening to note that 8 private companies participated in World Defence Show KSA without the government support. However, this participation can increase manifold with the government support in the future. We are also focused on integrating and participating along with the Chamber of Commerce in our different defence national as well as international exhibitions. Besides, we are focused on the suppliers, vendors and the small-scale manufacturers, basically to link them with the large-scale manufacturers and our private and public large-scale defence production enterprises. Now coming over to the flagship unit of IDRs. As you are aware, IDRs is the flagship event of international stature for Pakistan, which is a sought-after rendezvous for business and knowledge sharing. With synergistic interaction of the global defence industry, it serves as a shared platform both for global peace and stability. International recognition and participation thus truly reflects deeply embedded, mutually beneficial relations. Then the main objectives which are actually desired to be accrued out of the IDRs include provision of the business opportunity for the defence industry, both for the international exhibitors as well as the domestic exhibitors. Attract maximum numbers of the domestic as well as the international exhibitors. Demonstrate organizational skills and increase in the defence exports. Image building of the country. Promulgate Pakistan's point of view internationally and reinforce diplomatic efforts in the realm of defence diplomacy. Now with this gentleman with a brief introduction, I shall now take you through a documentary which will actually show you both these whatsoever I have spelled out about ideas and the depot.
how it actually reached to this where we are standing today. Thank you very much. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ऐ अल्लाह इस दावत कामिल और ता क़यामत कायम होने वाली नमाज के रब, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में नुमाया मकाम, फजीलत और बुलंद दर्जा अता फरमा और उन्हें उस मकाम महमूद पर फाइज फरमा जिसका तूने उनसे वाद फरमाया है, और क़यामत के दिन हमें उनकी शिफात नसीब फरमा। बेशक तू वादे के खिलाफ नहीं फरमाता। It's a matter of great pleasure to see the National Defence Exhibition and more popularly known as Ideas gain strength with every past year.
exhibition has grown in scope and stature, spanning from years, and I'm satisfied to see Pakistan's events in a relatively strong trust. Over the years, Ideas has become a big meeting place for defense exhibitors, high-level defense delegations, analysts, and trade visitors from all over. This group, Ideas provides excellent opportunity to develop better understanding and friendship, networking of defense industry for trade and joint ventures, and importantly, seeking affordable solutions to meet the challenges faced by the defense industry. I should say I'm really proud of the progress Idea has made, which is evident in overwhelmingly participation of traders, exhibitors, delegates, and visitors in the last 5 years held in year 2008. Honorable guests, Pakistan harbors no aggressive designs against any state, but we are determined to defend our territorial integrity and safeguard our sovereignty. Armed forces of Pakistan are battle-hardened and known for their professionalism. The world over, our contribution towards the UN peacekeeping missions and our performance around the globe is a clear manifestation of devotion to duty and professional skills. The motto of this exhibition, Arms for Peace, also highlights our commitment to the international community for peace and harmony. Pakistan will, inshallah, continue to develop our military potential that guarantees peace with honor and dignity. Towards this end, we have been able to develop significant capabilities for indigenous production of sophisticated weapons and equipment. It is a matter of great satisfaction that besides meeting the domestic requirements, our defense products are now gaining market shares at the international level as well. Praiseworthy progress has been made in production of complex systems like main battle tanks, UAVs, armored vehicles, air-launched munitions, fast-attack missile crafts, maritime battle vessels, fleet tankers, modern jet aircraft, and aircraft-related technology. I see a great potential in our defense industry to export its products on competitive basis through responsible arms trade. Honorable guests, holding of Idea is a reflection of Pakistan's consistent efforts to galvanize the industrial activities for production of defense equipment through collaboration and joint ventures, in addition to indigenous production. Having overcome the effects of unprecedented, devastating COVID-19 pandemic, which affected the whole world, we are back in business with a renewed zeal and enthusiasm. I wish the organizers of this event success in the conduct of Ideas 2022 and look forward to an overwhelming participation from defense industries from inland and abroad. We would warmly welcome the foreign defense delegates and trade visitors to Ideas 2022 to be held in November this year after a gap of 4 years. I also congratulate all the defense-related as well as other business-associated community and media houses who have selected the mega event of international repute for participation and sponsorship. I thank you all. Pakistan, mind Allah.
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया फातिमा है और मैं यहाँ पे बचत एक्सपो में खड़ी हूँ और ये इसके ऑर्गेनाइज़र हैं बदर एक्सपो। और हमारी आइसक्रीम कंपनी का नाम है केटी आइसक्रीम, जो कि हमें बहुत अच्छी है, जो कि और 1 स्कूप इसमें 100 रुपीज़ का यहाँ पर चल रहा है। और इसमें करंज कुल्फ़ा है, रबड़ी कुल्फ़ा है, पिस्ता रबड़ी है और मैग्नम है, कुल्फ़ा है, वो स्कूप्स में है और लीटर वगैरह 1.5 लीटर भी है इसमें। Assalamualaikum. I'm Kuratulain. I'm brand manager of Popular Dairy और यहाँ पर बदर एक्सपो पे हम कल से मौजूद हैं और यहाँ पर फुटफॉल भी अच्छा है, लोग आ रहे हैं और यहाँ पर हमने हमारा प्रोडक्ट है पॉपुलर का फ्लेवर्ड मिल्क मिलकर, इसके लिए भी हमने बड़ी अच्छी स्कीम लगा के रखी हुई है। वैसे इस पे 5 रुपये वैसे भी ऑफ है, लेकिन अगर आप इसको 500 तक की परचेज करते हैं तो आपको इस पे 2 पैक्स फ्री भी मिलने वाले हैं। बाकी पॉपुलर ग्रुप के हमारी बहुत सारे और प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। माज़ा का है, जैसे ये हमारा माज़ा को डील कर रहे हैं, बारे में बताएंगे कि हमें कितने में प्रोवाइड कर रहे हैं और कितनी बचत इस पे लगी हुई है। हम महमूद पॉपुलर फूड को डील कर रहा हूँ। हम जो है तकरीबन 30% डिस्काउंट पे यहाँ पर सेल कर रहे हैं। आप यहाँ पर आ सकते हैं, हर चीज़ हम आपको 30% डिस्काउंट पे देंगे। बच्चों की तरफ से बड़ा अच्छा एहतमाम किया गया है। ईद के मौके पर बचत के लिए बाजार लगाया गया है। अगर यहाँ पर आके आप ईद के मौके पर दी गई सेल को, बचत को It's 6 p.m. Assalamualaikum. My name is Awais Nadeem. I am Regional Business Manager in Fast Cables Limited. Today we are here on second day of IDC22. IDS जो है एक बड़े गैप के बाद हो रहा है 2022 में, से पहले 4 साल पहले हुआ था। It's a good occasion where industries can introduce जो लोकली हमारी इंडस्ट्री आर्म्स की प्रोडक्शन कर रही हैं, उससे रेलेवेंट जो इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे आर्म्स को सर्व कर रही हैं, हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स को सर्व कर रही हैं, तो वो यहाँ पे सब मौजूद हैं। फास्ट केबल्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। फास्ट केबल इज द फर्स्ट एंड ओनली मैन्युफैक्चरर हु हैज CCV लाइन टेक्नोलॉजी और इसके अलावा वी हैव एल्यूमिनियम लाइव प्लांट। We are the first Schema Gold certified here in Pakistan, and we also have launched the first Fast Tasdeeq, and we are the first one who launched their app in Pakistan, जहाँ से आप अपनी products को घर बैठे buy कर सकते हैं। We also launched the Fast Tasdeeq कि आप जब भी Fast का product market से खरीदें तो आपको real quality product मिले। So we claim that Fast serves you with a real quality, and we are the manufacturer who has the highest capacity of production. We are manufacturing 33 cables, and also we are manufacturing griller, जो कि हमने import substitution की है और हम उसके जरिए अपने national grids को और जितने हमारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसको एनर्जाइज कर रहे हैं। सो आप सब लोग जो रेलेवेंट इंडस्ट्री के या रेलेवेंट लोग हैं वो आइडियाज को जरूर विजिट करें। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि रियल फेस है पाकिस्तान का और पाकिस्तान की इंडस्ट्री का। थैंक यू। This is me, Arusa Slaudin, as outreach manager from ISPR. We have a stall here in Ideas 22. It's a हिलाल publication. सभी जानते हैं कि हिलाल publications जो है वो 1948 से publish हो रहा है और हम यहाँ पे Ideas में अपने जो है magazines और books को डिस्प्ले के लिए आए हैं, because Armed Forces magazine और हमारा जो base purpose है वो यहाँ पे अपनी जो है Armed Forces में जो हमारी magazines release हो रही है, इसका motive जिसमें हम global politics को discuss करके Ideas को हम specially जो है वो अपने magazines hide कर रहे हैं। It's available here एंड हम उसमें एडिशनली जो है आइडियाज़ के ऊपर स्पेसिफिक जो है हमारी स्पेशल रिपोर्ट्स भी हैं इसमें। सो आइडियाज़ विल बी अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिकेशंस। दैट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हम यहाँ पे जो है अच्छी चीज़ें जो है डिस्प्ले कर सकें। My name is Özgür Cankara. I am the Vice President in Meteksan Defense. Meteksan Defense is one of the major companies in the Turkish industry. Working in the Pakistan market Pakistan sector for 3 years. We are the supplier of the Yakamos sonar, which will be used in the Miljam ship, which will be delivered
by us. So today we are in the expo presenting our sonar systems, including Yakamos. And more than that, we are also supplying submarine sonar systems. We are promoting our newest products, which we have already delivered to the Turkish Navy. And I think all these will support the Pakistan Armed Forces and Navy and the Air Forces in that sense. So we went through the nitty-gritty, the hard part of AI. My objective of that discussion was to lighten a little bit, put the discussion in a context. The context which is very important. Personally, I'm basically a computer science person, technology person, and I'm too afraid of technology. You can't imagine how much afraid I've stopped using PowerPoint technology for the last 20 years now. I'm much better. This is distracting, right? So this is distracting to what I was doing. And you can actually see those PowerPoint slides were distracting, actually. The presenter is unable to express what is in the heart because maybe the presentation was not visible, it was made for some other context. And my advice to all the students basically is, I'm trying to, I'm not quite able to ban the PowerPoint slides from classrooms. But basically, what I'm trying to emphasize is that the technology is as good as the people using it. A simple knife in the hands of an expert butcher will be able to make that meat into a beautiful piece of something eatable. And that same knife in a nincompoop like me, who doesn't know how to use the knife, will simply spoil it. That is as true with the technology, such as a simple knife. It is as true with a more sophisticated technology like a PowerPoint slide, and even more sophisticated technology like the graphics. So these graphics help. They help some of the time and not all the time. We need to be humble about the use of technology. It is for serving our purpose. It is not to serve the purpose of technology itself. It is not for the purpose of serving the purpose of the capitalist economy that would like 2G to be replaced with 3G, to be replaced with 4G, to be replaced with 5G, to be replaced with 6G, and in each such transition make our life more and more miserable and more where we do not have the quality time for us. So
we were talking over here about artificial intelligence. There was a great debate between Peter Norvig and Noam Chomsky. The basic issue today, where we are using data, and I think that example is very well put. We have all the data about planetary motion. So we are taking readings. We know precisely when a particular planet will be at a certain time. We have been taking those readings for the last, say, 20 years and have a massive database which can precisely predict, based upon the data itself, where the planet will be on such and such date. But does that mean that we do not need the Newton's equations of planetary motion? Because the Newton's equations of planetary motion required intelligence, the human intelligence. Whereas simply predicting something on the basis of huge number of data instances that we have is of course efficient, is of course speedy, it of course scales up, it makes our life easier, but will not be able to resolve some of the major issues, major concerns of our life, which is how to be happy, how to live with equanimity, what happens when there is war, and how to avoid wars, and when to stop. Yes, it is a tool that has to be used, but it has to be used in a sparing fashion. We just saw what the soft power of USA versus the hard power used in Afghanistan did. So yes, it is for the time it happens, and it is an essential part, but we must not lose sight of the greater picture of life. So the technology is as good as the people using it. If the people are not good, I don't know what will happen. As the speakers pointed out, that in most of the cases, we are using the same password that was given by the manufacturer when the machine was installed. I think that would also be true in 95% of the cases, even in Pakistan also. So, and this also pointed out, AI is as good as the man behind the programming of the AI code that is being put in the machines. So, and that person can also put in all the viruses that one wants, and the machines, those hi-fi machines that we are buying, I'll be surprised if the manufacturer has not put in a fail-safe switch in there. It was really an nincompoop of the manufacturer not have put to shut down that machine getting such signal. I think that's pretty easy to do and pretty simple thing. So we need to be humble about technology. It's not a panacea. It's a good for solving specific problems, directed problems, and solving particular issues, very well-defined problems. But at the current state of the art, thinking about big decisions, I believe the humans will have to shoulder those things. But yes, of course, the challenges of speed and repetitive attacks that are coming in require repetitive AI technologies. So we need to identify the context in which it will work or will be useful for us, and the context in which it will not be. The other major important thing are the fake news. We have seen how the loyal people could be used simply by pumping up their loyalty to an extent where it starts harming them. And that has happened in USA, it has happened in UK, it has happened in other countries, and it can and is happening around us also. We need to be aware of that and need to be humble that this alarm which is going out is actually an alarm or just a fake news or a fake alarm. So it's very murky, and there are these algorithms and philosophical discussion, and we need to be aware about their philosophical understandings. So just not believing in the technology as panacea for all. I would like to thank the speakers over here
for taking time out and doing an interesting and wonderful discussion. It was a great learning exercise and we all learned a great deal. Thank you very much. Defence Export Promotion Organisation under the patronage of Ministry of Defence Production, Government of Pakistan and managed by Badar Expo Solutions is organising the 11th edition of the International Defence Exhibition and Seminar Ideas 2022. The exhibition will bring together stakeholders and companies from diverse defence industries. The 4-day exhibition will provide an opportunity for G2G, B2G and B2B interactions, joint ventures and investment in defence production sector. A strategic seminar will also be conducted during the exhibition, in which speakers, experts from public and private sectors will share their views on artificial intelligence defence market. Ideas will be held from the 15th till the 18th of November 2022 at Karachi Expo Centre. For exhibition stands and sponsorship participation, please visit our website www.ideaspakistan.gov.pk. Assalamualaikum. My name is Awais Nadeem. I am Regional Business Manager in Fast Cables Limited. Today we are here on second day of Ideas 2022. Ideas जो है एक बड़ी गैप के बाद हो रहा है 2022 में. इससे 4 साल पहले हुआ. It's a good occasion where industries can introduce जो locally हमारी इंडस्ट्री आर्म की प्रोडक्शन कर रही है, जो उससे रेलेवेंट जो इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे आर्म्स को सर्व कर रही हैं, हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के प्रोजेक्ट को सर्व कर रही हैं, तो वो यहाँ सब मौजूद हैं. फास्ट केबल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया. फास्ट केबल इज द फर्स्ट एंड ओनली मैन्युफैक्चरर हैज सीसी लाइन टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा वी हैव एल्यूमिनियम प्लांट. We are the first gold certified here in Pakistan. And, we also have launched the first fastest, and we are the first one who launched their app in Pakistan, जहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट्स को घर बैठे बाय कर सकें. We also launched the fast तस्दीक कि जब भी फास्ट का प्रोडक्ट मार्केट से खरीदें तो आपको रियल क्वालिटी प्रोडक्ट है. So we aim that fast serves you with a real quality, and we are a manufacturer who has the highest capacity of production. We are manufacturing 33 kV. And also we are manufacturing green cutter, जो कि हमने एक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की है, और हम उसके जरिए अपने नेशनल ग्रिड्स को और जिन हमारे बड़े मेगा पॉइंट्स हैं उसको एनालाइज कर रहे हैं. तो आप सब लोग जो रेलेवेंट इंडस्ट्री के या रेलेवेंट लोग हैं वो आइडियाज को जरूर विजिट करें. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वो पॉइंट्स मिलेंगे कि रियल फेस है पाकिस्तान का और पाकिस्तान की इंडस्ट्री. थैंक यू. Ideas 2024 brings together stakeholders across defense industries, the Fish Officer platform for G2G, B2G, and E2B measures and investment in the defense sector. A strategic seminar will also be held to facilitate decisions on challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at G Expo Center. ऑफ द आइडियाज, इस तरह आपने बोला कि एक ऐसा इवेंट है कि जो पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री और पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री विद ग्लोबल प्लेस के लिए एक बड़ा ब्रिज का काम करता है. तो कोविड में पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, तो जाहिर सी बात है कि इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन दिस ईयर दे डूइंग इट एंड आई थिंक वी विल कैच अप टू व्हाट वी हैव मिस्ड आउट. बट येट अगेन आइडियाज़ का सक्सेशन में होना इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, इस मुल्क के ग्लोबल परसेप्शन के लिए, क्योंकि आप देखते हैं इसमें दुनिया की मिलिट्रीज आती हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, तो एक पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पे ले जाने में आइडियाज़ का बहुत बड़ा रोल है. ये इवेंट है जिस लेवल की इसमें पार्टिसिपेशन होती है, ये अगर सारे स्टेक होल्डर्स, एक तो टॉप क्लास स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें आपकी पाकिस्तानी मिलिट्री हो गया, बदर हो गया, यहाँ के लोकल आपके जितने बड़े डिफेंस प्रोटेक्शन फर्म हैं. तो दिस इज़ वन ऑफ द शोज पुट अप
इन पाकिस्तान। और कराची खुशकिस्मत है कि हर साल कराची में होता है, थोड़ा सा लोगों को तकलीफ है कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऐसी होती है, लेकिन डेफिनेटली देयर इज नो अर्जेंट टू इट। Putting Pakistan on a global scale in defense product capacity in our requirements is what is pitched really well in ideas. 2024. Their stakeholders prosper defense industry. The FIC offers a platform G2G, 2G, and 2G interactions, joint venture investments in Fenway. A strategic seminar will also help facilitate discussions on global changes within the defense. The meeting of ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. IDEA 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The BTV platform for G2G, B2G, and B2G joint ventures and investments in defense production. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense. The meeting of ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good evening to all of us. So today I would like to leave presentations on the 5G adoption fair, its component and challenges. Next slide, please. So I would divide this topic into 4 subtopics. The first one is that I will give very brief introduction about themselves, KPI, the use cases, the standardization roadmap, and so on. And then from topic 2 until 4, they are about the military. What are the 5G key enablers that can be used for the military? How 5G can be very beneficial or can be used for the future battlefields? And last but not least will be, so what are some technical challenges in there that we need to consider? Okay, next slide. So I will start this triangle, which is very famous in explaining about 5G if I only have slide. We can see here that in 5G, there are 3 big use cases. The first one is called the massive broadband, which means that the speed is much faster than the existing one, the existing 4G or even the 3G and so on. And then the next one, the bottom left, no, previous slide please. Okay. The bottom left is about the massive machine type communications. So this is about so many devices are connecting to the network. For instance, in this kind of venue or in the stadium and so on, even if there are cellular signals, in most of this we cannot connect to the network. It's because the number of connectivity are limited. In the 5G, the kind of problems is solved. So one big use in 5G will be massive machine type communications, which later on will be used very much for the IoT, Internet of Things, and so on. And the third use case is about critical machine type communications. This is about the very low latency, even less than 1 millisecond latency. So using these 3 generic subcases or use cases, and there are many possibilities, like using 5G for sensor network, using 5G for Industry 4.0,
using 5G for streaming, using 5G for autonomous driving or semi-autonomous driving, and so on and so on. Next slide, please. So if we want to see a little bit detail, then the upper left or right picture showing how we can compare the 5G with the 4G. So 5G is matter in all the checks, and then we can see also in there several KPIs of 5G, but I think it's quite difficult for you to read. But here I just will show you that with all these KPIs, all this performance, we have a very big possibilities to use it in various type of use cases for smart cities, for mobile broadband, for the automated controls, real-time telematics, and so on and so on and so on. And of course, 5G is connected to the AI and also the edge computing. Next slide, please. And in this slide, you can see that the standardizations of 5G is now still ongoing. We call it the release stages. Release 14, release 15, release 16, release 17, and so on. Now 2022, so the release 17 is already there, which means that the full set of 5G will be available in the market already. And some countries have launched the 5G. I think Pakistan is not there, but some countries like Korea, Japan, US, Germany, Saudi, and many countries have launched the 5G, so they can use all the capabilities. Next slide, please. And then, if we relate this to this event, actually, even though 5G is originally developed for civilian applications, recently there are many studies that 5G also can be used in defense. This study from Allied Market Research saying that global 5G in defense market is expected to reach $70,000 million US. This is quite significant number. Next slide, please. Next. So, how 5G can be used for defense? There are several key enablers. I don't know if you can read the slides because the fonts is quite small. But actually, there are some enablers in the 5G that is very significant for the military. The first one is the NF, network function virtualizations, in which most network functions will be virtualized. And also SDN, software-defined network. The network will be defined using software, not hardware. And also network slicing, the set of parameters can be very easily changed and done for different types of use case. And then orchestrations, end-to-end orchestrations, this is what's using AI. And then native, mobile computing, and of course, millimeter wave. Next slide. So with all those key enablers, we can see that there are many studies and research about using the 5G for the military. This is just a few examples, like the one done by LMT and Funable and so on. Next. Okay. So this slide explaining in brief about how this 5G can be used for military applications. Okay. The first and the foremost is that it can be used for military making because of the quality of connectivity, the very latency, and so on and so on. Several studies investigating about how 5G can be used for military decision making, and then also for smart warehousing, and then for distributed command and control in battlefields. Even some studies are investigating about the use of the 5G for NTN, non-terrestrial. Also for tactical communication. Tacticals means that in the battlefields, using millimeter wave so that we can use very high frequency, high activity, and very low latencies. Also for the proximity service, PROSI, 5G for the VR, augmented reality, and the virtual reality. Also the mixed reality, and also for the visual. These are some pictures, some pictures that is showing that how this 5G can be used and has very big potential for the military applications. Next. However, we can see still there are some challenges in the 5G. The first one, click please. Next.
is related to the KPI challenges. Not all KPIs are there, but it is in the process. Next. The next one is about architecture. 5G is much more efficient than other G, and 4G than 3G, of course. Okay, but you can see here that the contribution of 5-layer algorithms is about 5 times. Contributions of spectrum is about 20 times. And the biggest contribution comes from the small size. It is 1,600 times. So all these components is if it is there, then it is very good. But in fact, not all of them are there. Next. And then the next one is the most important, I think the most important part here is that challenge of softwareizations. Okay, in the legacy network, in the 4G, software and hardware is interlocked together. Most of them are open. Okay, and then in the 5G, there is so-called decoupling between software and hardware, so that we can develop the software and virtualize the hardware and so on and so on. And then post 5G, in the 5G BOG, it is not just decoupling, but also orchestrate using the AI. So this is the most technical revolutions in the 5G. Next. Next one is about the bandwidth and delay. I think we can see one. And then next one. Next one is about the use of version 6. Next one. So as we can see that one of the things that have big impacts on the security in the 5G is softwareizations. Softwareizations mean that NFV, SDN, edge cloud computing, and so on. All of them are softwareizations and has very big impacts on the security aspects. Next. Okay. If we compare this 5G to 4G, then 5G is much better in terms of security, much more secure. The problem is that because 5G is more software, meaning that the security problem difference. So we need different approach of assessing the security of mobile cellular communications, like Lars said just now. Maybe we need to use the cyber security approach. That's what makes the 5G more challenging. It's much more secure than 4G, but because this variety of use cases, meaning they also increase the space of for attacks. That's why this is very big concern to 5G formulary. Next slide. And of course, the security standard is still ongoing now. Next. The problem is this one. Even if the standard is there, okay, the standard is the what we call it, the innermost rectangular. Okay. After that, there are some security issues which is depend on the vendor development process, and then another security issues that are related to the deployment process, and then another security issues that are related to the operation process. That's why there are so many forums that are discussing about how we need to deal with security issues of 5G. Has a big potential to be used for the military, but there are so many challenges, technical challenges, software challenges, and the most important thing is that security challenges. So we need to do very important and serious research if you want to use this 5G for the military. Next, that will be the last slide from my presentation. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IDEAS 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The BTV offers a platform for G2G, B2G, and 2G directions, joint ventures and investments in the production sector. A security summit will also help to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. 12th of IDEAS will be held from 9 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center.
Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shahid Ismail. I am the director of Premier Cables. Premier Cables is one of the leading manufacturers for telecom cables, that is optic fiber cables, copper telephone cables, ducts, pipe, and jointing materials. We are here today in Ideas to exhibit our new products to fiber the home, fiber to the room, and a lot of other new varieties are demonstrated here. And inshallah, we hope that in the coming future we are going more and more better for the development of Pakistan. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम, मैं मसूद रजा है और मैं दुनिया न्यूज़ से वाबस्ता हूँ। आइडियाज़ का आइडिया ही बड़ा यूनिक है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इतनी ज़बरदस्त एग्जीबिशन जिसमें दुनिया के तकरीबन 100 से ज़्यादा ममालिक इस दफ़ा भी शिरकत कर रहे हैं। और माजी का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इस एग्जीबिशन की जो क्वालिटी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। जहाँ न सिर्फ इसमें हमारी जो आर्म इंडस्ट्री है उसको फ़ायदा होता है, उसकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जैसे बड़ी अपॉर्चुनिटी निकलती है, बल्कि शहरियों के लिए भी बड़ी दिलचस्पी का बायस होती है। इसलिए 3-4 दिन जितने दिन भी ये एग्जीबिशन चलती है, शहरी भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेरी दुआ है कि इस दफ़ा भी ऑर्गेनाइजर्स के लिए इवेंट बड़ा कामयाब हो और ये पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह का इवेंट हो रहा है। पूरे पाकिस्तान के लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। सारे पाकिस्तान को इस इवेंट की मुबारक। Ideas 2020 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition platform for G2G, B2G, B2B productions, joint ventures and investments in its production sector. A big seminar will also be to facilitate discussion on global challenges within the defense sector. The edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Bilal Tozari, Foreign Minister, Islamic Republic of Pakistan, Federal and Provincial Minister, Chairman Joint Chief of Staff Committee, Services Chiefs, Senior Civil Military Delegates, Chairman and Chief Executive of National and International Defense Exhibitors, OEMs, Excellencies, Academia, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. On behalf of Ministry of Defense Production, Pakistan, we are indeed grateful to you for gracing this occasion of 11th edition of International Exhibition Seminar Ideas 2022. I am grateful to the worthy guests and dignitaries from participant countries, foreign and domestic exhibitors, OEMs, trade visitors, and diplomats for their healthy presence to make IDES 2022 a great success. I also warmly welcome all those who have joined us for the first time, and my profound regards to all the old friends. I assure you that it is you who make this event substantive. Distinguished guests, the development of indigenous and internationally competitive defense industry is always a strategic interest of any nation. Today, it is regarded as one of the major business in the world, alone accounting for approximately 2.2% of global GDP. On the other hand, globalization of this industry has also changed the geography of innovation with new players, markets, partners, and opportunities. Strategic alliances ranging from consortia to joint ventures have become the norm of
both in the domestic and foreign industry. In the context, prevailing political-military realities have further accentuated our desire to develop an agile and innovative defense industry, not only as an instrument of peace and stability, but also for its rightful contribution towards socio-economic development of the country. Pakistan has potential to emerge as a global platform for defense, research, scientific growth, manufacturing, and joint ventures in order to strengthen our defense capabilities and support developments as well as exports in this sector. Ladies and gentlemen, Pakistan's defense industries today comprises of a wide range of technologies, well-trained human resources, and infrastructure, not only to meet its own requirement, but also export to international defense markets. While major defense products are manufactured by the government-owned defense production establishment, private defense industry is also instrumental in producing high-quality supportive equipment and services. Joint development and production of main battle tanks, Al-Khalid and other aircrafts, JF-17, K-8, Super Mashak, UAVs, maritime patrol vessels, fleet tankers, fast-attack missile crafts, different variants of APCs, air-launched munitions, small arms and high explosive, a few to mention is similar. Ladies and gentlemen, towards this end, Ministry for Defense Production is continuing to evolve clear priorities and approaches for protecting and defending Pakistan defense industry interests at home and abroad. Accordingly, with dedicated efforts, regularity, initiatives, and incentives help to improve defense manufacturing and quality services. Recently, Pakistan's defense exports are steadily growing, and it is reaching the figure of $382 million US. This export potential is not only instrumental to the country's economic growth, but also key to our mutually rewarding relations with international fraternity. Today, we are the reliable export partners of more than 60 countries. Through mutual partnership and joint ventures, Pakistan industries' effort of a wide area of cooperation and collaboration. Ladies and gentlemen, here I would like to particularly mention the significant role of private sector in our defense industry. It is a fact that enhanced collaboration of private sector in defense manufacturing will not only increase production, but also provide the much needed support to public sector defense enterprise. The growing indigenous sophistication of private sector is an attractive investment opportunity. Our government is now keenly encouraging private sector to expand its capabilities through partnership, involvement in R&D, joint manufacturing, marketing, and defense products at home and abroad. Ladies and gentlemen, while Ministry of Defense Production is fully committed to enhance the defense production of Pakistan, International Defense Exhibition and Seminar Ideas is our grand initiative to project defense production potential of Pakistan for international standards. India. Ideas 2022 is aimed to serve as a bridge between defense industry entrepreneurs, traders, R&D specialists, financial experts, and policymakers for capability enhancement and cost-effective business. The significance of the event is holding a strategic seminar on artificial intelligence in defense, paradigm shift, military strategy, and national security. During Ideas 2022, the academic discourse during the seminar will certainly help government to optimize the defense policies and priorities of Pakistan. I am certain that participants will acquire maximum
benefits from this event. I congratulate Depot for organizing this event of national significance and playing their part in promoting the growth of Pak's defense industry. Depot has surely been successful in providing such a rich and rewarding platform to a large number of friends and partners across the globe. Besides conducting IDEAs, it acts as a window national platform for promotion, facilitation, coordination of export and defense-related products from Pakistan. This opportunity, I encourage all stakeholders to make use of Depot's platform for enhancing defense exports. My special wishes for federal and provincial ministers, Pakistan's armed forces, law enforcement agencies, Karachi Metropolitan Corporation, and Government of Sindh, who rendered their out support to make this event a great success. I also greatly appreciate the effort of our event organizer, Badar Expo Solutions, who utterly marketed IDEAS 2022 worldwide and very professionally organized this show. In the end, I would like to thank Honorable Foreign Minister, all the guests for gracing occasion with their presence. I thank you all for Pakistan's part. I'm Rabia Pirzada. I'm the marketing manager at Pakistan Oxygen Company. Pakistan Oxygen is in operation since 1935. So before creation of Pakistan, that time it used to be Indian Acetylene Company, and from then it changed its several names. It became Pakistan Oxygen, then it changed to British Oxygen, Linde, and we are back to Pakistan Oxygen from 2019. Basically, we are the leading manufacturer of industrial and medical gases, and we have a huge portfolio, and you can call it a one-stop solution for the hard good needs of industry. IDEAS is a very good platform to exhibit what Pakistan is doing, and as to our company, we can see many international exhibitors over here, and we can promote our products outside of Pakistan. We have served in COVID days and received appreciation letter from NCOC as well. People who are coming over here, when they see the name of Oxygen, they ask us that what we have been doing or how we have served the country in COVID days. And even people outside of Pakistan, they feel glad to learn that about our services which have been in the crucial days when Pakistan was going through very difficult times. In Pakistan, who has imported a yarn manufacturing for electrodes, and our very renowned brand, they comprise of the import tracks Matador 4748. In COVID days, when people were running after oxygen and weren't finding it anywhere, that time we launched this portable oxygen canister. It's indigenous product. It's a 13-liter can of oxygen, which is, you can see, it weighs just half a kg. And allows 250 puffs. So it was very much in demand in COVID days when people weren't finding oxygen, would keep it at home. Pakistan has been importing this product for many years. Now we are manufacturing in-house completely. This is basically, it is installed on tanks. The storage tanks, they could be liquid storage tanks or grains, whatever. So what it does, it gives you the real-time data of what inside the tank is. For example, there's a liquid oxygen tank which is installed in a hospital, and hospital doesn't realize that what level inside is and when do they need to replenish it. ये कुरी गारमेंट्स का स्टॉल है, पर हम खड़े हुए हैं। कुरी गारमेंट्स की तरफ से एक्सपो में आप लोगों को मुनासिब प्राइस पर बेबी फ्रॉक्स दी जा रही हैं। इसी तरीके मेंस की टी शर्ट्स हैं, रिजनेबल प्राइस है। एक्सपो के लिए आप लोग आइए और ज़रूर इस धमाकेदार ऑफर फ़ायदा उठाइए। और आप लोग चाहें तो प्राइस का थोड़ा सा आगा करिए। 400 की शर्ट राउंड नेक की 4 दे रहे हैं। इसी तरीके से 600 की 2 दे। इसी तरीके से हर एक शर्ट्स पर, टी शर्ट्स पर कोई नई ऑफर लगी हुई। मेरा नाम समद आलम और मैं ओसाका लाइट का एम्प्लॉई हूँ, और हमने यहाँ पे बद एग्जीबिशन एक्सपो की 2nd एडिशन में यहाँ पे इंस्टॉल लगाया है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कस्टमर का। इसके अलावा एक्सपो तो अच्छा लगा। पहला एडिशन था, उसमें भी बहुत ज़्यादा पब्लिक आई थी और बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया था लोगों के।
इसके वाले भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है और हमारे काफ़ी पब्लिसिटी भी हुई थी, लोग काफ़ी ज़्यादा आए थे। और उसके अलावा बाहर मंडी भी लोगों ने लगाई है, बचत होने इस दफ़ा ये भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मंडी भी लगी है दफ़ा, ताकि लोगों को कम से कम चीज़ में अच्छी चीज़ लगे। और यहाँ पे रिव्यू वगैरह तो ये बंदे हैं आ रहे हैं, और इसके अलावा हम यहाँ आते हैं लोगों का हमें अच्छे से चीज़ पहुँचाने के लिए ना, ताकि यहाँ पे बचत में हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट में मतलब हम लोगों को अपना ब्रांड यहाँ पहुँचा सकें, लोगों तक के ब्रांड हम पहुँचा सकें से कम रेटों में और अच्छे से अच्छी चीज़ पहुँचा सकें जो नॉर्मल बंदा यूज़ कर सकता है। थोड़े से ज़्यादा रेट है जिनके मार्केट, वो यहाँ पे हम उसे 20% 70% का हम यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एग्जीबिशन के लिए। और इसके अलावा बदर वालों का भी शुक्रगुजार रहे हैं हम कि अच्छा एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं हर दफ़ा। सीजन 1 में भी काफ़ी अच्छा पहुँच रहा था, बचत वालों ने बड़ा सपोर्ट किया हर जगह। It's 7 p.m. जब ये कंसीव हुआ था आइडिया कि भी आइडियाज करना है, तो उस वक्त मकसद यही था कि जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है वो उजागर किया जाए, और उसी को लेके जितनी भी एफर्ट्स हुई ना, भी हमने लोगोस लाइक आर्म्स फॉर पीस, और पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है इन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ फॉर द डिफेंस इक्विपमेंट एंड डिफेंस इंडस्ट्री, वो हाईलाइट नहीं हो रहा था जैसे होना चाहिए था। तो जब से आइडियाज़ आया है तो हमने अपने शोकेस करना शुरू किया है प्रोडक्ट्स को, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ डेपो। उससे एक बड़ी पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का गया है और लोगों को पता लगा कि पाकिस्तान एक इतनी ताकत है, ऐसी पावर है कि डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत अच्छी चीज़ें बना रहा है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी डिमांड है। डिफेंस सेक्टर को तो सपोर्ट कर रहा है, मगर जो आइडियाज़ है ये ओवरऑल आपकी इंडस्ट्री है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। टूरिज्म भी इससे बढ़ता है, लोग जो बाहर से बहुत सारे डेलीगेशन आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं स्पोर्टिंग करने के लिए, ऐसे वो पाकिस्तान देखते हैं। पाकिस्तान को देखने के बाद उन्हें अंदाज़ा होता है कि ये बड़ा पीसफुल और अच्छा कंट्री है, खाने अच्छे हैं, लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ डेवलपमेंट अच्छी हुई है। तो अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट होता है जब वो खबरों में देखते हैं तो बाहर के ज़माने में चले गए, मगर जब यहाँ आते हैं नाइस रोड्स बनी हैं, बिल्डिंग्स हैं, ईटरीज हैं, इसके अलावा मॉल्स हैं, तो उन्हें पता चलता है यार ये तो वन ऑफ द मॉडर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो वो फिर जाके इमेज हमारा जो है वो पॉजिटिव इसी तरह लोगों को बताते हैं। और मेरा ख्याल है कि इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड इमेंसली एंड पॉजिटिव टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान सिंस द टाइम आइडियाज सेट। एंड बदर एक्सपो जो है वो और आइडियाज़ जो हैं दोनों आपसे कि एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। ऐसे लगता है कि भाई ये इन्होंने इतनी मेहनत की है कि इन्होंने पाकिस्तान के इमेज को भी उजागर है और इस चीज़ को नहीं देखा कि इनका फ़ायदा या नुकसान क्या है, इन्होंने सिर्फ ये देखा है कि पाकिस्तान का इमेज कैसे बेहतर होगा, तो उसी हिसाब से इन्होंने इवेंट्स को बनाया। तो बदर एक्सपो का बहुत कंट्रीब्यूशन है टू हाईलाइट आइडियाज़, टू पुट आइडियाज़ ऑन अ वेरी हायर। अल्हम्दुलिल्लाह। In a few minutes, I'll be on defensive production and peace. Direct upon the objectives of the foundation side, and thereafter we have to develop documentary which will contain and peace factors. It was raised in 2000 under Joint Staff Reporters, later placed in under Ministry of Defense in 2000. Since then, they were working with the MODP. Vision was to promote and push our military's industry and defense export industry. All core functions therefore are performed and coordinated with burden on national level. The main statement, which has been spelled out through the demo, reads a national platform providing defense manufacturing, service sector, and export chain through promotion, facilitation, and coordination for sustained growth defense exports of Pakistan. To achieve this vision, the network is undertakes promotion, facilitation, and coordination of the business opportunities and networking in the defense industry. It also does exist both inland and abroad in the pivot of the ideas, establishing Pakistan pavilion across the globe. Gentlemen in the guard, it establishes 12 to 14 Pakistan pavilions annually across the globe in different countries for our own production enterprises. We also had the unique honor of organizing a country exhibition at Iraq, which was actually mentioned a while ago. With regard to exhibitions, the depot has been instrumental in organizing 2 editions of the Supplies and Vendor Defense Exhibition at Lahore in concert with the Chamber of Commerce Lahore, 2 editions of the Defense Exhibition at Lahore. The Rawal Expo at Rawalpindi in concert with Rawalpindi of Commerce and the Export Turkey at Islamabad.
The IDEAS has been a flagship event which is conducted since 2000 and it has grown over a period of time both in stature as well as in size. Other than these projects, the demo also maintains an international standard center here at Islamabad. We have built up an extensive mapping of the private defence industry wherein the potential buyers across the globe are directly interfaced with public as well as the private defence manufacturers. A comprehensive defence product scheme has been prepared. It's not only available online but has also been provided to all our foreign missions and is presented to all the visiting dignitaries. In addition, the demo conducts seminars other than the main seminar during IDEAS. Well, just briefly touch upon the centerpiece of the recent efforts of the demo. It is basically focused on advertising of the private defence industry and wherein the private sector is facilitated for national participation. It is heartening to note that 8 private companies participated in World Defence Show KSA without the government support. However, this participation can increase manifold with the government support in the future. We also focus on integrating and participating along with the Chamber of Commerce in our different events, national as well as international exhibitions. Besides, we are focused on the suppliers, vendors and the small-scale manufacturers, basically to link them large-scale manufacturers in our private and public large-scale defence production and process. Coming over to the flagship unit of IDEAS. As you know, the IDEAS is the flagship unit of international center for Pakistan, which is a sought-after rendezvous for business and knowledge sharing. Within the election of the global industry, it serves as a shared platform both for global peace and stability. International recognition and participation truly reflects deeply embedded mutually beneficial relations. Gentlemen, the main objectives which are actually desired to include out of the IDEAS include provision of the business opportunity for the defence industry, both for the global international exhibitors as well as the domestic exhibitors. Attract maximum numbers of the domestic as well as the international exhibitors. Demonstrate organizational skills and increase in the defence exports. Image building of the country. Promulgate partners' point of view internationally. And reinforce diplomatic efforts in the realm of defence diplomacy. Now with this gentlemen, with the brief introduction, I shall now take you through a commentary which will show you both these whatever I have spelled out about IDEAS and the depot. How did it actually reach to this where we stand today. Thank you very much. I'm Rabia Pirzada. I'm the marketing manager at Pakistan Oxygen Company. Pakistan Oxygen is in operation since 1935. So before creation of Pakistan, that time it used to be Indian Acetylene Company, and from then it changed its several names. It became Pakistan Oxygen, then it changed to British Oxygen, Linde, and we are back to Pakistan Oxygen from 2019. Basically, we are the leading manufacturer of industrial and medical gases, and we have a huge portfolio, and you can call it a one-stop solution for the hard good needs of industry. IDEAS is a very good platform to exhibit what Pakistan is doing, and as to our company, we can see many international exhibitors over here, and we can promote our products outside of Pakistan. We have served in COVID days and received appreciation letter from NCOC as well. People who are coming over here, when they see the name of Oxygen, they ask us that what we have been doing or how we have served the country in COVID days. And even people outside of Pakistan, they feel glad to learn that about our services which have been in the crucial days when Pakistan was going through very difficult times. In Pakistan, who has imported a European manufacturing plant for electrodes, and our very renowned brand, they comprise of Zodian, Trax, Matador, 47, 48. In COVID days when people were running after oxygen and weren't finding it anywhere, that time we launched this portable oxygen canister. It's indigenous product. This is a 13-liter can of oxygen, which is, you can see, it weighs just half a kg.
and it allows 250 puffs. So it was very much in demand in COVID days when people weren't finding oxygen. They would keep it at home. Pakistan has been importing this product for many years. Now we are manufacturing in-house completely. This is basically, it is installed on the tanks, the storage tanks. They could be liquid storage tanks or grains, whatever. So what it does, it gives you the real-time data of what inside the tank is. For example, there's a liquid oxygen tank which is installed in a hospital, and hospital doesn't realize that what level inside is and when do they need to replenish it. अस्सलाम वालेकुम, मैं ट्राई ग्रुप ऑफ कंपनी से मैं काम कर रहा हूँ। हमारा काम ये है कि हम ये वाटर प्रूफिंग का काम करते, छतों का, वाटर टैंक का और वॉल्स का, जितनी एक्सट्रैक्शन का कोई काम हो हमारे उसमें आता है। और 2 साल की हमारी वटी होती है, तो प्रॉपर हमारा काम होता है और पूरा एक अमला है हमारा, ट्रेन अमला, उसके थ्रू ये काम हमारा होता है। हाल वक्त तकरीबन पाकिस्तान में हमारा है और का तकरीबन कराची में हमारी ज़्यादातर डिफेंस साइड में हमारा काम ये चल रहा है, तो ये हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन जब ये कंसीव हुआ था आइडिया के भी आइडियाज़ करें, उस वक्त मकसद यही था कि जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है उसको उजागर किया जाए और उसी को लेके जितनी एफर्ट्स हुई, जितना भी हमने लोगोस बनाए लाइक आर्म्स फॉर पीस, और पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है इन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ फॉर द डिफेंस इक्विपमेंट एंड डिफेंस इंडस्ट्री, वो हाईलाइट नहीं हो रहा था जैसे होना चाहिए। तो जब से आइडियाज़ आया है तो हमने अपने शोकेस करना शुरू किया है प्रोडक्ट्स को, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम द फॉर्म ऑफ टैपो, तो उससे एक बड़ी पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का गया और लोगों को पता चला है कि पाकिस्तान एक इतनी ताकत है, ऐसी पावर है कि जो डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत अच्छी चीज़ें बना रहा है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में भी बड़ी डिमांड है। डिफेंस सेक्टर को तो सपोर्ट करता है, मगर जो आइडियाज़ है ये ओवरऑल आपकी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। टूरिज्म भी इससे बढ़ता है, लोग जो बाहर से बहुत से डेलीगेशन आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं इसको अटेंड करने के लिए बाहर से, वो पाकिस्तान देखते हैं, वो पाकिस्तान को देखने के बाद उनको अंदाज़ा होता है कि ये बड़ा पीसफुल और अच्छा कंट्री है, खाने अच्छे हैं, लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ डेवलपमेंट अच्छी हुई है। तो अदरवाइज जो उनके कॉन्सेप्ट होता है, पता नहीं जब वो घरों में देखते हैं तो कोई कार खाने में चले गए, मगर जब यहाँ आते हैं रोड्स बनी हुई हैं, नाइस बिल्डिंग्स हैं, ईटरीज अच्छी हैं, इसके अलावा मॉल्स हैं, तो उन्हें पता चलता है यार ये तो इस वन ऑफ द मॉडर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो वो फिर जाकर इमेज हमारा जो है वो पॉजिटिव इसी तरह लोगों को बताते हैं और मेरा ख्याल है कि इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड इमेंसली एंड पॉजिटिवली टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान सिंस द आइडियाज स्टार्टेड। एंड बदर एक्सपो है वो और आइडियाज़ जो हैं दोनों समझें कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे लगता है कि भाई ये इन्होंने इतनी मेहनत की है कि इन्होंने पाकिस्तान की इमेज को भी उजागर किया है और इस चीज़ को नहीं देखा कि फ़ायदा या नुकसान क्या है, इन्होंने सिर्फ ये देखा कि पाकिस्तान इमेज कैसे बेहतर होगा, उसी हिसाब से फिर इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया है। तो पता है बहुत कंट्रीब्यूशन है टू हाईलाइट आइडियाज़, टू पुट आइडियाज़ ऑन अ वेरी हायर पेडेस्टल। अल्हम्दुलिल्लाह। I agree that on the sense and the knowledge of the promotion organization and ideas. Mainly that on the objectives and what the organization does, and then after we have a documentary which relates to the depot and activities of class. It was released in 2000, not our orders, which released in under Ministry of Action in 2002, except depot is 30 and
The basic was to promote and protect Pakistan military industrial and defense export potential. All functions of the corporate market move financial burden on their sector. This statement was instrumental to the deputies and the platform provides support to the manufacturing, service sector, and the support chain to promotion, facilitation, and validation for sustained growth of defense exports of Pakistan. The promotion, and coordination of the business opportunities and for the defense sector. It organizes the exhibitions both in and abroad, including flagship event of class, such as Pakistan Pavilion across the globe. In this regard, the Apple establishes 15 Pakistan Pavilions across the globe in different ways for our production enterprises. We also had the honor of organizing a single country exhibition at AIR, which was actually made a while ago. With regard to national exhibitions, the depot had recently organized 2 editions of the supplies and defense exhibition at Lahore in concert with the Chamber of Commerce Lahore, 2 editions of the exhibition at Rawalpindi in concert with Rawalpindi Commerce and the Defense Turkey at Lahore. The ideas has been a event which is conducted since 2000 and it has grown over a period of time both in stature as well as in size. Other than these projects, the depot also maintains an international standard display here at Islamabad. We have carried out an extensive mapping of the defense industry where the potential buyers across the globe are now directly interfaced with public as well as the private manufacturers. Comprehensive defense products catalog has been prepared, which is not only available online, but also be invited to all our foreigners and is presented to all the visiting dignitaries. In addition, the depot also conducts seminars other than the main during ITRs. Just briefly touch upon the centerpiece of the recent efforts of the depot, which is basically focused on magnetizing the private defense industry and wherein the private sector is facilitated for international participation. It is happy to note that 8 private companies participated in World Show KSA with the government support. However, this participation can increase manifold with the government support in the future. Also focus on integrating and participating along with the Chamber of Commerce in our different defense, national as well as international exhibitions. We are focused on the space vendors and the steel manufacturers, basically to link them with the large scale manufacturers and private and large scale defense production prices. Now coming over to the flagship of ideas. As you're aware, the IDEAS is the flagship event of national stature for Pakistan, which is a sought-after rendezvous for business and knowledge. It serves in connection of the global defense industry. It serves as a shared platform both for global peace and stability. International recognition participation thus truly reflects deeply embedded mutual relations. The main objectives which are actually desired to be fruit out of the ideas include provision of the business opportunity for the defense industry, both for the global international actors as well as the defense exhibitors. Attract maximum numbers of the domestic as well as international exhibitors. Organizational skills and increase in the defense exports. Image building of country. Promulgate Pakistan's point of view internationally. And reinforce diplomatic efforts in the realm of defense diplomacy. Now, this gentlemen, a brief introduction, I shall now take to a document which will actually show you both these, whatever I have spelled out about ideas and demo, how they actually reach to this where we are standing today. Thank you very much. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ऐ अल्लाह इस दावत अमिल और ता क़यामत कायम होने वाली नमाज के रब तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत नुमाया मकाम फजीलत और बुलंद दर्जा अता फरमा और उन्हें उस मकाम महमूद पर फाइज फरमा जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है और क़यामत के दिन उनकी शिफात नसीब फरमा बेशक तू वादे खिलाफ नहीं फरमाता I'm Rabia Pirzada. I'm the marketing manager at Pakistan Oxygen Company. Pakistan Oxygen is in operation since 1935. So before creation of Pakistan, that time it used to be Indian Acetylene Company, and from then it changed several names. It became Pakistan Oxygen, then it changed to British Oxygen, Linde, and we are back to Pakistan Oxygen from 2019. Basically, we are the leading manufacturer of industrial and medical gases, and we have a huge portfolio, and you can call it a one-stop solution for the harder needs of industry. IDAS is a very good platform to exhibit what Pakistan is doing, and as to our company, we can see many international exhibitors over here, and we can promote our products outside of Pakistan. We served in COVID days and received appreciation letter from NCOC as well. People who are coming over here, when they see the name of Oxygen, they ask us that what we have been doing or how we have served the country in COVID days. And even people outside of Pakistan, they feel glad to learn that about our services which have been in the crucial days when Pakistan was going through very difficult times. Our Europe manufacturing plant for electrodes, and our renowned brand, they comprise of Zodian, Trax, Matador,
47 or yet. In COVID days when people were running after oxygen and finding it anywhere, that time we looked this portable oxygen canister. Its edition is this is a 13-liter can of oxygen, which is, you can see, it weighs just half a kg and it allows 250 puffs. So it was very much intimate in COVID days when people were in oxygen, they would keep it at home. Pakistan has been importing this product for many years. Now we are manufacturing in-house completely. This is basically, it is installed on tanks. The storage tanks, they could be electric storage tanks or grains, whatever. So what it does, it gives you the real-time data of what inside the tanks. For example, there's a liquid oxygen tank which is installed in a hospital, and hospital doesn't realize that what level it is and when do they need to replenish it. अस्सलाम वालेकुम। मैं ट्राई ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम कर रहा हूँ। हमारा काम ये है, हम ये वाटर प्रूफ का काम करें, छतों का, ट्रैंक का और वॉल्स का, कंस्ट्रक्शन का कोई काम हमारा केमिकल उसमें आता है और 2 साल हमारी वारंटी होती है। वो प्रॉपर हमारा काम होता है, पूरा एक अमला है हमारा, ट्रेंड अमला, उसके थ्रू ये काम होता है। हमारा जाता है और कस्टमर का तक में हमारी बेहतर हमारा काम ये चल रहा है, तो ये हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। मैं 3 प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट कर रहा हूँ। पहला प्रोजेक्ट जो है वो है ईगल, ये एक मशरूम जैमर है और इसका बेसिक ये है कि फॉर एग्जांपल लैंड एस्टेब्लिशमेंट में ड्रोन्स आपको विजिट कर रहे हैं, आपके लिए इनसिक्योर है और आप उसको स्टॉप करना चाहते हैं, तो आप विद इन 7 किलोमीटर की रेंज में आप ड्रोन को जैम कर सकते हैं। इसमें प्रोसेस ये होता है कि जो भी कनेक्शन बनता है ड्रोन का, उसको जैम कर देते, सो ड्रोन डोंट नो एनी मोर तो किस लोकेशन पे है, वो मूव नहीं कर सकता जब तक जीपीएस लोकेशन का पता ना हो। ये एक जैमर का शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हाई स्पीड टारगेट ड्रोन मेरा जो हम लोगों ने है, उसकी स्पेक्स हैं, मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो उड़ सकता है। एनवायरनमेंट जो है एक्सपो का काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हुआ है एंड इट्स वन ऑफ बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव। जितनी भी मैंने एक्सपोज रखी उसमें से बेहतरीन एक ये है और बहुत सारे फॉरेन डेलीगेशंस और रैंक ऑफिसर्स जो है वो आ रहे हैं और मुख्तलिफ स्टॉल्स को विजिट कर रहे हैं। सब लोग इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं और टेक्नोलॉजीज़ का मैं अगर आम अल्फाज में कहूँ तो एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है और पूरी दुनिया से और पाकिस्तान के पूरे टेक्नोलॉजीज़ से लोग आए हुए हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। वेरी हैप्पी हियर एंड आई वुड सजेस्ट एवरीबडी दिस एक्सपो टेक्स every 2 years. Just all engineers and technocrats who must visit this expo. Mr. Bilawal Bhutto, Honorable Foreign Minister, Islamic Republic of Pakistan, Muhammad Adri, Title Minister, Defense Production, Prime Minister, Chief of the Naval Staff of the Navy, Representative of Armed Forces, degrees, exhibitors, agencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, good morning. On behalf of Defense Export Promotion Organization, it is indeed an honor and pleasure to welcome the participants of 7th International Defense Exhibition and Seminar Ideas 2022. Today is a very special day for us to host guests from 6 countries. Honorable Minister, your presence is a great, immense value that you have graced this occasion as the chief guest. Your presence reflects your keen patronage to our efforts in organizing ideas and its source of inspiration for us. Yes, Pakistan defense industry is not only the behind our armed forces, but also an instrument of national sovereignty, part and social commitment of the country. Its evolution has opened the door of technological advancement in national market for quality products. So mutual partnership, joint venture, Pakistan industry plays for wide areas of cooperation and collaboration. In this regard, I will say that with the continuous assistance of the government of Pakistan, they were supporting export defense industry and services promotion, facilitation and coordination. Ladies and gentlemen, the other aspect of the development of this industry is the vital role of private sector as medium enterprises and SMEs. According to one estimate, 90% of the business and half or more of the export is because of the private industry called SMEs. Generate employment opportunities for approximately
70% of the labor force. Hence, it is no surprise that globally SMEs are an indispensable part of major industrial sectors. In this regard, our SMEs operating in defense production possesses potential which, if capitalized, can generate rich returns for the country. Ladies and gentlemen, International Defense Exhibition and Seminar is a flagship event at DACO, which is organized biennially for the latest technology demonstration of the national and national defense industry. The exhibition is regarded as one of the international rendezvous for enterprise, research and development specialists, financial experts, top policy makers, more cooperation, knowledge sharing, and sport venture in the field of gun production and security. Ladies and gentlemen, indeed, IDEA is a leading event in Pakistan that brings together the global defense industry for synergetic business. The innovation and excellence exhibited here is meant to pave the way for international defense collaboration among the friends and partners. Distinguished guests, IDEA is a continuous success story since 2000. I am glad to share that IDEA's 2022 has surpassed all previous landmarks in terms of space booking, exhibitor, and visiting delegate to Pakistan. It is evident the fact that Karachi Expo Center has been booked with full capacity with more than 300 exhibitors from 32 countries. Besides paid visitors, we are hosting more than 300 delegates from 57 countries, representing almost all parts of the globe. Like this, the initiative of IDEA 2022 includes the creation of extra space by taking the new stall to accommodate overwhelming participation from the national and international exhibitors. IDEA Karachi show is specifically organized for the people of Karachi at Nishan-e-Pakistan Seaview. Pakistan Postal Services has issued an elegant commemorative postage stamp on 14th of August 2022, specially marking the holding of 11th edition of IDEA and 50th year of independence of Pakistan. The hospitality culture, warmth of culture will be demonstrated during various receptions in the honor of the dignitaries who are visiting Pakistan. Honorable Foreign Minister, I would like to particularly mention the financial assistance and support the government of Pakistan is providing private sector of defense industry for their enhanced participation in IDEA 2022. Ladies and gentlemen, last but least, let me acknowledge the organizers who support and cooperation with the key organizing this memorable event. I would like to thank the Ministry of Defense, Armed Forces of Pakistan, especially the Headquarters 4, Chief Minister of Sindh, Trade Development Authority of Pakistan, Defense Industry, the Sindh Rangers, Karachi Police, Karachi Metropolitan Corporation for their great support and contribution towards creating an enabling environment for successful of this event. I would also like to pay special tribute to the Karachi for their all-out support and hospitality. Thanks and appreciation are also due to our event manager Badar for putting up a very professional show, fielding a competent team and effectively marketing IDEA across the globe. I would again like to express sincere gratitude to the Foreign Minister and all our noted guests who have participated and travelled to Pakistan participating in this event. I thank you all. Pakistan Ka Zindabad. मैं शारिक अमीन फारूकी, मैनेजर ताल्लुकात आमा कराची फोकस आपसे मुखातिब हूँ और हमने इस आइडियाज़ में पार्टिसिपेट किया है और अपनी सर्विसेज को हाईलाइट करके कि हम किस किस किस्म की सर्विसेज अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कार्गो हैंडलिंग की फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें हम जो है वो जो बर्थिंग फैसिलिटीज़ हैं वो भी हैं और टाइप्स ऑफ कार्गो जो हम हैंडल कर रहे हैं उसके बारे में भी हम बताते हैं। इसके अलावा जो हमारा फ्लोटिला वगैरह है, जो हम बोट्स यूज़ करते हैं, ड्रेजर्स यूज़ करते हैं, इन तमाम चीज़ों को मुतारिफ कराने के लिए और अवामुन्नास को बताने के लिए हमने इस आइडियाज़ में हिस्सा लिया है और हम केपीटी की सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असलम खान है, ब्यूरो चीफ दुनिया टीवी कराची। 11वीं आइडियाज़ के हवाले से आज ब्रीफिंग रही और हमें जिस तरह बताया गया कि तकरीबन 229 पार्टिसिपेंट होंगे, 100 से ज़ायद ममालिक हैं जो यहाँ पर इसमें शिरकत करेंगे। पहली आइडियाज़ से हम यहाँ पहुँचे कि इसमें 2 नए ममालिक भी आ रहे हैं और ऐसे ममालिक भी हमारे पास आ रहे हैं जिनके साथ हमारे जो बरादराना ताल्लुका है, दिफाई ताल्लुका। और मैं आपको ये बताऊँ कि हमारा तैयारा है JF-17, उसमें बहुत से ममालिक ने खरीदारी में दिलचस्पी रखी। माजी में अगर हम करें कि हमारा अलजराल्ट है, बहुत से मुल्क उसकी खरीदारी में दिलचस्पी रखते थे और अब
आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसकी जो प्रोडक्ट है उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मजबूत तौर पर आज की ब्रीफिंग हौसला अफजा थी हमारे लिए कि पाकिस्तान वाई मैदान में भी किसी भी तरह पीछे नहीं है। हम पहली नुमाइश की अगर हम बात करें वो इंतहाई आ रही है और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो दिफाई नुमाइश है ये भी मजीद जो कामयाबी के गाड़े की मजीद कामयाब होगी और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा कि हर दिफाई नुमाइश में हमें ये मालूम होगा कि हम दिफाई मैदान में इस हद तक आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो कौम है उसके लिए भी ऐसे इत्मीनान है कि उसकी मुसल्लह अफवाज है वो पूरी तरह तैयार, किसी भी दुश्मन की जाहिरियत का मुकाबला करने के लिए हम जो है वो पूरी तरह तैयार और डटे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं ट्राई ग्रुप ऑफ कंपनी से मैं कर रहा हूँ। हमारा काम है कि हम ये वाटर प्रूफिंग का काम करते हैं, छतों का, वाटर टैंक का और वॉल्स का, ये जितने भी कंस्ट्रक्शन का कोई काम हो हमारा केमिकल उसमें आता है और 2 साल की हमल्टी होती है वो प्रॉपर हमारा काम होता है और पूरा एक हमारा ट्रेंड अमला उसके थ्रू ये काम हमारा हो सकता है। हाल वक्त तकरीबन पाकिस्तान में हमारा जाता है और कंस्ट्रक्शन का तकरीबन में हमारी ज़्यादातर डिफेंस साइड में हमारा काम ये चल रहा है, तो ये हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें पहला प्रोजेक्ट जो है वो है ईगल हंट Z1। ये एक ड्रोन जैमर है और इसका बेसिक पर्पस ये है कि फॉर एग्जाम्पल किसी भी लैंड एस्टेब्लिशमेंट में ड्रोन्स आप कर रहे हैं जो आपके लिए है और आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप विद इन 7 किलोमीटर की रेंज में आप उस ड्रोन को जैम कर सकते हैं। इसमें प्रोसेस ये होता है कि जो GPS कनेक्शन बनता है ड्रोन का उसको आप जैम कर देते हैं, सो ड्रोन डोंट नो एनी मोर कि वो किस लोकेशन पे है और वो मूव नहीं कर सकता जब तक उसको GPS लोकेशन का पता ना हो। ये एक जैमर का इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हाई स्पीड टारगेट ड्रोन जो हम लोगों ने बनाया, लैब ने बनाया, की मुख्तलिफ स्पेक्स हैं, उसके बारे में बता सकता हूँ। 120 मीटर की स्पीड वो उड़ सकता है। एनवायरनमेंट जो है यहाँ का एक्सपो का काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है एंड इट्स वन ऑफ बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव एवर अटेंडेड। जितने भी मैंने एक्सपीरियंस किए हैं उसमें से बेहतरीन एक ये है और बहुत से फॉरेन डेलीगेशंस और हाई ऑफिसर्स जो है वो यहाँ आ रहे हैं और स्टॉल्स को विजिट कर रहे हैं। सब लोग इंटरेस्ट के साथ रहे हैं और टेक्नोलॉजीज़ का मैं अगर आम अल्फाज में कहूँ तो एक मेला लगा हुआ है और पूरी दुनिया से और पाकिस्तान के जो टेक्नोलॉजी सेक्टर लोग आए हुए हैं और उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड आई वुड सजेस्ट एवरीबॉडी that this expo takes place every 2 years. After every 2 years, I would suggest all engineering technocrats to must visit this expo. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Badar, Honorable Foreign Minister, Army Republic of Pakistan, Muhammad Misraj, Battle Military Production, Battle Minister, Chief of Naval Staff and Navy, the President of Armed Forces, dignitaries, exhibit excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning. On behalf of Defense Sport Promotion Association, it is an honor and welcome the participants of 11th National Defense Section and Seminar Ideas 2022. It is a very special day for us to host a esteemed guest from 57 countries. Honorable Minister, it is a great value for us that you have graced us as the chief guest. Your presence indeed reflects your patronage to our efforts in raising ideas and it's a source of inspiration for us. Distinguished guest, Pakistan defense industry is not only the force behind our armed forces, but also an instrument of national security and important economic component of country. Its recent evolution has opened with our technology advancement, resulting in international market for quality products. Through mutual partnership, joint ventures and industry, today's offer wide areas of cooperation and collaboration. In this regard, I will proudly say that with the assistance of the Pakistan, DAPO is supporting the support of defense industry and services through promotion, facilitation, and coordination. Ladies and gentlemen, the other aspect of the development of defense industry is the vital role of
private sector or medium enterprises called as SME. According to one estimate, 30% of the business and half or more of the export is because of the private industrial SMEs, and it generates employment opportunities for approximately 70% of the labor force. Hence, it is no surprise that globally SMEs are an indispensable part of the major industrial sectors. In this regard, SMEs operating in defense production possess tremendous potential which can generate rich data for the country. Ladies and gentlemen, International Defense Exhibition Seminar, flagship event of DAPO, which is organized biennially for the latest technological demonstration of the national and international defense industry. The exhibition is now regarded as one of the international rendezvous for enterprise, research and development specialists, financial experts, top policy makers to promote cooperation, knowledge sharing, and support venture in the field of defense production and security. Ladies and gentlemen, indeed, IDEA leading event of Pakistan that brings together the global industry for business. The innovation and excellence exhibited here is meant to pave the way of national defense collaboration with friends and partners. Distinguished, IDEA is a continuous success story since year 2000. I am glad to share that IDEA's 2022 has surpassed our previous landmarks in terms of space booking, exhibitor, and visiting delegates to Pakistan. It is evident from the fact that Karachi Expo Center has been booked to full capacity with more than 300 exhibitors from 32 countries. Besides trade visitors, we are also hosting more than 300 delegates from 57 countries, representing almost all parts of the globe. Besides this, the initiative of IDEA's 2022 includes the creation of a space by establishing new stalls to accommodate overwhelming participation from the national and international exhibitors. IDEA's Karachi show is specifically arranged for the people of Karachi at Nishane, Pakistan, Seaview. Pakistan Postal Service has issued an elegant commemorative postation on 14th of August 2022, specially marking the holding of 11th edition of IDEA's 75th year of independence of Pakistan. The hospitality culture of Pakistani culture we demonstrated during various receptions in the honor of the dignitaries who are visiting Pakistan. Honorable Foreign Minister, I would like to particularly mention the initial assistance and support the government of Pakistan is providing to private sector of defense industry for their enhanced participation in IDEA's 2022. Ladies and gentlemen, last but not the least, let's acknowledge the organization whose support and cooperation was the key in organizing this memorable event. I would like to thank the Ministry of Defense Production, Armed Forces of Pakistan, especially the Headquarter 5 Corps, Chief Minister, Trade Development Authority of Pakistan, Defense Industry, the Sindh Rangers, Karachi Police, Karachi Metropolitan Corporation for their support and contribution towards creating an enabling environment for the success of this event. I would also like to pay special tribute to the people of Karachi for their all-out support and hospitality. Thanks and appreciation are also due to our manager Badar Expo for putting a very professional show, fielding a company and effectively marketing ideas across the globe. I would again like to express my gratitude to the Foreign Minister and all our noteworthy guests who have participated and traveled to Pakistan for participating in this event. I thank you all. Pakistan Paindad. शारिक अमीन फारूकी, मैनेजर ताल्लुकात आमा कराची पोर्ट ट्रस्ट, आपसे मुखातिब हूँ और हमने इस आइडियाज़ में पार्टिसिपेट किया है और अपनी सर्विसेज को हाईलाइट करिए कि हम किस किस किस्म की सर्विसेज अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कार्गो हैंडलिंग की फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें हम जो है जो बर्थिंग फैसिलिटीज़ हैं वो भी हैं और टाइप्स ऑफ कार्गो जो हम हैंडल कर रहे हैं उसके बारे में भी हम बताते हैं। इसके अलावा जो हमारा फ्लोटिला वगैरह है, जो हम बोट्स यूज़ करते हैं, ड्रेजर्स यूज़ करते हैं, इन तमाम चीज़ों को मुतारिफ कराने के लिए और अवामुल नास को बताने के लिए हमने इस आइडियाज़ में हिस्सा लिया है और हम केपीटी की सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असलम खान है, ब्यूरो चीफ दुनिया टीवी कराची। आइडियाज़ के हवाले से आज ब्रीफिंग रही और हमें बताया गया है कि 229
पार्टिसिपेंट होंगे, 100 से ज्यादा मालिक हैं जो यहाँ पर इसमें शिरकत करेंगे। पहली आइडियाज से हम यहाँ तक पहुंचे कि इसमें 2 नए ममालिक हैं और ऐसे ममालिक भी हमारे पास आए जिनके साथ हमारे जो बदराना ताल्लुकात हैं, दिफाई ताल्लुकात हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि हमारे जो हमारा तैयारा है JF Thunder 17 में बहुत से ममालिक ने में दिलचस्पी अदा किया। अगर हम बात करें कि हमारा अल्लाह टैंक बहुत से मुल्क उसकी दिलचस्पी रखते थे और अब आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसकी जो प्रोडक्ट है उसमें भी हम बढ़ रहे हैं। मजमूई तौर पर आज की ब्रीफिंग बहुत हौसला अफजा थी हमारे लिए कि पाकिस्तान दिफाई मैदान में भी किसी तरह पीछे नहीं है। हम पहली नुमाइश की अगर बात करें वो इंतहाई दारी, और मैं उम्मीद करती हूँ ये जो दिफाई नुमाइश है ये भी मजीद जो कामयाबी का झंडे गाड़ेगी, मजीद कामयाब होगी। और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा कि हर दिफाई नुमाइश ये मालूम है कि हम दिफाई मैदान में किस हद तक आगे हैं। हमारी जो कौम है उसके लिए भी ये बाइस इत्मीनान है कि उसकी जो अफवाज है वो पूरी तरह तैयार है। किसी भी दुश्मन जाहिरियत का मुकाबला करने के लिए हम जो है वो पूरी तरह तैयार और डटे हुए। Selam Aleyküm. My name is Ahmet Turul Özkan from Turkey, Aselsan company. Aselsan is the leading defense industry in Turkey, mainly involved in communication, weapon sites, satellite systems, electronic warfare systems, closing weapon systems. We are here for promote our business with Pakistan Army as well as Air Force and Navy. We are engaged several projects here. And our main idea is to share our technology and our capabilities with our brother country, Pakistan. And my office established in Islamabad. I am the area manager of this company. And we are very close to the headquarters, Air Force, Navy and GHQ. So we expect that in this exhibition, several business opportunities which are also very new designs available with us. This one is Gökdeniz project, which is engaged with Pakistan Navy to increase their capability, defense capability in Pakistan. This was my brief information about my company. Thank you very much and wish you Pakistan Zindabad. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद राशिद इकबाल तिरमिज़ी। मैं इंट्री ब्रेड को लुक आफ्टर कर रहा हूँ यहाँ। मैं इस कंपनी का सेल्स मैनेजर हूँ और हमने कल से ये स्टॉल यहाँ लगाया है और हमारी कंपनी को अभी तकरीबन 10 महीने हो गए ब्रेड को और हम कराची को काफ़ी अच्छी तरह से डील कर रहे हैं। हम हाइजीनिक ब्रेड पे काम कर रहे हैं। इस वक्त सबसे बेहतरीन ब्रेड हम बना रहे हैं जो कि यूरोपियन प्लांट पे तैयार की जाती है और हाइजीनिक सिस्टम पे तैयार की जाती है। इस वक्त इतनी अच्छी ब्रेड नहीं बना रहा क्योंकि हमने कोरंगी में कंप्लीट एक प्लांट लगाया जिसमें हम ब्रेड की तमाम वैराइटीज़ को तैयार कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। एक्सपो में हमारा ये सेकंड एक्सपीरियंस है। हमने रमज़ानों पे यहाँ पर स्टॉल लगाया था और बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। उसी को देखते हुए हमने जो है अब दोबारा यहाँ पर एक कोशिश की। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और लोगों की फीडबैक भी बहुत अच्छी आ रही है। जो पब्लिक जिन्होंने यूज़ किया है, जो हमारे एंड यूज़र हैं मार्केट में जहाँ पर, उनको भी बहुत ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट्स पसंद भी आ रही हैं। और एक्सपो के साथ काम करने में मिलता है कि यहाँ पे वर्किंग करने से जो यूजर्स को नहीं मालूमात वो भी आते हैं और वो इसको ट्राई करते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे खुशी है कि हम एक्सपो के साथ यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। बदर एक्सपो के बारे में कहूँगा कि उन्होंने जितना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है और जितना कोऑपरेट करते हैं, मतलब हमें ऐसा लगा कि वाकई हम यहाँ परेशान नहीं हो रहे हैं। तो उनकी ये काविश काबिल सताइश है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो उनका कोऑपरेट जो है हमें आसानी दे रहा है। बहुत सारी It's 8 p.m. My name is Cengiz Kahraman. I'm marketing manager of Menatech Defense Technologies. Menatech Defense Technologies is leading a supply chain manager of Turkey and MENA region. It's almost 30 years company and we manufacture sub-assemblies of trucked and wheeled vehicles. We have been delivered 150,000 components, uncompromising quality standard to NATO and USA countries.
for almost 30 years. Backgrounds of half century of experience. We are going to look to future with our R&D center. We are investing different companies with different sectors. As an example, electromobility. As an example, we try to turn to Turkey the giant factory. That is another subject, another project for us. More than 3,000 suppliers and with 150,000 parts. As Manatech, we supply for your priorities for high-tech manufacturing defense industry. Welcome back from DHA Sports Club Khan Academy 25 of Karachi Table Premier League Season 3. It's going to be the table toppers, Marine Malangs, up against North Nobs. Earlier we saw Malangs have won the toss and have started to bat for it yet again. The table toppers against North Nobs, who are fighting hard to secure the spot in the semi-finals. All set here. The DHA Sports Club Khan Academy. Second game of day. It's Asif Pathan has got the ball. His position. Plays a call from the umpire. Straight away. Could be a big wicket. What a start. It's DK who has to walk back. First ball outside edge. Comfortable catch behind the stumps. But DK walks back without even troubling the scorers. It is not for one. Outside edge could be out. Easy one. On. Goodness me. Mimran follows DK. It's 2 down here and just 4 on the board. Mimran also walking back after scoring just 2. It's 4 for 2. Here comes the first big shot. And here comes the boundary. Full toss. Straight over the ball's head for the boundary. It was a gift for the new batter. Full again, smashed away. Much bigger, much longer. Half a dozen. Again, asking to be held full toss. This got plenty on it, Aziz. I'm sure आपने क्रिकेट के मुख्तलिफ अदवार देखे हैं पाकिस्तान में. कभी आपने सोचा भी था कि टेप बॉल क्रिकेट इस लेवल पे हो रही होगी और इस लेवल पे एग्जीक्यूट करने पर KTPL इंतजाम की तारीफ बनती है. A shot on the rise. Is it long enough? Not quite. Comfortably taken, well within the boundary. And Asif Pathan continues to impress us. Chaji Box coming 2. It's 22 for 3. So a delivery picked up. It's in the air. And this time the ball has gone over the boundary ropes. He goes for it once again and gets plenty on it as well. Once again the ball has landed beyond the boundary ropes. और हार्ड बॉल की क्रिकेट है, बिल्कुल उसी तरीके से ये टेप बॉल को पाकिस्तान के ब्रांड बना के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ले जाने की बात हो रही है. मुझे लगता था आपने कुछ सालों पहले तक सोचा भी था कि टेप बॉल इस लेवल पे हो रहा होगा और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में हो रहा होगा. एक विकेट भी इस दौरान गिर गई है. अजीज आउट होकर अब वापस पवेलियन लौट रहे हैं. ये जिस तरीके से देखी जा रही है और तैमूर मिर्जा जैसे लोग हमारे साथ खेले हैं जिनकी फैन फॉलोइंग मिलियंस के अंदर है, तो जिस तरीके से और इस दफा जो KTPL को 34 कंट्रीज के अंदर 84 चैनल्स के ऊपर देखा जा रहा है, अरबों की तादाद में लोग इसको देख रहे हैं. सो मुझे लगता है ये है कि ये बहुत जल्द उसके लेवल के बराबर एक जो है पैरेलल के अंदर एक अलग टाइप की क्रिकेट शुरू होने वाली है. सो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट डेफिनेटली बदर एक्सपो को जाएगा और जोहेर नसीर को जाएगा. Well, the decision has been referred upstairs. It was a very good throw towards the bowler. Looks touch and go, Falak. You see the red light on. Confirmation. Gone back after scoring just 2. It's 43 for 5. Holds the way on the leg side. It's in the air. There is a fielder out there who misjudges it. And I think the ball has gone past the boundary ropes as well. Could have been another wicket for Irshad, but not to be. Hits that away on the offside. Over extra cover. That's going to go all the way for 6. Probably the shot of the innings so far by Ubaid. By giving away 16 in his opening over. Once again, hits that on the offside. It's up in the air. Has he timed it well enough? I think he has. There was a fielder at long off who was trying to get around it, but the arms are aloft from the on-field umpire. Once again, insane timing by Kaleem. Once again, he has gone big. He has gone straight. It's up in the air. Chance for the fielder who takes it this time. It's Irshad Ali Afridi down there at long off who makes absolutely no mistake. So Kaleem is removed at the score of 25.
62 for 6. Last ball of the innings, a low full toss that has been just hit away on the leg side. They are going to be looking to come back for the second one. There is a throw at the wicket-keeper's end, but he couldn't collect it, the captain. So they're going to collect a couple of the last ball of the innings. That means Maleen Malangzar finish off at 66 for 6 after their 6 overs. A job well done by North Nawabs. All set for second innings. Majid Goli starting the proceedings from the far end. Down the leg side, it pitched, but then it went away into the offside. He's working really hard. This is going to be 4 runs. Oh, it is swing down, but still has enough legs to carry over the line. He got enough amount of bat on that. He didn't like the... And this time Hafiz Bola has trunked that and trunked that with little disdain. Wow. He swings this away and swings this away beautifully for yet another 6. Full toss, cut that away and cut that away over. What a magnificent shot. You beauty, Hafiz Bola. In the air, who's going to take it? And it is caught. So Hafiz Bola shows is over. He played really well for his 22 of 10, 1 for 28 on the board, North Nawabs. And this time around, batsman has given that a go. And this is going to go all the way at mid-wicket boundary for 6. Zain has gone downtown. Absolutely smoked that away. Wow, what a good shot. Absolutely. बाएं हाथ से गेंद करने वाले तेज बॉलर और उनकी इस पहली गेंद को उठा दिया है. फील्डर के लिए यहां पर कोई मौका नहीं होगा. 6 रन. 8 रन अब भी पीछे हैं पहली इनिंग में मलीर मलंग. और इस बार बोल्ड कर दिया. तो बहुत जल्दी हिसाब चुकता किया है फजल ने. 12 रन बनाकर ये आउट हुए. 58 पे 2 आउट. एक मर्तबा फिर फजल आए और इस बार शफी ने गेंद को उठा दिया है. 6 रन. बड़ा कुछ डिफरेंट सा एक्शन है लेकिन बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं खेले. टेप बॉल क्रिकेट में इस गेंद पर जोरदार तरीके से खेले. बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद थे जिन्होंने एक बुलंद वाला शॉट को कैच में तब्दील कर दिया. और इस तरह शफी जो है वो आउट होकर लौट रहे हैं. सिर्फ 1 रन बनाया और 65 पे 3 खिलाड़ी आउट. इसी दौरान जोरदार तरीके से जहन खेले और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 के लिए. जहन को रोक पाना बड़ा मुश्किल है. और इस बार नो बॉल ये होगी. कनेक्ट उन्होंने जरूर किया है, 6 उन्होंने हासिल किए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मलीर मलंग को ये नो बॉल मिल गई है. फजल और कोशिश यही होगी फील्डिंग साइड की कि वो कम से कम यहां पर इनको बढ़तरी हासिल करने दें. लेकिन ये एक और छक्का, इसको कहते हैं कि मुंह में बॉल कर दिया उन्होंने. और बैट्समैन ने जो जैन है उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया. ऊंचा खेले इस गेंद को और गेंद फील्डर के पास पहुंची है कुछ एक आध टप्पा खाकर. और ये बैट्समैन तीसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं और पहुंच गए. ये देखा होगा अंपायर ने कहा जी हाँ पहुंच गए. तो ठीक ठाक बढ़तरी यहां पर हासिल कर ली है मलीर मलंग की टीम ने. 96 रन किए हैं 3 विकेट के नुकसान पर. उनकी बढ़तरी पहली इनिंग में 30 रन की. UB11 कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 का 25th मैच. नसीम राजपूत पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर और जहां जहां हमारी नशरियात जारी है आप तमाम लोगों को
DHA स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड मोइन खान क्रिकेट अकेडमी से खुशामदीद कहता है। 25वां मैच है जहां नॉर्थ नवाब और मलीर मलंग्स की टीमें मद्दे मुकाबले हैं। आप मेरे साथ दो इंपॉर्टेंट शख्सियत यहाँ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट UBL अमीन, कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए गिरा खदर खिदमात अंजाम देने वाले हारून रशीद साहब, और उनके साथ हमारे लिविंग लेजेंड द वन एंड ओनली ग्रेट जावेद मियादाद साहब की साहबजादी मारिया मियादाद, जो हमारी विमेंस विंग को अब देखना शुरू हो गई है। कायनात इम्तियाज़ और काम शुरू कर दिया यहाँ, एक प्रॉपर मैनेजमेंट भी, और ख़ास तौर पे जो 16th फाइनल है उससे पहले KTPL विमेंस प्रीमियर लीग की लॉन्चिंग होने जा रही है। ख़ास तौर पे हम इसको भी बहुत फोकस कर रहे हैं। मारिया आपको और हारून भाई आपको वेलकम करते हैं। हमने आपको किसी इवेंट में उस तरीके से देखा नहीं, इस बार प्रॉपर कनेक्शन, फर्स्ट बाउंस के बाद गई बाउंड्री के बाद। हमने इससे पहले किसी और इवेंट के साथ आपको नहीं देखा जिस तरीके से आप कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के साथ जुड़ी हैं। उन बच्चियों के साथ मिला के जो कुछ नई बच्चियाँ होंगी वो खेलें। मैं चाहूँगा कि जितनी भी फैमिलीज हैं उस पर्टिकुलर डे, फाइनल के दिन ये एक आउट हो गए, एक ऊंचा शॉट खेला था और डी के जो हैं वो दाऊद खान पठान वो आउट हो गए, एक रन बनाकर अच्छा कैच किया। आई थिंक अगर ये देखा जाए तो बड़ा नॉर्थ नवाब बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। नहीं, ये हम सुनने चाहेंगे, ये खबर तो हारून भाई भी सुनने के लिए बैठे हैं। जबरदस्त कनेक्शन, फर्स्ट सेंड बाउंस के बाद बाउंड्री के बाहर गई, कलीम का अच्छा स्ट्रोक इरशाद की गेंद पर। तो इशू ये है कि हमारी जो बच्चियां हैं एट द यंग एज से अबाउट 14, 15, 16, और ये इस दफ़ा ऊंचा शॉट खेला और गेंद जो है वो बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए, 6 रन का इजाफा किया कलीम ने, बहुत ही अच्छा। आई थिंक दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट टू डू रादर देन ट्राई एंड प्रूव कि आई कैन बी एज गुड एज माय फादर, बिकॉज़ आई कांट बी लेजेंड। इस बार मिमरान का छक्का है यहाँ पर, जबरदस्त हिट आसिफ की गेंद पर। लेजेंडरी जावेद मियादाद की बेटी हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट से स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, उनकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होंगी वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस फील करेंगी, इनके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं। एक और छक्का मारा है कलीम ने और इसे स्क्वायर लेग के ऊपर से खेल दिया था। सिर्फ 10 रन की लीड अभी हुई है और ये 30 ओवर का खेल चल रहा है। फिर एक और ऊंचा शॉट और ये गेंद भी जो है वो बाउंड्री लाइन के बाहर गिरी। मिमरान और कलीम दोनों बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर इस हवाले से भी जानते होंगे। एक और जबरदस्त हिट, कलीम पकड़े गए इस बार। कलीम का इस बार शॉट बाउंड्री क्रॉस नहीं करा सका बल्कि सीधा हाथों में गया और लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान कैच आउट हुए। इस तरीके से ये दूसरा नुकसान उठाना पड़ा यहाँ पर मलीर मलंग्स को। क्रिकेट की एकेडमीज लगाना चाह रहे हैं और ख़ास तौर पर वुमेन की, सो यहाँ से वो प्लेटफॉर्म इनको मिल सकता है अगर बच्चियाँ अच्छी खेलेंगी। एक और विकेट गिरी है और इस तरह मलीर मलंग से एक और नुकसान हुआ। एक और अच्छा प्लेयर मुख्तार आउट होकर वापस गई। Bowled him, knocked him over. Inside edge, rattled onto the stumps. And have a look at that. Victorious bowler enjoying his victory. And Mimran goes for 14. 50 for 4 on the board. Maleer Malangs. Shorter one he gets and he really nails it over mid-wicket for a huge hit. That one went out of the ground. And this time it's a high one. It's hit high enough. Does it have enough distance? No, it doesn't. And a very good catch is taken by Paula. An important catch here by the Rahman. Cameo is over. Just 6 to his name. Full toss. Oh, you betcha. That's all the way. That's a biggie. What a sweet connection. What a blow that is. Full toss put away over mid wicket for 6. इन्वायरमेंट नहीं होता, क्रिकेट का रुझान नहीं होता, लेकिन इस तरह की लीग्स होंगी और लाइव चलेंगी पूरी दुनिया में, तो मेरे ख्याल में। एक मिनट जरा, आप तो क्रिकेटर हैं, कैच तो बताना पड़ेगा। यहाँ विकेट गिर गई है जी मलीर मलंग्स की टीम कहीं ना कहीं कम बैक करने में जरूर कामयाब हुई है इस मैच में, लेकिन नॉर्थ नवाब का पलड़ा भी बहुत भारी। Oh, that's a very good delivery. Slow bouncer to finish things off. 6 done, 71 for 6. Effectively, they are 41, and it's going to be a target of 42 for North Nawabs to chase down when they come out to bat. और इस गेंद को ऊंचा खेल दिया बैट्समैन ने और गेंद
वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्ड के हाथ में ऑलमोस्ट मिड ऑन पर कैच कर ली गई और इस तरह विकेट लेने में यहाँ पर कामयाब हो गई है टीम। यहाँ पर मलीर मलंग की और हाफिज पोला लौट रहे हैं आउट होकर। दोनों जो इनके कोचेज हैं उनको भी दे रहे हैं और जो हमारे वो हैं मोहम्मद समी साहब उनके लिए भी प्लॉट का उन्होंने ऐलान कर दिया अगर फाइनल जीतते हैं तो ये प्लॉट एक नया सिलसिला शुरू हो गया ज़ुहैर भाई, ये तो बहुत ही बड़ा आगाज़ है और जिनके लिए हम पूरे साल इन लोगों को सपोर्ट करें। तो KTPL असल ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये एक सिर्फ टूर्नामेंट नहीं है, ये सिर्फ हम इसके अंदर इन सारे लड़कों को इंशाल्लाह पूरे साल अपने साथ एंगेज करेंगे। इसके जो टॉपर्स होंगे वो फिर दुनिया के अंदर जितने टूर्नामेंट्स होंगे उसमें हम इनको आगे लेके चलें। जफर अब्बास भाई एक और चीज़ भी KTPL विमेंस लीग का भी आगाज़ हो जा रहा है, उसकी भी लॉन्चिंग होने जा रही है और जितनी आपकी इन्वॉल्वमेंट हमने देखी, इमरान अली रोशन साहब की देखी, DK की देखी, सारे ऑनर्स जिस तरह मुजम्मिल अतहर सब लोग जुड़े हुए दिखाई दिए, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। वुमेन क्रिकेट लीग जो है उसको तो सपोर्ट करेंगे बल्कि ज़ुहैर भाई ने कहा एक टीम हमें JDC को फिर दे रहे हैं CSR में, तो मैं कराची से अच्छा टैलेंट वुमेन निकाल के लाऊंगा और उनको यहाँ खिलाएंगे और वो नेशनल लेवल मुतारिफ कराएंगे। क्योंकि कराची जिस तरह से कराची ग्राउंड बर्बाद है, अब दोबारा से बात हो रहे हैं तो उस जश्न में मैं शामिल रहूँगा इंशाल्लाह। ये बहुत लड़कियां जो हैं वो हार्ड बॉल से काफ़ी डरती हैं, तो उसमें अब ये इंशाल्लाह टेप बॉल्स जिससे जब वो खेलेंगी तो उनका एक जो एक डर है वो ख़त्म होगा और वो हमारे नेशनल क्रिकेट के लिए उनकी एक अवेलेबिलिटी हो जाएगी। प्लस जो उन फैमिलीज़ के लिए, वो फैमिलीज़ जो अपने बच्चों को बाहर भेजते हुए जो हमारा इन्वायरमेंट है कि ऐसे ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है जिससे उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इंशाल्लाह हम एक ज़बरदस्त किस्म का एक इन्वायरमेंट भी क्रिएट करेंगे जहाँ पे बच्चियाँ आएँ और खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इनको खेल में कामयाब हुए, ये भी पड़ो पैकेट स्क्वायर लेग, ऑलमोस्ट स्क्वायर लेग पे छक्का। इनको खेलने में कामयाब हुए और एक बार फिर अंपायर का इशारा कि ये छक्का। अब चाहेंगे कि इसी ओवर में खेल तमाम किया जाए। गोज अगेन, लेकिन फील्डर हैं, जंप किया, क्या अपने आप को संभालने में कामयाब रहे हैं, बल्कि नहीं, ओ वो हैं, लेकिन कैच शायद उन्होंने अंदर फेंका है क्योंकि हम देख रहे हैं कि सीवरेज हो रही है और अब हम रिप्ले में मजीद अंदाजा करेंगे, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट कैचेस होगा यकीनन अपना तवाज़ो बिल्कुल खो चुके थे और तवाज़न खोने से ठीक पहले उन्होंने बॉल को रिलीज कर दिया अपने हाथों से बिल्कुल, और ये कैच करार दिया गया है। रेड लाइट्स ऑन हुई और जितनी तारीफ की जाए फील्डर की वो कम है और इन्होंने एक आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा है बिला शुबा। ये भी 12-13 रन बनाकर आउट हुए। यहाँ पर उठा के दिया है, गेंद हवा में, देखना पड़ेगा फील्डर गेंद के नीचे और एक आराम सा कैच लेकर एक और विकेट हासिल कर ली है और मुरसलीन को यहाँ ठिकाने लगा दिया है उबैद ने, तो तीसरी विकेट हासिल कर ली उबैदुर रहमान ने 17 रन देकर। ये तो था वर दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास से गुजरी, अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेंथ इसे निकाल दिया है डीप स्क्वायर लेग की जानिब। फील्डर मौजूद है, एक ही रन हासिल किया और इसी के साथ फतह हासिल कर ली नॉर्थ नवाब की टीम ने। 5 विकेटों से ये मैच अपने नाम कर लिया है नॉर्थ नवाब की टीम ने। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आरिफ कटाना है और मैं GM कॉर्पोरेट सेल हूँ सर्विस इंडस्ट्रीज में। सर्विस इंडस्ट्री पाकिस्तान में 50 साल पुराना नाम टायर के हवाले से और शू के हवाले से पहचाना जाता है। हम लोग आम लोगों के लिए जो जूते बनाने के अलावा हम लोग फोर्सेस के लिए भी जूते बनाए जो कि कंप्लीट रेंज है, नेवी के लिए, आर्मी के लिए, एयर के लिए, रेंजर्स के लिए और पुलिस के लिए। इसके अलावा सर्विस इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में कुछ और चीज़ें भी बना जिससे बहुत कम लोग
जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम लोग आर्मी सियाचिन में जो शूज़ इस्तेमाल किया जाता है के शूज़ भी बना रहे हैं। इसके अलावा हम गैस आर्मी के लिए बना रहे हैं जो पाकिस्तान में सिंगल सोर्स है आर्मी के लिए। इसके अलावा हम लोग खालिद और अल-ज़रार के लिए कुछ रबर पार्ट्स भी बना रहे हैं। रिसेंटली हमारा एक जेवी हुआ है जो कि ये कंपनी लॉन्ग मार्च के साथ और पाकिस्तान में पहली दफ़ा ट्रक बस रेल के जो टायर मुतारफ करवाए गए हैं वो भी सर्विस ग्रुप की तरफ से करवाए गए, सर्विस लॉन्ग मार्च से। इससे पहले ये सारे टायर पाकिस्तान में इंपोर्ट किए जाते थे। पाकिस्तान में मार्केट साइज ट्रक बस रेडियल का तकरीबन 2 मिलियन के करीब है एक साल में, और हम लोग जो प्लान करके इस पाकिस्तान में ये फैसिलिटी लेके आए हैं, हम इंशाल्लाह थर्ड फेज में आज से 2 या 3 साल बाद 2.5 मिलियन की कैपेसिटी इस साल की बना रहे होंगे। और मार्च में ये इनॉग्रेट हुआ है और इस वक्त हम लोग अमेरिका को ये टायर पाकिस्तान से बना के छोड़ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक फख्र की बात। आइडिया में ये बात करूंगा कि ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है क्योंकि यहाँ पे बहुत से ममालिक से लोग आते हैं, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, नए प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है और दुनिया को ये जानने में आसानी है कि पाकिस्तान बहुत सी चीजें अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। नो डाउट ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट के लिए है। Well, hello. My name is Ayhan Şentürk, and I am the Business Development Manager for Profan Defense Technologies. We're a Turkish company. Our company was founded back in 1995, and our core expertise and experience is in satellite communication systems. So that's satellite antennas, satellite ground station, and those are the main products that we're promoting at this exhibition. So we can design and build all the way from 65 centimeters small satellite dishes, man-packed terminals, all the way up to 7.3 meter big ground stations. So as I said, that's our expertise. That's where our main experience comes from. But we're also an engineering company. We do systems integration. We have a very good software team supporting us in our activities. We have a material science team helping us with the design of our antennas. And we deliver turnkey solutions to our customers. It's our first time in Pakistan attending an exhibition, and it's been a very fruitful period for us. I mean, we've been very busy for the past 2 days. We're busy today as well, and we're very happy about it. We're very happy about it. During the COVID period, we've been having a lot of online meetings or telephone meetings with our contacts in Pakistan. So as I said, it's our first time in Pakistan, and it's a great pleasure. It's a great pleasure to be able to talk, face to face with our contacts, with our customers in Pakistan. So thank you very much. Thank you for everything, for your hospitality. It's been an honor to be here, and we look forward to improving our relationship with Pakistan. Thank you. My name is Abdul Basit, and we are exhibiting ideas from the platform of K Electric. K Electric has recently launched a new company with the name of K Solar, and from the platform of K Solar, we are offering solar solutions for our commercial industrial users. In these solutions, we have multiple models for our industrial and commercial users, which include power purchase agreement. In the solution, all the assets belongs to us. We are going to deploy it on the premises of our industrial user or commercial user. In the solution, the customer don't have to pay any upfront costs. They only have to pay the monthly energy bill, which will be generated at the end of the month by using solar energy. So this is the first solution we are offering to our industrial and commercial users. And secondly, for the second solution we are offering is of deferred EPC payment. This is one of the viable option in which the client doesn't have to pay an upfront cost for the system. They have to pay the capital cost in terms of an installment for the defined period of time. And the third solution we are offering is the upfront cost, which will be paid by the consumer and at the time of installation. So these are the 3 options available for our users. And in all of the solutions, we are committed to quality, and we are going to compromise in quality.
then if the user is getting solution from K Solar, so what we are offering is one window solution for our users from survey till the commissioning of the system. Only you have to contact K Solar and we will gonna give you one window solution. You don't have to go anywhere else for any other services. We are going to do the survey, we are going to do the designing, we are going to do the installation and commissioning, as well as we are going to do the all preparation related to the net metering application, and we will help our users to get the generation license. And once the license is arrived, then we will going to install the energy meter, which will be done by our other department of K Electric, net metering department. So I welcome all our users to please come to K Solar and have a good experience from us, and please try us. And in last, I just want to thank the exhibition, the organizers. It's a really good experience over here, and I wish them a very good luck. मेरा महात्मा है, मैं आई हूँ FWO में, और इस वक्त ये FWO स्टॉल यहाँ पे मौजूद है। हमें यहाँ पे अपने 4 मेजर कंपोनेंट्स FWO पाकिस्तान में एक मेगा कंस्ट्रक्शन इदारे के तौर जाना जाता है, लेकिन हम कंस्ट्रक्शन के अलावा कुछ और काम भी करते हैं जिनको हमने यहाँ पे आज रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग और टनलिंग इंस्टीट्यूट का एक सबसे अहम जो है वो काम है, और उसके लिए हम यहाँ पे डिजिटल कंस्ट्रक्शन के जितने पैरामीटर्स हैं उनको सामने रखते हुए डेली कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा कि कोविड के दिनों 40 दिनों के अंदर 250 बेड होटल जो है वो तैयार किया था। इसके लिए बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सिस्टम को यूज किया था ताकि वो जल्द से कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट आ सके। तो इदारा जो CTTI यानी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग है वो सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है, जिसमें हम पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। IT की साइड से, तो मेरा ताल्लुक IT से, तो IT की साइड से नेटवर्क पाकिस्तान में तमाम मोटरवेज की और जो MTech इंटेलिजेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके बारे में डिस्प्ले हमने लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें पाकिस्तान ने पाकिस्तान के टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के ऑल ओवर पाकिस्तान एक नया नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश किया है फाइबर का, और फ्रॉम कराची पेशावर वो कंप्लीट हो जाएगा तकरीबन अगले साल शुरू में, और फिर तमाम मोड जो है वो हमारी कनेक्टेड होंगी, और आप पेशावर से चलिए और सत्तर तक बगैर किसी जगह आप टॉल पेमेंट जो है वो हो, और जब इंशाल्लाह सखर से हैदराबाद तक की मोटर कंप्लीट हो तो पेशावर से कराची तक आप सिंगल लिंक के ऊपर और सिंगल केबल जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं। The backup data we presented a form of the transmission, Federal State Commission, please, that's what 6 hours or then media, this government parties. We are ready to be on this party. Large exhibitions are 2020, better known by them. Ladies and gentlemen, we entered the national exhibition industry by organizing the Idea in the year 1000 at Expo Sakrasi, 125 international visitors and 150 foreign delegates. During the last day, Idea has grown steadily in space, volume, exhibitors and foreign delegates. In Idea 2018, we had a record participation of 524 exhibitors and 239 delegates representing 44 countries. And we are lucky that General is here who was the region, and we had a record participation across the world. The opportunity to explain the idea got adversely affected when Idea 2020 has rescheduled the COVID, which was one of the worst times of our living. World in general and Pakistan in particular fought with courage and nation. COVID is still not over, but we have learned how to live with it. Ladies and gentlemen, I am happy to share that the 11th edition of Idea is scheduled from 15 to 18 November 2022, the year of 75th celebration of independence of Pakistan. What a proud moment. Despite a gap of 4 years, we have received booking for more than 70% of the available space state to date. Needless to say that Idea 2022 will be much bigger size and stature than ever before, inshallah. We are also in the process of extending invitation to the defense delegation of around 85 countries.
and expect to receive positive response from the honorable invitees. IDS has established itself as an attractive and grand value to promote mutual understanding, trust, friendship, and cooperation. In this regard, Pakistan's defense industry and defense industry offer a great opportunity to the defense industry of the developed world. Ladies and gentlemen, it presents Pakistan's large defense industry to the outside world by showcasing Pakistan's defense production capability in the casual talent, aimed at exploring ways and means of partnership in defense production through joint ventures, outsourcing, and cooperation. Ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity to share a vision of IDA, which is twofold. On one hand, it aims at increasing space for joint cooperation between Pakistan public and private enterprises with their regional and global partners, while on the other hand, it is meant to enhance the possibilities of public-private partnership, providing a unique opportunity to our friends from friendly countries to visit Pakistan, sit together, interact with each other, collaborate, cooperate to build defense ties, and find solutions to problems confronting the region and the world. I wish to make a special mention of Ministry of Commerce as well as the Trade Development Authority of Pakistan for their all support and availability of Expo Center Karachi as a venue for the IDEAS 2022. I would also like to thank Ministry of Communication and Director General for Pakistan Post for according approval for issuance of commemorative postage stamp on 14th August 2022, signifying the holding of 11th edition of IDEAS in 75th year of celebration of independence of Pakistan. May I also mention that the Government of Sindh and Karachi District Administration have always been forthcoming and very supportive of holding this mega event in Karachi. I would also like to thank Badar Expo Solution, our event organizer, for his untiring efforts and wholehearted. Ladies and gentlemen, in the end, I would like to thank all the worthy guests for accepting the invitation to attend this ceremony. Honorable Defence Minister, we are personally grateful for your presence on this occasion. I thank you all, ladies and gentlemen. Pakistan Zindabad. जिस तरीके से जब हम आइडियाज़ की बात करते हैं तो आइडियाज़ जो है ये इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो तकरीबन कोई 50+ कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन होती है और जब 50 कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन होती है तो आप कुछ समझ सकते हैं कि शो का साइज़ और चीज़ें जो हैं वो किस लेवल पे चला जाता है, जहाँ पे हमारे पास सारे चीफ्स के काउंटर पार्ट्स आ रहे होते हैं, दुनिया से डेलीगेशंस की पार्टिसिपेशन हो रही होती है और ये पाकिस्तान का एक नाम जो है पूरी दुनिया के अंदर एक प्रोजेक्ट हो रहा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा शो जो है इस दफ़ा दोबारा 15 to 18 नवंबर को इंशाल्लाह कराची एक्सपो सेंटर में होगा। आज इसकी हमारी सारी सॉफ्ट लॉन्च थी जिसको ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको इनॉग्रेट किया। तो हमारा असल इसके अंदर मकसद है कि इसके अंदर हम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बढ़ाएं और इस शो के अंदर हमारी जितनी डिफेंस इंडस्ट्री है वो सारी की सारी यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करती है। और इसके साथ साथ मेरा हमेशा से एक ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ है इसको हम एक तो प्रमोट करें और दुनिया को हम ये दिखाएं। जिस तरीके से इस वक्त चीफ की भी एक पॉलिसी है कि हम सेल्फ इंडिजनाइजेशन के ऊपर जाएं और हम अपनी खुद से पाकिस्तान जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करे, मैन्युफैक्चर करे यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से हमने इस पूरे इवेंट के ऊपर जिस तरीके से हम अपने लोकल एग्जिबिटर्स को जो है या मैन्युफैक्चरर्स को जो है वो हम सब्सिडी देते हैं, तो उसमें उनका मकसद ही यही है कि हम उनको इस फोरम पे लाएं और लाने के बाद जो हमारे पास दुनिया से डेलीगेशंस आती है, पार्टिसिपेशन आती है, ताकि ये उनको ऑर्डर्स मिल सकें और वो एक बिजनेस जनरेट कर सकें और इसके साथ साथ हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर नई एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट की जाए। मैं ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जितने भी हमारे जितने ये डिफेंस इदारे हैं और जितने हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक बदर एक्सपो के ऊपर ट्रस्ट है और ये एक भारी जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बदर एक्सपो इसको मेरी पूरी टीम, मतलब ये मिल के एक बंदे का काम नहीं है, इसमें सारी टीम एफर्ट्स होती हैं और ये पूरी टीम जो है वो मिल के अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम कर रही है। और इसमें जितना कोऑर्डिनेशन और जिस टाइप की चीज़ें होती हैं आप उसको समझ सकते हैं वो कितना एक पीक टाइम होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरा टीम उसको उसी के अकॉर्डिंगली जहाँ जैसी जो रिक्वायरमेंट्स उसको मैनेज करती है। तो बस अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक ये काम दिया, ये चीज़ें दी कि जहाँ पे लोग कंपनी के ऊपर और बदर एक्सपो के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ये एक और बड़ी खुशाइन बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह के 75 इयर्स हमारे कंट्री को जो है वो कंप्लीट हो गए और आप जैसे देखते हैं कि ये साल आइडियाज़ का जो है वो भी इंशाल्लाह ताला उसकी पूरी एक सेलिब्रेशन इंशाल्लाह की जाएंगी आइडियाज़ के अंदर। और हम इंशाल्लाह जिस तरीके से आज आपने सॉफ्ट लॉन्च में भी देखा कि हमने एक स्टेम बनाई है जिसके ऊपर 75 इयर्स को हमने उसके अंदर प्रोजेक्ट किया है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान का इवेंट है और पाकिस्तान फोर्सेस का इवेंट है। इंशाल्लाह ये उसी तरीके से ये सक्सेसफुल इंशाल्लाह ये इवेंट होगा। I'm Rabia Pirzada. I'm the marketing manager at Pakistan Oxygen Company. Pakistan Oxygen is in operation since 1935. So before creation of Pakistan, that time it used to be Indian Acetylene Company, and from then it changed its several names. It became Pakistan Oxygen, then it changed to British Oxygen, Linde, and we are back to Pakistan Oxygen from 2019. Basically, we are the leading manufacturer of industrial and medical gases, and we have a huge portfolio, and you can call it a one-stop solution for the hard good needs of industry. Ideas is a very good platform to exhibit what Pakistan is doing, and as to our company, we can see many international exhibitors over here, and we can promote our products outside of Pakistan. We have served in COVID days and received appreciation letter from NCOC as well. People who are coming over here, when they see the name of Oxygen, they ask us that what we have been doing or how we have served the country in COVID days. And even people outside of Pakistan, they feel glad to learn that about our services which have been in the crucial days when Pakistan was going through very difficult times. Pakistan has imported a European manufacturing for electrodes, and our very renowned brand, they comprise of Zodi, Fortrax, Matador, 47, 48. In COVID days when people were running after oxygen and weren't finding it anywhere, that time we launched this portable oxygen canister. It's indigenous product. This is a 13-liter can of oxygen, which is, you can see it weighs just half a kg. And it allows 250 puffs. So it was very much in demand in COVID days when people weren't finding oxygen. They would keep it at home. It has been importing this product for many years. Now we are manufacturing house completely. This is basically, it is installed on the tanks, the storage tanks. They could be liquid storage tanks or grains, whatever. So what it does, it gives you the real-time data of what inside the tank is. For example, there's a liquid oxygen tank which is installed in a hospital, and hospital doesn't realize that what level inside is and when do they need to replenish. आइडियाज़ 2022 जो कि वैसे एक बाइनल इवेंट हर 2 साल के बाद होता है, लेकिन इस दफ़ा कोविड-19 से जब 2020 में हम इसमें कंडक्ट करा सके तो ये अब 4 साल के बाद है, तो उसकी वजह से अब इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है और हम अल्लाह पूरी तरह इसके लिए तैयार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 2018 में जिस तरह कंडक्ट किया था उससे मज़ीद बेहतर होगा और इंटरनेशनल पार्टिसिपेट ज़्यादा होगा। हमारे पास काफ़ी हाई लेवल डेलीगेशंस की कन्फर्मेशन आ चुकी हैं जो कि पूरी दुनिया के तमाम बनों से हमारे पास डिग्नेटरीज आ रहे हैं और एग्जिबिटर्स भी हमारे पास यूरोप या हर तरह से बड़े लेवल के एग्जिबिटर्स इस एग्जीबिशन में आ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस दफ़ा हमने बहुत ज़्यादा जो चीज़ के ऊपर फोकस किया है तो ये है कि न सिर्फ हम अपनी जो पब्लिक सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसके साथ अपने जो प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी इसके लूप लेके आएँ और उनको भी एक आउटलेट ताकि वो दुनिया के सामने अपना जो प्रोडक्शन है उसको शोकेस कर सके। जिस पर भी तरह की कोई बिजनेस एक्टिविटी होती है जहाँ पर इंटरनेशनल लोग भी आए हैं, आपके लोकल इंडस्ट्री भी मौजूद है, में बहुत बड़ा उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। न सिर्फ यहाँ के जो दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग हैं या जो हमारे लोकल लोग हैं कि वो जो दूसरे मुल्कों से आने वाली कंपनीज हैं, OEMs हैं, उनके साथ
इंटरेक्ट करें, उसके साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं और इसके साथ साथ जो हमारी लोकल कंपनीज हैं एट टाइम्स जॉइंट वेंचर्स होते हैं बाहर के मुल्कों की कंपनी के साथ, तो डेफिनेटली ये हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा और हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक साइन लेवल का ये एक इवेंट है जिसमें पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और हाई लेवल जैसा कि मैंने आपको बताया आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ जब एक दफ़ा पाकिस्तान में उसका इनेकाद किया जाएगा तो इसका बहुत ज़बरदस्त और बहुत पॉजिटिव मैसेज एक लोग यहाँ पर आएंगे वो ले जाएंगे, उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान भी इस लेवल का एक बहुत बड़ा इवेंट आ सकता है। और तमाम तर जो अल्लाह का बहुत शुक्र है हमारे साथ वो सिक्योरिटी चैलेंजेस नहीं हैं जो हुआ करते थे और इस तरीके की चीज़। और आजकल जो फ्लड के बाद के हालात हैं उसके बाद इस तरह का इवेंट कंडक्ट होना ये हमारी इकोनॉमी को भी इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेमिनार हम मुनक्किद करवा रहे हैं जो कि बेसिकली 2 सेगमेंट्स में होगा। इसका सेगमेंट 1 जो है वो आइडियाज़ के पहले ही उसका इनेकाद किया जाएगा और उसके अंदर 4 स्पीकर्स होंगे जो कि एक्सपर्ट्स होंगे आर्ट इंटेलिजेंस के। और इसी तरह जो सेकंड ईयर का जो नेक्स्ट डे पे कंडक्ट करा जाएगा दैट वुड बी द सेकंड डे आइडियाज़। उसके अंदर जो हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने इस पे काम किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वो आके अपना काम प्रेजेंट करेंगे। और ये इन प्रेजेंट करने वालों के अलावा 2 दिन हमने अपने स्टूडेंट्स को और यंग ऑफिसर्स को इन्वाइट किया हुआ, उनको सुनेंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसे सीख के जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे ज़ोर शोर से, चाहे वो कराची की सड़कें हों, आइडियाज़ के जो वेन्यू है कराची एक्सपो सेंटर उस बाहर की कोई जगह हो, कराची एक्सपो सेंटर के अंदर का जो आउटडोर एरिया है और जो एग्जीबिशन हॉल्स का एरिया, सब के ऊपर बहुत ज़ोर शोर से काम हो रहा है। और इंशाल्लाह हम अपने टाइमलाइन को मीट करते हुए स्टार्ट से पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। गवर्नमेंट के बारे में मैं ये कहूँगा कि उनकी पैटर्नेज हमेशा हमें मिलती है, पास्ट में भी मिली और इस दफ़ा भी आपने खुद देखा कि हमारी जो 2 दिन कमेटी मीटिंग्स थी दे वर हेल्ड एट सीएम हाउस। सीएम साहब वेरी काइंड ऑफ हिम, उन्होंने उसको शेयर की और वहाँ पर तमाम सिंध गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स मौजूद, उनको जिस तरीके से सीएम की तरफ से इंस्ट्रक्शंस उनका बड़ा पॉजिटिव हमने इम्पैक्ट देखा कि जब सिंध गवर्नमेंट ने अपना साथ हमें दिया तो उससे चीज़ें बहुत बड़ी आसान हुई। देखिए, जब ये कंसीव हुआ था आइडिया कि भी आइडियाज़ करना है तो उस वक़्त मकसद यही था कि जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है उसको उजागर किया जाए और उसी को लेके जितनी भी एफर्ट्स हुई, इतना भी हमने लोगोस बनाए लाइक आर्म्स फॉर पीस और पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है इन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ फॉर द डिफेंस इक्विपमेंट एंड डिफेंस इंडस्ट्री, वो हाईलाइट नहीं हो रहा था जैसे होना चाहिए था। तो जब से आइडियाज़ आया है तो हमने अपने शोकेस करना शुरू किया है प्रोडक्ट्स को, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ एपो। तो उससे एक बड़ी पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का गया है और लोगों को पता चला है कि पाकिस्तान इतनी ताकत है, ऐसी पावर है कि जो डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत अच्छी चीज़ें बना रहा है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में भी बड़ी डिमांड है। सेक्टर को तो सपोर्ट करता ही करता है, मगर जो आइडियाज़ है ये ओवरऑल आपकी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। टूरिज्म भी इससे बढ़ता है, लोग जो बाहर से बहुत सारे डेलीगेशन आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं इसको अटेंड करने के लिए बाहर से, वो पाकिस्तान को देखते हैं। वो पाकिस्तान को देखने के बाद उनको अंदाज़ा होता है कि ये पीसफुल और अच्छा कंट्री है, खाने अच्छे हैं, लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ डेवलपमेंट अच्छी हुई है। तो अदरवाइज़ जो उनके कॉन्सेप्ट होता है पता नहीं, जब वो खबरों में देखते हैं तो कोई गार के ज़माने में चले गए हैं, मगर जब यहाँ आते हैं नाइस रोड्स बनी हुई हैं, नाइस बिल्डिंग्स हैं, ईटरीज अच्छी हैं, इसके अलावा मॉल्स हैं, तो उन्हें पता चलता है यार ये तो इस वन ऑफ द मॉडर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो वो फिर जाके अपना इमेज हमारा जो है वो पॉजिटिव इसी तरह लोगों को बताते हैं और मेरा ख्याल है कि इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड इमेंसली एंड पॉजिटिवली टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान सिंस द टाइम आइडियाज़ हैव स्टार्टेड। एंड बदर एक्सपो जो है वो और आइडियाज़ दोनों आप समझें कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे लगता है कि भाई ये इन्होंने इतनी मेहनत की है कि इन्होंने पाकिस्तान के इमेज को भी उजागर किया है और इस चीज़ को नहीं देखा कि इनका फ़ायदा या नुकसान क्या है, इन्होंने सिर्फ ये देखा है कि पाकिस्तान का इमेज कैसे बेहतर होगा, उसी हिसाब से फिर इन्होंने इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया है। तो बदर एक्सपो का बहुत कंट्रीब्यूशन है टू हाईलाइट आइडियाज़, टू पुट आइडियाज़ ऑन अ वेरी हायर पेडेस्टल। अल्हम्दुलिल्लाह।
Ideas 2020 brings together stakeholders across diverse defense industries. The exhibition offers a platform for G2G, B2G, B2B actions, joint ventures and investments in defense production. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The board exhibition offers a platform for G2G, B2G, B2B interactions, joint ventures and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The pitch of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Assalamualaikum. हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. It was really great visiting all the events related to many countries here. My father is also in army. We are proud to be daughters of a person who's in army. We love Pakistan and it was really a great experience. Really proud to be a Pakistani. Thank you.
अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाद हसन है और मैं यहाँ पे हेल्प टेक्नोलॉजी की तरफ से हूँ और हम यहाँ पे हेल्प की तरफ से फीमेल्स के लिए सलून शॉर्ट्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम थ्रेडिंग दे रहे हैं, नेल पॉलिश दे रहे हैं और मेहंदी का आप देख सकते हैं सेटअप है। और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है बदर एक्सपो ने और इस तरह की जो है वो एक्सपोज होने चाहिए, ख़ासतौर पे कराची में हमारी जनरेशन को, हमारी फीमेल्स को ख़ासतौर पे बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे काफ़ी क्राउड है, इस वक्त काफ़ी रश है, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं चीज़ों को, तो बहुत अच्छा लगा इन चीज़ों को लेकर। थैंक यू बदर एक्सपो के इस तरह का उन्होंने हमें चांस दिया, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम एक अच्छी चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and E2B interactions, joint ventures and investments in the production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on challenges within the defense sector. The discussion of ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Hello everyone, this is Sun from Narenco, China North Industries Corporation. Our corporation is an international defense company, and today expected our most advanced defense product like BTV main battle tank and SH-15 howitzer. We are very honored and delighted to exhibit here. Thank you all. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अनम फातिमा और आज जो है मैं बचत एक्सपो में आई हुई हूँ, एक्सपो सेंटर कराची में। तो यहाँ जो है काफ़ी डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं, ग्रॉसरी के स्टॉल्स हैं, फूड आइटम के स्टॉल्स हैं, कॉस्मेटिक्स है और कपड़े वगैरह हैं। तो काफ़ी अच्छी एक्सपो लगी हुई है और इवन के यहाँ पे 50% ऑफ भी दे रहे हैं हर चीज़ों पे। तो ये जो है ईद भी करीब है, तो आप लोग आएँ, विज़िट करें और डिफरेंट स्टॉल्स को आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। और ईद करीब है, इसकी वजह से भी लोग जो हैं उनको चाहिए कि वो आएँ और यहाँ से ख़रीदारी करें और बहुत अच्छा रिस्पांस है। और मैं यहाँ पे अभी आई हूँ तो देख रही हूँ स्टॉल्स, हर स्टॉल्स पे जो है वो डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं और बहुत अच्छी जो है ना वो एग्जीबिशन लगी हुई है। थैंक यू। कैसा हमारा ये बता एक्सपो पहला एक्सपीरियंस है जी? कैसा? जी नहीं अच्छा है। कुछ फायदा हुआ? हाँ फायदा हुआ, प्याज आलू वगैरह सब्जी में, फल फ्रूट में बहुत अच्छा फायदा हुआ। अच्छा, इन तमाम चीज़ों में आपको फायदा हुआ है, तो ये आप चाहेंगी कि ये होना चाहिए बार बार? होना चाहिए बार बार। और खासकर एक चीज़ का ख्याल रखा गया कि जो वाइट कॉलर लोग उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, तो ये हमने जो कोशिश आपको पसंद आई? जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। It's 9 p.m. Ideas 2020 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, B2B interactions, joint ventures and investments in the production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निदा है। मैं SSJDC लैब में पैथोलॉजिस्ट वर्क करती हूँ। मेरे साथ पर्दा ली हैं, ये मेरे साथ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही हैं। हम लोग यहाँ पे आज हेल्थ एक्सपो में आए हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था बदर वालों की तरफ से, बहुत अच्छा, मतलब डिफरेंट कैटेगरी से हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे हम गैदर हुए हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव
ये रहा है हम लोगों के लिए। अब मैं अपनी लैब के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। हम लोगों की लैब JDC फ्री डायग्नोस्टिक लैब है, जहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 250 से ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। इस वक्त हमारी कैपेसिटी है मोर देन 1 लाख टेस्ट करने की पर डे, और हमारे पास जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जैसे कि जफ़र भाई कहते हैं कि जिसका खून लाल है वो हमारे पास आ सकता है टेस्ट करवाने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures, and investments in the production sector. A strategic seminar will also help facilitate discussion on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures, and investments in the production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 4th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. पूरे मुल्क से यहाँ मवेशी मंडी 2024 जो कराची के एक ज़बरदस्त किस्म के त्यौहार की तरह ही मनाई जाती है, और हम सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं, तो जानवर बड़ी तादाद में पहुँचना शुरू हो गए। आपकी पसंद के हर तरह के जानवर जो है वो यहाँ पर दस्तयाब होंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम के तमाम जानवर हैं ये मुख्तलिफ जगहों से आए और लोग यहाँ पहुँच गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नेक मोहम्मद। नेक मोहम्मद, आप कहाँ से आए? मैं कनकोट से आया हूँ। कनकोट से आए, तो कितने जानवर लेकर आए? 32 जानवर लेकर के आए हूँ। और वैसे कितने आ चुके हैं अब तक जानवर? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे फर्स्ट गाड़ी जो है दोनों मेरे उतरे हैं। अच्छा। और उसके बाद जो है काफ़ी जानवर आ चुके हैं। नेक मोहम्मद भाई ने पहली गाड़ी उतारी है मवेशी मंडी में, तो नेक काम हुआ है, तो फिर देखे ना आगे इसका रास्ते बनेंगे। नेक मोहम्मद भाई गुड लक, आप जो आए ख़रीदारी करने के लिए। और ये जो फीस वगैरह रखी गई है सब बेहतरीन है, इंतजामात आपके लिए जो किए गए खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक ठाक हैं, और सिक्योरिटी हर चीज़ जो तैनात किया गया, सब कुछ जो हम पहले ही उतरे हैं, फर्स्ट गाड़ी हमारे उतरे हैं तो इन्होंने सिक्योरिटी दे दिया, रेंजर्स की सिक्योरिटी दे दिया। उसके अलावा जो बाकी दूसरे सिक्योरिटी निज़ाम थे वो भी ठीक ठाक थे, जो उन्होंने दे दिया सिक्योरिटी हर चीज़। चलें, सिक्योरिटी इसका मकसद है कि तमाम व्यापारी जो यहाँ पर कारोबार करने के लिए आए, आपके लिए सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का मौका फराहम करने के लिए आए, वो सब लोग बहुत मुतमईन दिखाई दे रहे हैं कि सिक्योरिटी से लेके तमाम इंतजामात बहुत ज़बरदस्त हैं। निक मोहम्मद भाई थैंक यू वेरी मच, और गुड लक, अल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, सारे आप देख सकते हैं सच चुकी है यहाँ पर मवेशी मंडी। मैंने जैसे कहा ना कि कनकोट से नेक मोहम्मद साहब आए थे, और बड़ी तादाद में हम देखें ना तो यहाँ पर लोग जो है वो पहुँचना शुरू हो गए हैं, और स्टॉल्स भी यहाँ पे बन गए हैं, पान के केबिन खुल चुके हैं हर जगह पे। आप देखें तो रौनक लौट आई है इस वक्त मंडी में। और ये देखें ये क्या ज़बरदस्त किस्म के जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहजाद जी। शहजाद भाई कहाँ से आए आप? शेखुपुरा से। शेखुपुरा से, तो ये अंदाज़ा करें पंजाब से जानवर पहुँचे हैं, वहाँ आपने कनकोट देखा और यहाँ पे शेखुपुरा से। कैसा सब अरेंजमेंट वगैरह? खुश, बेहतरीन, मज़ा आ रहा है यहाँ पे? बस मज़ा आ रहा है, हर साल होने 16-17 साल होने आ रहे हैं। अच्छा, हर साल आते हैं? तो सब बेहतरीन है। कितने जानवर लेकर आए? अच्छी जानवर 36 लेके आए। 36 जानवर लेकर आए, सारे ऐसे ही तगड़े नजर आ रहे हैं? सारे इधर ऐसा तगड़े ना, वो सारे तोड़ आगे अपने जानवर। अच्छा, सारे भी आपके? आइए तो हमसे बात करते हुए चलते हैं। आपको क्या, आइए हमारे साथ बात करें थोड़ा सा। ये कैसा जो अरेंजमेंट्स आपके लिए किए गए हैं, आप व्यापारी यहाँ पर आए तो ये ठीक अरेंजमेंट है? मुतमईन है आप? सिक्योरिटी से लेके सारे इंतजाम तामन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तामन कर रहे हैं। सिक्योरिटी भी तामन कर रही है, फौजी भाई इतने होंगे ने, पानी पुनी सारा दे के जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा तामन कर रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा सारे लोग आपके आके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे जो सब आके ताउन, पानी से लेके कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है? कोई सानू परेशानी नहीं किसी काम की है। आज सानू 12-13 दिन हो गए आए नूं, बाकी हर साल ही आने, किसी साल भी ना परेशानी नहीं होने दी। अच्छा, किसी साल भी परेशानी नहीं हुई है? तो ये आप देख सकते हैं बच्चे ने अपने अगले साल दे, ये खीरे बच्चे ने सारे। अच्छा, हाँ जी, 1 साल के बच्चे? हाँ, ये 10 महीने दे, 11 महीने दे, अगले साल से पढ़ाई बस आते हैं। क्या आपने तैयार किए हैं यार? 10 महीने में क्या खिलाते हैं और आप भी क्या खाते हैं यार? खा रहे हैं, अगे देखो अगे वही खा रहे हैं।
तो आप भी माशाल्लाह जो है वो जबरदस्त पहलवान है पंजाब ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨ ਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੇਖੋਗਾ ਵੇ ਸੇਰਾ ਬੰਨਿਆ ਵਿੱਚ ये जरा देखें अंदर जरा दिखाएं तो सही ना यार ये जो काम हुआ हुआ है यहाँ पे आप जानवर देख सकते हैं किस आइए आइए जरा तो इधर आ जाएं आप मेरे साथ इधर आए ना आपके साथ बात होगी ये जरा ये क्या प्रोडक्ट है आपकी वैसे हम भी पहलवानी है पहलवान है बिल्कुल सही बात है पूरी मंडी में घूमे हैं ऐसा है वे बछड़ा कहीं नहीं ये बछड़ा तो भाई कौन सी नस्ल कौन सी है ये साहिवाल क्रॉस है साहिवाल क्रॉस भाई ये एक ही है मेरे ख्याल इस साइज की हाँ एक ही है कुछ मुझे बछड़ा देखो आपको पसंद लगा बहुत ही जबरदस्त किस्म का बछड़ा है भाई बहुत ही जो है ना अपना मज़ा आया और हम लोगों को भी बता रहे हैं पंजाब के शेर आपने देखे कि वाकई में शेर लेकर आए हुए हैं ये लोग ना पंजाब के आप ही शेर ने जरा देखें जरा अंदाज अपना बताएं आप ही शेर ने देखा पंजाब के शेर दोबारा बोलेंगे आप पंजाब के शेर हैं जानवर भी शेर हैं हम भी शेर हैं शेर आ चुके हैं जी मैदान में आप देख सकते हैं कि हमारी मंडी जो है वो मवेशी मंडी सज चुकी है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जानवर यहाँ पर पहुँच चुके हैं कोई पूरे मुल्क से यानी कि KPK से भी लोग आए हुए हैं और हर जगह से लोग आए हुए हैं यहाँ पर कैसा अरेंजमेंट्स वगैरह खुश हैं मुतमईन है मज़ा आ रहा है बेहतरीन माहौल है मंडी का माशाल्लाह पहले से भी बेहतर है बहुत ही बेहतर है फ्लाइट भी VIP हैं रास्ते भी खुले हैं पानी का जो इंतज़ाम है वो भी बेहतरीन है आप यानी कि बहुत मुतमईन है बहुत खुश हैं बेहतरीन बहुत ही बिल्कुल असल चीज़ है कि ये तमाम व्यापारी जो पूरे मुल्क से आते हैं इनका मुतमईन होना इनका खुश होना और आपने जिसको सुना होगा वो तमाम के तमाम लोग ख़ास मुतमईन दिखाई दिए हैं। वैसे मैं अगर थोड़ी सी आपको इस मंडी की डिटेल भी बता दूं तो उसके मुताबिक 2024 में 900 से 1000 एकड़ पर ये मंडी कायम हुई है। अगर आप देखें तो ये पूरा रकबा पीछे भी अगर आप दिखाएंगे तो दूर दूर तक 1000 एकड़ पर कायम की गई है, छोटी जगह नहीं है ये। उसके साथ साथ इसमें मजबूती तौर पर 20 ब्लॉक्स बनाए गए हैं और उन ब्लॉक्स की मैं बात कर लेता हूँ तो उसमें VVIP ब्लॉक भी है, VIP ब्लॉक भी है और नॉर्मल ब्लॉक भी है। तो तमाम के तमाम ब्लॉक आप लोगों के लिए जितने भी मवेशी मंडी में जितने व्यापारी आ रहे हैं सारे मुल्क से आ रहे हैं और आके अपना कारोबार करने के लिए पहुँचे तो 3 डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है जिसमें VVIP भी है, VIP भी है और एक नॉर्मल ब्लॉक भी है और इसके 2 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक नहीं है। व्यापारियों को पहले पाइए की बुनियाद पर यहाँ पर तमाम मुफ्त जगह दी जा रही है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनको व्यापारियों को यहाँ पे फराहम की गई है कि आएँ और आके आप बिज़नेस करें और इसके साथ साथ हमारे शहर के लोगों को यहाँ बसने वाले लोगों को सुन्नत इब्राहिमी बेहतर अंदाज से अदा करने का मौका मिले। उसके बाद अगर मैं आगे चलता हूँ तो कई और चीज़ें दिखाई देती हैं कि मंडी में दाखिला फ़ी और फ़ी ऊँट 4,250 रुपये है जबकि फ़ी की कीमत 2,000 रुपये रखी गई है। तो एक नई कीमत रखी गई है मंडी में। जब आप अपने जानवर लेके आते हैं आपने देखा होगा एक बड़ी तादाद में जानवर अब भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ नमाजियों के लिए ख़ास तौर पर मंडी में जगह जगह जो है वो मस्जिद की सहूलत फराहम की गई है। इसके साथ साथ हर जगह पे जो लोग भी यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आएंगे उनके लिए टॉयलेट्स रखे गए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने आपको दिखाया था कि होटल से लेके जूस के स्टॉल और दीगर स्टॉल्स ऑलरेडी यहाँ पर कायम हो गए। बहुत सारी सहूलतें यहाँ पर फराहम की गई हैं जिनमें अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें ख़वातीन के लिए भी अलहदा टॉयलेट्स हैं। मैं एक मरतबा फिर आपको बताऊँ कि बहुत सारी ख़वातीन आना चाहती हैं बकरा पीढ़ी तो वो नहीं आ पाती सहूलतों की वजह से। तो आपके लिए नमाज़ पढ़ने की सहूलत भी है ख़वातीन के लिए, एट द सेम टाइम आपके लिए टॉयलेट्स खाने पीने का इंतज़ाम भी यहाँ मवेशी मंडी में किया गया है। इसके साथ साथ पक्के सीमेंट के ब्लॉक बनाए गए हैं बहुत सारे पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए। बहुत सारे इक़दाम यहाँ किए गए। मवेशी मंडी में बैंक की सहूलत भी मौजूद है तो बैंक की सहूलत भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी 24 घंटे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो कोई चीज़ छोड़ी नहीं है मुंतज़मीन ने। जो मसाइल पहले रहे हैं मसाइल को दूर किया जाए। इस दफ़ा इंशाअल्लाह जो लोग भी मवेशी मंडी ख़रीदारी के लिए आएंगे उन्हें कोई मसला नहीं होगा।
कुछ पुरानी वीडियोस वगैरह होती हैं, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल आप व्यापारियों से भी सुन चुकें, लोगों से भी सुन चुकें, तो तमाम के तमाम लोग मुतमईन हैं, सबको इत्मीनान है। और आप इत्मीनान से आएँ और आके अपना जानवर यहाँ ख़रीदें कुर्बानी के लिए और सुन्नत इब्राहिमी अदा करें। नसीम राजपूत आपसे यहाँ मुलाकात करता रहेगा, जल्द से फिर मुलाकात हो रही है। मवेशी मंडी में तेज़ी के साथ जानवर आ रहे हैं, अभी तो वक्त खास बाकी है, लेकिन पूरे मुल्क से जानवर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिनको जल्दी ख़रीदारी करनी होती है जानवरों की, वो इस वक्त आके बासानी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जानवर के साथ मानूस होते हैं, उसको पालते हैं, 15-20 रखते हैं, तो फिर यहाँ आ जाएँ, आपको हर चीज़ बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन रेट में मैसर होगी। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ मवेशी मंडी से इजाज़त चाहते हैं, और आएँ और आप आके ख़रीदारी करें। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर एलिया है। मैं हेल्थ सर्विसेज एकेडमी में बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर को हेड करता हूं। आज हम एक BIC की प्रोडक्ट, जो कि हमारे वर्दी वाइस चांसलर डॉक्टर शहजाद अली खान साहब का आइडिया था, जिसको हमने अमली जामा पे है हमारे इंक्यूबेशन सेंटर ने, और हमने एक ध्यान के नाम से एक बॉट बनाया है जो कि घर में बच्चों का ध्यान रखेगा, उनके साथ इंटरव्यू सेशन करेगा। ये AI बेस होगा और इसके अलावा स्टोरीज आएगा, उनके साथ इंटरेक्शन रखेगा, रिप्लाई करेगा, और बहुत सारे और टीचिंग में भी मदद देगा। शुरू में हमने ये प्रोडक्ट सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बनाया था, लेकिन अभी 7 मंथ में हमने ये प्रोडक्ट कंप्लीट किया है। तो अभी ये ब्रिगेडियर रफ़ीक साहब, जो कि नेवल कमांडर भी हैं यहाँ कराची में, तो हम इनके अल-शिफा हॉस्पिटल में भी इसको इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं। जी, मेरा नाम शाद हसन है और मैं यहाँ पे हेल्प टेक्नोलॉजी की तरफ से हूँ, और हम यहाँ पे हेल्प की तरफ से फीमेल्स के लिए सलून शॉर्ट्स सर्विसेज प्रोवाइड हैं, जिसमें हम 3D दे रहे हैं, नेल पॉलिश दे रहे हैं, और मेहंदी का आप देख सकते हैं सेटअप है। और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है बदर एक्सपो ने, और इस तरह की जो है वो एक्सपोज होने चाहिए। ख़ासतौर पे कराची में हमारी जनरेशन को, हमारी फीमेल्स को ख़ासतौर पे बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पे, बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी क्राउड है, काफ़ी रश है, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं चीज़ों को, तो बहुत अच्छा लगा इन चीज़ों को लेके। थैंक यू बदर एक्सपो के इस तरह का उन्होंने हमें चांस दिया, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम एक अच्छी चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, ये बदर एक्सपो की तरफ से जो एग्जीबिशन लगी है बचत बाज़ार की, उसमें इनोवेटिव की तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और हमारा ये जितने भी स्टॉल आप देख रहे हैं, सारा प्रीमियम क्वालिटी लगा हुआ है, लोकल मार्केट में हमारा चल रहा है। इस पर हम टोटल जो अपने डिस्काउंट दे रहे हैं वो फ्लैट 20% दे रहे हैं मार्केट के। अगर मार्केट में एक चीज़ 240 रुपये की है तो हम वो 200 रुपये की ऑफर कर रहे हैं, और ये मार्केट में जो प्राइस है ये 200 का है, हम 150 का यहाँ सेल आउट कर रहे हैं। एक्सपो का अच्छा एक इवेंट है, और पिछले साल हमने लगाया था, इस साल भी हम लगा रहे हैं, तो अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट दिया, लोगों को जो फैसिलिटेट किया जा रहा है, और हम भी उस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपना इनपुट डाल रहे हैं। विश्व मंडी में इंतजामात का आगाज़ हो गया। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ स्टॉल्स यहाँ लग चुके हैं। सामने आप देखते हैं तो होटल्स तामीर हो चुकी हैं। आप हर चीज़ यहाँ पे आपकी सहूलत के लिए अवेलेबल है। अगर आप देखें तो ये तमाम के तमाम स्टॉल्स अभी खासे दिन बाकी हैं, लेकिन इसके बावजूद सजना शुरू हो गई है हमारी मवेशी मंडी। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको पानी के जूस, पानी, जो भी आपको चीज़ रिक्वायर होगी वो तमाम की तमाम आपको अवेलेबल होगी यहाँ पर।
2020 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4th exhibition offers a platform for 2G, B2G, and B2B directions, ventures, and investments in the defense sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions global changes within the defense. The 12th edition of IA will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. तासीर अहमद में नाम है, मैं बेसिकली असिस्टेंट मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग हूँ। ये हमारा बेसिकली स्टॉल है अलबशीर कस्टम फैब्रिक का। ये अलबशीर ग्रुप है हमारा, जिसमें हमारे पास टोयोटा की डीलरशिप्स हैं, एमजी की डीलरशिप है, जैक फॉरलैंड ट्रक की डीलरशिप है, 2-3 हमारा चाइनीज़ वेरिएंट्स हैं, और उसके अलावा हमारा कस्टमाइज फैब्रिकेशन का काम है। ये जितने भी गाड़ियाँ होती हैं, एम्बुलेंसेज, फायर ट्रक्स, रेस्क्यू व्हीकल्स, कार्गो ट्रक्स, लग्जरी व्हीकल्स, मोटर होम, ये जितनी किस्म की गाड़ियाँ होती हैं सब पे हम फैब्रिकेशन करते हैं। और इसके अलावा हम EN सर्टिफाइड भी हैं, CE सर्टिफिकेशन भी हमारे पास है, ISO सर्टिफिकेशन भी है हम। और इसके अलावा तमाम किस्म के जो ब्रांड्स हमारे पास, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो व्हीकल सेल के अंदर भी हमारी जो है वो सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा कंप्लीट सोल्यूशन हम ऑन व्हील प्रोवाइड करते हैं। उसमें आपके पास कोई भी गाड़ी हो, वो टोयोटा हाईएस हो, वो आपके पास कोई फायर ट्रक है या किसी भी किस्म की गाड़ी है, उस पर आपने कुछ भी बनवाना हो तो हम उस पर बना देते हैं। ये हमारा ओवरऑल है। हमने यहाँ पे एक्सपो पे आए हुए हैं, या देख रहे हैं हमने एक फायर बाइक लगाई हुई है, रेस्क्यू बाइक है। ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर एम्बुलेंस जा सकती वहाँ के ऊपर बाइक ये लेके आ सकते हैं। इसके अलावा पीछे एम्बुलेंसेज भी हैं और छोटी गाड़ी भी है, बड़ी गाड़ी भी है। इन सब पे हमने जो है वो यहाँ पर हमने स्टॉल में एग्जिबिट की हुई है लोगों को दिखाने के लिए। थैंक यू। मैं MD फूड इंडस्ट्रीज़ का CEO आप लोग से मुखातिब हूँ। आज हमने यहाँ पर बदर एक्सपो की हिसाब से जो यहाँ पर एग्जीबिशन हो रहा है, ठीक है, उसके हवाले से हमने डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह लॉन्च किए हैं यहाँ पर, और हम तकरीबन 15 to 20% तक अपने प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, हमारी एग्जिस्टिंग जी के ब्रांड से जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं उस पर डिस्काउंट्स दे रहे हैं। और इसके अलावा हमने प्रिंगल्स का सब्स्टिट्यूट भी लॉन्च किया पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसको भी हम बहुत रिजनेबल रेट्स पे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे ऑफर कर रहे हैं। इस तरह हमने और मज़ीद इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के भी हमने सब्स्टिट्यूट यहाँ पर हमने नुमाइश के लिए भी रखे हैं और लोग भी रखे हैं कि लोग आ सकते हैं, खरीद भी सकते हैं और फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और मैं आखिर में बदर एक्सपो का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म अता किया, और मैं लोगों को भी चाहता हूँ इसको आके अवेल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू। इस वक्त हम जा रहे हैं मवेशी मंडी और सुपर हाईवे से जस्ट हमने लेफ्ट टर्न लिया है। अगर आपने देखी होगी सब्ज़ी मंडी, और सब्ज़ी मंडी के बाद फ़ौरन एक बड़ा फेमस अल हबीब होटल आता है, उसके फ़ौरन बाद नॉर्दर्न बाईपास का रास्ता मुड़ रहा है जो रास्ता कोयटा को भी जाता है। हम जस्ट उससे मुड़े, और अगर हम वहाँ से मुड़ते हैं तो फिर आप गूगल मैप में ज़रूर देख सकते हैं कि 8 मिनट का रास्ता, तकरीबन 1 मिनट हम और चलें तो 9 मिनट का रास्ता है जहाँ से हम मुड़े हैं नॉर्दर्न बाईपास से। और आप देख सकते हैं ये रोड जिस तरीके का है, बेहतरीन किस्म का रोड बना हुआ है, तमाम की तमाम सहूलतें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और जैसे ही आप नॉर्दर्न बाईपास से तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर चलेंगे, तकरीबन 7 किलोमीटर, तो ये नॉर्दर्न बाईपास का रोड आप देख रहे हैं। यहाँ सुपर हाईवे से हम लोग आए हैं यहाँ, और यहाँ आने के बाद लतीफ़ ग्रीन सिटी के नाम से आपको ये पीछे बोर्ड दिखाई देगा, ये इलाका लतीफ़ ग्रीन सिटी की जानिब जा रहा है। और यहाँ आप वैसे भी देख सकते हैं मवेशी मंडी, कैटल मंडी का एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपको तकरीबन 7-8 किलोमीटर सुपर हाईवे के बाद यहाँ दस्तयाब होगा। और उसके बाद आप लतीफ़ ग्रीन सिटी को जो रास्ता जा रहा है आप इसके लिए चले जाएंगे। आप जिस जानिब देखेंगे तो फिर आपको मेरे पीछे इधर देखेंगे तो आपको सिक्योरिटी खड़ी भी दिखाई देगी, बेहतर अंदाज से काम हो रहा है। और अगर आप मेरे इस जानिब भी देखेंगे तो आपको प्रॉपर सिक्योरिटी खड़ी हुई दिखाई देगी। यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म के इंतजाम किए गए ताकि आप बेहतर अंदाज से आके सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकें।
कि इस मुल्क में जहां माशी बहरान अपने अरूज पर है और लोग बेयारो मददगार इंतजार में हैं, लेकिन एक और बात मुझे समझ नहीं आई कि हम या तो जानते बूझते या अनजाने गरीबों को ये एहसास आते हैं कि आप गरीब हैं, यानी आप ऐसी लाइनों में लगे जहां गुर्बत का एहसास हो। ये मैं गवर्नमेंट साइड की बात कर रहा हूँ। एनजीओ तो जो अपना काम कर रही हैं उनको तो खराज तहसीन पेश करना चाहिए, लेकिन आज मैं ये अपने उन लोगों से कह रहा हूँ जो इस अंदाज से लोगों को रिलीफ देते हैं कि उसे गुर्बत का 100% यकीन हो जाए कि वो गरीब, यानी हमें खुशी होती है कि हम बड़े बड़े बैनर लगाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि ये रिलीफ बाजार है, ये बचत बाजार है, यहाँ गरीबों के लिए डिस्काउंट है। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। हमें उनके इस्तेकाक का और उसको मजरू ना करने का सबसे बड़ा एहसास होना चाहिए। हम अगर किसी को रिलीफ दे भी रहे हैं और वो जिसको दे रहे हैं वो अवाम है जिसकी वजह से हम इक़्तिदार में आए। तो आज इक़्तिदार में आकर उनसे जिनसे वोट मांगते हैं या जिनसे हम ये वक्त रखते हैं कि वो हमारे लिए खड़े होंगे, तो ये कैसा जुल्म है कि हम गरीब को ये एहसास इस शिद्दत से दिलाते हैं कि तुम गरीब हो, तुम गुर्बत की आखिरी लाइन पर हो, और हम कोई बादशाह हैं जो तुम पर ये एहसान कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए हमने यूटिलिटी स्टोर्स खोल दिए हैं, या हम तुम्हें चंद कतारों में खड़ा करके चंद लोगों को कम रेट के ऊपर या तो आप मुफ्त में दें तो आप समझेंगे आपने कोई बड़ा एहसान किया है। लेकिन अगर हम ये देखें कि आज ने जो बचत एक्सपो में ये इंतज़ाम और एहतमाम किया है, ये एक रिस्पेक्टफुल तरीका है जहाँ पर तमाम ही ब्रांड्स मौजूद हैं, और इनका या मेरा काम यह है कि हम उसको ये मेक श्योर करें कि वहाँ रेट्स कम हैं, और उसकी वजह ये नहीं है कि यहाँ लेने आने वाला कोई गरीब है। यहाँ हर वो शख्स मुझसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है, मुझसे ज़्यादा इज्जत रखता है अपने घर में, अपने ख़ानदान में। तो हम बार बार ये तस्करा ना करें कि ये हमने गरीबों के लिए या कोई मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा एहसान कर दिया। यहाँ भी जो हो रहा है वो अपना कारोबार हो रहा है, और जो शख्स भी आता है वो खरीदता है। ये हमारा ज़रूर काम है कि महंगाई को कंट्रोल करें। असल लफ्ज़ ये होना चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इन हालात में जहाँ माशी बहरान मौजूद हो और हम अपनी आवाम के लिए कुछ ना करें। देखिए, अमीर लोग जो डिस्टिलिस्ट हैं वो क्या ख्वाहिश करते हैं, वो कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम है। हर मीटिंग्स में यही बात करते हैं। कभी आपने ये सुना है कि हुकूमत ये कह रही हो कि इन गरीब बिजनेसमैनों के लिए हमने इंटरेस्ट रेट कम कर दी? नहीं, वहां पे तो इंटरेस्ट रेट अपना हक समझ के कम करवाया जा रहा है, और गवर्नमेंट कहती है कि जी हमने बिजनेसमैनों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए रिलीफ दिया है कि इंटरेस्ट रेट कम कर। लेकिन मैं समझता हूँ ये लफ्ज हदफ होना चाहिए पाकिस्तान की से कि जहां आवाम के लिए अगर कोई रिलीफ हो तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि हमने मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए बड़ा एहसान कर दिया है। तो ये एहसान नहीं है, ये हमें रिलीफ देना है। यही हुकूमतों का काम होता है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए जो उनका हक है। जैसे एक बड़े सनतकार का इस मुल्क पे हक है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को कम कराए, बिजली के नर्ख कम कराए, गैस के नर्ख कम कराए। तो अगर गरीब को गरीब कह कह के बार बार उसकी तजलील की जाए, अगर मैं ये कहूँ कि गरीब को गरीब हमारी हुकूमती पॉलिसी ने तो बनाया है, वरना आज एक आम आदमी जब मुल्क से बाहर जाता है तो वो 2, 4, 5 साल में अमीर कैसे बन जाता है? क्योंकि वहाँ हुकूमतें उसको इज्जत देती हैं और उसको मौके फराहम करती हैं जो कि हमने नहीं दिए। मैं समझता हूँ कि अगर आज भी हम अज़्म कर लें, और मैं जो नसीर साहब खड़े हैं और ये मेरी बात की तायीद करेंगे, वरना ये ना कर दें,
अगर हम प्राइवेट सेक्टर में भी ये अहद कर लें कि हमने कराची एयरपोर्ट से लेकर सीबीयू तक और सेंट्रल में हैदरी तक अगले 5 सालों में 100 बिल्डिंग बनानी है, 100 मंजिला, क्यों नहीं बन सकती? आज अगर हम अहद कर लें तो 5 साल में ये 100 बिल्डिंग बन सकती हैं। और अगर ये 100 बिल्डिंगें बनना शुरू होंगी तो आपको हर किस्म की मुलाजमत अच्छे पैसों पे इस शहर में मैसर होगी। जब आप दुबई उतरते हैं तो आप ये 2000 बिल्डिंगें देखते हैं, आप मलेशिया उतरते हैं तो 2000 बिल्डिंगें हैं, दुबई में 2000 बिल्डिंगें, इस्तांबुल में 2000 बिल्डिंग। तो मेरे शहर में जो माशी हब है पाकिस्तान का, जहां पर अगर इमार के अंदर अपार्टमेंट लेने जाएं तो 20 करोड़ रुपए का है, तो अगर ये 100 बिल्डिंगें बनेगी तो ये 2 करोड़ का मिलेगा। तो इस पर हमने काम करना है और मैं समझता हूं कि ये पॉसिबल है और इसको भी मैं गवर्नर इनिशिएटिव का नाम दूंगा। प्राइवेट सेक्टर के बिल्डर्स को मैं बुलाऊंगा, उनके साथ बातचीत करूंगा और उनको कहूंगा कि कम रेट के ऊपर लोगों को रिहाई मंसूबे दें। जिस तरह यहाँ बचत एक्सपो है, इसी तरह कम रेट पर अगर ज्यादा बिल्डिंग्स बनेगी तो लोगों को रिहाइश भी सस्ती मिलेगी। हमने काम करना है, हमने इस शहर को, इस सूबे को तरक्की देनी है और ये मुमकिन है। आज कोई चीज ऐसी है जो नामुमकिन हो। हम ज़राई मुल्क है, पूरा सिंध जो है, हमारे पास जमीनें, अगर हम किसानों को, काश्तकारों को सही बीज, सही फैसिलिटीज दें तो आपकी क्रॉप जो है वो बेहतरीन हो सकती है, 4 गुना हो सकती है, 5 गुना हो सकती है। तो यहाँ पर अब सिलसिला, जिस तरह हमने गवर्नर हाउस में आईटी का इनिशिएटिव लिया, अल्लाह ताला ने कंप्लीट करवा दिया। आज 50,000 नौजवान बच्चे बच्चियां गवर्नर हाउस में पढ़ रहे हैं। आप मीडिया गवाह है। गवर्नर हाउस के दरवाजे रमजानुल मुबारक के लिए आज खुले हुए हैं आवाम के लिए, मीडिया गवाह है। गवर्नर हाउस से राशन ड्राइव आज तक हो रही है, मीडिया गवाह है। आज मैं आपके सामने ये ऐलान कर रहा हूं कि इस शहर डेवलपमेंट के लिए मैं काम करूंगा और इंशाअल्लाह ताला अगले 3 से 5 साल में हम 100 मंजिला 100 बिल्डिंग बनाएंगे। इसी तरह से जो इंडस्ट्री है जो कि खत्म होती जा रही है, आज मैं जिस इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठता हूं उसकी बहुत सारी मजबूरियां हैं। अगर उनको एड्रेस किया जाए तो क्या जरूरत है कि वो बांग्लादेश में जाके इंडस्ट्री बनाए, उसे क्या जरूरत है कि वो इस्तांबुल में जाए, तुर्किया में जाए। इसी शहर, इसी सूबे में इंडस्ट्री भी लगेगी, इमारतें भी लगेंगी, ज़राअत पर भी काम होगा। और मोदी जो भारत का वजीर आज़म है, जो उसने अभी 3 दिन पहले बयान दिया है कि मुझे दोबारा वोट दो क्योंकि मैंने 5 साल के इक़्तिदार में पाकिस्तान को भीख मांगने वाला मुल्क बन दिया। वो अपनी तकरीर में कह रहा है कि आज वो IMF के सामने हाथ फैलाए खड़ा है। तो हमें एक गैरतमंद कौम, एक पाकिस्तानी होने के नाते मुझ समेत सबको ये आज़म करना चाहिए कि मोदी के इस बयानिए का जवाब पाकिस्तान में तरक्की करके देना है। ज़बानी बातों से जमा खर्च कुछ नहीं होगा। आज मैं यहाँ आने से पहले कर्नल शहीद सैयद काशिफ अली के घर गया, उनके वालिद साहब से मिला, उनका जज्बा मैंने देखा। वो इस बात पे खुश हैं कि मेरे बेटे ने लोगों की जान बचाते हुए जान बचाना दी। उस बाद में नसीर सोमरों के पास दारुल हॉस्पिटल गया। वो फख्रे सिंध है, फख्रे पाकिस्तान है। हमारे पास हर किस्म का टैलेंट मौजूद है। हमारे पास जफर अब्बास हैं, हमारे पास सैलानी जैसे बशीर फारूकी साहब हैं। इन सबको बिठाना होगा, स्टेक होल्डर्स के साथ मैं बैठूंगा। कोई वजह नहीं है कि मेरा सूबा और मेरा मुल्क तरक्की ना कर सके। सिंध में कुदरती ज़खायर से माला माल मवाद मौजूद है। और एक और मैं आज ऐलान करना चाहता हूँ, मुझे बड़ा तनकीद की जाती है, जफर भी खड़े हैं, कहते हैं जी आप जो ये सारे काम करते इसलिए लोग आपके पीछे पड़े हैं कि इनको हटा दें। आपकी मेरिट, आपके काम आपके सामने आके खड़े हैं। तो जफर भाई, मैं आपके सामने ये ऐलान कर रहा हूँ कि तो सिर्फ कराची के गवर्नर हाउस में IT प्रोग्राम चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले 2 महीनों के अंदर अंदर ये थर में भी होगा, सखर में भी होगा, ये नवाबशाह में भी होगा, लाड़काना में भी होगा
और हैदराबाद में भी होगा इंशाअल्लाह ताला। आईटी की तमाम क्लासेस इन तमाम शहरों के अंदर मैं शुरू करने जा रहा हूँ। और मैं गवर्नमेंट से कुछ चाहिए, जिस तरह इस 50,000 बच्चों को हम जो $8,000 का कोर्स करवा रहे हैं फी बचा, और 50,000 ऑन साइट पढ़ रहा है, 4.5 लाख ऑनलाइन पढ़ रहा है। सिर्फ यही कहूंगा कि रोक सको तो रोक लो। आवाम के लिए दिन और रात खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की जात पे मुझे उम्मीद है कि हम आईटी से ही इस सूबे सिंध को इस पाकिस्तान में आईटी का सूबा बनाएंगे। ये शहर कराची आईटी सिटी बनेगा, और यहाँ हर पढ़ा लिखा नौजवान बच्चा बच्ची आईटी कोर्सेज करेगा और इस पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालेगा। और मैं उन सब के साथ शाना बचाना खड़ा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर निदा है। मैं जेडीसी लैब में पैथोलॉजिस्ट वर्क करती हूँ। मेरे साथ वर्दा ली हैं, ये मेरे साथ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही हैं। हम लोग यहाँ पे आज हेल्थ एक्सपो में आए हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था बदर वालों की तरफ से। बहुत अच्छा, मतलब डिफरेंट कैटेगरी से हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे हम गैदर हुए हैं, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये रहा है हम लोगों के लिए। अब मैं अपनी लैब के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। हम लोगों की लैब जेडीसी फ्री डायग्नोस्टिक लैब है, जहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 250 से ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। इस वक्त हमारी कैपेसिटी है मोर देन 1 लाख टेस्ट करने की पर डे। और हमारे पास जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जैसे कि जफर भाई कहते हैं कि जिसका फ़ोन लाल है वो हमारे पास आ सकता है टेस्ट करवाने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मवेशी मंडी में इंतजामात का आगाज़ हो गया। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ स्टॉल्स यहाँ लग चुके हैं। सामने आप देखते हैं तो होटल्स तामीर हो चुकी हैं। हर चीज़ यहाँ पे आपकी सहूलत के लिए अवेलेबल है। अगर आप देखें तो ये तमाम के तमाम स्टॉल्स अभी खासे दिन बाकी हैं, लेकिन इसके बावजूद सजना शुरू हो गई है हमारी मवेशी मंडी। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको पानी के जूस, पानी, जो भी आपको चीज़ रिक्वायर होगी वो तमाम की तमाम आपको अवेलेबल होगी यहाँ पर। Ideas 2020 brings together stakeholders across diverse defense industries. The Forex platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint venture and in product sector. A strategic seminar will also help facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. पूरे मुल्क से यहाँ मवेशी मंडी 2024 जो कराची के एक ज़बरदस्त किस्म के त्यौहार की तरह ही मनाई जाती है, और हम सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं, तो जानवर बड़ी तादाद में पहुँचना शुरू हो गए। आपकी पसंद के हर तरह के जानवर जो है वो यहाँ पर दस्तयाब होंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम के तमाम जानवर ये मुख्तलिफ जगहों से आए और लोग यहाँ पहुँच गए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नेक मोहम्मद। नेक मोहम्मद, आप कहाँ से आए? मैं कनकोट से आया हूँ। कनकोट से आए। कितने जानवर लेकर आए? 32 जानवर लेकर के आया हूँ। और वैसे कितने आ चुके हैं अब तक जानवर? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे फर्स्ट गाड़ी जो है दोनों मेरे उतरे हैं। अच्छा। उसके बाद जो है काफ़ी जानवर आ चुके हैं। नेक मोहम्मद भाई ने पहली गाड़ी उतारी है मवेशी मंडी में, तो नेक काम हुआ है, तो फिर देखे ना आगे इसका रास्ते बनेंगे। नेक मोहम्मद भाई गुड लक, आप जो आए ख़रीदारी करने के लिए। ये जो फीस वगैरह रखी गई है सब बेहतरीन है, इंतजामात आपके लिए जो की गए खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक ठाक हैं, और सिक्योरिटी हर चीज़ जो तैनात किया गया सब कुछ। जो हम पहले ही उतरे हैं, फर्स्ट गाड़ी हमारे उतरे हैं, तो इन्होंने सिक्योरिटी दे दिया, रेंजर्स की सिक्योरिटी दे दिया। उसके अलावा जो बाकी दूसरे सिक्योरिटी निज़ाम थे वो भी ठीक ठाक थे, जो उन्होंने दे दिया सिक्योरिटी हर चीज़। चलें, सिक्योरिटी का मकसद है कि तमाम व्यापारी जो यहाँ पर कारोबार करने के लिए आए, आपके लिए सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का मौका फराहम करने के लिए आए, वो सब लोग बहुत मुतमईन दिखाई दे रहे हैं कि सिक्योरिटी से लेके तमाम इंतजामात बहुत ज़बरदस्त हैं। नेक मोहम्मद भाई थैंक यू वेरी मच, और गुड लक। अल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। सारे आप देख सकते हैं सच चुकी है यहाँ पर मवेशी मंडी। मैंने जैसे कहा ना कि कनकोट से नेक मोहम्मद साहब आए थे, और बड़ी तादाद में हम देखें ना तो यहाँ पर लोग जो है वो पहुँचना शुरू हो गए, और स्टॉल्स भी यहाँ पे बन गए हैं। पान के केबिन खुल चुके हैं हर जगह पे। आप देखें तो रौनक लौट आई है इस वक्त मंडी में।
और ये देखें ये क्या ज़बरदस्त किस्म के जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहजाद जी। शहजाद भाई कहाँ से हैं आप? शेखपुरा से। शेखुपुरा से। तो ये अंदाज़ा करें पंजाब से जानवर पहुँचे हैं, वहाँ आपने कंदकोट देखा और यहाँ पे शेखुपुरा से कैसा सब अरेंजमेंट वगैरह खुश बेहतरीन मज़ा आ रहे हैं यहाँ पे? बस मज़ा आ रहा है, हर साल होने 16-17 साल हो रहे आ रहे हैं। अच्छा हर साल आते हैं तो सब बेहतरीन है। कितने जानवर लेकर आए? अच्छी जानवर 36 लेके आए। 36 जानवर लेकर आए, सारे ऐसे ही तगड़े नजर आ रहे हैं। अरे इधर ऐसा तगड़े ना, वो सारे तोड़ आगे अपने जानवर। अच्छा सारे भी आपके। आइए तो हमसे बात करते हुए चलते हैं। आपको आइए हमारे साथ बात करें थोड़ा सा। ये कैसा जो अरेंजमेंट्स आपके लिए किए गए हैं, आप व्यापारी यहाँ पर आए तो ये ठीक अरेंजमेंट है? मुतमईन है आप? सिक्योरिटी से लेके सारे इंतजाम तामन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तामन कर रहे हैं। सिक्योरिटी भी तामन कर रही है, फौजी भाई इतने होंगे ने पुनी सारा देख जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तामन कर रहे हैं। अच्छा बहुत ज़्यादा सारे लोग आपके आके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे जो सब आके तावन पानी से लेके कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है? कोई ये सानू परेशानी नहीं किसी काम की है। अच्छा 12-13 दिन हो गए ना आए नू, बाकी ये हर साल ही आने किसी साल भी ना परेशानी नहीं होने दी। अच्छा किसी साल भी परेशानी नहीं हुई है। तो ये आप देख सकते हैं बच्चे ने अपने अगले साल दे ये खीरे बच्चे ने सारे। अच्छा हाँ जी 1 साल के बच्चे? हाँ ये 10 महीने दे 11 महीने दे अगले साल से पढ़ाई बस आते हैं। क्या आपने तैयार किए हैं यार 10 महीने में? क्या खिलाते हैं और आप भी क्या खाते हैं यार? खा रहे हैं आगे, देखो आगे वही खा रहे हैं। तो आप भी माशाल्लाह जो है वो जबरदस्त पहलवान है। पंजाब पंजाबी जवान है, कराची वाले नहीं पंजाबी पूरी बड़ी पंजाब दे देखो सेरा बनने विच। ये जरा देखें अंदाज जरा दिखाएं तो सही ना यार। ये जो काम हुआ हुआ है यहाँ पे आप जानवर देख सकते हैं किस। आइए आइए जरा तो इधर आ जाएं, आप मेरे साथ रहें ना, आपके साथ बात होगी। ये जरा ये क्या प्रोडक्ट है आपकी? वैसे हम भी पहलवानी है। पहलवान है, बिल्कुल सही बात है। पूरी मंडी में घूमे ऐसा है बछड़ा कहीं? नहीं ये बछड़ा तो भाई कौन सी नस्ल कौन सी है ये साहिवाल क्रॉस है। साहिवाल क्रॉस भाई ये एक ही है मेरे ख्याल इस साइज की। हाँ एक ही है। कुछ बछड़ा देखो आपको पसंद लगा? अरे बहुत जबरदस्त किस्म का बछड़ा है भाई। बहुत ही जो है ना अपना मजा आया और हम लोगों को भी बता रहे हैं। पंजाब के शेर आपने देखे कि वाकई में शेर लेकर आए हुए हैं ये लोग ना। पंजाब के आप ही शेर ने जरा देखें, जरा अंदाज अपना बताएं। आप ही शेर ने देखा पंजाब के शेर। दोबारा बोलेंगे आप? पंजाब के शेर हैं, जानवर भी शेर हैं, हम भी शेर हैं। शेर आ चुके हैं जी मैदान में। ये आप देख सकते हैं कि हमारी मंडी है वो मवेशी मंडी सज चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जानवर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कोई पूरे मुल्क से यानी कि KPK से भी लोग आए हुए हैं और हर जगह से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। कैसा अरेंजमेंट्स वगैरह? खुश हैं, मुतमईन है, मज़ा आ रहा है? बेहतरीन माहौल है मंडी का माशाल्लाह, पहले से भी बेहतर, बहुत ही बेहतर है। फ्लाइट भी VIP हैं, रास्ते भी खुले हैं, पानी का जो इंतज़ाम है वो भी बेहतरीन है। आप यानी कि बहुत मुतमईन है, बहुत खुश हैं? बेहतरीन बेहतरीन बहुत ही। बिल्कुल असल चीज़ है कि ये तमाम व्यापारी जो पूरे मुल्क से आते हैं इनका मुतमईन होना, इनका खुश होना, और आपने जिसको सुना होगा वो तमाम के तमाम लोग ख़ासे मुतमईन दिखाई दिए हैं। वैसे मैं अगर थोड़ी सी आपको इस मंडी की डिटेल भी बता दूं तो उसके मुताबिक 2024 में 900 से 1000 एकड़ पर ये मंडी कायम हुई है। अगर आप देखें तो ये पूरा रकबा पीछे भी अगर आप दिखाएंगे तो दूर दूर तक 1000 एकड़ पर कायम की गई है। छोटी जगह नहीं है ये। उसके साथ साथ इसमें मजमूई तौर पर 20 ब्लॉक्स बनाए गए हैं और उन ब्लॉक्स की मैं बात कर लेता हूं तो इसमें VVIP ब्लॉक भी है, VIP ब्लॉक भी है और नॉर्मल ब्लॉक भी है। तो तमाम के तमाम ब्लॉक आप लोगों के लिए, जितने भी मवेशी मंडी में जितने व्यापारी आ रहे हैं, सारे मुल्क से आ रहे हैं और आके अपना कारोबार करने के लिए पहुँचे, तो 3 डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, जिसमें VVP भी है, VIP भी है और एक नॉर्मल ब्लॉक भी है। और इसके 2 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक नहीं है। व्यापारियों को पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर यहाँ पर तमाम मुफ्त जगह दी जा रही है। बहुत सी चीज़ें उनको व्यापारियों को यहाँ पे फराम की गई है कि आएँ और आके आप बिजनेस करें। और इसके साथ साथ हमारे शहर के लोगों को, यहाँ बसने वाले लोगों को सुन्नत इब्राहिमी बेहतर अंदाज से अदा करने का मौका मिले। उसके बाद अगर मैं आगे चलता हूँ तो कई और चीज़ें दिखाई देती हैं कि मंडी में दाखिला फ़ीस गाय और फ़ी ऊँट 4050 रुपये है, जबकि फ़ी बका और फ़ी बकरी की कीमत 2000 रुपये रखी गई है। तो फिर मुनासिब कीमत रखी गई है। मंडी में जब आप अपने जानवर लेके आते हैं, आपने देखा होगा एक बड़ी तादाद में जानवर अब भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं।
इसके साथ साथ नमाजियों के लिए ख़ास तौर पर मंडी में जगह जगह जो है वो मस्जिद की सहूलत फ़राम की गई है। इसके साथ साथ हर जगह पे जो लोग भी यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आएंगे उनके लिए टॉयलेट्स रखे गए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने आपको दिखाया था कि होटल से लेके जूस के स्टॉल और दीगर स्टॉल्स ऑलरेडी यहाँ पर कायम हो गए। बहुत सारी सहूलतें यहाँ पर फराम की गई हैं, जिनमें अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें ख़वातीन के लिए भी अलहदा टॉयलेट्स हैं। मैं एक मरतबा फिर आपको बताऊं कि बहुत सारी ख़वातीन आना चाहती हैं बकरा पीढ़ी, लेकिन वो नहीं आ पाती सहूलतों की वजह से। तो आपके लिए नमाज़ पढ़ने की सहूलत भी है ख़वातीन के लिए, एट द सेम टाइम आपके लिए टॉयलेट्स, खाने पीने का इंतज़ाम भी यहाँ मवेशी मंडी में किया गया है। इसके साथ साथ पक्के सीमेंट के ब्लॉक बनाए गए हैं बहुत सारे पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए। बहुत सारे इक़दामात यहाँ किए गए। मवेशी मंडी में बैंक की सहूलत भी मौजूद है, तो बैंक की सहूलत भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी 24 घंटे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो कोई चीज़ छोड़ी नहीं है मुंतज़मीन ने। तो मसाइल पहले रहें, उन मसाइल को दूर किया जाए। और इस दफ़ा इंशाअल्लाह जो लोग भी मवेशी मंडी ख़रीदारी के लिए आएंगे उन्हें कोई मसला नहीं होगा। कुछ पुरानी वीडियोज़ वगैरह होती हैं, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल आप व्यापारियों से भी सुन चुकें, लोगों से भी सुन चुकें, तो तमाम के तमाम लोग मुतमईन हैं, सबको इत्मीनान है। और आप इत्मीनान से आएँ और आके आप अपना जानवर यहाँ से ख़रीदें कुर्बानी के लिए और सुन्नत इब्राहिमी अदा करें। नसीम राजपूत आपसे यहाँ मुलाकात करता रहेगा, जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। मवेशी मंडी में तेज़ी के साथ जानवर आ रहे हैं, अभी तो वक्त खासा बाकी है, लेकिन पूरे मुल्क से जानवर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जिनको जल्दी ख़रीदारी करनी होती है जानवरों की, वो इस वक्त आके बासानी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो जानवर के साथ मानूस होते हैं, उसको पालते हैं, 15-20 दिन रखते हैं, तो फिर यहाँ आ जाएं, आपको हर चीज़ बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन रेट में मैसर होगी। नसीम राज अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ मवेशी मंडी से इजाज़त चाहते हैं और आएँ और आप आके ख़रीदी करें। अल्लाह ने के बाद औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एशिया की बड़ी मंडी कहें या वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी, जिसमें 3.5 लाख से ज़ायद मवेशी मौजूद हैं। मवेशी मंडी के नाम से ही यहाँ पर आवाम के लिए एक बेहतरीन फैसिलिटी के साथ ऑर्गेनाइज़ किया गया है। मैं इनके तमाम मुतमिज़ीन जो हैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने आवाम के लिए सहूलियात मैसर की। बदर एक्सपो हमारे जोएब नसीर यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने सारा मीडिया यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं समझता हूँ कि एशिया की बड़ी मंडी होने की वजह से और कराची के अंदर जो लोग कुर्बानी शौक़ से करते हैं, ख़ूबसूरत जानवरों की खरीदारी करते हैं, उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ मुझे रोज़ाना टीवी पर नज़र आई है। और हर साल की तरह मैं ख़ुद भी पिछले कोई 12-15 साल से मवेशी मंडी में आता हूँ। पहले जहाँ लगती थी वहाँ भी हम जाते थे, पिछले साल यहाँ आए हैं और अभी विज़िट भी करना है। ये भी देखना है कि यहाँ जो रेट रखे गए हैं वो एक आम आदमी की रीच में है या नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जो आखिरी के 4-5 रोज़ होते हैं, इसमें देखने में ये आया है कि ख़बरें आती हैं कि जो व्यापारी हैं वो भी लुटना शिकार हो जाते हैं, जो ग्राहक आता है उसको भी शिकायतें होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया के तवज्जुह से IG सिंध को भी मैं ये कहूँगा कि वो स्पेशल अरेंजमेंट सिक्योरिटी के यहाँ प्रोवाइड करें, रास्ते में पिकेट्स लगाएं, ताकि ना ग्राहक को प्रॉब्लम हो ना व्यापारी को प्रॉब्लम हो। जो एक फैसिलिटी लोगों को दी गई है उससे वो अफादा हासिल करें। और मकसद सिर्फ यही है कि एक ऐसा फरीज़ा
जो हम पे फ़र्ज़ है, जो साहिब सरवत लोग हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो कुर्बानी का सिलसिला है वो साहिब सरवत लोगों को पूरा साल जारी रखना चाहिए, चाहे वो सदक़े की सूरत में हो, अल्लाह नाम की सूरत में हो, क्योंकि इस वक्त जहाँ माशी हालात इतने मुश्किल हों, वहाँ एक मिडिल क्लास और एक शख्स के लिए बकरे का या गाय का, बैल का गोश्त खरीदना नामुमकिन हो गया है। अल्लाह ताला ने एक फरीज़ा रखा है जिससे लाखों लोग फैज़याब होते हैं और कई महीने तक ये गोश्त इस्तेमाल हुआ है। मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा फिर जो यहाँ जिन्होंने ये सारे इंतज़ाम किए हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटर भी मौजूद हैं, बाकी उनकी टीम्स मौजूद हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और इंशाल्लाह मैं विज़िट करता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ क्या रखे गए हैं, क्या चीज़ है। शुक्रिया आप सबका। Ideas 2024, bring together stakeholders across diverse defense industries. Board offers a platform for G2G, B2G, and E2G joint ventures and investments in the Dutch sector. A strategic seminar will also be to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. Edition of Ideas will be held from 19-22 November 2024 at Karachi Expo Center.
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निदा है। मैं ऐसे जेडीसी लैब में पैथोलॉजिस्ट वर्क करती हूँ। मेरे साथ वर्दा अली हैं, ये मेरे साथ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही हैं। हम लोग यहाँ पे आज हेल्थ एक्सपो में आए हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था बदर वालों की तरफ से। बहुत अच्छा मतलब डिफरेंट कैटेगरी से हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे हम गैदर हुए हैं और काफ़ी इंफॉर्मेटिव ये रहा है हम लोगों के लिए। अब मैं अपनी लैब के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। हम लोगों की लैब जेडीसी फ्री डायग्नोस्टिक लैब है, जहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 250 से ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। इस वक्त हमारी कैपेसिटी है मोर देन 1 लाख टेस्ट करने की पर डे। और हमारे पास जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जैसे कि जफ़र भाई कहते हैं कि जिसका खून लाल है वो हमारे पास आ सकता है टेस्ट करवाने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ ना कुछ प्रोडक्ट पे अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो फिर ये कुछ बेहतर है बचत एक्सपो। कुछ बेहतर है, इसीलिए तो यहाँ सेल करी है। ये तो सही बात है। एनवायरनमेंट भी अच्छा है, एनवायरनमेंट भी अच्छा है, माहौल है, होना चाहिए ऐसा लोगों के लिए थोड़ा अच्छा रहता है। असल मकसद इसका यही है कि बचत होनी चाहिए लोगों को। होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है, बचत होनी चाहिए लोगों के लिए। रिलीफ मिलता है इससे लोगों को। तो आप लोगों को रिलीफ तो मिला ना? जी बिल्कुल रिलीफ मिला, इनकार नहीं कर रहे इस बात से, बिल्कुल मिला है, अच्छा रिलीफ मिला है जी। यानी कि आप मुतमईन होके जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मुतमईन होके जा रहे हैं यहाँ से। और ऐसे ऊपर एक ब्रांड है, उसके ऊपर जो है डिस्काउंट है, ये अच्छी बात है ना। 12 महीने लगनी चाहिए, हर महीने में 1-2 दफ़ा तो लगनी चाहिए एग्जीबिशन, ताकि हम जैसों को आराम मिले, सुकून मिले। जूस वगैरह लिए। तो ये जूस और फ्रूट पे आपको डिस्काउंट मिला? जी मिला, बाय 1 गेट 1 था जूस पे। और फ्रूट में भी मिला? फ्रूट पे भी आधी कीमत पे था, बाहर जो मिल रहा है 120 100 रुपये मिला, इधर 60 रुपये मिला तरबूज। तो ये अच्छा मकसद है कि रमज़ानों में फ्रूट आप यहाँ से ख़रीद लें तो ज़्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल सही बात है। आपको माहौल कैसा लगा जो बदर एक्सपोजिशन ने आपको प्रोवाइड किया? माहौल ठीक था? जी बिल्कुल ठीक था, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ज़्यादा ना कोई परेशानी कोई मुश्किल नहीं है। It's 10 p.m. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good evening to you people wherever you are in the world. We are live here yet again for match 27 where Clifton Capulars are up against Liari Legends from DHS Moin Khan Cricket Me Karachi. A little while ago both of the captains were there in the middle with our colleague Danish Anish, and the news from the centre was that Liari Legends won the toss and opted first. Here we go. It's match 27 and we are all set. The players are just about to get ready. Bowls a full toss this time and it's a weapon breeze by Hamidullah. 6 to start. Qari Hamidullah straight away got into his class act. This is a big swing and he's got the connection all right. It's a first 6 by the left-hander and it's a good one. Typical left-handed leg-sided swing. He goes again. Another one. 2 or 2. That's even bigger. That's landed on skin here. He goes for the massive shot but doesn't connect. And this time it's Farhad Abdali who doesn't make any mistake, and look at the celebration. They're relieved, Clifton Capulars. Badar is gone for 15. 26 for 1 is the score. And by taking gambles, you can do that. This time it's an outside edge, and this time it's been taken at short third. Catching has been good in this at least. Farhad comes and gets a wicket. He's gone for 4, 31 for 2. This time it's a connection. It's Hamidullah who's got one below the bat, and there you go. It's half a dozen the result. Over square leg.
It's a leading edge chance for the bowler himself. Imran is going to make it. Once again, another wicket has gone down for the legends. Qari Hamid just not timing that sweep shot whatsoever, ending up giving a dolly of a cash to the bowler. Hamidullah went for 14 on 9 deliveries, 39 for 3. Big heave on the leg side. Looks like he has got plenty on it. What a connection. First ball has been deposited into the stands on the leg side. Shot asking to be hit. Getting the elevation and the distance. Another 6 to the captain. Not good bowling from Imran. Shot again. It's flat, it's hard, it's long, and that's going to be yet another 6. What a start this is from the captain. 3 sixes in the over. Full toss. Might be given as a no ball. It's going to go all the way for 4. We'll have to wait for the umpire signal. Yes, the left arm is aloft. Not only it's a no ball, but it's a boundary as well. Bowling the last over of the innings. Outside edge and taken. Well, that was dying to the wicket keeper, Umar Baja, behind the stumps. Still managed to take it. A wicket of the very first ball to Mansoor. Ashraf Pathan's cameo comes to an end. 23 of 9 for the captain. Full toss. Thumps it down the ground all the way from him. That's a good connection for Iran Amose. If you bowl in the middle on his body, definitely you're going to get hit. Slower one, picked up, it's up, and it's over. Really good from Dawood. He was waiting for that slower length, and as soon as he got it, he had no hesitation. It's pitched up. Once again, Dawood has deposited that over long on for yet another gigantic 6. And a perfect way to finish the innings. 3 maximums coming in that last over of Mansoor. Liari legends have put up a very good score. They have managed to score 92 runs for the loss of 4 wickets. असद शाह स्ट्राइक पर हैं। पहली गेंद आने को है इस दूसरी इनिंग्स की। राना मोहसिन असद शाह के लिए लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर बीट हुए। फील्डर मौजूद थे सर्कल के अंदर विकेट कीपर के पीछे, वरना ये 6 रन होते, लेकिन 2 रन फिर भी हुए हैं। इस गेंद का ड्राइव किया, बड़ा खूबसूरत ड्राइव, और गेंद दनदनाती हुई बाउंड्री से बाहर। 4 रन। और इस गेंद को ओवर द टॉप ऑफ साइड में, और गेंद को कवर्स और पॉइंट के दरमियानी पोजीशन पर 6 रन के लिए बाहर डिस्पैच कर दिया। ये गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बड़ी खूबसूरत गेंद, एज हुआ और विकेट कीपर ने गेंद को कैच किया, और सोहेल फहद मैच की बड़ी विकेट लेने में कामयाब। 7 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस फहद आलम। इस गेंद को खेले, मिड ऑफ को बीट किया, और गेंद गोली की तरह बाउंड्री से बाहर। चौका, बड़ा खूबसूरत शॉट। ओह शॉट यार, गेंद घास के साथ एक तरह से चिमट कर रह गई है, और फिर रगड़ खाती हुई बाउंड्री से बाहर। 4 रन। इस मतवा ऊंचा शॉट, वाइड ऑफ, लॉन्ग ऑफ, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। जोरदार और शानदार छक्का, काफी बुलंदो वाला स्ट्रोक, और इस गेंद को लॉन्ग ऑफ पे लॉफ्ट किया। फील्डर ने हवा में जंप किया और कैच करने में कामयाब। अहमद विकेट लेने में कामयाब हुए उमर की, और 39 रन पर दूसरी कामयाबी। बाजवा 1 रन बनाकर आउट हुए। 39 for 2। इस गेंद को घुटने का बेंट करके ऊंचा खेले, 2 फील्डर आए, मगर गेंद दोनों के ऊपर से बाउंड्री से बाहर। छक्का। Outside edge, Tahir Pindi goes once again outside the off stump. He chased it, massive outside edge, big deflection, and good take behind some. 3 innings is over of Tahir Pindi.
Outside the off stump, he lifted. Is it long enough? Just enough. Right outside the off stump, and Asad Shah chased it beautifully. And what a finish of the over. Change of pace, going for the run, could be tight. Oh, gone, certainly gone. And but wicketkeeper is not happy at all. He wanted him to throw to the batting end. The wicket falls here. He goes for none, 4 for 63 on the board. He goes for it, has he lofted beautifully, over long off. Not quite, he's gone. Good catch. He is yard short of Shah. He tried his best to clear the longer boundary. Well picked up by the fielder, and Ahmed has got the breakthrough. It's a big one. He goes for it. Has he struck it well enough? Fielder coming up. I think it goes for 6. Just enough good connection from Arbaz, who came to the crease, timed it well, and cleared the boundary. Goes for it. Chance or 6? Forget about chance. It's a huge one. Lovely connection right off the middle of the bat. Length ball put away by Kamran. Got him. Hit the timber. Beautifully bowled. Lovely line, lovely length. And Arbaz has to walk back. Well, taking all the time before the run-up. Shows off now. Salman hitting the stumps. Arbaz goes 6 of 2. Goes for the big shot, hard and flat. Should cut off in the gap. It's a boundary. Good one, very full. Plenty of pace behind the ball. He's coming back for 2 and comfortably taken. Now scores are absolutely when you are spot on, Kainat. So 90 for 6 exactly after 6 overs. There is no lead. Nobody's ahead, nobody's behind. Good evening and welcome back to all of you folks wherever you are across the globe. We welcome you once again from the DHA Sports Club, Moin Khan Cricket Academy, Karachi, where the second match of the night is off and running. First innings is done and dusted, and the first innings, both of the sides couldn't separate each other. Left arm bowling one. Now let's play. Let's play, boys. Outside the off stump will be given as a wide. And here goes Painda announcing his arrival with his first maximum over long on. This is Painda, we all know. Yeah, that's the delivery he was waiting for. You're right, but this guy seems to be a master in doing that. And he's a master if you put him there. That's already seen. That's Nizar, we all know, his first 6 of this innings. Could have got a few runs as well. There we see the owner of the DHA, the Bungs, and Clifton Popular. That's wrong line, wrong length, and pays the price with a boundary. Does Farhad Abali. So a boundary to finish that over. 2 done, it's 20 for none. He miscues one that is in the air, and it's been accepted. Easy one for the fielder at backward point, and Painda is gone. Well, technique again comes into play with those type of shots. He gone for 8. और बड़ा उम्दा स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी छक्के के लिए। इस ओवर की आखिरी गेंद और फरहाद की इस गेंद को उठाकर खेले हैं। फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे हैं, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब पहुंचकर उनकी हिम्मत जो है बढ़ गई और उन्होंने अपने कदमों से गेंद को रोकने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब हुए। इसी अवस्था में दोनों बैट्समैनों ने क्रीज तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन गालिबन यहां पर ये रन आउट की अपील की जा रही है। दाऊद को लियारी लेजेंड के वापस जाना होगा 7 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के के साथ 13 रन बनाने के बाद वापस लौटते हुए। उमर बाजवा इस ओवर में पहली मर्तबा आए, गेंद की और इस गेंद को उठाकर खेले हैं और फील्डर गेंद को देख सकते हैं, रोक नहीं सकते और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। यहाँ बड़ा शानदार शॉट है निज़ार लफड़ी की जानिब से और इस बार उठाकर खेले हैं, गेंद हवा में और तैरती हुई ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गिरी है 6 रन के लिए। उमर बाजवा एक मर्तबा फिर आए, गेंद की
और इस बार गेंद को कनेक्ट करने में कामयाब हुए हैं। गेंद हवा में तैरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर जा गई है और ये गालिबन इस ओवर का दूसरा छक्का होगा। एक बार से यहाँ और इस बार गेंद को उठाकर खेले अशरफ पठान 6 रन के लिए। अशरफ पठान फुल फॉर्म में रहे तो इस ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के मुझे मुश्किल दिखाई दे नहीं रहे, लेकिन इस बार अशरफ पठान ने अपनी विकेट की कुर्बानी दी है जबरदस्ती। और साथ ही वाइड बॉल का इशारा भी है अंपायर की जानिब से। 2 गेंदों पर 6 रन बनाने के बाद डिपार्चर अशरफ पठान का। एक बार फिर से तैयार हैं, सामने मौजूद है निज़ार लेफ्टी। इस बार निज़ार लेफ्टी नहीं, यहाँ पर फरहाद अहमद के पास विकेट के ऊपर इस ओवर में आखिरी मर्तबा। और इस बार जोरदार तरीके से खेलना चाहते थे विकेट कीपर गेंद के नीचे और उन्होंने गेंद को क्या किया। 96 रन्स का अब हदफ मिला है इस मैच को जीतने के लिए क्लिफ्टन पॉपुलर की टीम को। 95 रन 3 विकेटों के नुकसान पर लियारी लेजेंड्स ने बनाए हैं और आखिरी 12 गेंदों पर 47 रन बने। Here's the first ball. And here's the first big shot. It's into the gap. That's a run away for 4. Typical for Halmia Chunnu start this. It's up in the air. He hasn't timed it. There is a fielder at long off who is trying to get underneath, and he has taken it. Wow, what a comeback this is from Rana Mohsin. The revenge has been sought. Fahad Mia Chunnu dismissed. Pitched up. Hit away down the ground. There is a fielder out there at long gone, but the ball has gone past him. He goes again. This time getting the elevation and the distance, the captain. And that ball has landed over the roof. Slower one. Picked up. It's up in the air. He hasn't timed it. Fielder getting underneath that. And he has taken it in the 6th or 7th attempt, finally. And once again, it's Umar Bajwa who disappoints. Bajwa goes for 1, 19 for 2. Meanwhile, Sohail is continuing. Powerfully struck the offside. Look at how fast that ball has traveled across the boundary ropes. Well, that traveled like a bullet. Full toss. It's up in the air. Rana Mohsin will just watch that ball over his head. And you also could ask from the fielder. That's what you told me. Shot. Wow, that was some hit from Asad Shah. Once again, the ball has landed on the roof. Well, his name should be printed on that roof because that's how many times he has hit that. Full toss. He has hit that up in the air. He hasn't timed it well enough. There is a fielder who is trying to get underneath that, and Daud Suleiman takes a really good catch. In fact, that has been signaled as a no ball. Wow, that is interesting. Flicked away. Not the best timing. Has got the placement right. Yes, it goes for 4. Flicked away. High in the air. Somebody wants it. Should be taken. Gone. Asad Shah goes. Salam has got the breakthrough, exactly what his captain wanted, and it's a big one. Pulled away. He has got the time right. He's found the fence. One bounce into the boundary. He is off the mark with 4. क्रिकेट के अंदर बॉडी लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्या है, उनकी एक कल तक का जो मैसेज था वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि उनकी मिला कि यार तुम लोग बहुत जबरदस्त खेल लो, इसी स्पिरिट के साथ फिनिश करना, इसी स्पिरिट के साथ मैच खेलना, और तुम लोगों की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी नजर आ रही है. Outside the off stump, in the air, flat. One bounce, 2 bounces into the fence for 4. Beautifully played by Tahir Bindi. Went for it. Much higher, much longer. 6 more. Wonderful from Kamran. Goes for it. Onside. It's on. Comfortably taken. Kamran goes. Well, it's all happening. It's a wicket. Salam, the bowler, making a comeback. And cameo is over from Kamran lefty. He is walking back.
He goes for it. Big shot. Is it long enough? He's got plenty of height. It's over the top for 6. Haq Nawaz. Oh, what a time, Mill one! It's Haq Nawaz in the building, announcing his arrival at the crease. Goes for run. Could be run out here. Oh, he misses. Will they come back for 2? Scores are level now. Scores are level. Pressure on Liari Legends. Going back for 3. Gone this time. Nobody was in the frame, but the batsman was way out. But in the end, after covers, the run out took place. They have wickets in hand. Obviously, he missed the opportunity. It's the red light, the confirmation, official confirmation. Short backward point. Everybody is ready to stop a single here. One important one. Look at Have that. a look at those butterflies around the bat. Looking to stop one run. Here we go. Easily done. Victory goes to Clifton Popular. It goes for the boundary. Tahir Bindi finishes the job, and look at celebration. Everybody, every supporter of Clifton Popular, they are grounded. What a match. Yeah, back foot punch, a proper cricketing stroke by Tahir Bindi. Kept his calm, his cool, and saw his team to the victory. What a game we've had. वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी से केटीपीएल सीजन 3 कराची नाइट्स वर्सेस लियारी लेजेंड्स, जहां पर मुकाबला है। लियारी लेजेंड्स ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। Here we go, और आप एक्शन के लिए तैयार हो जाइए। लियारी लेजेंड्स एक इंतहाई अहम मैच खेलने के लिए तैयार। पहले बल्लेबाजी करेंगे वो कराची नाइट्स के मुकाबले पर। जी हाँ, बड़े अहम मुकाबले में इससे पहले उन्हें शिकस्त हुई है क्लिफ हैंगर पे, जब पॉपुलर आखिर में जीत गए। और इस मैच की शुरुआत ही छक्के के साथ की है कारी हमीद उल्ला ने। बड़ा जबरदस्त आगाज, और ये वो आगाज है जो चाहते थे ज़ुहैर नसीर, केपीएल के रूह रवा। और एक बार फिर गेंद को उठा दिया है, मिडल हुई गेंद और गेंद बाउंड्री लाइन के पार। बिल्कुल स्वीट साउंड ऑफ द बैट। एक मर्तबा फिर अली शेर आए और एक बार फिर गेंद को उठा दिया है, और ये फलक बोस तीसरा छक्का इस मैच का हैट्रिक। और इस बार गेंद को उठाकर खेले हैं, फील्डर आगे हैं तो फील्डर गेंद के भागेंगे जरूर, लेकिन वो गेंद को उठाने के लिए तो अली शेर का एक बहुत ही महंगा ओवर अपने अख्ताम को पहुंचा, जहां उन्होंने 25 रन दिए। इसी दौरान शफीक आए और शफीक की पहली गेंद को पुल कर दिया है, और कोई फील्डर यहां पर मौजूद नहीं है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और इस बार गेंद को उठाकर खेले हैं, फील्डर क्या गेंद तक पहुंचेंगे, बिल्कुल महफूज हाथों में ये गेंद महफूज हो गई, और नजीर एफटी की इनिंग अपने अख्ताम को पहुंची। और अब वापस लौट रहे हैं, और लियारी लेजेंड्स का 32 पे एक खिलाड़ी आउट हो गया। और काजी की पहली गेंद को डिस्पैच कर दिया है छक्के के लिए। अंपायर और बैट्समैन हो राजी तो फिर क्या करेगा काजी। एक मरतबा फिर इमरान, और ये दूसरा लगातार छक्का। 3 बार तो काजी करवाते हैं। हाँ, इन्होंने 2 करवा दिए। वाह, बहुत जबरदस्त बैटिंग, कोई शक नहीं इसमें। तो काजी साहब यहां पर बहुत मुश्किल में है, और तक 4 छक्के वो इस ओवर में कंसीड कर चुके हैं। और एक और जोरदार शॉट, 6 रन से बाद बनेगी नहीं, लेकिन यहां पर फील्डर ने इसको कैच में तब्दील कर दिया है। 47 रन बनाकर 12 गेंदों पे ये आउट हुए, और 60 रन पे 2 खिलाड़ी आउट।
इससे बेहतर आगाज हो नहीं सकता। और विकेट लेने के बावजूद कारी इमरान जो उनकी प्यास नहीं बुझी और उन्होंने दूसरी विकेट भी ले ली। इस तरह आउट हुए बिना कोई रन बनाए दाऊद सुलेमान। 60 रन पे 3 खिलाड़ी आउट, 3 ओवर्स मुकम्मल। It was short, it was wide. He absolutely nailed that on the outside Hassan. He'll have to wait for the umpire signal. In fact, the arms are aloft. What a hit that was. Full toss. Gets the treatment it deserves. It's up in the end. It's over the boundary ropes as well. He goes once again. Wow, just hear the sound of the bat. Wow, that was some hit from Hassan. Another full toss, hitting it straight back past the bowler. The result is going to be the same. Not good bowling this from Imtiaz Imti. It's the 4th maximum of the over. He goes for it. He absolutely slaps it, and all the fielders are just going to watch it sail over the fielders' head. 5th maximum of the over. Extraordinary batting this from Hassan. They are going to be the 4th side. And the onslaught, in fact, that has been taken. Wow, that was a good hit. But it went straight to the field and a deep mid-wicket. Shoban Seto walking back without even troubling the scorers. It's a 94 for 4. This time he's tried to belt it. And this time it has been taken. Finally, Ubaid Lefty has managed to take one at long on. And that is how Hassan has now been dismissed. He bowls the shot. He slaps it. Once again, the ball has gone towards Ubaid Lefty at long gone. The ball just bouncing in front of it. They are looking to come back for the second run. And there is a collision between Harisi and the runner. So they'll get 2 runs in the last ball of the over. That means Liari Legends have finished on a very strong score. They are finished on 112 for the loss of 5 wickets. अब इस मैच में अच्छी फतह दरकार होगी अगर आपने क्वालिफाई करना है सेमीफाइनल के लिए। तो लियारी लीजेंड्स इस वक्त जो रन्स भी वो बोर्ड पे सजाने में कामयाब हुए। इस मरतबा उठा दिया है, गेंद हवा में, देखना पड़ेगा। और एक आसान सा कैच लेकर यहाँ पहली विकेट हासिल कर ली है उस्मान जान की। और विकेट गवा बैठे। ये क्रिकेट के एक फुल टॉस गेंद पर भी विकेट चली जाती है और अच्छी गेंद पर छक्का भी लग जाता है। आई थिंक वो कराची में पूरे पाकिस्तान में जो है वो एक स्टार हैं। तो कराची के असद शाह हैं, आपका हारिस अली खान है, यासिर मुश्ताक हैं। आई थिंक आई फॉलो ऑल ऑफ देम एंड दे आर ऑल माय फेवरेट। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द साइडलाइंस एंड नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू कॉम बॉक्स। अब तक 14 रन जब बनाए हैं, 1 विकेट गवा चुकी है। इस मरतबा गेंद पड़ने के बाद एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेले हैं उबैदुर रहमान, लेकिन मिली 4 रन के लिए। तो खूबसूरत अंदाज उबैदुर रहमान का। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ एफर्ट करनी होगी बॉलर्स को भी। इस मरतबा हिट लगा दी है, गेंद हवा में, देखना पड़ेगा। और गेंद चली गई है 6 रन के लिए। इस मरतबा उठा के खेले हैं, देखना पड़ेगा। और गेंद जाएगी मिड विकेट बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। गेंद को ग्राउंड से बाहर जाकर देखना पड़ेगा कहाँ गई है। इस गेंद को खेल दिया है ऑन साइड में, जोरदार अंदाज में, खूबसूरत शॉट, छक्का। और इस मरतबा हिट लगाने में कामयाब हुए और गेंद बाउंड्री लाइन की और बाउंड्री लाइन से बाहर, छक्का। इस गेंद को हिट आउट करने में कामयाब हुए हैं। जोरदार और ऊंचा स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री से दूर, छक्का। 71 for 1 मौजूदा स्कोर। और इस गेंद को अप्पू ने उठाकर खेल दिया। बड़ा जबरदस्त अंदाज इनिंग्स को मुकम्मल करने का। अंपायर के हाथ फजा में बुलंद और कमर पे हाथ रख लिए भी सलाम ने, और फिर उन्होंने अप्पू को कहा वेल्डन। 77 रन 1 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर्स में बनाए हैं। इस तरह 35 रन की बर्तरी लियारी लेजेंड्स को पहली इनिंग्स में हासिल हुई है।
Welcome back and good evening once again as we are up here yet another innings, the third innings of this last and third match of the night. Larry Legend, they're playing second game of the day, consecutive games, and Larry Legends are 35 runs ahead. Here we go. And there you go. On the legs. Hit me delivery and hit me is the answer by Hamidullah. First boundary. Well, he's toying with the bowler and it's paying for him at the moment. He's launched it. And he's launched it in the hand at the moment. Well, he's been goner. He's been goner on the occasion. Long on grabs the catch. Made no mistake here, and Qari Hamidullah goes for 4, 1 for 8. This is a proper connection. This is Hassan Painda. And it's his first 6 of this innings. It's a fine shot. Picked it up from outside the off stump. Beautifully struck. और मैं खुद कॉलेज का पार्ट हूँ, स्कूल का पार्ट हूँ, तो उसमें हमारे पास जो है वो जी, तो उसमें हमारे पास जो है वो हमारे स्कूल के लेवल पे इंटर रीजनल टूर्नामेंट्स होते हैं जो हमारे ग्रास रूट लेवल से लोग या बच्चे यहाँ पर आएंगे और इस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करेंगे। एंड ऑल्सो आप जैसे पिछले सीजन का भी रेफरेंस दे रहे थे कि पिछले सीजन से आप सीजन तक मजीद बेहतर इंप्रूवमेंट हो रही है और टैलेंट को लेकर आप क्या समझ रहे हैं, ये लीग कितनी कामयाब होती हुई नजर आ रही है मुख्तलिफ ग्रास रूट लेवल के टैलेंट को रिकॉग्नाइज करवाने में? Goes through the offside. That one hit like a train through the covers. Eventually it will get a fence. Well, this is Hassan's territory. This time he's given it a go. And it's a little bit helicopter, reminding me of Mahendra Singh Dhoni with that stroke. Another 6 for Hassan, and that brings up the 50. What a way to bring up half century of the side. This time he's waited for it and waited for it for this. Because he sends him over square leg for yet another maximum. That's a bad line. Nicely put away. Although, and that's gone for 4. That's gone for 4. I thought it would have been stopped somewhere in the outfield, but it couldn't. And he has spread that away and played that away beautifully. And here comes his half century with a grand 6. What a way to bring it up. He goes again. Bigger and better. And it's dropped right in front of us. Oh, thank God. We are behind the glass. They are asking for the more trouble. And Nizar lefty this time around whacked that away beautifully for a 6. And he has blasted that away onto the onside. It's gone country mile again. 6 more. Absolutely. And there we go again. Hassan Panda is in a tremendous form. Nizar has got that away and cut that away terrifically. 6 more into the offside. Hassan, you little beauty. What a good shot. Oh, they can't really stop him because he's really taking them to the cleaners. And goes again. In the air. Going, and gone. Wow, what a batting. And he goes again and adds 6 more. He's not stopping tonight. What a way to end the proceedings. Hassan, you beauty. 85, 23 balls. Wow, what an innings. A monumental effort. 176 runs will be the biggest target to achieve for Karachi Knights. It will be very tough. So Haris,
will face the first delivery. The final innings is about to commence here. Yes, Ahmed Kulfi is absolutely ready. He has got the new ball in his position. Inside edge. Is he gone? Umpire is unmoved. That is quite interesting. We heard something. Maybe the bat hit the ground. Nothing happened. 177 in 35 balls now. Big shot. Nice and clean. Absolutely brilliant. What a connection there is. That's it over. Straight as an arrow from Haris. Top class stuff. That was a fair shot. Missed it. Missed it. And could be a boundary behind the stumps, missed by the keeper as well. Nobody got there. We have to wait for the umpire signal. Yes, leg by given. Whatever, they will take it. 4 valuable runs for them. Big shot over mid-off. Has he cleared the boundary? Not quite. One bounce, 2 bounces into the fence. So finally, a good decent contact from Ubaid lefty. Pulled away by Haris. He's found the gap and he's found the boundary as well. So boundary to end the over. Oh, full toss, waited beautifully, spanked away down the ground. Good decent connection on this occasion from Ubaid lefty. Half a dozen to his name. That was a rank pad full toss. Swiveled away. Will get a boundary. Haris is the man who's got that boundary. That's down the ground, and that's massive. That's a 6. A very good hit by Haris. He's been in good form. This time it's a proper connection. And yes, result is also in the favor of the batter. He has hit that bad lefty. He goes again. That's even a better connection. And it eventually goes over the line. I said better connection because that was the longest part of the ground. So, well, this time I have with me Mr. Haris Ali Mathani, who is team owner, Liari Legends. Thank you, sir, for joining us. Thank you. अभी बात कर रहे थे आप कुछ चंद ही बॉल्स हैं. कितनी उम्मीद बाकी है आज के मैच को जीतने के लिए? पॉजिटिव हैं आज के मैच को लेकर? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार इस सीजन 3 में लियारी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है टीम ने. This time it's Usman Jan who's got hold of that, and it's gone all the way. First 6 of this innings for Usman Jan. 4 deliveries left. And that's even bigger. That's a good hit. Usman Jan with his second 6. Oh, what a way to finish off. Sam gets his man. It's the timber. It's a wicket of the last ball. Haris was covered. Wonderful ball to finish the match. And so victory goes to Liari Legends, a comprehensive one. They won it by 81 runs. Haris was batting quite well, missed it all together. Yorker stump. And celebration has begun. And the spot in the semi-final has been cemented. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening to all of you wherever you are across the globe. Here we go. The wait is over. The first semi-final, the big one we have got in our hands. DHA Dabangs are taking on Malir Malangs all the way from DHA Sports Club Moin Khan Academy. And then from the center has been that DHA Captain Nasser Mushtaq won the toss and opted to bat first.
Right then, we are all set for the first semi-final of this UBL Amin presents KTPL Season 3. Here we go. Nicely ball and respect earlier on given by Waqas Sher. Semi-finals first hit in front of your eyes, and it's a high one. Oh my goodness gracious me, you gotta be kidding me. Too many butterflies under the ball and none of them catch the ball. What's going on? A genuine chance by the fielder to catch this one. He doesn't need second invitation, I tell you what. It's gone for 4, 1 bounce, but he's used that pace of Majid Ghori. There you see. This time he's got hold it, and he's got plenty of it because it's 6 over square leg. First one by Khurram Shahzad. Goes through the offside. How good is that? What about the timing and placement? Khurram Chakwal, you little beauty. Oh my goodness gracious me. You gotta be kidding me. It's all about the timing. Nearly hit our cameraman down there. It's gone for the maximum. You won't see a better stroke. It's gone over whitish long on for yet another maximum. It was flat and it was long. My word, this guy is unstoppable tonight. Well, this time it's Waqas Sher here, and 1 bounce hit only for 4 over extra cover. There you go. He's good there. He's good everywhere. 1 bounce into the boundary. Didn't get entirely out of the screws, but still manages to get up 4. Because his partner is unstoppable tonight. This is Khurram Chawal's night, I tell you what. On 47 with that 6. Hammers it down all across the turf. It's in the gap between long on and mid wicket. DK himself standing there at long on. It's just going to be a single. Talking about Mali Mullins, well, after the first 5 games, they were leading the points table. As we see, 50 comes up for Khurram Chakwal. 50 of just 15 deliveries, and he can raise the bat to the dugout. Starts off with a short delivery. That has been nailed over square leg. That's going to go all the way for 6. That has been the story of the innings so far. Goodness me, how clean is this? It's a long hit from Khurram Shahzad. Slower delivery. Wow, that is a very good hit. That is still again. Finally, it has landed, but way beyond the boundary ropes. It's length, and when you bowl length to a guy of that caliber, that ball is going to disappear. Bad delivery. Juicy length offered to Khurram Shahzad and beautifully put away. It's short, it's wide. This time it's Chota Wiki who has deposited that ball over the side screen. That's a magnificent hit once again. Fuller in length once again. Khurram Chakwal has just smashed that ball over long off. Wow, that is some hit. Juicy ball over pitch outside the off stump. He has absolutely launched it, and launched it in a magnificent fashion. Squat head on the leg side. There is a fielder out there in the deep. They will definitely look to come back for a couple of the last ball. And the wicket keeper couldn't gather the ball. Plenty of damage has been done, and Mali Mullins did not pick up any wicket. 118 for none. It's a marathon performance. It's a huge performance from DH Dabang in the semi-final. और इस बार कादिर कश्मीरी का गेंद ब्लॉक होल्डर मिला मिमरान, जिन शानदार फॉर्म जारी है, शानदार छक्का। बॉल तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन मिमरान का उतना ही शानदार स्ट्रोक गेंद को पहुंचाया 6 रन के लिए सामने की जानिब। ये जी खरोच गेंद, क्या जवाब दिया है यहाँ मिमरान खान खटक ने। इस बार गेंद मिल गई रडार में जहां चाह रहे थे मिमरान। मच नीडेड बाउंड्री फॉर मलीर मलंग्स।
टेप बॉल में इसको कहते हैं, बिल्कुल मुंह में दे दिया। और बोल्ड कर दिया, जबरदस्त इन स्विंग डिलीवरी। अगर ठीक है पहली गेंद पे आप बच गए, लेकिन दूसरी गेंद पे नहीं बचेंगे। दाऊद खान पठान। डीके गॉन फॉर 7, 28 पे 1 और बैकफुट पर गए और ऊंचा शॉट खेला, बट शानदार कैच लॉन्ग ऑन पर। एक वक्त में हवा में उछले, बट बॉल को हाथ से जाने नहीं दिया। 2 गेंदों पर 2 विकेटें दिला दी यहाँ पर। पेस बहुत अच्छा था और कैच भी उतना ही अच्छा था। करें आप कादिर कश्मीरी की तारीफ बनती है, लेकिन खुरम चकवाल की भी क्या बात है। कलीम 0 पर आउट। मतलब यॉक करने की कोशिश की है, स्ट्रेट शॉट, स्ट्रेट एज एन एरो, और बॉलर के सर के ऊपर से खेला है, पावर मौजूद थी, तो 4 रन। बोल्ड कर दिया हिम्मतवा हसनैन की बड़ी अच्छी गेंद, और मुख्तार के पास उसका कोई जवाब नहीं था और क्लीन बोल्ड हो गए। और इस तरह से एक और विकेट गिर गई है। मुख्तार 2 रन बनाने के बाद आउट हुए हैं। हसनैन ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया है। 45 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और इस गेंद को ऊंचा खेलने में कामयाब हुए। ऑफ साइड में गेंद लॉन्ग ऑफ पोजीशन पर बाउंड्री लाइन से बाहर आकर गिरी, 6 रन। जी हाँ, जितनी तेज होगी उतनी ही तेज दूर तक जाएगी। शॉर्ट डिलीवरी थी ऑफ स्टंप के बाहर। शॉर्ट राइजिंग बॉल, इस मरतबा पुल या हुक करने की अटेम्प्ट थी उनकी, मगर गेंद को एज कर बैठे विकेट पर यासिर मुश्ताक के हाथों में और वापस आ रहे हैं आउट होकर। जी हाँ, ये स्लो बाउंसर थी और थी तो खासी ऊंची, लेकिन इतनी स्लो थी कि टाइमिंग सही नहीं हो सकी। 30 रन बनाकर मिमरान आउट हुए, 55 पे 4। नए बैट्समैन उबैद सामना कर रहे हैं और उबैद ने पहली गेंद पर जोरदार अंदाज से लॉन्ग ऑन पोजीशन पर खेला है। फील्डर मौजूद थे बाउंड्री पर, उछलकर उन्होंने अपनी जंप को टाइम करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से दूर। अगली गेंद एक मरतबा फिर ऊंचा खेले है। क्या 600 का स्ट्राइक रेट बरकरार रहेगा, देखना होगा। गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से दूर। एक और का स्ट्राइक रेट 600 का बरकरार, 2 गेंदों पर 12 रन। और इनको ऑन साइड में हिट करने में तो कामयाब हुए, मगर काउ कॉर्नर से फील्डर ज़रा वाइड में डाउन की जानिब आए। दूसरे रन के लिए बैट्समैन पहुंचने में क्रीज में अपनी कामयाब हो गए। अंपायर बॉलर से गेंद ली और इस तरह 6 ओवर्स के बाद 74 रन 4 विकेट पे बनाने में कामयाब हुई मलीर मलंग्स। 44 रन की लीड उन्होंने कंसीड की है डीएचए दबंग्स को, यानी डीएचए दबंग्स जब अपनी सेकंड इनिंग्स शुरू करेंगे तो 44 रन के फ़ायदे के साथ या सबकत के साथ आएंगे, जो कि यकीनन काफ़ी बड़ी लीड है। Welcome back once again from DHS Sports Club, Moin Khan Academy, Karachi, where UPL being KTP Season 3 is going towards the end, and the first semi-final is being played between DHS Dabang and Mali Malangs. And overall, DHS Dabang is dominated so far, and they got a lead of 44 runs. It's a healthy lead in the first semi-final, so it's all set. First ball of the new innings. Outside the off stump, try to chase it initially. Wide giving. Big shot, land ball, put away in style. What a wonderful blow. Goodness me, how good is that from Chora Wiki? Out, could be out, could be out. Oh, he's dropped it. It was a tough one from toe end of the bat. And the fielder dived forward. It was never easy. I think he's hurt himself. And it's commenced in innings in style. It goes six, I guess. It's a flat one. Beautifully timed. That was some shot. Wrist work was there. It goes offside. Chora Wiki. One bounce into the fence for 4. What a status. Pulled away. What got the middle. Could be a boundary. 4 more runs flowing here for DH Dabang. Big full toss. Has it got enough length? Should be taking it long off. No mistake. So finally wicket falls. Full toss hit high on the bat. No timing at all. And Chora Wiki has to walk back.
Waqas share went for 25 on 11 deliveries. 50 for 1, DH at the bunks. Oh, goodness me. Two men are converging. Chance or 6. It's over the rope. What a way to begin the innings. Arsalan, the man in form, as I mentioned, picked it from outside off jump to pick up half a dozen. He goes again over long off. 6 more. Comfortably over the holdings. Terrific batting from Arsalan. Yes, he got that away and got that away in style. And it has gone for 6. Magnificent batting. Again, it is in the air. And I think it has come down right in front of our commentary box. Wow, Arsalan is absolutely having a go at everything. This one is hit away and hit away beautifully for a beautiful 6. Oh, Arsalan has given this a go. Fielder is paddling back a little bit. Oh, has he grabbed it? Yes, he has. He paddled back a bit and then grabbed that one nicely so it goes down here. Oh, wow. This is going into the hands of the fielder. Oh, it is, yes. Shahzad goes for 1. 1 of 5 for 3. And batsman got excited there as he got that away and got that away all the way for a 6. Out of the middle of the bat, 6 more. This is in the air. Has he timed enough? Oh, yes, he has again. What a great timing on that again by the batsman. And it goes again. And goes well as well. Another 6. So 6s are coming like a singles here. Last ball of this innings is coming up. But it won't last ball. Because it's going to be a wide, I reckon. Yes, it is. Wide called. Although batsman is being run out as well. And the newcomer will go. But ball will be bowled again. Yeah, 2 runs of the wides will be added to the total, but Salu has to take a long walk back to the dugout. And Khurram gets that away into the leg side. There's a man back at the long leg boundary who comes up a little bit. They are turning back for second. Oh, and now they are turning back for the third. And this is going to be out or not. Umpire has referred it to the third umpire. Let's see what will be the word of the third umpire. He should be given as out, but a couple of runs would be enough for them. So they have finished their second innings at 129 for 4. They allotted 6 overs. It means Maleer Malangs will be requiring 174 runs for the victory in 6 overs. Well, what a time he's having. It's just his 3rd game and so far he has created so much impact. Big shot to the onside. Nobody's out there, but it doesn't matter. He has cleared the rope and also the boundary. Beautifully played. First 6 of the innings. Got him! Clean him up. Beautiful with the beauty here. Abdul Qadir was right on the block hole. Yorker. And Mimran has to walk back. And he got 6 to his name. He kept it beautifully over the ring. 1 bounce into the fence. Lovely shot, Neeson. What a way to get on the mark. That was some hit. Outside the off stump. He goes for it over offside. Nice and safe. 1 bounce into the boundary. और मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी ये पॉपुलर हो जाएगा
एम्बियंस बहुत अच्छा है अब इस स्टेडियम में, और उसके बाद फिर शायद नेशनल स्टेडियम चला जाएगा। मैं समझता हूँ कराची को क्या पूरे पाकिस्तान को इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। Flicked away to the onside. Has he got the timing right? One bounce into the fence for 4. He has 4 given. Nicely timed. Leg side-ish and well put away. Very impressive, Abdul Qadir. Flicked away. Wrist work comes into play. Gone this time. No mistake whatsoever. And Abdul Qadir struck in the last ball of his spell. DK has to walk back. Good catch in the outfield. So 2 wickets have gone down. It's 35 for 2. He goes back for scoring 19. And time to go for us downstairs once again with Nadidar. कोई फलाना कुछ है, कोई जान जुनैद जानू है, यस पैंडा है कोई, तो वो बड़ी एक यूनिक चीज़ है, डिफरेंट है और इट्स वेरी यूनिक। चलिए, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस ऑन द साइडलाइंस एंड नाउ लेट्स गो बैक टू कॉम्बॉक्स। ये दो बिल्कुल डिफरेंट किस्म की गेंद थी, इसको पुल किया है डीप पोजीशन की जानिब और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। एक और जोरदार छक्का इस दौरान हसन लगा है, 62 रन हो गए हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। ये फिर शॉट है टेप बॉल का, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी और हमेशा बहुत ही कम बैट्समैनों को दिखने में मिलेगा कि एक्स्ट्रा कवर खेलेंगे। स्पेशली पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द रीजन, ये एक बहुत ही खुशाइंद बात है कि इस मौसम सरमा में कराची जैसे माहौल में मौसम में ये एक्टिविटी प्लान की गई है और मैं इसका क्रेडिट बदर एक्सपो को भी देता हूँ और पूरी जो कराची की जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है और एंटरप्रेन्योरशिप है मैं उनको देता हूँ। और इस मरतबा भी ऊंचा खेले हैं, इस मरतबा भी आउट हो सकते हैं अगर फील्डर कैच करे तो, और इस मरतबा कोई गलत नहीं। कैच लिया है और फॉर्मेट देखें जैसे हम कह रहे हैं कि टेप बॉल क्रिकेट हो रही है, 3 स्लिपें लगी हुई थी यहाँ पर, कैच आउट, इजी कैच। मिस्टर फहीम सिद्दीकी हु इज सीनियर जर्नलिस्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ KUJ, सर थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। वेल यूजुअली जर्नलिस्ट खबरों के पीछे भागते हुए नजर आते हैं, लेकिन आई एम श्योर क्रिकेट के शौक में मैदान में दौड़ लगती होगी आपकी। बिल्कुल ऐसा ही है, और यहाँ पर जो मैं आया हूँ तो क्रिकेट के शौक में ही आया हूँ, और ये जो कराची में आपने मेला सजाया हुआ है, ज़बरदस्त मेला है भाई, क्या रंगारंग मेला है। मुझे बता रहे थे जो है कि 82 ममालिक में ये देखा था, ग्रेट 84 प्लस, यस। और उसके साथ अगर हम ये कहें कि क्रिकेट, हम तो क्रिकेट नेशन को है ना, क्रिकेट लवर है हम तो। ओके सर, हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे जरूर, यह मैच खत्म हो गया है, गो बैक टू कॉम्बॉक्स। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 102 रन कामयाबी हासिल कर ली है DH दबंग ने। मलिर मलंग को शिकस्त हो गई है। इस पहले सेमीफाइनल में 72 रन पर सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट हुए, लेकिन 6 ओवर्स मुकम्मल हुए सेकंड इनिंग्स के, और 101 रन से DH दबंग ने ये पहला सेमीफाइनल सीजन 3 का जीत लिया है और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। It's 11 p.m. Welcome back from DHA Sports Club Moin Khan Academy in the semi-final of UBL Amin Karachi Table Premier League Season 3. Clifton Populars are up against Liari Legends here at DHA Sports Club Moin Khan Academy, and this also promises to be an extravagant contest between these two very strong sides. If we talk about the toss, it was Clifton Popular, and their captain Asad Shah has no hesitation in deciding to bat first once again. And he'll be raring to go in the second semi-final. We are all set for the first ball. Rana Mohsin up against the opposition skipper Asad Shah. He's going to come around the wicket first up. Starts off with a full toss. It can well and be a no ball. Yes, it has been a signal as a waist high no ball. Might have slipped out of his hands. Yeah, it looked like it slipped out of his hands. Outside the off, playing it over extra cover. It's up in the air. One bounce and into the fence. Making full use of that free hit, Asad Shah.
He goes right. Wow, that is some hit from Asad Shah. Take that one, Mohsin. Absolutely gorgeous hit that one was. He finished that one from that presence. It's short. It's pulled. My goodness, how far that ball has went. For a moment, I thought he was a little late onto that stroke, but still got so much power onto it. Oh, Zishan, take a look at the reflexes he had. Low full toss. Picked away on the leg side. Asad Shah's love affair maximum in this tournament continues. And look at these spectators. He goes again. This time it's flatter and longer. Brilliant way to end the over. This from the captain. This time it's Fahad Mia Chinnu who has decided to go big. There is a fielder trying to get in the knee tap and he has taken it. Wow, what a like this. Fahad Mia Chinnu was silent at the other end and that has resulted in his wicket going down. Alhamdulillah, Popular is there now. और I wish them good luck to Zuhair Saab and his team, Badar Expo and everybody. ये देखें 6 लग गया अल्हम्दुलिल्लाह. चले जी और इसी के साथ हम आपको थैंक्स कहेंगे और कॉम बॉक्स में जाने वापस जाएंगे. Goes again. It's straighter. And the fielder at long on will be just a mere second. Oh, that was a gorgeous hit again. Wow, right on the beach of the bat. It goes offside. It's high and handsome. Where will it land? I think it has landed beyond the rope. But a fine strike over cover. It played with real authority. Lifted. It's high in the air. Who wants it? Two men are converging. Landed for bound two. Oh dear, they made a mess of it. Could have saved. They could have saved boundary again to Clifton Popular. And Asad Shah has brought up his half century. What a wonderful show. Lifted. Has it got the timing right? It's high in the air. That's gone way over, I think. Oh yes, it's a big one. Asad Shah continues to amaze us. TV artist Matira is present as well. She's enjoying this contest. Big shot to the onside. Has it got the distance? Yes, a big hit. It's a crowd cash. Tahir Pindi picks up a maximum here. What a start of the new over. In the air, could be out. Missed time shot. Oh, dropped. He has dropped a stitter. Should have been taken at this level. He goes for it. Has it got the good connection? Yes, it's a big one. Wonderful finish from Tahir Pindi. In fact, Asad Shah is but overall it's a good over from Rana Mohsin. 10 runs off the over. It's a good total. 109 the first innings. 6 overs have done and dusted. First ball, it has gone high up in the air. The fielder at long on is trying to get in the knee that. And the ball just was out of his reach, but they still get a couple of the very first ball. Who would know better than you, Kainat? It's short. He has tongued that Qari Hamidullah and has sent the ball into the crowd. Once again, shuffling across the crease, hitting it flat. Has that gone all the way for 6? The umpires will definitely take a look. Yes, the arms are aloft. What a hit this is from Qari Hamidullah. And I'm so excited क्योंकि मुझे लगता है that ख़वातीनें बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं and sports in cricket and all that. So taking the stand बहुत ही अच्छा होगा for the women. छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे tournaments ही ना प्यारे-प्यारे खूबसूरत सितारे पैदा करेंगे. You rightly said, and we're super excited about the game as well. We have just witnessed a wicket going down for Hardal. Finally, the wicketkeeper has managed to take a catch, and his lefty has been dismissed. Liari Legends have lost their first. It's 27 for 1.
बहुत मुश्किल होता है और हम देखने वाले को तो और मज़ीद मुश्किल होता है। ओए होए 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 होए, क्या हुआ? It's a 6. In cricketing terms, it's known as a 6. Slower one, picked up. It's hard, it's flat, and it's long. Hamidullah is a hope for Liari Legends at the moment. It's full toss, picked up on the leg side. My goodness, it's a flat hit, and once again that has sailed over the boundary ropes. If Hamidullah keeps on going like that, Liari Legends are definitely going to get some lead. फरहाद की इस गेंद को बैट्समैन ने ऊंचा खेल दिया। कारी हमीदुल्लाह का जोरदार छक्का, खूबसूरत क्रिकेट। और इतने अच्छे तरीके से खेल रहे हैं और अपना नाम खुद बुलंद कर रहे हैं। एक और जोरदार शॉट, कारी हमीदुल्लाह के इरादे और अज़ाइम बड़े खतरनाक हैं। एक और छक्का, इस मरतबा ऑफ साइड में ऊंचा खेले, फील्ड मौजूद, कैच लेने में कामयाब। बड़ी अहम कामयाबी, कारी हमीदुल्लाह खतरनाक हो गए थे। 47 रन बनाकर लौट रहे हैं और इस तरह 58 for 2, 47 बनाकर कारी हमीदुल्लाह आउट। इस गेंद को ऑन साइड में उठा दिया, फ्रंट फुट पे आते हुए, और गेंद तमाशाइयों के बिल्कुल सामने, और तमाशाइयों ने डांस करना शुरू कर दिया। एक और छक्का। कम ऑन। और ये वो चीज है जो बार बार बॉलर करते हैं मगर बचे हैं। He got away with that one. अब रन आउट चांस भी हो सकता है। रन आउट चांस स्टिल है क्योंकि अंपायर ने, तीसरे अंपायर है टेलीविजन अंपायर की जानिब, रेफर किया है कि वो ये देखकर बताएं कि बैट्समैन पहुंचे हैं कि नहीं। यस, रेड लाइट कम्स इन। तो एक और विकेट यहाँ पे गिरी है 67 के स्कोर पर। हवा में, लेकिन वॉज दैट ऑफ द बॉडी, लेकिन इधर रन आउट का चांस है। यस, अंपायर ने इस मरतबा जहमत नहीं उठाई तीसरे अंपायर को भी रेफर करने की, और नॉन स्ट्राइकिंग पे बैट्समैन रन आउट हो गए हैं और अशरफ हैं रन आउट होने वाले बैट्समैन। फ्रंट फुट पे आके स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड बेल्ट किया है गेंद को, बड़ा खूबसूरत छक्का का। और इस छक्के के साथ इनिंग्स का इख्तिताम हुआ। लियारी लेजेंड्स ने 78 रन स्कोर किए, 4 विकेटें गंवाकर, और अभी भी 31 रन पीछे हैं पहली इनिंग्स के टोटल से, जो कि क्लिफ्टन पॉपुलर ने सेट किया था। Welcome back once again from DH Club Moin Khan Academy. Second semi-final is being played between Liari Legends and Clifton Popular. And now second innings is about to begin. They are 31 ahead, none for none. Ahmed Kulfi is ready. Fahad Mian Channo is ready with the bat. Ahmed Kulfi is with the ball. He streams in. And straight away bowled a full toss. And I reckon straight away bowled a no ball or not. Let's see. Yes, that was a no ball. This is not the start they would have liked. And he hit that one over the top. It bounced away to the point boundary for 4. Wide outside the off stump, not a right line. It was full. Length was okay, but line was a problem. I do, we can say, and like I'm not a big fan of cricket, but I do support since my father loved it. So yeah, this is why I'm here, and I'm also supporting Clifton Popular today. Fahad Mian Channo hit it in the air. Oh, he put it down. No, order, order. What have you done, Mr. Covers? Oh my God. And now Fahad is telling, if you drop me, I would whack you like that. Absolutely gave it a dunk. What a hit. Fahad Mian Channo whacked that away over backward square leg, in fact over conventional square leg, and it's gone for 6. Terrific. Oh, he got that away, and got that away over mid-wicket for another 6. What a lovely shot. Brilliant shot. मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं PSL खेल रहा हूँ और मैं PSL की कोई टीम बाय की है। मैं I was astonished to see कि यार कमाल क्राउड है,
कमाल के जो है टीम है, कमाल का ऑर्गेनाइजर है। You know, it's third season और season wise ये लीग improve होती गई है. So this is big achievement for Yes, KTPL. it is. It is very wonderful, mashallah. Just to see, just to be here और enjoy करना is just phenomenal, honestly. मेरे लिए तो बहुत मजा आ रहा है. Ah, yes. It's the maximum. I like them there. Oh, yes. Oh, my word. This is carnage. Absolutely carnage here. Unbelievable hitting by Assad Shah. It really is. I mean, I am running out of words to describe this master knock. जितनी मैनेजमेंट है केटीपीएल की, ज़ोहैर नज़ीर भाई और जितने भी लोग मिलके काम कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग फॉर्मेट दिया है पाकिस्तान की यूथ के लिए, पाकिस्तान के यंगस्टर्स के लिए, और क्रिकेट को एंजॉय करें, क्रिकेट खेलें। एक और चक्कर लगा दिया फाद ने। बिल्कुल एक और शक्ल लगा और यहाँ हम आपको थैंक यू कहेंगे और we'll go back to the box. He has killed that. He has definitely killed that a long way. Overload on. What a way to bring up the 100 for the team. He hardly seemed to have hit that. I tell you what, it looks as if he's got a knife in his hands. He's really slaughtering them. Big time. It's a sword in his hands, Fahmi Achinu. Bowl him! Unbelievable, he got his man through the legs, and it wasn't on the cards, I can tell you. It was a slow delivery. Well done, Sohail, you little beauty. You miss, I hit, says Sohail lefty. Fahad Alam walks back after scoring a magnificent knock of 47. Whipped away. Very good looking stroke. In the gap too. He got himself a boundary. Umar. Well, that's what he can do, Umar Bajwa. Goes through the offside this time. He goes over the top and gets the connection all right. It's a big six to finish things off. What a way to end the proceedings with the bat for Clifton Populars. And their lead is now of 162, which means that 163 will be the target for the Derby Legends to chase down. Let's play! इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए, ऑन साइड में अच्छा शॉट, फील्डर दौड़े जरूर लेकिन गेंद को रोकने में वो नाकाम रहे और गेंद बाउंड्री से बाहर। 4 रन्स। इस गेंद को ऊंचा खेले, खतरे हैं, फील्डर के नीचे, विकेट लेने में फरहाद कामयाब और उन्होंने सेंड ऑफ भी दिया बैट्समैन को। खुशी का इजहार। इस तरह हसन की बड़ी कामयाबी पॉपुलर्स को मिल गई है। 3 बॉलों पर बड़ी विकेट, 1 पे 4। कारी हमीदुल्लाह ने गेंद को खूबसूरती के साथ हिट किया। ऐसी बहुत सी हिट्स दरकार रहेंगी अगर जीतना है, लेकिन ये पहली बड़ी हिट है कारी की, छक्का। अच्छा शॉट। इस मतलब गेंद को खेलने में कामयाब हुए कारी हमीदुल्लाह का खूबसूरत अंदाज, ऑन साइड पे एक और छक्का। पीछे गिरी हुई गेंद और उसका फायदा उठा कारी हमीदुल्लाह ने। शॉर्ट गेंद जिसे स्क्वायर लेग यानी खेले, रन आउट शॉट, पक्के रन आउट हो जाएंगे। कारी हमीदुल्लाह निज़ार निकले नहीं और कारी दौड़ते चले आए और इससे भी फ्रस्ट्रेशन साफ जाहिर है जो इस वक्त लियारी लेजेंड्स की है और इस तरह एक और विकेट जो है वो लियारी लेजेंड्स की गिर गई। बहुत ही उम्दा ओवर इमरान का, इस बात में कोई शुबा नहीं अब तक। और ज़ोहैर नसीर का खूबसूरत शॉट, बैकफुट पे रॉकेट होते हुए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग से बाहर, छक्का। ओह गुड हिट। और ये देखें, इस गेंद को ऊंचा खेले हैं बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब और गेंद रोल करती हुई लॉन्ग लेग बाउंड्री से बाहर, चौका। इस गेंद को स्विंग कर दिया है ऑन साइड में और गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन से बाहर, एक और चौका। Goes big, does Zohair Nasir. Has he connected well enough?
Yes, he has. It's his second six. He's enjoying his batting. There you see, everybody seems to be enjoying this. You will mean presents KTPL Season 3. Hitting away on the offside. There is no protection out there. It's going to get a boundary in his lefty. Down the leg side, it's up in the air. And it has gone all the way for six again. He's just enjoying his time out there now. It's our lefty. Slower one, picked up on the leg side by Nizar lefty. He's got the height and the distance. Once again, the ball landing into the leg side, into the crowd. Oh, he goes once again. My goodness, how well has he timed that? Wow. He's putting up a show here tonight, Zohair Nasir. Tell you what, he's got something in his armory. What do you mean? It's Zohair Nasir with his bat. Yet another maximum. Come on, you can hit them. Oh, he has been knocked over. It was a full toss. He was coming down the track, yorked himself, and the ball landed in the base of the middle stump. But a brilliant cameo comes to an end from Zohair Nasir. 28 of just 11, dealt in just maximums. Outside edge, that should have been a regulation chance. It's all happening for Clifton Popular. Now, this is a field we can witness in Test match cricket. He's clearly disappointed, going out for a golden buck. It's 88 for 4. Down he comes. Up she goes. Out of the ground. 6 more. Ashraf Patang saying it to the opposition. Centre fielders back in their position. Pitched up. Makes it into a full toss. Hit it. Over long gone. Back-to-back maximums for Ashraf Patang. But that's not going to be enough. They scored 100 for the loss of 4 wickets. But still they have suffered a huge defeat by 63 runs in this second semi-final. Won that second semi-final and advanced to the final. मेरा नाम साकिब सानी है। मैं डोमेस्टिकल ऑफिसर अहमद फूड से। तो हमने यहाँ पे बचत एक्सपो में अपना स्टॉल लगाया हुआ है अहमद फूड का। तो हमें आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो बचत वो है, जैसे आप सब रस लेंगे 800 ml, वो मार्केट में 430 का है और हम आपको दे रहे हैं 250 का। और ऐसी केचप है जो मार्केट में 430 का है, वो हम आपको दे रहे हैं 320 रुपये का। तो काफ़ी हम बचत दे रहे हैं यहाँ पे। तो आप आइए लाजमी। यहाँ पे हमारा अचार भी है 600 रुपये का मार्केट में दे रहे हैं और यहाँ पे 400 रुपये का हम यहाँ पे आपको स्टॉल पे देंगे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का। तो बहुत ही आप यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस ले सकते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं अहमद के सब आइटम है, ये पाकिस्तानी ब्रांड है, इसको प्रमोट करना चाहिए। और इसराइली जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको बैन करना चाहिए, उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो बहुत अच्छा इकदाम यहाँ पे कराची के लिए उठाया गया है। सफ़ेद पोश लोग, मिडिल क्लास और जो भी आएगा उसको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। अस्सलाम भाइयों, क्या हाल है? अच्छा भाइयों, हम हैं अलनूर राइस मिल पंजाब रहीम यार खान से। ठीक है, हमारे कराची में 5 डिस्ट्रीब्यूटर हैं और ऑलरेडी हमारा चावल पूरे कराची में। लेकिन इस बार हम बचत एक्सपो में, जो कि बदर एक्सपो वालों की तरफ से था, जिनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम कराची की आवाम की खिदमत कर सकें। तो ये आपके लिए एक अपना जो प्रीमियम प्रोडक्ट है, जो कि हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और पाकिस्तान के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स में अलनूर राइस मिल, अलनूर इंटरनेशनल और अलनूर ग्रुप आता है। तो मैं ये आपको एक अपना प्रोडक्ट दिखाने लगा हूँ, जो कि हमारा सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है। ये डबल पॉलिश 11 पीस प्योर कायनात 1121, जो कि ये अगर आप देखें तो जूम करें, ये चावल आपको दराज पर 520 रुपये किलो। ठीक है, बाकी अगर किसी पे 480, 450। और ये हम चावल सिर्फ कराची के लिए जो इस बार आए हैं 330 रुपये किलो। चाहे 1 किलो लें, चाहे 50 टन लें,
ठीक है, हम सबको वेलकम करेंगे। हमारे पास पीछे अलॉट पड़ी हुई है, मिल डिस्ट्रीब्यूटर्स को वेलकम करते हैं, रिटेलर को वेलकम करते हैं, आम पब्लिक को वेलकम करते हैं। आए, ये नादिर मौका है, पूरे साल फिर से आपको ये चावल 330 रुपए किलो में कोई भी नहीं ला के देगा, ये हमारा आपसे वादा है। अगर आपको चावल पसंद ना आए, आप पीछे दिए गए नंबर पे बताएं कि आपको चावल पसंद नहीं आया। कराची में आपको चावल चेंज भी कर देंगे। कराची में ऑलरेडी 5 से 10 हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं अल्लूर राइस मिल्स के, तो आप बिस्मिल्लाह करें, एक दफ़ा आएँ। और आखिर में एक और दफ़ा शुक्रिया अदा करूँगा बदर एक्सपो वालों का, जिन्होंने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तो तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं, महफिले अंजुम भी नहीं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening everyone. It's KTPL season grand finale. Clifton Popular taking on DH Davangs, where DH Sports Club Moin DH Davangs won the toss and are batting first. Here we go. Players are ready. Everything is in order. Everything is in readiness for the first ball to be bowled from the far end or from ocean end. Irfan Nona to start the proceedings. Choda Wiki is ready. Irfan steams his first ball. Outside the off stump. And he started off with a wide run the ball straight away. Choda Wiki has got that away. And here comes the first big hit of the final. It's gone. Choda Wiki has got it in the air and got it towards the cricket boundary for hit. He got that away over the top of covers and twisted away, left it to the boundary for 4. Oh, he's in some form. Khurram Chakwal has played that away. This is Khurram Chakwal. It's gone for the journey. He has hit it again and hit it well. Oh mine, Khurram Chakwal already smashing around. What a magnificent shot. 2 sixes in a row. Khurram Chakwal at his level best as he bashed that away over lob. And look at the crowd. Khurram Chakwal, you little putty. Grand finale. 46 for none in 2 overs. And Choda Wiki has picked that away and picked that away over the corner, number 6. And again, better and bigger. Choda Wiki is making mystery of the bowling. Wow, shot, yaar. Wiki has hit it and he grabbed it. What a good catch! Oh, what a great catch it has been! Choda Wiki drove that one very hard. Builder plucked that one from the air. Magnificent effort. Is this the first? Just in the tail. Is this the first turn in the match? Dear Salan. He got that one away over the top of covers. It bounces away to the boundary for 4 like a treasure whip. Wow, good shot. Khurram Chakwal put that away and put that away in style. Another assist. Went for it. Has he got a bat on that? He has. Wonderful. First 6 of the over.
Drop the ball short. Has he got the elevation? It's flat. Got the time. Wagner Chinube picked up a catch. He was nice and relaxed. Right at the edge of the boundary. That's a huge one. Arsalan Jamshed went for 11 of 5 deliveries. 79 for 2. DH at the bumps. Chance. Leading edge. Who wants it? Should be a simple catch. Got him. Umar goes without scoring. What an over it has been. Imran has picked up a wicket. 2 in the over. And Didi is in the score. Standing over from Imran and short chase from Umar Shahzad goes without troubling the scorers. 3 for 79 on the board. Flick on the wrist from Pura Chakwal. And it's gone all the way. Unstoppable. What a form he is in. Once again, a terrific shot of the wrist. Big full toss. He goes offside. Smashed away for a flat fix. Wonderful shot again from Pura Chakwal. Bad delivery. Put away. Smashed away to the onside. What a strike that is. He has absolutely nailed it into the crowd for half a dozen. From the ball short, smashed away. Pura Chakwal has made it. What a blow that is. Shot outside the option. Bad delivery on this occasion. And what a good strike that is. Up goes the arms. Waited, smashed away. Down the ground. 6 more. Yes, it's a big one. What a batting performance. He's already crowed up his half century in the previous ball. Big shot on the onside. That is gigantic. That is huge. This is tremendous thing. 69 of just 17 balls. 6 overs have done and dusted the first innings, and look at the score. What a big score they posted. 3 for 128. Well, the man's dugout must be really happy with the effort the boys have shown to the 8 and 6 overs. फर्स्ट बॉल आने को है और मिड विकेट पे खेले फहद मियां चन्नू, फील्डर मौजूद, कोई रन। खासा है कादिर कश्मीरी का कि एक तो जबरदस्त पेस से बॉल करते हैं और साथ साथ इनको पिच पे मूवमेंट भी मिलता है। और इस गेंद को खेल दिया असद शाह ने। गेंद हवाई रास्ते से होती हुई बाउंड्री से बाहर। शक्ल सिलसिला है कि आज रुकने वाला नहीं। बड़ा जोरदार शॉट इस मर्तबा फहद मियां चन्नू की जानिब से। फहद का पहला छक्का। फहद मियां चन्नू ने ड्राइव किया और गेंद गोली की तरह डीप कवर्स बाउंड्री से बाहर। 4 रन। यही करना पड़ेगा, बॉल को अपने मेरिट पर खेलना होगा जब आप जहीर कालिया का सामना कर रहे हो। तो इस मर्तबा मिड ऑफ को फहद मियां चन्नू का खूबसूरत शॉट हमारे कमेंट्री बॉक्स के दाएं जानिब छक्का। और इस मर्तबा जोरदार शॉट। शानदार अंदाज में बैट स्विंग दिखाई अपनी यहाँ पर असद शाह ने। इस किस्म के शॉट्स खेल के ये टॉप स्कोरर बने हैं अपनी टीम के लिए और इस टूर्नामेंट के। और फहद मियां चन्नू ने कहा कि भैया बहुत हो चुका, अब मेरी बारी है। जहीर कालिया पैच किया, लॉन्ग वे बैक छक्का। इस दौरान अगली गेंद फहद मियां चन्नू goes downtown and goes country mile। जोरदार छक्का फहद मियां चन्नू का। जी हाँ, उमर ने स्टार्ट लिया। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और बड़ा ही दिलकश शॉट डीप मिड विकेट के ऊपर से। बहुत ही खूबसूरत छक्का, बहुत ही खूबसूरत शॉट। तो पहले बॉल पे 6 रन ले लिए इन्होंने। उमर क्या करते हैं, एक दफ़ा फिर बहुत ही खूबसूरत शॉट और ये भी मेरे ख्याल स्क्वायर लेकर मिड विकेट के ऊपर से। इस दफ़ा और भी बड़ा छक्का, बल्कि मोइन खान अकेडमी जो कि इंटरनेशनल सतह का ग्राउंड है, ग्राउंड के बाहर बॉल फेंक दी गई। शॉर्ट गेंद थी, सोचा इसको कि खेलें, लेकिन लगा कि एज कर बैठे हैं। जहां
विकेट कीपर ने ग्रैब किया और यहाँ पर बड़ी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए उमरी पेसर और उनकी विकेट नंबर 22। इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए उमर। पांचवा जोरदार और खूबसूरत छक्का लगाकर उन्होंने इसका इख्तिताम किया है और इस ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 85 पे 1। फहद मियां चन्नू 45 पे। इस गेंद को फहद ने स्विंग किया, फील्डर मौजूद, डाइव फॉरवर्ड किया लॉन्ग ऑन पोजीशन पर और अच्छा कैच लेने में कामयाब हुए और 87 के स्कोर पर ये विकेट नंबर 2 गिर गई है और फहद मियां चन्नू 45 रन बनाकर आउट हुए। बहुत बड़ी तादाद को आप मौका दे सकते हैं कि वो आएं और इन टूर्नामेंट्स में हिस्सा लें। इस दौरान जोरदार शॉट ताहिरी पिंडी का और गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। 100 रन पूरे हो गए आरिफ साहब। आखिरी बॉल लेकर एक बार फिर हसनैन और इस मरतबा भी अच्छी गेंद, लेकिन फाइन लेग के फील्डर से फंबल हुआ, उन्होंने गेंद को रिकवर किया। दूसरे रन की कोशिश है, रन आउट चांस, लगता है फिर अवेल नहीं कर पाए और इस मरतबा 2 रन के साथ लगता है कि दिफा हो गया है। जी हाँ, इन 2 रन के साथ स्कोर हो गया 110। इस तरह 18 रन की बर्तरी जो है वो DH दब्स को पहली इनिंग्स की बुनियाद पे हासिल हुई है। 110 रन बनाने में कामयाब हुई यहाँ पर टीम जो है वो क्लिफ्टन पॉपुलर की। Welcome back once again from the DHA Sports Club Muin Khan Academy, Karachi, where the all-important final is going on. The first innings have been done and dusted, and the defending champions, DHA Debangs, have excelled by retrieving a lead of 18 runs in the first innings. We are all set for the start of this third innings. Irfan Nana to Chota Wiki. Let's play! Let's play, boys! Nicely bowled, full toss, just with the angle going away. These sort of fumbles are not required. Asad Shah, the captain, was there on that occasion. But they're off the mark, Waqas Sher and company, nevertheless. That's hit away hard and flat. One bounce over extra cover. First boundary of the second innings by Waqas Sher, and it's a good one. And bowling full toss, hit hard and caught. My word! Not an exactly wicket-taking delivery, but he will take it all day and all night. It's Irfan Nana. It's drama already. They're all the Clifton Populars. Waqas Sher, early in the piece, goes for 4. 4 for 1. Bit away in the vacant region, and the ball is going towards the boundary because that is vacant region. That's why eventually it gets to the fence for Irslan's boundary. Oh, he has swatted that away. That, and in no time he's gone to the boundary. 4 more. What, that was not a slower delivery, but he just hammered away down there on the leg side. He's brave enough, and he's getting the success as well, but not this time because it's Khurram who gets into the act. Thumped it down the ground for yet another boundary. Bowled him! How about that? Round his legs, and I like that salute. Wow, Irfan, you little beauty. See, we've been waiting for a dismissal since the very first day of the tournament. Bowling a batter round his legs, and we are talking about Khurram Chakwal, who has been simply outstanding. Takes a big fish. Khurram goes for 9. 2 wickets down for 27. को देखे अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ओसाका लाइटिंग ने इस मैच के लिए नुमाया टूर्नामेंट के नुमाया काम किया है। बिल्कुल, यहाँ पर एक विकेट गिर गई है। इन्होंने क्रिकेट के लिए ओसाका किरिको के नाम से टेप इंट्रोड्यूस कराई है। वन ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ द इवेंट लिया गया है जब फरहाद की गेंद पर फहद मियां चन्नू ने जबरदस्त अंदाज में सलमान खान का कैच किया और वो 1 रन बनाकर आउट। और यहाँ पर उठाकर खेल दिया है उमर भाई शेहुपुरा। ओह माय गॉडनेस, क्या कमाल का कैच किया है। टीम कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जबरदस्त कैच, पिलियन ने भी अपने थोड़ा से खूबसूरत कैच को लेकर पहला विकेट दिलवाया था। तमाशाइयों की खुशी का ठिकाना नहीं और उमर शहजाद बिना कोई रन बनाए आउट।
और यहाँ पर उठाया है गेंद को और जाएगा ये बिल्कुल मीलों दूर। अरसलाना चिपट फख्रे पाकिस्तान, जिला गुजरात से ताल्लुक है और पाकिस्तान नेशनल बेसबॉल टीम के ये बड़े अहम खिलाड़ी हैं। 57 रन की लीड और इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए। बड़ा खूबसूरत और जोरदार शॉट अरसलान का। डीएचए मेकिंग ए सॉर्ट ऑफ अ कमबैक हियर। 45 रन के छक्के के साथ 4 ओवर्स का खेल भी मुकम्मल। इस पर दबाव उठा के खेल दिया है, देखना पड़ेगा और गेंद यकीनी तौर पर जाएगी तमाशाइयों के बीच में। ये है केटीपीएल कि जो जिस तरीके से हमने लोगों के अंदर जाना था, लोगों को बताना था कि देखो हमारा ये एक ऐसा अनस्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट्स था जो गली मोहल्लों में खेला जाता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हम इसको ग्राउंड्स के अंदर लेके आए। 15 सालों में तो नॉट बीइंग द 15 सालों में ऐसा क्राउड, नॉट इवन इन द सबर्ब, आई हैव टू गो एज सीईओ आउटसाइड टू हैव 2000 पीपल इनसाइड टू गेट इट। सो इमेजिन इमेजिन करें जो स्कीम है और जो लेवल है और जो इलेक्ट्रीफाइंग है। क्लिफ्टन पॉपुलर उठा के खेला है मुस्तफा हनीफ, कामयाब हुए यहाँ स्क्वायर रीजन के बाहर और बिल्कुल अंपायर ने इशारा किया है कि इट्स अ बाउंड्री फॉर मुस्तफा हनीफ। उठा के खेला है एक बार फिर से और ये बॉल तमाशा बुलेट। मुस्तफा और अरसलान एट द फैगड़ ऑफ द इनिंग्स। यहाँ पर एक बार फिर से उठा के खेला है डीप मिड विकेट की जानिब। Yes it is, बहुत ही अच्छा रुके सबके ऊपर से ये बॉल। बैक टू द बॉलर और यहाँ एक रन मिलेगा कामयाब और ताहरीफ की जानिब से। आखिरी 3 गेंदें बड़ी अच्छी करने में कामयाब हुए। पहली 3 गेंदों में 18 रन उन्हें पड़े थे, एक चौका और 2 छक्के और एक वाइड बॉल के दौरे में मगर आखिरी 3 गेंदों में मैच 2 रन दिए। इस तरह डीएच रन्स ने अपनी इनिंग 87 रन 4 विकेट पे मुकम्मल की है। 105 रन से उनकी बढ़तरी हो गई है। इस तरह चैंपियन बनने के लिए क्लिफ्टन पॉपुलर को 106 रन दरकार होंगे। Abdul Qadir Abbas is going to start the proceedings in the final innings. Just couldn't time it. Hitting the bottom half of the bat. Starts off with a dot ball. No timing at all. Try to heave it. Intentions is pretty clear because target is way above 100. Hitting it over extra cover. This is bread and butter stroke for someone like Asad Shah. Typical of Mr. 360. Boundary to start the innings for himself. What a start that is from Asad Shah. He went over extra cover. A well-controlled shot. Lofted beautifully. Pick up. Not many batters can hit a shot like that to Abdul Qadir Abbasi. That has sailed into the crowd. Stunning. Absolutely stunning from Asad Shah. Flick of the wrist and then traveled over the boundary. What a start that is for the captain. He hits it up. It's over long off. Wow, that is a big hit from Fahad. That's how he announces his arrival. Welcome to the crease, Zaid Ahmed Kalia. What a shot that is. He goes over extra cover. That's a flat hit into the crowd. Bad delivery, put away in style. What a magnificent shot. Once again, tremendous contact. Zahir Kalia, what can he do next? Once again over extra cover. Wow, what a hit that is. Elevation and the distance. For the first time, you see a crowd dropping a catch. You little beauty. My word, that is a classy shot. Picked up. Down the leg side. Wow, that is another one. A monstrous one for the and look at the shot in the dugout. This makes it staggering. The first one too good, but this is something special. Wrist work over long on. What a shot that is. He'll have to work a little harder because Fahad Miachinnu is absolutely amazing right now. Length is offered straight away. Abdul Qadir over the wicket. He stayed deep in the crease and what a shot that is. It's short, it's pulled, it's flat, and into the ground she goes once again. Sixes are literally flowing like a river. Goodness me. Murtada Wahab Saab is present here. Mayor Karachi witnessing this grand final. Sitting along with Mr. Zohair Nasir.
It's up in the air. He hasn't timed it. Can this be taken? Oh my goodness! Oh my goodness! This is Zahir Ahmed Kalia. What has he done? The crowd, in fact, the whole team is running out to him. This is a sensational catch. And look at the reaction of Fahad Mia Chinnu. Will they come back? And what a scintillating performance from Fahad Alam. 42 of 14. Last ball of over number 3. He hits it straight. Wow, that is as straight as an arrow. Umar Bajwa also announced his arrival. He has been struggling, but not tonight. Remarkable shot. Absolutely remarkable. Just a hint of a helicopter shot. Asad has whipped that away into the side and picked up the gap, and it's gone for 4. Hasnain streams away. Oh, this one is pumped and pumped over the corner. What a timely 6 for Asad. He comes. He got that away and got that away through the offside. Where has it gone? It has gone all the way. He slapped Zahir Kalia. What a magnificent 6. Asad Shah, you little beauty. Here he comes again. And he has hit that and hit that. Where has it gone? Oh no, it hasn't gone anywhere. And fielder is looking very upset as well. We will have to. Here he goes. He has hit that into the leg side. Oh, what a fielding. What a fielding. Who was the fielder? And it could be a run out. It could be a run out. It is. It is a run out occurred. Although umpire has sent it upstairs, I think they want to see who has been run out. I tell you what, pressure is mounting. Umar Bajwa gets out for 10 of 7 balls, and it's 95 for 2. Every eye is in the middle. Umri goes away. And Asad got away on the top. It's running away. Has it gone to the boundary? Oh, yes. For drama. Drama's turn. 7 required of 2 balls. My God. 5th ball of the over. Asad has played that away. Protection is the take one. Will they turn back for the second? Run out chance. It is. It is. It has come down to the final ball. And Asad will have to face the final ball. And Asad and his team will need 6 runs for the victory. Javed Miandad smashed Chetan Sharma in 80s for a 6. Since everyone is up on their feet, it's commentators' turn to come and up. Get up on your seats. Here's the final ball, and Asad has hit it in the air. And oh yes, Asad has smashed that one out of the back. And look now, oh my God, what a scene there! It looks like we were in England many years ago. Now used to come to the ground and used to hug the face of their favorite and their idol. Oh my God, oh my God. KTPL is ended, and it's Clifton Popular, the champions of KTPL Season 3. बहुत सारी तालियां होनी चाहिए यूबीएल अमीन क्रिकेटबॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 की चैंपियन क्लिफ्टन पॉपुलर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तारिक महमूद भट्टी, डिप्टी जनरल मैनेजर पीईसी। पीईसी जो है वो पीआईए का एक इदारा है जो एविएशन से रिलेटेड जो है पार्ट्स वो बनाता है, ऑप्टिक्स से रिलेटेड पार्ट्स बना रहा है, और दूसरे डिफरेंट एविएशन ग्रेड के सर्टिफिकेशन है हमारे पास जो, और हम जो है चौथी दफ़ा इस आइडियाज़ 2022 में पार्टिसिपेट करने से पहले भी हम 3 दफ़ा आइडियाज़ में जो है वो पार्टिसिपेट कर चुके हुए हैं और अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं।
Ideas 2020 brings together stakeholders across diverse defense industries. The fourth exhibition offers a platform for G2G, B2G, B2B actions, joint ventures and investments in its production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. आज अपनी जिल्लत का सबब यही है शायद, सब कुछ है याद मगर खुदा याद नहीं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। Ideas 2020 brings together stakeholders across diverse defense industries. The fourth exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures and investments in the production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The fourth edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Ideas 2020 brings together stakeholders across diverse defense industries. The full exhibition platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. बुरा समझूं उन्हें, मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं खुद भी तो हूं इकबाल अपने नुक्ता चीनों में। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। Ideas 2020 brings together stakeholders across diverse defense industries. The fourth exhibition of the platform for G2G, 2G, and B2B interaction, joint ventures and investments in defense production sector. A strategic seminar will also hold facilitate discussions on global challenges within the defense sector. 12 of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center.
2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures, and investments in the production sector. A steep seminar will also help to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B interaction, joint ventures, and investments in defense production sector. A G2G seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Introducing Dhabeji Special Zone, a project of Government of Sindh. This global industrial city connects to Central Asian, Middle Eastern and African markets. Access to China and the rest of the world through Karachi's port. Enter a state-of-the-art zone that nurtures creating jobs and boosting exports. Dhabeji Special Economic Zone represents a defining moment in its evolution, offering special economic zone benefits such as tax holidays and import exemptions, along with the added advantage of seamless access to uninterrupted utilities. A flagship CPEC project of Government of Sindh under public-private partnership with Zaid Khan Brothers Development and Management Company. Dhabeji Special Economic Zone, Pakistan's gateway to prosperity. AM. Welcome back from the DHA Sports Club, Moin Khan Cricket Academy, Karachi, where the second match of tonight, DHA Dabangs are taking on Clifton Popular. And news from the center is that Clifton Populars have won the toss and they have opted to bowl first. A little surprising for me, but we'll see what they have to offer. It's going to be another very good game of cricket. Looks as if it's going to be Farhad Abdali, the man on your screen, will be starting the proceedings. He's a left-arm quick, and taking strike is going to be KC Khurram Chakwal. There we go. And there you go. In the slot, and welcome to the bowling crease. And sails over eventually for the maximum. This is Casey for you. As is another one. This time he goes over cover. And that's all the way as well. Couple of sixes to start the proceedings. Entertainment already, Zishan. And again, flick of the wrist and away she goes. That's another one. 3 of 3. He's non-stoppable at the moment.
There you go. It's a no ball. Alding saw to the wound, and it goes all the way 4-4. Well, this is an onslaught, and so far the bowling side have no answer to that. 4 maximums to start off the campaign, 4 maximums to start the innings. Gotta got that Yorker right. It's not going to help. The length deliveries are not going to help his cause. It's a couple of bounces and over the boundary for 4 through mid-off. He goes big. This time it's Umar. And it's gone all the way. That has to be the biggest of the night so far. It's 37, would you believe, after first over. And there you go. Have a look at that for a shot. It's gone for 4, not gone all the way, but it was an amazing stroke of cricket. It was slower in pace and it went high in the air. Now somebody has to get underneath it. Someone lining underneath makes a good work. And that's the end of Khurram Chakwal. Will be much relieved, Clifton, to see the back of this guy. At the moment, Umar is going to be on strike. And Umar goes big this time. It's very high in the air. And it's safely gone all the way, I reckon. Yes, it is. Another maximum. Full toss, put away on the leg side. It's going to be a flat... No, one bounce into the fence. Is it? Yes, it is. It's going to go up. Well, the persistence with that line and angle eventually helping the bowler's cause. 63 for 2. Shot. He goes big, and this is what Waqas is known for. It went a country mile over mid-off for a half a dozen. Come on, umpire, put up your both hands. He goes big, he goes long, and it's a Waqas airliner once again, but lands in the hands. Unbelievably caught. They're losing wickets in clumps as well. They're hitting sixes and losing wickets, so it's a mix-up. End of the third over, it's 72 for 3. Another one, even bigger and better, and it's gone many a miles. Balls are traveling and visiting the boundary ropes regularly. Oh, Yasir Mushtaq has hit it in the air, and that's exactly you are talking about. And finally, bowler got it right, and Yasir Mushtaq gifted a catch at the long on boundary, and 4th wicket falls. Oh, he got that away. And cut that away magnificently. It has gone all the way. Siptan, umpire, raised his arms and signaled it a half a dozen. Edged it. Going to be out. It is. Fielder was there at the flying slip, one may call it, who took that one gladly, and another wicket falls. Facing Irfan. And he straight away launched that one. And launched that one out of the park. Another 6. What a way to start his innings. He hooked that one away. Onto the onside. Fielder was down at the long leg boundary. And he caught that one beautifully. He had to run. Had to cover a bit of territory to get under the ball. Which he did pretty well. And at the end caught that one very, very nicely. 1 or 2 for 6 now. And straight away, he cut that one over wide mid-on for a 6. It's a lot of 6s. In fact, too many 6s. That was a very good ball. And it's going to be a run out. It's going to be a run out? Yes, it is. 114 for 7. Single on the last ball of the innings, and it called leg byes by the umpire. So they have finished their innings, I reckon, at 120 for 7. It's a very good score in 6 overs. The umpire calls it play. Fast bowler is going to start the proceeding from the gymnasium end. He's going to come around the wicket first up. Hit away on the offside into the gap. That might go all the way for 4. Yes, it does. So an excellent start as well for Clifton Popular. First ball has been dispatched for a boundary on the offside. This time he's taking the aerial load. Is that going to be the first maximum of the innings? You betcha it is. A boundary and now a maximum. And even Clifton Warriors are up and running.
Short pitch delivery. That has been smoked on the leg side. That is going to go into the stands. What a way to get off the mark with that too from the captain. Hitting it up in the air. It's into the gap. One bounce into the fence, or is it a maximum? Yes, it has been signaled as a boundary. So once again, Fahad starting the over with a boundary on the offside. A big shot attempted. Down the ground it goes, and it goes over the boundary ropes as well. Once again, a 4 followed by a maximum coming from the batter Fahad. Pick up shot on the leg side. That's going to travel to Journey as well. All of the batters from both the teams are showing no mercy whatsoever to the ball. Shot of the day to me. Against Fahad. He goes straight. He goes long. And he goes for yet another maximum. That has been the story in this over. It's the third of Zohaib. 20th of the over. Another away on the leg side. It's into the gap. That's going to go all the way for as well. So that's the over they were looking for. 3 maximums and 3 boundaries. Make that 30 coming from that over of Zohaib. It's going to be a Salim starting the third over. Both fielders outside in ring. Starts off with a short delivery. Put up in the offside. Beautiful batting once again. This time coming from the bat of Asad. Now he decides to go big as well. And that's going to go way over the stadium. And the crowd really enjoying it. Very good striker of the ball. He goes big this time. Doesn't get the elevation, but certainly in the gap for a boundary. Down to mid-wicket. First boundary in this over. He goes big. And he goes massive. And eventually he comes down, but out of the ground. What a shot to start the proceedings. Welcome to the bowling crease. जी I'm very much excited about it. और आप देख रही हैं पीछे के कराची रोशनी बहाल हो गई और everybody is enjoying this match और खास तौर पर देखिए क्लिफ्टन पॉपुलर इस वक्त खेल रहा है. ओके यहाँ पे हम आपको बता दें कि क्लिफ्टन पॉपुलर्स की एक विकेट गिर गई है. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. But this is a game, इसमें गेम में ऐसा होता है. But if you bowl that length, then you're good journey, no matter it's meat of the bat or not. And it goes all the way with all the pace of the bowler. He picks that one away, but straight to the throat of deep square leg fielder. Another wicket goes down. It's Nawaz who's the latest exit. Second wicket goes down now. He goes big, and this is what we were expecting of Umar Bajwa. He's a big striker of the ball, and that is the evidence. He chips one in the air, and he's been caught brilliantly. Very good catch there by Khurram Chakwal at long on boundary. So Bajwa goes for 6 after 2 deliveries faced. He goes big this time, does Tahir, and he goes long as well. Over square leg for a big 6. There he goes. And I wonder if that is a wicket. There you go. Your prediction comes true, Kaina. Yeah, they've managed to 113 runs off their quota of 6 overs and lost 4 wickets, which means that they will have to trail by 7 runs. Welcome back to the DHA Moin Khan Academy, where the KTPL Season 3 is being played. And the third innings of this match about to be get underway. DHA Dabangs has the lead of 8 runs. And for what do you make of this 8 runs lead? But lead is a lead. And straight away, he had a wild swing at that one. But I think he changed his pace a bit. He bowled a slower one back of the hand. Left arm from down the wicket, and Vicky has got that away. Over mid-wicket all the way for 6. Tremendous shot. Wasn't a long hit, but half a dozen. This one is picked away, and picked away for a massive 6. 6s are being hit in every part of the ground again. He's a real class act, no doubt about that. And he goes again. And goes good enough for yet another 6. This one is going
going and gone away for 6. That was some hit. And he goes again. But fielder is there at the deep backward square leg. And he caught that one beautifully. Chota Vicky went for the bait again. He has to walk back. Big wicket, 15 to his name, 34 for on the board. Meanwhile, Hassan is going to continue with his second, the left arm seamer. Picked up. Is it long enough? It's sailing over the boundary ropes. Yes, it is. Perfect start to the over this from Khurram. Another slower one. This time he decides to go straight over long over and see you later, says it to the ball. Back-to-back sixes for Khurram. And now they are up and running once again, DH at the bunks. 34 for 3 was not that threatening for Clifton. Once again goes straight, goes long for yet another 6. It's the hat-trick of maximums now. This time over long gone. Length. He goes flat. Is the other one? Yes, it is. Oh, someone please take it. Someone in the crowd, please take it. We're looking to make the grand stuff come back. He tries to go big. He has sliced it up in the air. Is it going to be taken? It has been taken. Second wicket goes down. They are 62 for 2 at the moment. And he decides to go straight. There is a flip down there at long on, but the ball is going to go over his head. A bit of a counter punch now from Arsalan. He tries to go big over long off and he gets plenty on it. Another 6 from Arsalan's bat. The lead in the first innings of about 13 runs. It's in the air and it's been caught. So Khurram Chakwal has to take a long walk. So Khurram Chakwal will be walking on his way back to the pavilion. 42 of just 15 tonight for the big star. Once again, perfect execution of that yoga. It's going to be just one. In fact, they're looking to come back for the second one. Run out opportunity at the bowlers and it's a suicidal run out. There was no way he could have come back for the second run on that occasion. That just did not even cross the inner ring. I wonder what the chemistry was going on between both of the batters. Full toss, picked away on the leg side and a much needed maximum for DH Dabungs. Missed out his length this time by just a few inches. Felt like he was almost waiting for it, Arsalan. He goes for another one. Full extension of the arm. That's the shot of the night. Over long gone for a gigantic 6. Forget about the distance. How about that height? So the innings of DH Dabungs is over. 105 is the equation. Clifton Popular, they have to get 105. They did well in the second innings. First ball of the final innings. Full toss outside the off stump. And plug gap and could be a boundary. Chases on and finally ball has got the fence. The boundary to start the over. That should have been stopped. It wasn't struck very hard. Umar again. Smashed away over long off. He has cleared the boundary quite comfortably here. It's not a long strike, but he smashed it well enough to pick up a maximum. He goes backside. It's high in there. Will this be taken? It's a tough one. Who wants it? And it's taken. What a wicket that is. It's a huge one. Fahad has to walk back. It's a lead and well judged catch indeed. It was a tough one. Picked up an important wicket of Fahad. Boundary and 6 followed by a wicket. Umar again. It's high in the air. Where is going to land? Is there a chance? Or is the maximum? It's got him. 2 wickets in 2 balls. Would you believe it? Dream start for DH Dabungs. There's 12 for 2 on the board and they are extremely happy. Trick ball. Pulled away. Will this be taken or it goes for 4? Nicely struck. Importantly, it's a well-placed shot. He goes leg side as a Shah and it's got the distance. He's just cleared the hoardings and he starts off with the maximum. Beautifully played. Outside edge and gone. No doubt whatsoever. Massive deflection. Finger goes up as well. And Tahir Pindi just came and went. He knows it. He has to walk back. He went after the bowler. He wanted to smash it over long off. Now he's walking back to the pavilion. He goes big. He goes high. And certainly has cleared the boundary by a long, long way. That has cleared the stadium. What a start that is. Beautifully played. Pick shot by Haq Nawaz. What a start. Went for the big shot. And he took on in with absolute power and class.
No doubt whatsoever. Of course, the arms of umpire. He goes leg side, it's high. Is it long? Certainly. It's just clear the boundary. It should be a maximum. He was right at the edge of the boundary for top edge. What a good strike. What a good strike. He has sailed over the rope comfortably. Haq Nawaz is on fire. He gets a full toss and he hits it hard, hits it long, and it's going all the way. Oh, not all the way, it's in the lap. Oh my word, it's Guram Chakwal again. He just can't keep him out of the action. And Asad Shah walking back after 12. It's 56 for 4. Full toss, picked up into the stand. That at least 6 rows back. He goes for another one. Once again, it's high up in the air. And that's way over the boundary ropes as well. Here we go. And there you go. If you bowl a little short, you're going to go the journey. It's a 1 bounce 4, but they'll take it. Length, as I talk about length, he bowls 2 full, and he goes the journey again. That's another maximum. And now they're getting closer to the victory target. Now it's a different story altogether. Shot starts with a good delivery, and he's been thumped down the ground. There is a little bit of fumble, and I think he's signaling that ball has hit the skirting. It's gone 4. Needs to bowl the perfect of the ball. He bowls a full toss. It's up in the air. Third man fielder drops it. Goodness gracious me, that should have been taken. Ah, you gotta be kidding me! It's just first game. It's a full toss. He has hit that on the leg side. It's gonna be taken. Mustafa has done it. He has provided all important breakthrough of Haq Nawaz, who is gonna perish after scoring 24. It's 93 for 5 with just 1 ball remaining. Yeah, even the delivery in which he got out, Daniel Shirazi is the new batter in. This from the captain. It's on. It missed everything. It's going to get all, and the defending champions have done it. They have defended this total against Clifton Popular and have managed to win this game by 11 runs. While the defending champions registering their first victory of this season 3 in this KTPL. Here's the match summary. The first innings, the bank made 121, courtesy 37 runs by Kuram and 3 wickets taken by Arfan. Clifton in reply made just 113. Fahad once again another half century for him. Mustafa was pick of the bowlers with 3 wickets, and in the second innings the Bun made just 96 runs, whereas Clifton Populars were 11 runs short. Good evening to all of you across the globe, wherever you are, and it's day 3 of KTPL, day 2 season 3, and today's first match is going to be between Johor Jawans and Gulshan Goers. Earlier on, the news at the center was that the captain Syed Nasser of Johor Jawans has won the toss and has opted to bat first without any hesitation. So here we go. First ball of the night. Oh, it was a full toss, but way away from the batter. We'll have to re-bowl as it's wide, way outside the stump. There is a lot of difference in tape ball and cricket ball, but this time it's in the slot and thrashed away mid-off for a boundary. First boundary right, and it's Nasser the captain. And there you go! We are here for this stuff! It's going all the way to the boundary. It's a beautifully struck. Not entirely out of the meter of the ball. Was there a nick? He's gone for the umpire. Umpire raised. So first wicket goes down. Dance.
Umar gone for 3. 16-4 at the moment. So Basit lefty is the new coming batter at number 3. And he has to face that delivery which he sends into the stands. Wow! Well, he announces his arrival at the crease with that big blow over mid-wicket. He means business tonight, his best Basit lefty. Full toss, gets the treatment, 6. That's big one, that's even bigger. He's not going to stop one bit. He goes big and he goes high, somebody getting underneath it. And somebody takes a brilliant catch. Patience from Ba. And it's Basit lefty who leaves the arena at a score of 12 with a strike rate of 200. And he has got him. Bowler was generating a lot of pace. Batsman did swing his bat at that one, missed the line of the ball, and it did hit the stumps. And so Nasir is gone, and gone for after making 11. And he has got that away. And it bounced away to the mid-wicket boundary for 4. Fielder, I think, should have stopped that one, but he made that one. And there you see, he lapped it away over square leg, and it's gone all the way for 6. There was authority there in that stroke. With great smoothness, and he goes again. Better and bigger. Lands outside the boundary for another 6. Oh, that can worry them. That can worry them. Way down the side, rest away for 5 or 6 wides. That was a bad ball. This will go. This will go. Blazed away through the offside for 4. That's a very good shot. They take 1. It's a leg by. 75 for 3 is what they have got in 6 overs. Saddam Shah coming back after injury. He's been the top bowler in 2019 and 2020. Here he comes. Straight away, that has been hit down the ground. Although there was a fielder down there at long gone, so they'll still just get a single. Once again, picked up in the air. There is a fielder at deep mid-wicket, but the ball is going to go way past him. A boundary for the left-hander. He goes again on the leg side. Fielder at square leg is after the ball. Ball might just trickle past the boundary ropes. So back-to-back boundaries to Bahadur. So the chase is definitely on. Starts off with a short delivery. Taimur Mirza decides to go big and he hits it way over the boundary ropes on the leg side. First maximum of the innings. Well. It's TM in the house. Fuller. He decides to go straight and he goes long, does Taimur Mirza. Second maximum to TM in this over. Don't search for the Yorker, especially when you don't have enough pace. Short. He goes big again. This time long on. That's a magnificent hit from TM. Back-to-back maximums. He goes big. He goes straight. It's up in the air. Mid-off was inside. And that's going to go way over the boundary rope. There you see the ball just landing from the orbit. Perfect start to the over. A 6 of the very first ball. Fuller. This time he goes over extra cover. It's into the gap. That's going to run away for 4 as well. Overcompensating this time. Previous one was wide down the leg side. This time it was too wide outside the off stump. Rashid now bowling to TM. Going to come over the wicket. Once again, it's the lead ball, and that's going to travel into the stands. That went good 4 rows back. Down the leg side, clipped away. One bounce into the fence. There's no stopping tonight, that's for sure. 50 also comes up for Gulshan Gohars. Watch it coming over the wicket. Starts off with a full toss, picked away on the leg side. It's into the gap, one bounce and into the fence.
horrible delivery. In fact, it has been signaled as a no ball as well by the on-field umpire. आई थिंक इन्होंने जिस तरीके से टीम को मैनेज किया है, अनलकीली लास्ट टाइम जो है वो हम फाइनल तक नहीं पहुंच सके थे, लेकिन इस दफ़ा आप देखेंगे इंशाल्लाह हमारी परफॉर्मेंस ग्राउंड के अंदर नज़र आएगी आपको. Full toss put away, and everybody's a spectator. That has been smashed way back over the boundary, and once again umpire raises his arms. So slow one, well picked up. And once again, same result for Taimur Mirza. He's just one away from an outstanding half century. And 6 to end the over, 82 for Nana 4. Smashed hard, it's high, it's handsome, that's gone way back. See it, what a strike that is. And 50 is up for Taimur Mirza, an outstanding half century. And he just consumed 15 balls to get to this landmark. He goes leg side this time. Once again, he doesn't need to run. This is stimulating batting from Taimur Mirza way back into the stands. Taimur Mirza, he's into the 60s now. Once again, pitched up. Thank you very much from Taimur Mirza. Hat-trick sixes. Goodness me, this is a real carnage. Bahadur lefty, beautifully played towards the side. Sublime shot from Bahadur lefty. This right and left in combination. Once again, he goes high. Is it long enough? Is it long enough? No, it's not. It's well taken at the boundary. Two fielders was converging, and there was a certain chance, and the fielder judged it well. He kept his cool, and finally, an opening partnership has come to a close. Bahadur lefty has to walk back. Final ball of the innings. And he finishes up with a maximum. Yes, one of the biggest sixes of the innings. Of course, the arms. And Taimur Mirza finished his innings with 75, blistering performance from a superstar. Welcome back to the DHA Sports Club Moin Khan Academy, where KTPL Season 3 is taking place. And I think Gulshan Gaur have done a very good job as well by taking the lead of 43 runs. First ball of the third innings of this match is coming up. A left armer streaming into us. And first one has been smashed away. And batsman knows that it will go all the way for a maximum. मिलते जुलते ना, लेकिन जो मैं अभी तक बर्री देख रहा हूँ वो गौहर की है, तो जमात की तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि उनको 47 का एक्स्ट्रा हमने टारगेट दिया है. पहले तो उनको 47 पूरे करने दोबारा मैच में आने के लिए, और यकीनन जब 47 पूरे करेंगे तब इनके टारगेट का पता लगेगा. In the air and taken at back foot point quite easily, and the first wicket falls. So the opening stand has been broken. George Jawan in a spot of bother. They are now at 25 for 1, with Shahrazad working back after scoring 5. He edged that one, and another beautiful catch is taken. That's a very, very good catch indeed from the fielder at short third. So the captain is walking back to the pavilion without even troubling the scorers, and George Jawans are in all sort of trouble. They are 25 now for 2. Umar is taking strike, and he's going to bowl the hat-trick ball. He streams in, crosses the umpire, and it is in the air. Wicketkeeper is trying to get under. Oh, he made a miss of that one. I think he misjudged that one. Hat-trick could have been taken. Thank you so much, Rana. And there you go. It's a 6 of the left-hander's bat. What a time to jump into the commentary box. With me is Kainat. As we can see, a flat hit this time through mid-off, wideish mid-off. It goes all the way after a couple of bounces. They need more of these. And keeping your shape just like that. That one has been smashed out of the screws. It was 6 written all over it when it left the bat. What a cracking sound of the willow.
He goes again this time. Not exactly very intended, but this is what it happens in tape ball. Not out of the screws, but he gets the desired result. Maximum to say the least. Yeah, he's getting under. Full tosses are not going to help the bowler's cause. That one went into the night sky. We have lost the ball. Please get the ball back. And have a look at that shot. That is shot of the night so far, in my opinion. Mere flick of the wrist and away she goes for a half dozen. That's gone. That's out of here. Please get the ball back. Well, it blinded me. In fact, when the ball was in the air, I thought it was out of here, but it was in the lap of the fielder. Comedy of errors in the commentating bench, I would say. Anyways, there was an action, so it was a bowler's victory. Falak Bashir goes through the extra cover. One bounce into the boundary. That's high. Where is it going? It's going in the square leg fielder's hands. So Falak Bashir has to take a long walk back to the change room as they lose their fourth wicket. All right, it's going to be Arib, the new coming batter, who is going to face. Look at that, not catching in the middle of the bat. No timing behind that. They will look for two here. Have to hurry, but they get it comfortably in the end. A batter throw could have got the interest a little too high, but they managed to pick up the couple to end innings. So 6 overs now have been officially bowled. So they have managed 9 for 4 in their quota of 6 overs. As we see Taimur Mirza with Bahadur Ali making their way to the center. They've got 50 runs defended, and it's not going to be that easy for the bowlers. I still believe the first ball had been hit away on the leg side by Taimur Mirza, and that has gone way into the stand. So an excellent start once again by Taimur, starting exactly from where he left in the first innings. He had a perfect seat in the house. He decides to go straight. He goes long and he goes over long on as well. So both the owners opening their account with a maximum each. What a glorious shot. First ball and smashed it down the ground. He picked the ball very well. A slower one once again decides to go big. This time the long on fielder is going to take it. So an anti-climax this to the innings of Bahadur lefty. A 6 and a wicket. So wicket falls. So they need more wickets like that to keep the batting side away from the victory. 6 to his name, 13 for 1 on the board. There's one ball still to go. Jahangir running up. It's a length delivery. Blazed over long off. That's a magnificent hit by Taimur Mirza. Another 6, this time to end the over with. Low full toss. He has decided to go big and he has got plenty on it as well. This time 6 coming from the bat of Essen. Real consolation, real relief for Essen. They just try to play straight or towards the onside. Well played, that's gonna be 6. Beautifully played, no trouble. Short delivery and punished once again by Taimur Mirza. 6 more to his name. And now they need just 15. He decides to go big on the offside. There is no fielder out there. In fact, if there would have been even, it would have still sailed over his head. Back-to-back 6s to Taimur. Has he timed it well enough? Has he timed it well enough? Not quite. 1 bounce, 2 bounces into the fence for 4. It's a boundary to Essen. And now they're not far away from the victory. Once again, it's lifted up. It's high up in the air. Who's trying to get underneath that? Is it going to be taken? It has been taken. A really good catch indeed by the fielder at deep mid wicket to get rid of Essen. A very well judged catch indeed. Kept his eye on the ball, kept his cool. So that wicket has delayed the victory of Gulshan Gauhar. 12 to his name, 43 for 2 on the board. Of UBL, I mean KTPL Season 3. Lofted over extra cover. That's going to be a boundary. Beautiful hit this from Ilyas. Was there an outside edge? Yes, the finger has gone up. What was he thinking, Taimur Mirza? An unusual way for Taimur Mirza, the way he got out. 24 to his name, but he's done his job for his side, 49 for 3.
But he does not need any second invitation. Abdullah pulling the first ball down towards leg side for a boundary. And that is it. That is how Gulshan Gohars have registered their first victory in this UBL Amin KTPL Season 3. A commanding performance both with the bat as well as with the ball. Welcome back to the DHA Sports Club Moin Khan Academy, where the KTPL Season 3 is taking place, and the latest match is between Liari Legends and Malangs, where Malangs won the toss and they have elected to bat first without any hesitation. Shahjahan is very much ready. He's in right over the wicket. Oh, batsman did have a go at that one, but Shahjahan knows how to baffle the batsman, how to castle the batsman. Shahjahan again. This time it has been bashed away and bashed away in the stands. Here comes the first 6 of this game. Goes again and goes big. It has gone all the way. Another 6. Daud Khan is looking relentless. He's looking ruthless. Yes, he was. And this one is going. Where it's going to land? It's land outside the boundary in the spectators and in the dugout. 26 runs off the over. And this one is whipped away magnificently. There we go. Another 6. Oh my God. And he got that away over mid-wicket. That's a huge one. That's a colossal hit. That is a big block. Gigantic one. That's been caught behind. Bowler made a very good comeback, and wicketkeeper did the rest by taking a very good catch, and the first blood is drawn. Smacked it. It's a flat batted hit. That's go way over deep mid wicket for a magnificent hit once again. A 6 to start the over with. Malid Malangs 56 for 1. Another big hit, and he has timed it well enough. Yes, he has. Back-to-back 6 Imran. And not a good start to the over from Salam. Oh, once again, terrific contact from Imran. It doesn't matter. This time the ball goes way over long off. 3 back-to-back maximums from Imran. This is the biggest. Once again over the offside. There is no protection out there. 2 bounders and into the ball goes. Nothing is working in the favor of Salam in this over. 3 maximums and now a boundary. This time he connects, but hasn't timed it well enough. There is a fielder and they're getting underneath that, but he did not even get his hands to it. And they're coming back for the third one as well. I think it's really good running. Outside edge and taken this time in the second attempt though. But what a magnificent spell this has been from Rana. Once again ending the over with a wicket. This time, once again, the dangerous batter Imran, who has been dismissed. 85-2 on the board, and Imran is walking back. Just 5 remaining in this innings. He tries to blast it on the offside. It's a flat hit. That did not go high off the ground, but still carried to journey. Once again, the ball hitting the legs. This has been an exceptional last over from Sohail. How well has he come back after being hit for a 6 on the offside? Just 8 runs conceded in the last over. And Malid Malangs are going to finish their first innings on 93 for 2 in their allotted 6 overs.
a very So here we fine go. ball. Down the leg side, misfiring. It was a bullet, but off target. And couple of runs given in the form of that's not on. Is the bowler. There he goes through the covers. This should go across the boundary for 4. The left-hander expanding a bit. His first boundary, Nizar lefty. There you go. If you bowl there, you're going to end up over the boundary for the maximum. Wow. There is Ali continue his bowling spell. And welcome to the bowling crease. Simple as that. In the slot. And there you go. Oh, Ali, come on. Welcome back, and there you go. That's another fine stroke. A good bit of football skills there on the boundary line, managing to stop the ball with the boot. And it's comedy affair. What's happening at the non-striker? Look at that. Oh, that was a big mix-up. That was very comical as well. Very, very nicely and very neatly. And the first blood is drawn. He's launched that one, though, and that's going to carry all the way. It was long, it was high, it was handsome, it was all the way, it was maximum. That is picked and hit out of his presence for the maximum over Squarely. Brilliant pickup once again. Straying onto the pads and paying the penalty. He definitely is swiveling around, but the fielder made a mess of it. That really was an opportunity at deep backwater square. Oh, nicely picked. It was slower in pace and in the slot, and he gets his man because the lack of pace has done the batsman on that occasion. Ashraf Pathan goes for 10, and they are now 49 for 2. Straight down the ground. It's high. It's handsome. Is it long? Yes. Forget it. It's huge from Daud. It was right in the slot, and what a strike that is. Dropped the ball short, and great shot in fact from Hamidullah. Picked the ball really well. It wasn't an easy shot to execute, but he finished the over with a magnificent maximum. Starts off with a short delivery, once again put away on the leg side. It's up in the air and it is going to land. Oh, it has been taken. What a brilliant take that is. What an outstanding catch. What a brilliant catch that is. One of the best catches of the tournament so far. Daud Sulaiman goes for 6, 65 for 3 on the board. Straight away he announced his presence. Subhan and... oh, caught! He caught. What a wonderful catch. 2 in a row. Would you believe it? But this one is even better. He's walking back. Golden duck to his name, but he is disappointed. 65 for 4 on the board. A pickup shot. How well has he timed that? That is going to go way over the boundary rows for a maximum. They needed that. Low full toss. That's a skimmer. Oh, he jumped in the air to take that one once again, but the ball was timed just well enough. This time he has gone an outside half of the bat. The fielder is trying to get underneath that, and he's going to take an easy catch. Revenge has been taken by Fazal. He gets the big wicket of Hamidullah. He has the last laugh. He attempts it. Perfect execution, although they're going to get a run. But that's really good bowling. So what's throwing back for this end? And will they come back for 3? Could be run out here. And it's gone, I think. I think wicket falls once again at the bowling end. Yes, the batsman is walking back here. So wicket number 6 down here. Time for the last ball of the innings. It's a short delivery, played straight, flat. Has that gone all the way for 6? We'll have to wait for the umpire signal. Yes, the arms are aloft from the on-field umpire. And that means the Legends are going to finish off their innings on 89 for 6.
welcome back to THA Sports Club, Moin Khan Academy, Karachi. It's almost half done. It's Mali Malangs versus Liari Legend. The situation has been even Steven, just 4 runs separate support sides. And Mali Malangs are 4 runs ahead. So ball number 1 of innings number 3. Outside edge, just try to play towards the onside. In the end, just a single with the soft hands. Catch it as a cry. Will this be taken? Got this time. No mistake whatsoever. Sherjan this time made no mistake. The second time he got the opportunity, and what an over it has been. 3 for 1 on the board. Mira goes back 1. It goes offside. He is clear the infield. That should be a boundary. Witt was offered and nicely managed by Kaleem, and it's the first boundary of the innings. Is there an edge? Is there an edge? Up goes the finger. Everyone was excited when the ball passed the outside edge. So wicket again. Sohail has been so impressive and now has been rewarded. And Kaleem goes for 6. Full toss. Once again hasn't timed it properly, but has gone for 4. That should have been saved at the leg boundary. A much needed boundary. Went for the big shot. Has he got enough on that? Yes. It's a crowd catch into the stands. A relief for Daud Khan. No ball. No ball signal. He has beaten the short fine leg fielder and has run away for the boundary. So gift here for Mali Malangs and Daud Khan. Last ball of over number 3. Free hit, still alive. Full toss. Has he got the treatment? It's a big one. Into stands for the maximum here. He finished the over in a grand fashion. Squatted away on the offside. It's into the gap, and since there's no fielder out there on the offside, he's going to collect a boundary as well away. He picks it up. Over long off. Has he timed it well enough? Yes, he has. This time a flat hit. Is this time he has been held out? Doesn't get the elevation or the distance this time away, and a very good change of pace by Shah Jahan. He picks up another. And is making his walk back after making very fine 17. Spotted away on the offside, over backward of point. Hasn't got a proper connection. The ball will just trickle past the boundary ropes. The fielder was a little slow in getting off the blocks. जी काफ़ी थ्रिलिंग हो गया आज और इसमें बहुत अच्छी फील्डिंग भी देखने को मिली है बहुत अच्छी क्रिकेट हुई हैगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टूर्नामेंट में अभी तक वाइट बॉल्स बहुत कम हुए हैं इतने सारे स्पॉन्सर्स और तो ये वाकई काबिल तारीफ है और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि Daud Khan decides to go straight as an arrow into the side screen he goes. That's another 6. Now he has moved into the 40s. It's a low full toss. Hit away on the leg side, into the gap and into the fence she goes. A 6 followed by a boundary. 99 for 3, 1 ball remaining. Sohail charging in. Bowls it right into the block hole. There might be a chance of a run out. It is a run out. A run out at the wicket keeper's hand means Mali Malangs are going to finish off their innings on 99 for 4. And they lead by 103 runs. Qari Hamidullah is ready to face first ball from Majid Gholi. Might be given as a wide, yes it is, although he was moving inside the crease there, because of which Majid Gholi is a little surprised by that decision which has been made by the umpire. And there he gets a connection he was waiting for, and there you go, it's the maximum. First, but not the last, by Nizar. And there you go. This time a pickup, it's high in the air and it's going towards the boundary.
Eventually it will reach the boundary because it was perfectly in the gap at fine leg region. Outside edge and a very good catch indeed. That's a remarkable catch. That is probably the catches of the tournament. Nizar Ali's taste comes to an end. 11 of 10 for the left-hander tonight. It's 25 for 1. That is going down the leg side and going for 6 wides. Is this the opening of the gate which the chasing side is needing? This has been a terrific piece of bowling, but it's still raced away to the boundary. This has been played away towards the fine leg boundary and it reaches the boundary. So first ball of this over has given them 13 runs. He has got that away and got that away into the stands. This is what they're looking for last few overs, and finally Daud got one away. And he has got that away and got that away into the gap and picked up a 4. Here is the final ball of this over. If it doesn't bowl nowhere wide, it's gonna go towards the fine leg boundary and got there. Another boundary to end the over. So 72 for 1 after 5 overs, starting the final over. And first one is lofted and lofted over deep square leg for a 6. That's what they wanted on the first ball of this over. Ubaid again, and he got that away and got that away over wide, long on. Another 6 still on. Let's see, here we go again. And he tried another one, and he has been able to hit that one into the hand of the fielder. He tried the third 6 in a row, but he failed that time around, and Ubaid has picked up a wicket. Or avoid from the no ball. Is it going to be a no ball? And fielder has done a very good job. Has he got it? It's gone. Now we can see it. Ashraf Pathan has to walk back. 84 for 3 on the board. This is going towards the boundary and on all the way for 6. So they have ended their innings at 91 for 3 and they lost this match by a margin of 12 runs.
It's 1 a.m. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum once again from DHA Sports Club Moin Khan Academy Cricket Ground for match number 5 of UBL Amin KTPL Season 3. It's going to be Gulshan Gohars up against Karachi Knights tonight in the second game of tonight's schedule. Karachi Kings, in fact Karachi Knights have won the toss and have decided to bat first against Gulshan Gohars, who started off their campaigns on winning note last night against Johor Jawan. They're all set for the first ball of this match number 5 of UBL Amin presents KTPL Season 3. Karachi Knights are batting first against Gulshan Gohars. Starts off with a fuller pitch delivery, which was just gently played towards mid-wicket for a single by Ubaid Lefty. That was a first. He tries to go big on the offside. There is no fielder out there. It's going to bounce twice, in fact once, before it goes past the boundary ropes. So the first boundary of the innings coming from the bat of the captain. Tries to go big. And tell you what, that is a monstrous hit from Ubaid Lefty. That has gone into the dugout of Karachi Knights. Down the leg side, it's up in the air. It's a leading edge. It's gone way over the head of the fielder at fine leg, and that's going to go past the boundary ropes as well. Pretty unfortunate this for the bowler. He'll be looking to hit a few more boundaries in this over. This time he connected that well. This time it's going to go way over the boundary ropes. In fact, the umpire is signaling it as a boundary. Might have bounced just inside the ropes, but just get the feeling he timed it too well. This time he goes straight. He goes massive over long off. That is some hit. And finally a catch has been taken in the crowd. Well, that's why it's so important to play on the merit of the game ball. Just like that, I was exactly talking about that, and oh my word, he nearly pulled out a blinder on the boundary line, but Indian just tips it over the bar for the maximum. Left-hander gets one in the slot. It's miles in the air. Does it have enough legs? I don't think so, because it's been caught on the boundary. Well, I thought it's going out of the stadium, but again, it was caught in boundary. Well, Lefty makes a long walk back to the change room. Oh, look at that. That's in the air, somewhere in the covers, and it's been caught. Nicely pouched. And guess who? It's TM who's taking the catch. Usman Khan, 3 for 3 runs for 4 deliveries. Oh, that's miles in the air. And it's not going to clear mid-on even. Asin Chitta was the fieldsman who makes no mistake. And another goes now. 27 is made of 17 deliveries. There are 3 wickets down now. There you go. He goes through the offside. Will he manage to clear the field? No, he doesn't. Another one goes. Now wickets are tumbling here. All of a sudden, there are 4 down. Junaid Juni gone for 1. Oh, and the music is a full toss, which has been belted brilliantly out of the ground, and it's going to be a no ball as well. This is the thing which they were waiting for. And there you go. It's gone somewhere. I don't know where. It's in the lap of the field. But it was a free hit, so the batter will be not out. Because the batters are going to go that way. That is out of here. See you next day and next night. There you go. We are going to see some stuff tonight. It's gone miles in the air and it's out of here. Second 6 on the trot, and look at the dugout. Well, definitely it is. Mix up of everything. Oh my God! How can you lift a ball from your feet all the way over the boundary? It needs immense power to do that. It was a great shot in the end to finish it off with a 6, 82 for 4. 82 runs का टारगेट है सामने दानिश अगरम दिखे यहाँ और जिस तरीके के बैटर्स इस वक्त गुलशन गौहर्स के मैदान में आ रहे जिसमें तैमूर मिर्जा टीएम भी शामिल हैं और टीएम ने जो कल इनिंग खेली थी 75 रन्स ऑन जस्ट 21 बॉल्स विद 10 सिक्सेस
आई थिंक ये बहुत ही क्रूशल होगा यहाँ टीएम विकेट जल्दी लेना। और अगर विकेट ले जाए तैमूर मिर्जा या बहादुर अली तो नीले पे दैला। पहली गेंद और बहुत ही अच्छी फील्डिंग एफर्ट यहाँ मिड ऑफ पे फील्ड की। इस तरह ये फील्डिंग स्टैंडर्ड बहुत हाई रखना होगा क्योंकि रन्स बहुत ज्यादा बोर्ड पे नहीं है और सामने बहुत ही डेंजरस बैटर है। और कब तक खामोश रखेंगे तैमूर को? इस बार गैप हासिल करने में कामयाब, 4 रन हासिल किए तैमूर मिर्जा ने। इस बार फिर गैप हासिल करने में कामयाब हुए तैमूर मिर्जा। एक और 4 रन, जिस तरह 4 डॉट बॉल्स थी, 2 चौकों के साथ इख्तिताम किया तैमूर ने इस ओवर का। और आउट बहादुर अली। पहला नुकसान उठाना पड़ा यहाँ। फुल टॉस था, बहादुर अली इसको जोरदार अंदाज में छक्के के लिए पहुंचाना चाहते थे लेकिन सीधा शॉट मिड विकेट पर थमा बैठे बहादुर अली। 5 गेंदों पर 1 रन बनाकर वापस पवेलियन जाते हुए 16 पर 1। इस बार तैमूर मिर्जा का प्रॉपर कनेक्शन, गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर पहुंचाया, शार छक्का। तैमूर इतनी जेन्युइन बैटर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली और इस बार आउट होने का खतरा है यहाँ। गेंद हवा में, हवाई हवा में गेंद बाहर चली गई। एहसन चिट्टा का शानदार शॉट। Temur is, and there you go. Temur has got that way, and fielder got under the ball. In fact, it was Essen who hit that one in the air, and fielder got that one beautifully. And Essen's cameo is over. It's not a happy man. 38 for 2 on the board. This one is whipped away. Again, there is a protection at the deep square leg. He gets another one. Wickets are falling like 9 pins here at DHA. Well, low full toss has done the trick for Ali. 38 for 3, Gulshan Gohar. Full credit to the bowlers so far. They have done a very good job. And now Temur Mirza has gone after him. It's going, and gone many a miles. He got that away and got that away magnificently. That's a big hit. It's gone all the way. जी अली 3 विकेट्स और उसके अलावा भी मैं आपको बताता चलूँ बहुत अच्छे बॉलर्स हैं हमारे पास और कोशिश यही है कि हम कम से कम जो है स्कोर पे इनको रोकें, आगे जाके जो है हम अच्छा टारगेट दें। Temur Mirza had hit that one away and hit that one away all the way towards the backward square leg for 4. Just 4 short of what would be a terrific half century. Got that and got that away. Miles again. He's on fire and he gets his 50 in style. Temur Mirza tried to head a go at that one, missed it altogether, and bowler had the final off. He got a wicket, but good job by Temur Mirza. 52 of 22 deliveries, 83 for 4 on the board. He has hit that one and hit that one very, very nicely. And it's gone all the way for 6. What a way to finish the innings. 89 for 4 they have. So it means they've got a lead of 7. Welcome back. Live, we are live here at Sports Club Karachi. So Karachi Knights managed to score 82, and whereas in reply they took the lead of 7 runs with Gulshan Gohar. Karachi Knights will be looking to score around about 90 or 95 so that they will end up with a healthy lead. Swing and a miss to start the proceedings in this innings, 3rd innings. Not there, certainly. If you bowl there, even if it is a top edge, it's going to carry all the way for the maximum. There you go. In the slot and into the night sky. See, it had so much elevation on that shot to bed lefty. Once again, it was length. Swung away on the leg side. This time he connects and he connects it well enough. Sailing over the boundary ropes for another maximum for Ubaid. 34 for none. Still halfway through the 3rd over. Picked up
On the leg side, that's going to sail over the boundary ropes once again. Ubaid has been very severe on anything on the leg side. 8 deliveries have been bowled already. Another swing on the leg side, that's going to sail over the boundary ropes. And to a ball to the wound, it had been signaled as a no ball. When will this over come to an end? और इस गेंद को ऊंचा खेले और खूब खेले और गेंद हवा से बातें करती हुई नीचे आ रही है, स्ट्रैंड्स में आके गिरी, छक्का। इस गेंद को खेले, गेंद हवा में है, कहां जाके गिरेगी, बाउंड्री से बाहर, एक और छक्का। ओह, बेल्ट किया हवा में, अभी भी हवा में और दरख्तों के दरमियान जाके गेंद गिरी, एक और छक्का। वाओ, शॉट यार, और देखें आउट की पूछी और इस गेंद को भी हिट किया, बहुत खूबसूरत शॉट, मिड विकेट से बाहर, एक और छक्का, छक्कों के साथ ओह सीटियां बज रही हैं। वाओ, एक और जबरदस्त कनेक्शन यहाँ उबैद लेफ्टी का, गेंद को पहुंचाया लॉन्ग ऑन और रेड विकेट बाउंड्री के दरमियान, 6 रन, शानदार स्ट्रोक। इस बार अपील और चल दिए थे उबैद, यहाँ पर अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की से अंपायर का इंतजार नहीं किया, ये पहली कामयाबी हासिल की गुलशन गौहर ने, उबैद लेफ्टी आउट। और इस गेंद को ऊंचा खेले, मिसक्यूड है, गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे आने की कोशिश में, नीचे आकर बड़ा शानदार कैच। इस तरह बहादुर अपनी पहली ही गेंद पे विकेट लेने में कामयाब हुए। तैमूर मिर्जा भी खुश दिखाई दे रहे हैं। उस्मान जान 34 रन बनाकर आउट, 11 गेंदों पर with 4 sixes and a strike rate of 304.56। इस मरतबा ऊंचा स्ट्रोक, क्या इनफ कनेक्शन है कि गेंद बाहर ट्रेवल करे, अंदर ही है। ओह, क्या रिबाउंड कैच लिया। जी हां, एक फील्डर से गेंद छूटी, दूसरे ने काम तमाम किया, शानदार कैचिंग। इम्तियाज इम्ती 4 गेंदें खेल गए, खाता भी नहीं खोला, नुकसानदेह साबित हुए कराची नाइट्स के लिए। आखिरी बॉल इस इनिंग्स की और बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, 1 रन जरूर मिलेगा और ओवर थ्रो, लेकिन बैकअप किया, अब रन आउट चांस है, दौड़ कर आए और रन आउट करने में कामयाब हो गए। अंपायर ने फौरन उंगली फजा में बुलंद की। इस तरह 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 90। 6 ओवर्स के बाद 3 विकेट के नुकसान पर ओवरऑल लीड हो गई 83 की। 84 का टारगेट है गुलशन के सामने। The last innings, and it's going to be a thrilling one. None other than Taimur Mirza is making his way to the middle. So it's the first ball of the new innings. As Bahadur lefty will be on a strike here. He goes for it. Full shot. Has he got enough on that? Yes, he has. That has gone way over the boundary. Well connected. What a start for Gulshan Gauhar. He goes for it. Beautifully picked up. And 6 more to his name. What a start that is. 12 runs of the first 2 balls. 2 different shots, but results the same. He goes for it. Good swing the bat. He has found the placement to pick up a boundary. Goes straight, goes high. Someone is getting in under the ball and is taken. Good catch. Good catch. It's Ubaid lefty who covered a lot of ground. He was very calm, very cool, and it's a big wicket. So cameo is over. It's high in the air. He hasn't got the timing right. He is in trouble. Will this be taken? Oh, good catch. Terrific take. My word. 2 wickets in 2 balls. 18 for 2 on the board. Will be on hat-trick. Taimur Mirza takes him on and takes him on with absolute flair. What a good shot that is. He cleared the hoardings comfortably. He goes for it. It's hard, it's flat. 6 more. Terrific. Unbelievable. How can you keep quite player of team's class and team's caliber? He goes for it. Picked it up from outside the off stump and smacked it over long on. This is tremendous. Watch out. There will be a lot to come. This time using the pace of the bowler down to fine leg in the vacant region for another boundary. Full toss.
And the bowler has got the punishment once again. It's hard and flat. He's unstoppable here. Going for a single to, he's trying to retain the strike, and quite wisely so. I think they have asked for a referral for that run-out appeal. TV umpire has to make the decision. Finally, we've got the decision. Leastani has to take a long walk. But Taimur Mirza has launched it. Is it long enough? Oh, that should have been saved. That should have been saved. The fielder had a chance to get it off, pull the ball back, but the ball has gone over the boundary. 4 more. Starting off with a big shot on the leg side. It's into the gap. That's going to race way to the boundary ropes. Taimur Mirza is not stopping. On a big hit. That sounded really good. Once again, the ball is going to disappear into the trees on the leg side. He's showing no mercy whatsoever to any of the bowlers tonight. A full toss. Similar direction. A flat hit. Another 6. He's cutting loose now. Taimur Mirza, and that takes also thumbs up for the superstar of table cricket. 52 of 16. Give yourself room. Playing it over extra cover. My goodness, how good a shot that is. One bounce into the fence. That's going to be a boundary. And that is it for Gulshan Gauhar. They managed to win this game comfortably by 7 wickets. Bismillahirrahmanirrahim. Good evening, everyone. We are at DHA Moin Khan Academy. KTPL Season 3, Johar Jawans versus North Nawabs is today's first game, where Johar Jawans have won the toss and they have elected to field first. He's going to take the attack from the far end. Here is the first ball, and Batman had a wild swing at that one, but it goes through the keeper as he didn't make any contact. This time batsman has given it a go, and he has given it a go over and gone for 6 outside the off stump. That was in his radar, in his arc. Here comes the first 6 of the night. There we go, there we go. He has put that away and put that away over the corner. Another 6 to end the over. There we go again. But he pitched it up and it has been chunked away onto the onside. One bounce into the wide mid-on boundary for 4. He edged that one, but there isn't any protection at third man. Ball running away to the boundary for 4. Doesn't matter how they come, as long as they come. Another boundary. Shafi has hit that one in the air. It is coming down towards the long leg. Has it cleared the long leg boundary? Yes, it has. Another 6. It was Shafi Agha, the captain himself. Look at that. On the legs. And he goes again. It's going to be caught. Fielder placing himself under the ball, and he takes it. He takes it, a very good catch. He took a very good catch, I would have said, and the first wicket goes down. So captain goes. Bowler always play a stubborn kind of a strokes. He got that away onto the onside, down towards the square leg for 4. This time it's coming down towards the fine leg boundary. There isn't anybody down at the fine leg boundary. It has gone for 4 again. This time he's got the connection he desired for. This will give him half a dozen.
It's a big blow. Wonderful, wonderful. That is Hafiz Pola on fire. Saddam Shah is back into the attack and he comes back with a massive wicket of Pola. This time he doesn't connect as he would have liked and he's been caught to wideish long on. Very good catch and a good comeback by Saddam Shah, who was expensive in his first over. Finally a departure for Hafiz Pola. This time flicked away by A.B. Paro and he's off the mark with the boundary. KTPL committee is watching this contest. And for it, catched it as a cry. But it has gone for 4, nobody was there. Placed it beautifully. Boundary here to end the over. This time he goes through the covers. It's a very good strike and it's well stopped. Or is it? No, it hasn't stopped. It's gone for 4. He will go leg side and he will collect a 6 he was waiting for. Wow. He goes for it. Is it long enough? Yes. Once again, he has cleared the ground by a long, long way. Up goes the arms of fire. What a batting performance here. Batter length, very full. Will he come back for 2? Will he come back for 2? He slipped. Oh, this could be run out here. Mix up, and at the batting end, run out took place, and he's not happy with his partner. Unfortunate way to get out, but he has to leave the arena. Swing and a miss. And single taken as a result of bye. So good comeback here. So finally the innings has come to an end here. So 88 they managed in their coach of 6 overs. George Jones, it is a bad score as far as the format is concerned. And here's the first ball of this innings. And straight away it is going down towards the fine leg boundary. And there isn't anybody down there, so it's 4. Once again, some serious pace on offer here. This one is going, and going all the way at mid-wicket boundary for 6. Now that is just insane. How could you hit that towards my leg? Just flick it. Did not even use his arms at that time. Oh, that's a colossal, humongous. He bashed that one from that presence. That's a terrific shot, a massive one. Another one. Another one goes over cow corner. Another 6. Here's the first ball of the second over. It is in the air. Fielder is trying to come under the ball. He has come in and then he caught that one gladly. So the first wicket goes down. Falak gone for 5. It's 23 for 1. Nasir, the captain, is taking strike and he has hit it in the air. Fielder is paddling back a bit and he took a very good catch. Another wicket goes down. So 2 wickets in the same over. All are doing a terrific stuff here. That was a simple catch. Nasir walking back for a duck. But batsman now replied him with a beautiful shot. He pulled that away, front of square or backward of square, I reckon, down to the boundary for 4. Oh ho ho! What is that? What is that? That's a biggie. Another 6. This is in the air. He pelted that one straight down the ground, right below a commentary position 6. A proper bazooka. Down he goes. Mid-wicket tried his level to get around, couldn't 4 more. Coming thick and fast here. Pick up shot on the leg side. Once again, this time the ball is going to travel to Journey. What an awesome stroke this is from Basit lefty. Once again, a top shot attempted. Has that gone all the way for 6? Another maximum to Basit lefty. Now bowling to Basit lefty, who has been simply exceptional. Once again, trying to hit it a little too hard. Chance for a fielder. And taken. What an excellent catch this is from the wicketkeeper. He was running backwards. Had to dive in front. Took an excellent catch in the end to get rid of Basit. So Basit lefty has been parried. He's going to walk back after scoring 38 of 13 deliveries. And with that, it's 71 for 3 Johar Jamans. Shahid Afridi now bowling his last ball.
Once again smashed down the ground. It's into gap, and that has gone all the way for 4. Wonderful placement this time from the right hander. So all the angles are covered up for the right hander, who decides to swing. And has he managed to hit it over extra cover? He's falling underneath that. Just couldn't hold on to it. The umpires are going to check, but the ball might have crossed the boundary ropes. Yes, it did. Once again, a pickup shot on the leg side. How well has he done that? Just look at the wrist power from Shahrazad on that ball. He goes again on the leg side, and I think he has timed it well enough as well. Yes, he does. So 3 maximums to finish off this. And Georgia Vans are going to finish off on 109, getting a lead, getting a valuable lead of 21 runs here in the first innings. Welcome back once again to THS Sports Club, Moin Khan Academy, Karachi. KTPL Season 3 is in full swing. Georgia Vans is taking on. So it's a 21 runs lead picked up by Georgia Vans. So action will continue here in THS Sports Club. So they are 21 runs behind. So innings number 3 is about to begin. Heaved away to the onside. And there's a protection. So North Nawab off the mark. And they are off the mark with a single. Big full toss, smashed away to the offside. Will he go all the way? One bounce into the fence for 4. So first ball boundary for Hafiz bowler, and no ball has been signalled. Flick of the wrist. Is it long enough? Not quite taken. Comfortable catch at mid-wicket here. And Shafi is absolutely disappointed. He doesn't want to move. He thought it would go all the way. But he has to depart now from the middle. Saddam again. Low full toss, smacked away down the ground. One bounce into the fence for 4. Lovely shot and a much needed boundary. He goes for it. It's hard, it's flat. Nobody's out there. And once again he picked the same region. Consecutive boundaries here for AB Paro. Last ball of the over. He goes for it through the onside. Catch it is a cry. Will this be taken? It's a tough one. Oh, he missed it. Goodness me. Well, he's misjudged it terribly. North Nawabs, they need a couple of huge overs. Full toss. Punished. That is out of the park. What a good blow that is. Full toss. Ideal height for AB Paro. Outside edge gone. Caught behind. No doubt whatsoever. Finger goes up. Massive deflection, and it's a huge wicket. So the dangerous bowler this time goes for just 7 of 5 deliveries. Just don't let the batter get underneath like that. How long has that gone? I think it's 1 bounce 4. He has decided to hit that big. Has he cleared the fielder at long? Oh, just by the barest of margin. And with that, 650 also comes up for North Nawabs. Pretty packed leg side field. Starts off with a full toss. Hit away on the offside. It's a flat hit. Even the fielder at long off couldn't take that one. So a boundary to start the over with. A leg delivery. Swung it as hard as possible, and he's going to get 6 runs for that. And it was dropped in the crowd as well. For the team. That was a full toss, once again trying to hit that a little too hard down the leg side, and it's going to be a run out. It was a slow and low throw which finally managed to hit the stumps. Third wicket has now been done. North Nawabs are 80 for 3 with Yahya Khan walking back after scoring just 9. Has he knocked him over? Yes, he has. Just get the feeling it was the bat who hit the stumps, because the ball was well outside the offside, but it's a wicket nevertheless for Georgia Vans. Zain Pathan, 0. Low full toss, hit away on leg side. The square leg fielder is trying to get it on, but he's not going to get there. A boundary, a very crucial boundary indeed for the batting side. Last ball of the innings coming up. North Nawab lead by 64. It's going to be a wide. They're running for it. We might see another run out. It's going to be AB Paro. Yeah, he's going to be dismissed.
AB Badar walks back after scoring well-constructed 40 of just 19 deliveries. It's 85 for 5. Yeah, he has changed his angle now, coming around the wicket. It's up in the air. There is a fielder at deep extra cover, but still he's very far away from it. Point field was running backwards. Couldn't get to the ball. They're going to get 2 runs. In fact, yes, we're going to witness another run now. It's all happening in this last over. So 2 runs conceded of the last ball, then a wicket fell. So North Nawabs are going to finish their second innings on 89 for 5. Well, they scored 88 in the first innings. Could just score 1 more run in the second. And technically means that now they lead by just 68 runs. George Jawan's openers are out there to give it a go. 71 is what their target is. Shah Raza, who batted supremely well in the first innings. Here's the first ball of the final innings of this match. And he did throw kitchen sinks at that one. Third man was there inside the circle. I think it dropped just in front of him. But that was a good ball. Batsman chased that one. Oh, it is in the air. Fielder is under the ball and takes it quite easily. What a beauty of a ball. Batsman didn't have any clue at that one. Basit has to make his walk back. And he has hooked it away. And hooked it away beautifully round the corner, down to the long leg boundary for 4. This is in the air. Fielder is under the ball. Could be caught. Could be caught. It is caught. It is caught. Another wicket goes down. Will it go right down the wire? Will it be a cliffhanger? 2 wickets in the first over, Danish. Shah Raza goes for 1 and the second wicket falls. This one is driven away. Almost drilled away towards the boundary for 4. He edged that one. Fielder is under the ball. Irshad gets another one. We are watching tremendous piece of bowling from Irshad. He held on to it really well. Syed Nasser will have to go back for 10 of 8 deliveries. But this time batsman has lofted him, but lofted him straight into the hands of the fielder. As I was saying, can he get another one? He got another one. Oh, he's knocked him over. Try to go for the big left-hander. Another one bites the dust. Johor Jawans are in all sorts of trouble, and the bowling side are turning it on. They're very young at the crease. It's high in the air. Has he got enough legs on it? I think it has. It's a very good connection. Oh, right in the block hole. This is what you can do with that type of delivery. There's a chance of run out. Oh my word! Another one goes. Well, 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 it is all happening, and Jawans are going nowhere at the moment. That's high. It should be taken now. Paula is getting underneath, a little bit of collision, almost a collision, but in the end the catch has been completed. So wicket for Sairam, a reward of some very good accuracy and very good, I would say, experimentation in this over. 7 to his name, 29 for 7. Swing and a miss. This time within the stumps. How could we run out here? Yes, no, yes, no. Asif Farman has a chance, finally a run out here. So wicket falls, Farman has to walk back. A lot of confusion. The wicketkeeper produced a throw and the run out happened at the bowler's end. Well, there was a comedy of errors in the middle between both of the batters. Farman goes for 1. Lost the toss, being asked to bat first, and batted well they did. In the first innings, made 88 runs. And then the opposition got a lead as well of 21 runs. And that's it. It's all over. North Nawabs have been able to register their first victory in their first game against Johor Jawans.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum and good evening to all of you wherever you are. Another exciting night ahead of us where DHA Dabangs are taking on Malir Malangs for match 6, night 4 of this Karachi Table Premier League Scene 3. As the toss has been done and dusted, DHA Dabangs and Captain Yasser Mushtaq has decided to bowl first. Looks as if it's going to be Umri Pacer to start the proceedings. This guy's got some serious pace to work with. Back with a point. Extra cover, mid-off, mid-on. And here goes Umri. Nicely bowled, good delivery to start with. They'll get off the mark, but it wasn't a convincing manner. Full toss, wrong line, it's high in the air, it's gone towards the boundary, and it's gone. It's gone for 4, 1 bounce into the boundary, using all the pace of Umri pace that he has, and it was a poor delivery, wasn't that? And this time it's a flake, but 1 bounce 4 again. So didn't get the desired result better, but still it's good enough to earn him a boundary. Oh, look at that. It's high in the air. Has it traveled distance? Yes, it has. First 6 of the night. Well, finished the first over. It's been an expensive one from Umari. He's been taken to the cleaners. And there you go. Length again, but he has protection for no use. I think it's crossed the boundary for 4. Oh, where has that gone? Pick the bones out of that! That has gone many a miles, and it's a no ball too! Oh my gosh! There you go, it's a free hit anyways. It's miles in the air. And oh, it was a tantalizing one for the fielder, but it goes all the way in the end. Turns on fire! Oh, there we go. It's delivered. And delivered all the way at right on for 6. Oh, well bowled, well bowled. Very well bowled. As we were talking about that, they got to do something. The first wicket goes down. It was a very full delivery. And again, it has some pace on it. 63 for 1 in the 4th over. And he straight away announced that he's there and put that away over mid-wicket for a 6. Another one, but this time it could be caught. And it is taken by the man at the cow corner. It was in the air for a long, long while. Took that one very cleanly and gladly as well. Clean goes for 6. 69 for 2. And the beautiful trophy that they all have been fighting for. This is in the air. Fielder is under the ball. Ball is coming down. And he kept his cool. Then took that one very easily and nicely at the end. Another wicket goes down. So bowling side making a very good comeback. Not only they're keeping them quiet now, but also picking up regular wickets. Awais Pathan goes for none. 3 down for 72 now. Fine leg did pretty well. Fine leg did pretty well to stop it, and it could be a run out or not. Let's see. I think umpire's going to refer it to the third umpire. Yes, he has referred that one to the third umpire. Let's see what will be his verdict about this one. Yes, he's gone by a good margin. That's what you need from any bowler. It's turning regularly now, 73 for 4. Yes, he has hit that and hit that well. That's exactly what the doctor ordered for him, and he smashed a 6. He goes again. Even better and even bigger. Here it comes down outside the boundary. 2 6s in a row. Last ball of the innings coming up. If it doesn't hold, I don't know. And this has been spanked, and spanked well, and way over deep forward square leg for 6. What a way to finish the innings. They'll be very happy with the score. 93 for 4 in 6 overs. Here we go. MG.
वेरी वेल बोल्ड। पहली गेंद यॉर्कर लाइन पे थी, छोटा विकी, वकास के पास कोई जवाब नहीं था। इस बार प्रॉपर कनेक्शन, फील्डर वहां मौजूद नहीं, 4 रन हासिल किए छोटे की ने। फुल टॉस गेंद जिसका भरपूर फायदा उठाया छोटा विकी और गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर। शानदार छक्का, इंक्लोजर में गेंद गई। खुर्रम चकवाल का प्रॉपर कनेक्शन, गेंद को पहुंचाया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। जोरदार छक्का, खुर्रम चकवाल किंग ऑफ एशिया। एक और प्रॉपर कनेक्शन, खुर्रम चकवाल, एक और छक्का। चकवाल की क्या ही बात है, मिलाकर देते हैं, एक और 6 हासिल किया। अली गेंद करेंगे। और अच्छा कनेक्शन यहां पर खुर्रम चकवाल का, छक्कों की हैट्रिक यहां खुर्रम चकवाल की जाने से शाइकी ने क्रिकेट खुशी से झूम उठे। छोटा अली को बड़े बड़े छक्के लगाए यहां खुर्रम चकवाल। इस बार छोटा वकी का ये कनेक्शन, गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर। एक और छक्का। इस तरह एक्सपेंसिव ओवर अली छोटा का जिसमें 4 छक्के लगे। और इस बार छोटा विकी के आउट होने का खतरा हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि छोटा विकी है। और गेंद पहुंचाई सामने बाउंड्री के बाहर। एक और छक्का। इतनी दूर और इतनी ऊंची गई कि किसी को नजर ना आई। एक और जबरदस्त कनेक्शन छोटा विकी का, एक और छक्का। तो फिर छक्कों का एशिया डिफेंडिंग चैंपियन दबंग की जानिब से दबंग बैटिंग। और इस बार आउट हो सकते हैं क्योंकि गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे है। देखना होगा और कैच लेने में कामयाब। मच नीडेड विकेट फॉर मलीर मलंग। छोटा विकी आउट। 30 रन, 11 गेंदें, 1 चौका और 4 छक्के। और आते ही उमर ने अपने इरादे जाहिर किए। पहली गेंद पे जोरदार छक्का और इस तरह जबरदस्त बैटिंग जारी यहां डीएचए दबंग की। He goes over extra cover, typical of Chakwal. And that travel could at least 20 meters even beyond the boundary ropes. This time he goes leg side. It's high, it's handsome, and it's all the way over square leg. Oh, it's a leading edge, and someone should get under it. Oh my word, it's Chota Ali who's made the mess of it. That could be very costly, I can tell you, Zishan. Down the leg side, a pickup shot that might go all the way for 6. Yes, it does. That has landed into the pavilion there on the first floor, just behind the commentary box. Let's see कि क्या होता है, लेकिन I hope for the best for this evening. Yes, DHA दबंग से नोमान हबीब सपोर्ट कर रहे हैं। वेल छक्के और चौकों की बरसात हो रही है, एक लंबा छक्का डेफिनेटली। और यही टेप बॉल की खूबसूरती है कि 6s और 4s हमें बड़े देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत खूबसूरत इवेंट हो रहा है। एक्सपो ने ऑर्गेनाइज किया, उनके हवाले से भी कहे। सारे जो लोग हैं, उन सब लोगों के लिए जो मेरी बेस्ट विशेस है कि आप लोग जैसे इवेंट हो रहे हैं, प्लीज इसी तरह सपोर्ट करते रहिए ताकि ये लोगों का जो टेम्परामेंट बना रहे। He's going to come around the wicket first up, Ubaid. It's a flat hit, and that is going to way over the boundary ropes over long on. What a start to this over by Khurram Chakwal. A full toss there to be hit, and he's going to punish them all day along to bring up his half century. 50 of just 16 balls. Still 3 balls remaining. Fuller. Look at that bat swing and look at that distance. The ball has covered. That took an eternity to come down the ball. This time coming from the bat of Omar. Last ball of the innings coming up. He's disappointed. He has struck it nicely on the onside, but there is a fielder up there. He's talking for the second run. And they're going to get there in the end. So a perfect end to the innings for DHA Dabangs. They managed to score 24 in the last over. They've got a very healthy lead of 40 runs, and they're going to finish off on 133 for the loss of just 1 wicket. Welcome back to DHA Sports Club, Moin Khan Academy, and the great match that's going on between DHA Dabangs and Mali Malangs, and plenty of fireworks we saw.
as DH Dabang posted a massive score. They got a lead of 40-odd runs. That's a huge lead. Get the trial runs and then get the lead. This is very important for them to win because they want to have that start again. First ball. He goes for it and beats mid off. That could be a boundary. He tried his best, but certainly it wasn't the best of efforts. Has he nicked it? Has he nicked it? Yes, he knows it. He's walking back. The wicketkeeper made no mistake whatsoever. Held side edge, and it's a huge blow. DK is gone. 4 for 1. Umar again. Pulled away. And could be gone. Straight to the fielder. Goodness me. 2 wickets in 2 ball, and Umar is on a hat-trick here. Kaleem has to walk back. He just came and went. Hat-trick ball. Chance. That was off the edge, I reckon. Beats the fielder, and ball goes for 4. Big shot. Is it long enough? It's high. It's handsome. And it's launched it over the rope. 6 to finish the over. Nice shot. Has he found the boundary? That's well played. No protection. It's high in the air. He has been deceived. Should be taken. Gone. Comfortable catch. Slight change in pace here. Well foxed. And Mukhtiar has to walk back. और इस बार मिमरान का जोरदार छक्का यहाँ पर मच नीडेड बाउंड्री फॉर मलीर मलंग्स। और जैसे ये कि ज़ुहैर साहब का जज्बा देखने वाला है पूरा इस टूर्नामेंट में, और उनकी जो क्रिकेट के लिए लव है, और स्पेशली यूबीएल भी आपको पता है इसकी हिस्ट्री है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना हम टैलेंट को डेवलप कर सकते हैं अपने लेवल पे वो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। टेस्ट क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, ये सब जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं पावर हिटिंग के लिए, क्योंकि आप क्रिकेट समझते हैं ये क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट। जी जी बिल्कुल, पावर हिटिंग एक और छक्का लग गया, ये देखें अभी आपसे बात हो रही थी। जी जी बहुत ही दिलकश शॉट एक दफ़ा फिर, और वो बहुत ज़्यादा फॉलो भी होती थी। नाज़ाबाद सुपर कप तक कराची जुमार का भी टूर्नामेंट था, तो उस लिहाज से ये एक और टूर्नामेंट क्रिएट हो रहा है, और मेरा ख्याल है कि ये कई साल चलता रहेगा और कई साल एंटरटेन करेगा। एक और बहुत ही ज़बरदस्त शॉट। तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं आप लोग जो कर रहे हैं, इससे आई फील दैट दिस विल एक्चुअली जनरेट अ लॉट ऑफ टैलेंट इन द कंट्री। सो आई होप कि इस तरह के और इवेंट्स हों, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Lead by some good runs. This is going, and it's gone out of here. What a magnificent blow. And welcome FS. And he swings this away. Fielder does try a lot, but he doesn't succeed. It has gone for 4. Runs everywhere. Got that in the air. Miles, who's coming under the ball. Long off, long off. Oh! He juggled with the ball, and ball goes to the boundary as well. But he played magnificently well. Got that away. Over backward square leg. 6 more. Runs are coming thick and fast. 2 balls, 2 balls. He has lofted it, and lofted it in the stands or on the grass bank. What a terrific 6. What an amazing batting performance. Wicketkeeper collected the last ball behind the wicket because batsmen didn't get the bat on that one. 112 for 3, where they finished their second innings, and Mimran remained not out at 73. Ubaid not out at 12. I think they did a decent job. So 73 is going to be the target for DHA Dabangs. What a magnificent batting performance it was. Malim Malang, especially in the last 3 overs. Still remember they were 30 for 3 in the first 3, but magnificent batting performance by the lower order, and they made sure that they now have given a very respectable target to the opposition. So Khurram Chakwal is on strike. Majid Kohli is all set to bowl the first ball of this run chase. It was a length delivery which was there to hit on the leg. I just couldn't connect it. Short delivery, chance. Is it taken? Yes, it is. The finger has gone up. The brains are this from Malim Maram. It's Khurram Chakwal we are talking about, who has been dismissed for a duck. Really developed all across Pakistan, and our branch network is also growing, and our penetration in Islamic business is growing. But cricket se better, as I always say, product nahi hoti to promote your brand.
That association is 50 years old, and UBL is going to start it all over again with Table cricket as the first pilot project. And जब है अपने व्यूअर्स को बताते यहाँ पर एक और विकेट गिर गई है। वेल एक्साइटिंग बहुत होते जा रहा है मैच। It's a pickup shot. Has he timed it well enough? There is a fielder who is getting underneath that. Is it going to be taken? It is! It's the third wicket that has gone down. Third batter has gone to the dugout without troubling the scorer. Outside the off stump, he had a full swing at that. And the fielder is just going to watch the ball sail over his head. First maximum of the innings. And no surprises coming from the bat of Choda Vicky. Full toss, has he knocked him over? Yes, he has! Completely boxed him with a slower one. Majid Kohli is on a roll. Choda Vicky, known as Mohammad Waqas, has now been dismissed after scoring 11. It's 17 for 4. Slower one, picked up on the leg side. It's a bit of an anticlimax. That's going to go all the way for 6. Getting an outside edge. Has that been taken? It is. What an excellent try by the wicketkeeper. He can do nothing wrong, Majid Kohli. It's his 5th wicket already. Darsalan Jamshed came and went, hit a 6 and has now been dismissed. It's 23 for 5. अली नए ओवर के साथ और इस गेंद को ऊंचा खेले, लॉन्ग ऑफ की जानिब, गेंद हवा में, फील्ड के हाथों में, एक और विकेट। बॉलर्स की रात लग रही है यहाँ पर। 6 खिलाड़ी आउट है 25 रन पर। बैट्समैन ने इस मरतबा ऊंचा खेल दिया इस गेंद को और गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री के अंदर। फील्डर ने अपने आप को प्लेस किया और बड़ा खूबसूरत कैच। वाओ, जितनी तारीफ करें वो कम है। शानदार कैच लिया, एक और विकेट। आज दबंग बॉलिंग परफॉर्मेंस है मलिर मलंग की इस इनिंग्स में और इस मरतबा बैट्समैन ने गेंद को हिट किया है। फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, आ गए और कैच भी ले लिया। एक और विकेट। कोई स्ट्रोक ग्राउंड से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं और फील्डर्स कोई कैच कराने के लिए तैयार नहीं और 8 खिलाड़ी 27 पे आउट। इस गेंद को ऊंचा खेला, लॉन्ग ऑफ की जानिब, टप किया, लेकिन इस बार बैट्समैन ने कहा भैया कितने कैच करोगे, अब मेरी बारी है। लॉन्ग ऑफ से बाहर छक्का। मैच नीडेड 1। एक और शॉट, बड़े शॉट के लिए गए, पुल किया है और कैच हो सकता है बल्कि 4 रन के लिए। चौका भी नहीं रोक पाए, कैच भी ड्रॉप किया और इस बार नाराज हैं उबैद। 4 रन मिले और ये देख ग्लूमी फेसेस और ये मैच खत्म हो गया है और खत्म हुआ है मलिर मलंग्स की फतह के साथ, जिन्होंने 25 रन से ये मुकाबला जीत लिया है। एक आउटस्टैंडिंग कमबैक। IDEAS 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, B2B interactions, joint ventures and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th of IDEAS will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. वाह, कितना अमेजिंग जानवर है। चलिए आइए इसके मालिक से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? वालेकुम सलाम, मलिक शुएब अमान फ्राम तलगंग, जिला चकवाल। अच्छा, और हमें इस जानवर के बारे में कुछ बताएं, कितने का है, कितनी उम्र का है और ये कहाँ से आया है? ये तलगंग अलमान कैटल फार्म जिला चकवाल से रावलपिंडी के पास पड़ता है ना। तो इसकी डिमांड जो है 1 करोड़ 20 लाख रुपया कर रहे हैं और
इधर भी माशाल्लाह अच्छे रिस्पांस आ रहा है। आज जो शौकीन है ना ज़्यादा कैटल फार्मर वो मांग रहे हैं और अच्छा रिस्पांस आ रहा है और अच्छे रेट आ रहे हैं। बाकी जो नसीब में होगा वही होगा। Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The board offers a platform for G2G, 2G, and E2B interactions, joint ventures, and investments in the production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The Launching of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening to every one of you who are watching us from different parts of the world. Once again, we welcome you for an exciting contest where Gulshan Gohars are taking on Liari Legends in match number 8 of this KTPL Season 3. The news from the center has been that Asan Chitta, the captain of Gulshan Gohars, have won the toss and has opted to bowl first. So here we go as match 8 is just about going to get underway. Oh, loosener to start the proceedings by the quick bowler down the leg side. This one goes through the offside. Width was there and length was there and he puts it away in style. This time it's launched. It's gone many a miles and over the advertising hoardings. First 6 of the night, and it's a good one. Now this time he goes down the ground, all along the carpet. Kind of a tape ball, but we have seen some great stuff. This time he goes leg side and beats fine leg and goes into the bat for 4. Ring boundaries in the first over. He goes high. Somebody getting underneath it, and it's a very good catch at short third. It was a sky, it was miscued, went across the line, play away from the body, and pays the price, does Nizar. 24 for 1. Flicked away off the hip, and it's gone all the way to the boundary for 4. This time he goes through the offside. That's a beauty of a stroke. Give it a real thump. Over wideish mid-off. It's a phenomenal achievement. Goes again through the offside. It's a flat one. It's Daud's Carnival here in Karachi. And have a look at that for a stroke. Unbelievable. It's 1 bounce 4, but it has been picked and just dispatched out of its presence. And there you go, bowls a full toss and he receives a thump, and that is one of the best catches of this tournament. And excellently catched by the fielder. Ashraf Pathan goes for 22 of 7 deliveries. He bowls another full toss. Always full toss is not going to yield fruit. This time it's been thumped down the ground for the maximum. Representing Liari Legends. This time he has cut that away. Fielder is trying to get under. He jumped in the air but couldn't quite get his hands into that one, and raised his arms. It means that has gone for 6. It is in the air. Who's going to take it? Fielder is placing himself under the ball, and he took that one beautifully, or very nicely, and one would say easily as well. So the 3rd wicket goes down. It's in the air. He is going to be out. It is. Wicket keeper comes forward and grabs that one nicely, and finally he gave his wicket away as well.
He hit it in the air. Wicketkeeper again in business. Yes, he's grabbing another catch gladly, gleefully, and another wicket goes down, and Mars suddenly is on a hat-trick. Saeed Bilal just came and went. Golden duck to his name, 70 for 5. He hits that away and hits that away well. He picked up a 6 here, and much needed one as well. It is in the air, but it really cleared the man at covers, and it racing away to the deep extra covers boundary for 4 runs. He has hit that away and hit that away for a massive 6. That's a good shot right out of the mid of the bat. Shaban has driven that away. That's a beautiful shot. It has gone down to the boundary and then clatters it 4 runs. What a beauty of a shot. 26 runs the last over, including 7 extras. 105 for 5. What they have scored in their allotted 6 overs. दोनों बैट्समैन तैयार हैं इनिंग्स का आगाज करने के लिए. 105 रन्स यहाँ पे स्कोर करने में कामयाब हुए लियारी लेजेंड्स के बैट्समैन. राना मोहसिन फार एंड से पहली बॉल लेकर और पहली गेंद को स्विंग कर दिया लॉन्ग लेग और फाइन के दरमियान, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर. छक्का. अगली गेंद एक और ऊंचा स्ट्रोक, और गेंद एक बार फिर बाउंड्री से बाहर. एक खूबसूरत जोरदार और बड़ा छक्का इस मर्तबा बहादुर का. एक और ऊंचा शॉट मिड विकेट बाउंड्री से बाहर. एक और छक्का. छक्कों की हैट्रिक. राना मोहसिन पे तमाम दबाव. इस मर्तबा खूबसूरत शॉट फ्लिक ऑफ द रिस्ट. पहली गेंद. तैमूर मिर्जा ने कहा मैं यहां पहुंच चुका हूं डीएचए मोइन खान एकेडमी में. गेंद ग्राउंड से बाहर. छक्का. इस गेंद को तैमूर मिर्जा ने स्विंग कर दिया वाइड ऑफ मिड विकेट बाउंड्री से बाहर. 4 रन्स. तैमूर मिर्जा का ऊंचा लंबा खूबसूरत शॉट. खूबसूरत दिलकश अंदाज में गेंद को सहकर आई है मीलों दूर, बहुत ही दूर 6 रन के लिए. 59 रन हो चुके हैं. एक और बड़ा जोरदार और खूबसूरत शॉट. तैमूर मिर्जा हैविंग गो एट एवरीथिंग. अब रन उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक बन रहे हैं. इस गेंद को स्विंग कर दिया है ऑन साइड पे बहादुर लेफ्टी ने, और नतीजा सिर्फ एक होगा और वो है छक्का. Slower one picked up on the leg side. It's up in the air. There is a fielder who is trying to get underneath that, and he takes it. They needed that, and they have made a very strong breakthrough. Taimur Mirza has now been dismissed. Good ball once again. Was there an inside edge, or has it knocked the stumps? Yes, he has. Well, there was definitely some bat involved, but the ball might have rolled onto the off stump. 2 wickets now in 2 balls for Suhail. Playing a forward defensive stroke will get just a single. There is a shy at the bowler's end. They might collect an extra run on the overthrow. This time there might be an opportunity at the wicket-keeper's end. I think he has been dismissed. Yes, the finger has been raised already. It's Liaz who is going to walk back to the pavilion. Rana is going to start his second over. He gave away 28 runs of the first over of the innings. It's an outside edge that has been taken. What an interesting passage of play this has been for Riyali Legends. Tell you what, it's Bahadur lefty who has now been dismissed. Fuller getting a thickish outside edge. It's going to go past the wicketkeeper and then the short third. A very fortunate boundary this for Shiraz. Slow one picked up on the leg side. It's up in the air. There is a fielder who was initially watching the ball. Well, he's still watching, but this time with the boundary ropes. Short. It has been pulled. Once again, it's in the air. Has it got the distance? I think it has. Just by the barest of margin, it went over the head of the fielder at long gone. This time he has hit that over extra cover. Has he timed it well enough? Well, he's still running. There is a field in that. And there was no communication whatsoever. I think it was Qari Hamidullah and the other fielder.
And they're going to collect another run on the overthrow. Oh my goodness, they're coming back for the another one. There might be a chance of a run out at the present. It's all happening. Finally they have managed to run a batter out. Another wicket has gone down, the 5th of the night for Gulshan Gohar. Shiraz Ali. It's a full toss. Picked away on the leg side. That's going to go one bounce into the fence. Arju, the new batter in, just facing his first delivery, just helping the ball on its way down the leg side. So 19 runs coming in the last over from Shah Jahan. Gulshan Gohar are going to end their innings on 114 for 5. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूबीएल अमीन केटीपीएल सीजन 3 2023 और दूसरी इनिंग अब से थोड़ी देर बाद डीएचए क्रिकेट अकेडमी मोइन खान पर शुरू होने जा रही है और पहली ही गेंद को मोड़ दिया है ऑन साइड पर और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर और इस बार गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई काफी देर हवा में रही और बहुत ही उम्दा कैच। बड़ा उम्दा कैच, आसान नहीं है अंडर द नाइट स्काइज इस तरह के कैच पकड़ना। पहला नुकसान यहां पर लियारी लेजेंड्स को। दूसरा ओवर पिछले कदम पर जाकर गेंद को उठा दिया, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और कैच मुकम्मल कर लिया उन्होंने। बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बैट्समैन को विट जरूर दी मगर अच्छा बाउंस करने में कामयाब हुए। इस तरह दूसरी विकेट गिर गई है और स्कोर है महज 13। और इस बार गेंद को उठा दिया है, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, क्या गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी या फिर, और ये अंपायर का इशारा कि छक्का। अशरफ लेफ्टी और इस बार गेंद को उठा दिया है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बिल्कुल लगता है कि इन्होंने याया हुसैन की बात फौरन सुनी और कुछ मैक्सवेल की रूह इनके अंदर जो आई। और इस बार 4 हो गए जी, बिल्कुल 4 रन। तो पहली 2 के 10 रन और ही चाहिए लियारी लेजेंड्स को। लियारी लेजेंड्स 33 2 विकेटों के नुकसान पर और अशरफ लेफ्टी की इस गेंद को उठा दिया है, फील्डर गेंद के नीचे है और उन्होंने इस कैच को मुकम्मल कर लिया। तो तीसरा नुकसान लियारी लेजेंड्स को 2.5 ओवर के खेल में 33 3 विकेटों के नुकसान पर। Yeah, they got to keep on trying. This time he thrashes it. It went through the covers. And I think it's gone all the way. Yes, it has. Nicely played. He split the field through the offside and got it in the gap for a boundary. And this time it's high in the air. Somebody should get underneath it. Oh, he's dropped it. It was easy as they come, in my opinion, because he's got underneath it and in the end just couldn't grab it. Good shot, straight down the ground. Is it long? Yes, it's a gigantic one. What a blow that is. Tremendous. Well, that is colossal. It's out of here. It had everything in it. He goes again. That's another one. 2 of 2. This is the momentum they need. This time on the rise, outside the off stump. He got the weight. What a shot that is. And flicked it away over square leg into the boundary after a couple of bounces. Vacant space available at a square leg. Lovely flick shot from Shubhan. This time he gets the connection, but he had to wait ages to get that. He does well to get away for a boundary. And this time it was a quicker one. And they came through for single, but they will not be able to complete it as we see a run-up at the close end. So Shaban has to take a long walk back to the dressing room as he's been run out. Oh, another big heave, but he gets beaten altogether. What an eventful this over has been. Great bowling. Foxed him and dot ball to end the over. They've managed only 75 in their quota of 6 overs, which means that virtually they have made 66. It's not a big target for Gulshan Gohar, considering the fact that they have got a very strong batting line, especially with the likes of Taimur Mirza
and Bahadur lefty who are going to be opening the batting. It's just 67 runs tonight, Kainat, and they have done it in the past. They have done it on 2 occasions in the first 2 games. Looks like it's going to be another easy victory for Gulshan Gohars. Left arm seam is going to start the proceedings. Swung away on the leg side, it's along the turf, and some misfield from the fielder at fine leg. They will just get 1 run. He's going to come around the wicket first up. Starts off with a short delivery that has been dispatched on the leg side. And it's a flat 6 from Taimur Mirza. Another pickup shot. This time he has managed to hit that in the long on direction and way over the boundary ropes as well. And getting it outside the park. An exceptional shot, showing his dominance. He needs to come back well here, Rana Mohsin. A slower delivery, chance for the fielder at short third, and that has been taken in the third attempt. It's the chairman of KTPL, Zuhair Nasir, who completes that catch, and they get a big wicket of Taimur Mirza. Big swing on the leg side, it's up in the air, and it's over the boundary ropes. What a hit of the very first ball, this from Ilyas Jani. He's going to bowl to the left-hander, Bahadur lefty, once again coming around the wicket. Big swing on the leg side, it's up in the air and it's into the stands. He doesn't need second invitation, especially when the ball is pitched up. Swung away on the leg side, just helping the ball its way. I think that has travelled to Journey as well. Yes, the arms are aloft from the on-field umpire. Not good bowling. This from Sohail lefty. Last ball of the over coming up. Once again, a full swing over long gone. He's not going anywhere, Bahadur lefty. He's going to stay there till the end, depositing the ball in the dugout. In fact, in the pavilion, I believe. And there you go. He's hit that hard, and it's 1 bounce 4. And that's another one in the air. The batter is also not managing it to connect out of the screws. But this time around, the pace of the bowler has carried the ball all the way for 6. Would you believe that? Outside 8, and finally, he gets one in his favor, does Shah Jahan. Shah Jahan is well respected by all the ball players. Outside the off stump this time, spanked away. 1 bounce 4. Just to the left of mid-off. Nicely executed stroke. And this match is over. They have won that match comfortably by lots of wickets. So here we are, welcome back to every one of you. With match number 7, North Nawabs are taking on Clifton Populars. Live all the way from PHS Sport Club, Moin Khan Cricket Academy, Karachi. And the news from the center is that Clifton Populars have won the toss and opted to bat first. So here we are, the umpires are ready, players are ready, and the umpire says, let's play. The other night against Johar Jawans. Starts off with a short delivery that has been put away on the leg side. There is a field there. Just a single to get off the mark with. Yeah, we'll be feeling good, will Fahad. And there you go, this time it's Asad Shah who has taken serious bit of punishment, and it's been hooked away. But no house edges from Asad Shah. Another short pitch delivery that has been nailed on the leg side. That's going to be a 6. Well, well, well. This time it's in the air. It smiles in the air. Somebody getting underneath it, but no one is there actually. It's gone in the gap for 4. Look at that. This is not going to help his cause. Poor line, poor length, and pays the price every time. And let's go together, says Fahad to Sahram. Wow, in the arc and away it went. A country mile.
He drops his another shot, this time over long. That's a flat hit. Well, they're just dealing in maximum so far, both these openers. It's short, it's pulled. See you later. He says it to the ball. That's the third of the over. With one ball still remaining in the second over. And that ball too has been sent into those trees outside. Oh, what a strike. What a way to end the over. Fahad is now on strike and we can expect anything from him. Boom shakalaka! Mid wicket, unstoppable Fahad. But he does, but this time it's Asad, it's the captain, gets a full toss and sends it way back into the stands, into the member. असद शाह 360 ग्राउंड से बाहर फेंका गेंद को जोरदार छक्का फहद मियां चुन्नू का इस बार अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब हुए एफएमसी फहद मियां चुन्नू वेरी वेल प्लेड ऑन जस्ट 14 बॉल्स दानिश अनीस 360 असद शाह ओए ओए ऑन द टोज जबरदस्त हिट 4 रन के लिए क्या जबरदस्त स्ट्रोक है असद शाह एक और जोरदार हिट असद की बाउंड्री के बाहर एक और छक्का क्लिफ्टन पॉपुलर का डगआउट खुश लेकिन इस बार जहां हिट करने गए थे वहीं हिट किया गेंद को और गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर एक और जोरदार छक्का 360 असद शाह का फुल टॉस गेंद और जैसा उसके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो ही किया असद शाह ने एक और जोरदार छक्का अंपायर देखना चाह रहे हैं लेकिन यहां से ऐसा लगा कि गेंद बाउंड्री के बाहर गई है दानिश बात कर रहे हैं कि बॉल जी बिल्कुल असद शाह अपनी निफ सेंचुरी 15 गेंदों पे मुकम्मल कर चुके 14 गेंदों पे फहद मियां चुन्नू ने मुकम्मल की एक और जोरदार हिट असद शाह इन फुल फ्लो एक और जोरदार छक्का कैप्टन क्लिफ्टन पॉपुलर 360 का एक और जबरदस्त हिट फहद मियां चुन्नू एक और छक्का दानिश अनीस क्या हो रहा है यहाँ पर नसीम राजपूत एक्स्ट्रा कवर पर जोरदार छक्का असद शाह का व्हाट अ शॉट लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग और इस बार एक और शानदार स्ट्रोक फहद मियां चुन्नू का फर्स्ट बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर की गई और यूबीएल अमीन सीजन 3 का सबसे बड़ा स्कोर क्लिफ्टन पॉपुलर अब तक करने में कामयाब हुए 141 फॉर नो लॉस Not Nawab, they just kept watching the carnage. Brilliant shots they played and played with real dominance. Goes for it. What a good blow that is. Into the stands. What a perfect start. His half-pitch bowler has announced his presence. Goes for it. Pulled away. Has beaten the man. Could be a boundary. It is a boundary. That's the start they were looking for. Well played. He goes for it. That's the connection. He loved it. What a shot that is. Half his bowler is off to a flyer here. Spanked away to the offside. Population and it's found the boundary. Lovely shot. Has picked up his first boundary. 7 of the over so far. Big full toss. He smoked it. He smoked it hard. Over the rope for 6 more. Oh, look at him. Look at him. He's absolutely jubilant. It's high, it's handsome. What a good strike. What a tremendous strike. My word, that is enormous. One of the biggest sixes of the tournament. Outside edge gone, caught behind. No doubt whatsoever. It's a huge wicket. Half his bowler went for the big shot again. Massive deflection. And wicketkeeper did the rest. यूबीएल इटसेल्फ क्रिकेट को लेकर कितना नहीं यूबीएल तो बहुत पैशनेट है आपने शायद सुना हो यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में और यहाँ पर विकेट गिर गई है हम व्यूअर्स को बताते हैं बहुत जबरदस्त क्रिकेट जारी है और विकेट्स गिर रहे हैं Shafi Agha, the latest victim, got out, so a couple of wickets falls in the shorter space of time.
He goes for it to the outside edge, and it's taken. Wicket number 3 down of the over. What's happening here? Mansoor has been very penetrative and now he's looking very ominous and lethal. He has taken the wicket number 3 in this over. It's a hat-trick ball, don't forget that. He goes for it, swing of the bat. Could be out, gone. It's a hat-trick. It's a hat-trick for Mansoor. What a performance. 4 wickets in the over. Would you believe it? Oh, what we are watching, what we are seeing. He goes for naught. 4 down for 44. In the slot over the extra cover, that is going to go straight into the hands of that fielder. Initially, it was all about maximum. Now they have started to pick up wickets. And the batting line of Nawabs is falling like a house of cards here. And there you go. It smiles in the air once again. Somebody getting underneath it. And what happened? I think he's pouched it safely. Very good catch in the end. He's going to walk back to the pavilion without even troubling the scorers then. Pathan, it's 48 for 6. Swung away on the leg side. It's in the air. And it's way past the fielder at square leg. That's going to run away for 4. And how about that? It's long. And where is it going? It's going out of the ground. What a stroke that is, Zishan. That's the power of Pathan. Not many would have been able to hit that ball on death length. And full toss has been belted into the members. Wow. That's in the air again. How far is it that? I think it's 1 bounce 4. Or has it carried all the way? It's gone all the way. 3 sixes of 3 deliveries. What a way to finish the over. Nicely bowled and nicely played, but unfortunately he's picked out the man at the deep mid-off. Another wicket goes down for North Nawabs. Their 7th of the night. Asif Pathan's cameo comes to an end. 25 of 8 for him tonight. So it's Saram, the new coming batter, who is known for his bowling more than his batting, but he can hold the bat. Gets a dot going on to finish the innings. So it's 82 for 7 what they achieve in their 6 overs, which means that the lead is going to be 59 runs. वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी से। और बड़ी उम्दा बैटिंग मुजाहरा यहाँ पर किया है क्लिफ्टन की टीम ने पहली इनिंग्स में, और 59 रन के करीब उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की बर्तरी हासिल की है। बेहतर गेंद थी जिसे खेल दिया है फाइन लेग की जानिब। फील्डर ने गेंद को बाउंड्री के आधे रास्ते में रोका और पहला रन इस इनिंग्स का। जी हाँ, और फार ने पहली गेंद को लिफ्ट कर दिया है खूबसूरती के साथ, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जा गिरी, छक्का। और इस मरतबा ऊंचा और जोरदार शॉट, गेंद हवा से बातें करती हुई ग्राउंड से बाहर जाकर गिरी, एक और खूबसूरत छक्का। इस मरतबा बहुत खूबसूरत शॉट देखने में बनता है, हल्का सा इनसाइड आउट ओवर डीप एक्स्ट्रा कवर्स, बहुत ही उम्दा शॉट। बॉलर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है। इस मरतबा आउटसाइड द ऑफ स्टंप विड्थ मिली और गेंद को ब्लास्ट कर दिया ऑफ साइड में। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बड़ा खूबसूरत शॉट, वन बाउंस इनटू द कवर्स बाउंड्री, एक और चौका। और इस मरतबा गेंद को ऑन द अप बेल्ट कर दिया है ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, और इस खातून का जज्बा देखें, लुक एट दैट। इस मरतबा बड़ा एक्सेप्शनल शॉट, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर, एक और छक्का। एक और अच्छा शॉट, और फिर गेंद ट्रेवल कर गई बाउंड्री से बाहर, एक और छक्का। और इस गेंद को खूबसूरती के साथ हिट किया,
गो के फील्डर मौजूद थे मगर नसर गेंद के ऊपर से गुजरी और बाउंड्री से बाहर जा गिरी। एक और छक्का। बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं और टेप बॉल की क्रिकेट हमारे वक्तों में भी होती थी लेकिन इस लेवल पे नहीं होती थी और मैं समझता हूँ कि ये क्रिकेट की प्रमोशन की बेस्ट चीज़ है। डेफिनेटली क्रिकेट की प्रमोशन के लिए इस लीग का बहुत बड़ा रोल है क्रिकेट को। खूबसूरत ग्राउंड इस्तेमाल हो रहा है, बड़ी लाइटिंग ज़बरदस्त है और जियो सुपर की टीम को और तमाम ऑर्गेनाइजर्स को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इतना ज़बरदस्त इवेंट करा रहे हैं कि लोग बहुत इसको एंजॉय कर रहे हैं। मुझे नसीम राजपूत साहब ने कई दफ़ा इनवाइट ज़रूर किया लेकिन मसरूफियत की वजह से मैं हाजिर रहा हूँ, लेकिन आज आने का जो इत्तेफाक हुआ सबसे पहले नसीम भाई को मैंने बोला कि मैं आ गया हूँ तो फ़ौरन आए और So it's a 6 अगेन जबरदस्त माहौल बना हुआ है और छक्के चौकों की गूंज है। Into his last over, and it's going to be the innings last over as well. He starts off with a full toss which has been belted hard. It's going, and it's gone! There you see Shahid Aslam, the on-field umpire, signaling it as a no ball. They can score 100 once again. They will definitely score 100. That's going to go over the boundary ropes. Well, that was launched from Clifton and that landed in North Karachi. So with that performance, Clifton Popular also becomes the first side to go past 100 on both the occasions in one game. They now lead by 159 runs. Huge target to chase, 160s to be specific. It's not going to be easy. Here's the first ball. This one is going down leg side. It has to be a wide. Yes, it is. And here he has hit that one in the air. One bounce into the long off boundary for 4. Good shot. There we go. He has hit that one away into the leg side and it's gone all the way. This one is put away and put away over to the leg side again. Another 6. And he has got that away and got that away beautifully. 6. Again, even better through the offside and it lands in the trees. And then he bashed his bat at the pitch in his trademark style, the Hafiz bowler. This is coming down towards the fine leg boundary. Somebody has to pick it up from outside the boundary. This is in the air. Fielder is trying to get under the ball. Yes, he has got under the ball and he has taken that catch as well. So first wicket goes down at the score of 54 and Mansoor is the one who got a wicket on the final ball of his first over. And Yaya has hit it straight down to the throat of the fielder who accepted that gleefully and another wicket goes down. It is coming out of the ground. 6 more. और इस मरतबा हाफिज बॉलर ने गेंद को स्विंग कर दिया ऑन साइड में. फील्डर जहां पहुंचना चाहते थे पहुंच ना पाए और गेंद पे खाती हुई बाउंड्री से बाहर निकल गई. चौका. तो 159 रन 6 ओवर्स में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के बराबर है. इस मरतबा बड़ा खूबसूरत शॉट फ्रंट फुट पे आके लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बाहर. 6 रन. एज उसके बाद गेंद गई गली की जानिब. ऑलमोस्ट थ्रो विकेटों में लग गया और बैट्समैन बिल्कुल साफ आउट हैं और उन्होंने सीधा दौड़ना शुरू कर दिया डग आउट की जानिब. 85 पे तीसरा खिलाड़ी आउट हुआ है. क्रिकेट लविंग स्पोर्ट्स लविंग नेशन है और इस मरतबा बड़ा जोरदार शॉट और भरपूर कुव्वत से हिट किया. बहुत उम्दा छक्का यहाँ पर आसिफ का. और एक बार फिर से हवा में है गेंद और यहाँ पे फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, लेकिन जी हाँ फादमिया चन्नू ने कैच पकड़ने में कोई गलती नहीं की और अपनी हाइट का भरपूर इस्तेमाल किया है वहां पे. पठान 7 रन बनाकर आउट हुए. 93 पे 4. इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए. ऊंचा गेंद ने फील्डर के आगे टप्पा खाया. उनको
धोखा देती, उनको बैफल करती हुई निकल गई बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए, और इस तरह 61 रन के बड़े मार्जिन से ये मुकाबला अपने नाम किया है क्लिफ्टन पाउलर्स ने। बहुत कारकर्दगी एफएस क्लिफ्टन की जानिब से। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all. I once again welcome you all. A brand new match coming up. UBL Amin KTPL Season 3. George Jawan will take on Malin Malangs. Although very confident at the time of toss. He was very clear. He opted to bat first straight away. So we all set here for the new match. The match number 2 of today. Malin Malangs will take on George Jawan. First ball coming up. Here he goes, good swing of the bat. Straight away he made his presence. It's high and handsome and it disappeared. My word, what a good strike that is. What a start from Daud Khan. Bat hard, throw it up there, one bounce to the boundary. Outside edge gone, is he gone? We have to wait for the passing, his finger goes up. And DK is not a happy man. He suggested that he hasn't hit it, but we saw some kind of deviation. The George Jawan, they are absolutely delighted. Good sound of the bat. Is it long enough? Yes, more than enough. That is gigantic from Kaleem. Either it's a wicket or it's a 6. Good strike, good strike. First ball, over long on. 6 more. This shot was only hit the wrist bar. It's high in the air. He's got a lot of height. And this time he's got the distance as well. Good to wide, beautifully wide. 6 to finish the over. There are 3 sixes in this partnership. Round the wicket. He goes for it. He waited, and what a good shot that is. It has gone many. My word. What a good strike that is. And welcome to the crease, Farman. Pulled away. Gone. Good catch. The batsman can't believe it. Kaleem, he smashed it pretty well, but picked the man to the perfection at his square leg. So Farman has got the breakthrough. He struck it well. Well taken. It was a tough one. Oh, इस मर्तबा बड़ा जोरदार खूबसूरत शॉट, फ्रंट फुट पे आए और स्पिन करना किसी गुनाह से नहीं है टेबल में। फरमान 5वें ओवर के साथ, और इस गेंद को हिट आउट किया, मगर गेंद कुछ टप्पे खाती हुई जा रही है मिड विकेट बाउंड्री की जाने। फील्डर ने पूरी कोशिश की वहां पर, लेकिन लगता है कि कामयाब नहीं हुए। 2 फील्डर से वहां पर, मगर फिर भी बाउंड्री से बाहर चौका। इस मर्तबा एज हुआ है, फील्डर गेंद के नीचे और गेंद को ग्रैब किया अपने दोनों हाथों से। इस तरह ये एक और विकेट। उबैर रहमान 1 रन बनाकर आउट। MM 78 पे थी। बड़ी बेहतरीन बॉलिंग, मगर इस मर्तबा फाइन लेग बाउंड्री से बाहर राउंड द कॉर्नर को पुल किया, और ढोल वालों के लिए एक मर्तबा फिर मौका कि अपने ढोल को खूब पीटें। Here we go, फर्स्ट बॉल, और इस गेंद को हिट कर दिया ऑन साइड पे, और गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री से बाहर। छक्का तो नहीं, लेकिन चौके से आगाज। इस मर्तबा गेंद को हिट किया, एंड इट हैज गॉन ऑल द वे। नहीं हो सकी गेंद, चूंकि फील्डर मौजूद थे बिल्कुल बाउंड्री पर। और अभी हम बात कर रहे थे बॉलर के लिए कि बॉलर भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो गेम से बाहर हैं। उन्होंने विकेट हासिल किया है। इन फॉर्म में इमरान की 46 आउट हुए। इस मर्तबा इस गेंद को उठा दिया लॉन्ग ऑन पोजीशन पर, और गेंद बाउंड्री से बाहर। 6 रन। इस बार तैयार थे मुख्तार, ऐसा लगता है हमारी बात सुन ली उन्होंने। इस बार बैक लिफ्ट भी कदरे कम थी, बल्ला वहीं से लेके आए जहां से उठाया।
और बड़ा जोरदार शॉट, मुख्तार छच्चर यू ब्यूटी वाइड ऑफ मिड ऑन, एक और वे टू फिनिश द इनिंग्स। आखिरी 2 गेंदों पे 2 छक्के लगे, 103 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए मलीर मलंग ने। Yes, indeed, it's a very good performance by Malir Malang. Finally, they managed to score 103 in their allotted 6 overs. It was looking a little difficult. As we see, Majid Gholi will start the proceedings. He was one of the pick of the bowlers yesterday night, picked up 5 wickets. Started off with a slower delivery, it wasn't picked by the right-hander. Shot, this time he has managed to pull it. He has connected that well enough, that's going to run away for 4 down towards fine leg. Yeah, it's pretty hard to adjust for a bowler against the left-hander. Swung away on the leg side, it's flat, it's hard, and it's all the way for 4 again. That little deep mid-wicket did not have much distance, but still, how did he time that? Starts off with a fuller delivery, that has been launched over mid-wicket. I think that has gone all the way for 6. Yes, the arms are allowed from the on-field umpire. He goes straight, it's up in the air. Long on is trying to get underneath that. And that has been taken. Big win for Malir Malang. It's Nadir, the captain, who is going to be walking back. बिल्कुल सर, लोग आप सुनना चाहेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा माइक ऊपर करें ताकि जो व्यूवर्स हैं वो आपकी बात सुन सके और ये जान सकें कि प्रीमियर लीग में किस तरह की रौनक लगी है क्रिकेट की। नहीं, इट्स वेरी नाइस फैमिली एंटरटेनमेंट, बड़ा अच्छा म्यूजिक है, एंटरटेनमेंट ड्रम्स हैं, क्रिकेट तो अपनी जगह है ही एक्साइटिंग, वेरी एंजॉयिंग विद द फैमिली। Oh, okay. We have different fans here. They are happy. They are enjoying the Premier League. But now let's go back to the commentary box. He pulls a low full toss, and that has been tongued over mid-wicket. They were looking for it. And Bassett has delivered one. Now, that is the problem with this game, really. Another swing. It's high, and it's handsome. Maximum of the over, and not a good way to finish off the over. This from Majid Gholi. He goes for it. Good swing of the bat, and look at that. There's gone many a mile. What a good strike that is. Absolutely muscled by Shah. Good shot. Good shot. Flick of the wrist. That is extraordinary from Shah. That is even better from him. Chance should be taken, gone. Certainly gone. Wicketkeeper covered the ground to his left. In the end, a simple catch for him and some relief and consolation for Fazal. He is struck here for his side, Malir Malang, and Bassett has to go. Pulls it, catcher is a cry. Gone, oh, good catch. It's down. He's still house. Pulled it well, and Shah has been dismissed. It's a big wicket. In the air, goes over offside. Glorious shot. 1 bounce over extra cover. Flick of the wrist. Is it long enough? Somebody is positioning himself and good catch. Umar goes out first ball. A good catching by Malir Malang. Umar went for 0. 71 for 4. Smashed high in the air. Somebody is getting in the ball. Daud Khan once again. Got him. He's an exceptional fielder. He doesn't miss many. It was a high catch. He kept his cool. In the end, no mistake whatsoever. Falak has to walk back now. Low full toss, smack down the ground. Could be gone. Oh, wicket falls again. Good catch. He was on a hat-trick, Ali. The catching so far has been brilliant. Arif Palki went for 0. Full toss, mistimed. He's got the height. Somebody should catch it. Oh, hat-trick missed here. A sitter has been dropped. Well, dropped from in between the hands. Last ball of the innings. Big full toss. He's got the height. Will this be taken? Daud Khan once again safe as a house. 4 wickets for Ali. And George Jawan innings has come to a close. 80 for the loss of 7 wickets.
एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी से। तीसरी इनिंग को इस मुकाबले की ऑफिशियल होने के लिए तैयार हैं। मलीर मलंग्स अपनी दूसरी इनिंग्स खेलेगा। 23 रन की सबकत होने हासिल है पहली इनिंग्स की बुनियाद पर। पहली बॉल इस इनिंग्स की और इस गेंद को ड्राइव करने में कामयाब हुए। ऑफ साइड में गेंद गई रेगोशेड होकर और 1 रन इस दौरान बन गया। इस बार बड़ी हिट मारने की कोशिश, टाइम प्रॉपर नहीं कर सके थे, लेकिन मिड ऑफ के फील्डर चूंकि सर्कल में थे इसलिए 4 रन हासिल हुए। यहाँ प्रॉपर टाइम नहीं किया था दाऊद पठान ने, लेकिन लकी रहे कि 4 रन मिले। इस बार बहुत ही अच्छा कनेक्शन, गैप हासिल करने में कामयाब हुए डीके, 4 रन हासिल किए। और इस बार इनसाइड एज, मिमरान की बड़ी विकेट हासिल करने में कामयाब हुए फरमान। मिमरान इनफॉर्म बैटर जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे। मलीर मलंग्स के लिए क्रूशल विकेट हासिल की यहां फरमान ने। इस बार थोड़ी सी अपनी लाइन को मिस किया था, जिसका भरपूर फायदा उठाया डीके दाऊद खान पठान ने। इस बार आउट होने का खतरा, फील्डर गेंद के नीचे और यूं कलीम की इनिंग का खात्मा इस ओवर में फरमान ने ये दूसरी कामयाबी दिलाई है जॉर्ज जवान्स को। स्ट्रॉन्ग कमबैक यहां जवान्स का। इस तरह एक और विकेट गिरी 20 रन पे। अब 3 खिलाड़ी आउट हो गए और कलीम 1 रन बनाकर आउट हुए। इस बार अच्छा कनेक्शन, लेकिन बाउंड्री के हाथों में थामे गए। इस तरह दाऊद खान पठान बहुत ही बड़ी विकेट यहां जॉर्ज जवान्स ने हासिल की, मच नीडेड विकेट। और इस बार थोड़ी सी खुद मुख्तारी जरूर दिखाई मुख्तियार ने और सामने एक जोरदार छक्का। इस बार सद्दाम की गेंद गाइड करने में कामयाब हुए स्क्वायर लेग की जानिब, फील्डर गेंद को नहीं रोक सके। 4 रन हासिल हुए। And this time it's a connection. He has bludgeoned away over cow corner. That is a majestic 6. Outside edge and grabbed gladly by the keeper. He says thank you very much, and typical celebrations of Farman. Mukhtar has now been dismissed, walking back after scoring 10. It's 46 for 4. From a different angle, a different strike, and it's gone away. He goes again. This time, it's even bigger. That's out of here. See you later. Come on, son. I need a piece of it, says the batter. You bowl like that, you're going to travel all night along for these type of gigantic blows. Well, it was a skimmer. Given the responsibility to finish off the innings now. And there you go. Welcome to the arena. Wow. These guys are absolutely merciless. He's going big. This time he goes over cover. This won't go all the way. But I think it's trickled over. Yeah, it has trickled over eventually to the boundary. Didn't carry it on the full, but a boundary nevertheless. 3 balls now remaining in the innings. Oh, he's hit that hard, but it's only going to be a single. Oh, look for 2. Here's the trouble, and he gets out on the non-striker's end. Well. It's all happening here. I would say he's sacrificed his wicket because they are into the last over, but there was never a run. He goes downtown, he goes flat, and he goes all the way. One bounce, that was skimmer. And this time he's got the length, but couldn't get the elevation as he would have liked. It's going to be a single. They will look to get another one, but it's not there. Another run out, just a couple of run outs towards the end of the innings. But they've managed 85 for 5 in their 6 overs. Johor Jawans needing 100 to register their first ever victory in this KTPL Season 3. Umpire signals, let's play gentlemen. The last innings of this match is getting underway here. Here's Majid Goli.
steaming in. And first one is hit back with the power over wide long on for a massive 6. What a way to start the proceedings. What a magnificent shot. He gets that away. Wide of the fielder at fine leg, and it raced away in an eye flash. Runs have started flown. He goes again, but fielder is there. Who doesn't make any mistake at the long on boundary? Majidul is saying, you hit me a 6, then you clobbered me a 4. Now it's my turn, and go back to your dugout. 10 of 3, 10 for 1 on the board. Georgia won. Basit is taking strike. And straight away, he goes bang over long on. That's a good hit, right out of the screws. This time it is going, and gone out of the boundary. What a magnificent stroke. And Shah has given this a go. And given this a go beautifully. I think it bounced once before it get over the line. 4 more. Basit has lofted him over long off. What a beautiful shot. Umpire is lofting his arms for signaling, and that's a terrific stuff from Basit. He has swung it away in the air and cleared the boundary by a big margin. इस मर्तबा छोटी गेंद कर दी थी और इसको सजा देने में कामयाब हुए हैं। जिस तरह चाह रहे थे उस तरह कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी रन जरूर मिले। मेहनत की बात की जाए तो कोई कमी नहीं है। जिस किस्म की स्ट्रोक खेल रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे हैं यहाँ पे। लॉन्ग ऑन के हाथों कैच थमा बैठे और टिपिकल सेलिब्रेशन। बासित लेफ्टी को पवेलियन दिखाते हुए कलाइयों के इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन सिर्फ 34 रन ही पवेलियन लौटे हैं। जोरदार हिट लगाई है और अपनी अनाउंसमेंट की है, लेकिन यहाँ पे एक और कैच पकड़ने में कामयाब हुए दाऊद पठान। फलक बशीर 0 रन पर आउट। केटीपीएल सीजन 3 से एंजॉय होते हुए और इस मर्तबा पीछे पड़ी हुई इस गेंद को खूब सजा दी है। स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। लाजवाब था और इस बार फिर एक लाजवाब कनेक्शन देखना होगा। गेंद जाएगी यहां लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर। एक और छक्का और फिनिश अच्छा नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्लॉट में कर दी है गेंद और सफर किया है दूर का। यहां पे एक और छक्का। इस मर्तबा उमर ने अपने हाथ खोले हैं। फजल अफरीदी पहले ही बॉल को भेज दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री की जानिब, लेकिन इनफ लेग्स नहीं थी, क्लियर नहीं कर पाए। बहुत ही अच्छा कैच पकड़ने में कामयाब। एक और विकेट गिर गई है और यहां पर बहुत ही मुश्किल होती हुई इक्वेशन, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इस मर्तबा उठा दिया है बहुत देर की मेहरबान आते आते। फील्डर वहां पे मौजूद थे मिड विकेट पे। वो इसने कलाइयों का इस्तेमाल करके बॉल को उठाया और 6 रन बटोरे। और फिर से यहाँ पे कवर्स में खेल दिया है और गेंद जा रही है बाउंड्री की जानिब। यहाँ पे भी चौका मिल जाएगा, लेकिन मैच जो है वो हाथ से निकल गया है यहाँ पे और जौहर जवान जो है वो मैच हार चुके हैं। जबकि बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दाऊद पठान एंड कंपनी की जानिब से, जितनी इनकी तारीफ की जाए कम। कंप्रीहेंसिव विक्ट्री इन द एंड।
को शिकायत है कि या रब बशरे गुमराह कम कोशिश भी है, नया इंसान कोई तख्लीक कर तो ये जाहिल भी है, बारे दोष भी है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। At 3 a.m. Welcome back from BHA Sports Club Boyin Khan Academy. This match number 11 of KTBL Season 3 is Clifton Popular up against Karachi Knights here tonight. An pitching encounter once again between these two very strong sides as we see two. If we talk about toss, it was Karachi Knights who won the toss and have decided to bat first.